किसानों के लिए एक सशक्त माध्यम बनाया है, जिससे पैक्स मजबूत भी होंगे। और साथ ही साथ जिस तरह से मैंने अभी कहा कि 3 मल्टी स्टेट सोसाइटी का निर्माण जो हुआ है, उनमें बीज का और खास तौर से ऑर्गेनिक, इसका जो किसानों के लिए सीधा सीधा फायदा मिलने वाला है, वो पैक्स के माध्यम से, और उसका सीधा सीधा लाभ किसानों के लिए पैक्स के माध्यम से मिलेगा। इसलिए माननीय सदस्य को मैं कहना चाहता हूं, माननीय सहकारिता मंत्री के नेतृत्व में लगातार जिस तरह से जो है सहकारिता क्षेत्र में काम हो रहे हैं, और 57 तरह के अभी तक पहल केवल हमने किया ही नहीं है, उनको धरातल पर लाने का काम भी हमने किया है। और निश्चित रूप से आने वाले समय में हम पैक्स को और मजबूत करने का काम करेंगे। और सहकारिता क्षेत्र का जहां तक सवाल मैं कहना चाहता हूं कि माननीय सांसद महोदय से, हमारे पूरे देश के अंदर बहुत सारे ऐसे क्षेत्र थे, ऐसी ग्राम पंचायतें थी जहां पर हमारा कोऑपरेटिव मूवमेंट नहीं था। माननीय प्रधानमंत्री जी ने पिछली बार ही 2 लाख पैक्स हमारी मत्स्य डेयरी सोसाइटी खोलने का निर्णय 5 साल में लिया है। कोई भी ऐसी ग्राम पंचायत ऐसी न बचे जिसमें हमारी ऐसी पैक्स सोसाइटी ना हो, कोऑपरेटिव मूवमेंट न हो। इसलिए पूरे देश में सर्वस्पर्शी और सर्वव्यापी बनाने का अभियान माननीय सहकारिता मंत्री के नेतृत्व में चल रहा है। और निश्चित रूप से सहकार से समृद्धि का विजन माननीय प्रधानमंत्री मोदी का पूरा करेंगे और सहकारिता आंदोलन को जमीनी स्तर तक चलाने का काम करेंगे। श्री फ्रांसिस कोसर्दिना। Sir, in our state, many of the cooperative banks and also societies have gone into liquidation. People who have invested money are scared. It is their hard-earned money, and they are scared they will not get back their amount what they had invested. So I would like to request the Honorable Minister to give us assurance that they will interfere and see that people get their hard-earned money. माननीय मंत्री जी। सहकारिता के क्षेत्र में जो मल्टी स्टेट सोसाइटियां थी, उनकी शिकायतें जगजाहिर हैं। 2013 से लगातार जो करोड़ों हमारे ऐसे इन्वेस्टर थे जो भटक रहे थे, परेशान थे, और उन्हें निराशा के भाव में ऐसे डूबे थे, उन्हें लग रहा था पैसा नहीं मिलेगा। लेकिन माननीय सहकारिता मंत्री जी के नेतृत्व में हमने उनको भी वो पैसा लौटाने का पूरी तरह से निर्णय ही नहीं किया है, वो पैसा वापस देना भी शुरू कर दिया है। अगर मैं रिकॉर्ड के अनुसार कहूं तो 3 करोड़ से ज्यादा इन्वेस्टर ने अपने लगभग 80,000 करोड़ रुपए के दावे हमारे यहाँ पेश किए थे। 18 जुलाई को पोर्टल के माध्यम से माननीय सहकारिता मंत्री जी ने उसे शुभारंभ किया, और 45 दिन में विधिवत उनका रिकॉर्ड सही है तो पैसा मिलना भी शुरू हो जाता है। और अब तक हम काफी इन्वेस्टर्स के लिए हम पैसा वापस कर चुके हैं, और ये पैसा वापसी की प्रक्रिया चल रही है। और एक एक पैसा वापस करने का लक्ष्य माननीय सहकारिता मंत्री जी का है। कोई भी इन्वेस्टर ऐसा नहीं रहेगा जिसको पैसा न मिले। हमने 5,000 करोड़ रुपया सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से लेने का काम किया है, वितरण चालू कर दिया है, और आवश्यकता पड़ेगी उसको आगे जाएंगे। और पारदर्शी तरीके से, बिल्कुल बिना किसी भेदभाव के, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज उनकी अध्यक्षता में इस काम को कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 22 के सुरेश जी। सर, क्वेश्चन नंबर 22। माननीय मंत्री जी। पटल पर। माननीय Honorable Speaker, sir, the Union Ministry of Social Justice and Empowerment had launched a scholarship scheme to help MPhil and PhD scholars from OBC groups in 2014. But there is an increasing delay in stipends, and students have alleged that complaints to the ministry have failed to solve the problem. The UGC was initially the nodal agency for enough OBC fellowship, but the National Backward Class Finance and Development Corporations, but ever since the NFCFDC, which operates under the ministry, took over in October last year under a revised procedure, the arrears have increased and situation grown worse. It is also shocking to note that nearly 70% of 223 scholars at over 100 universities had faced delay in fund transfers to students for varying periods this year. Sir, in this regard, I would like to further ask the government whether
the government intends to rectify the delay in fellowship dispersal and investigate the complaints raised by the students. And also, sir, I would ask Honourable Minister through you, sir, the government will reconsider handing over the charge of the distribution fellowship to the UGC, considering the experience the UGC holds to terms of higher education institutions, sir. माननीय अध्यक्ष महोदय, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी प्रधानमंत्री बनने के बाद हमारे जो ओबीसी का विद्यार्थी है उसको एमपीएल और पीएचडी का पढ़ाई करने के लिए, रिसर्च करने के लिए, उच्च शिक्षा के लिए फर्स्ट टाइम भारत में किसी प्रधानमंत्री ने सिद्धांत लिया है। जो एमपीएल और पीएचडी का जो फेलोशिप है उसके लिए 2014-15 में उनका फेलोशिप का व्यवस्था माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में फर्स्ट टाइम ओबीसी के लिए किया गया है। उन्होंने जो क्वेश्चन किया है जो उसके लिए लेट होता है ऐसा नहीं है। हम लोगों ने यूजीसी का जो स्लॉट है उसके अंदर से 1000 का हमारी स्लॉट है, उसके अलावा भी यूजीसी का 4000 का अलग से स्लॉट है। उसमें हम इस साल भी उन्होंने बतलाया यहाँ पे 57 करोड़ रुपया हम लोगों ने उसके लिए अलॉटमेंट किया है। अभी तक जो आवंटित राशि है 51 करोड़ राशि आवंटित हो गया है। ऐसा कोई लेट नहीं होता। हम लोगों ने वहाँ से यूजीसी के माध्यम से जो हमारी नेशनल बैकवर्ड क्लास फिनेंस एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन नोडल एजेंसी है, सीएनए भी है, 3 दिन के भीतर उस पैसा को, उस फंड को रिलीज करने का व्यवस्था हमारे विभाग से है। उसका लेट नहीं होता, समयबद्ध तरीके से हमको उसका संपूर्ण करते हैं। और उसके अलावा उसका जो फेलोशिप 2014-15 में हमारी जो जेआरएफ के लिए 31,000 था, उसको हम लोगों ने अभी माननीय प्रधानमंत्री जी ने उसको 37,000 किया है और जिसको 35,000 का 42,000 किया है और समयबद्ध तरीके से उसका ऑन टाइम हम करते हैं। जैसे इस साल का आपने बताया 57 करोड़ था, अभी तक हम लोगों ने 51 करोड़ उसको डिस्बर्स हो गया है। Different fellowship amount is very meager. So the students are facing serious problem for getting meager amount of the scholarship and stipend. So I would like to ask Honourable Minister through you, sir, whether the government should consider to enhance the amount of stipend and fellowship for the OBC students. And also, sir, whether the government further consider establishing fellowship for economically weaker section of the general category students. Thank you, sir. माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं पहले भी बता दिया 2014-15 से एमपीएल और पीएचडी के लिए जो फेलोशिप का शुरुआत किया है माननीय प्रधानमंत्री जी ने, जो 31,000 था उसको हम लोगों ने इस 2023 में उसको 22-23 में उसको 37,000 किया है। जो 35,000 था उसको 42,000 किया है। समय समय में उसको वृद्धि होता है। टीआर बालू जी। Sir, the number of OBC faculties in respect of technical and scientific universities, as far as OBCs are concerned, especially in the case of assistant professor, associate professors and professors, is very meager. It is not even 10%, sir, as of now. Sir, 30 years ago, we have enacted brought an act to introduce 27% reservation. But so far, only 10% we have provided so far. So equally, everybody is responsible. But you say, I want to know, what is the reason for that? The reason is because of shortage of PhD degree holders. So for want of PhD, the shortage is still existing. I want to know, to supplement Mr. Suresh's question, I want to know whether the stipend to the particular to the candidates will be increased according to the latest the economic data. Honorable. माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं डाटा पहले भी बता दिया कितना उसका इंक्रीज किया है, फिर भी मैं बताती हूँ जो उन्होंने क्वेश्चन किया है जो फैकल्टी के बारे में वो उसके संबंधित नहीं है। लेकिन पिछले हमारी 9 सालों में जितने लोगों को वहाँ पे हम लोगों ने किया है 8,251 to 8,251
लोगों ने उसके फेलोशिप पे वहाँ पे मिला है, लेकिन उन्होंने क्वेश्चन किया है उसका रिलेटेड नहीं है, वो फेलोशिप का रिलेटेड है। फेलोशिप को हम लोगों ने 2014 से 2023 तक उसका वृद्धि किया है। श्री हेमंत गोडसे। सन 2019 में सरकार ने ओबीसी के अलावा 10% रिजर्वेशन इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन को देने की निर्मित की। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से ये जानना चाहता हूं कि ईडब्ल्यूएस के स्कॉलर्स को सेंट्रल इंस्टीट्यूशन में एमफिल्स और पीएचडी के स्कॉलरशिप की सुविधाएं क्या मिल रही है? अगर मिल रही है तो अब तक कितने स्कॉलर्स को ये सुविधा मिली है? अगर नहीं मिली है तो क्या सरकार इसके ईडब्ल्यूएस के स्कॉलर्स को स्कॉलरशिप देने के लिए सोच रही है? थैंक यू। ओबीसी का क्वेश्चन नहीं था, उसका फेलोशिप ओबीसी का है। तो माननीय सदस्य महोदय को मैं उसका तथ्य उपलब्ध करके उनको भेज दूंगी। क्वेश्चन नंबर 23 श्री श्याम सिंह यादव। माननीय अध्यक्ष जी, क्वेश्चन नंबर 23, लेकिन माननीय ओके, क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23, लेकिन माननीय अध्यक्ष जी एक बात कहना चाहूंगा। माननीय अध्यक्ष जी, उत्तर सभा पटल पर रखा हुआ है। माननीय मंत्री जी इसका जवाब दें। माननीय अध्यक्ष जी एक बात कहना चाहूंगा। पहले क्वेश्चन नंबर 23 बोलो। 23। अब माननीय मंत्री जी बोलेंगे। एक मिनट बैठ जाइए। अब माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, उत्तर सभा पटल पर। अब माननीय सदस्य। मैं सभी माननीय सांसदों की तरफ से एक दरख्वास्त करना चाहता हूं। माननीय अध्यक्ष जी, आप प्रश्न पूछो, दरखास्त बाद में, अभी प्रश्न क्यों? ये रिलेवेंट सवाल है। जो हम लोगों का क्वेश्चन अपलोड किया जाता है 10 बजे, जिस दिन 11 बजे, वो विषय मुझे एक दिन पहले हो, वो विषय आप चेंबर में बताना या नहीं, आप प्रश्न पूछे यहाँ पे। तो दूसरा ये कहना था कि शायद आप मुझे बधाई दें कि 4.5 साल में पहली बार स्टार क्वेश्चन आया है। तो पूछे आप। और जैसे लोगों को ईवीएम पर संदेश है, उसी तरह से ऐसे बात नहीं बोलते माननीय सदस्य। अच्छा, 9 इसको रिकॉर्ड मत लेना। अच्छा, कभी बोलना ही बात। तो 1 मिनट बैठिए। बैठिए, सवाल पूछ रहा हूं। बैठिए माननीय सदस्य। मैं माननीय सदस्यों से आग्रह करता हूं, आप सब वरिष्ठ सदस्य हैं, कभी इस पर सवाल नहीं उठे। इस तरीके के विषयों को सदन में नहीं उठाना चाहिए। आपका सदन है माननीय। मैं माननीय अध्यक्ष जी से के द्वारा माननीय मंत्री जी से यह पूछना चाहता हूं कि ये प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना में बड़ी मुश्किल से तो हम लोग एक दूसरे से तारतम्य बैठा करके ये सड़कें स्वीकृत करवाते हैं, लेकिन हमारे जौनपुर के एक मंत्री जी हैं, विधायक लोग हैं, वो जा करके इसका उद्घाटन पहले ही कर देते हैं, जबकि एक शासनादेश है माननीय मंत्री जी जिसमें यह है कि इन सड़कों का उद्घाटन निर्विवाद रूप से माननीय सांसद करेंगे। तो क्या मैं जानना चाहता हूं कि ऐसे विद्वान मंत्री जिसको कानून नियम का ज्ञान नहीं है, माननीय मंत्री जी अनुरोध करेंगे उत्तर प्रदेश सरकार के मुखिया से कि उनको नियम कानून का पाठ पढ़ाएं और भविष्य में ऐसी घटनाएं न हो कि वे जाकर खुद सड़क का उद्घाटन कर देते हैं और जनता को गुमराह करते हैं। आपका प्रश्न, बस यही प्रश्न है। ओके। क्या माननीय अध्यक्ष महोदय, ये क्वेश्चन से संबंधित नहीं है, क्वेश्चन दूसरा है। इसके लिए मैं बता दूं, इसके लिए गाइडलाइन जारी है और उस गाइडलाइन की पालना सब करते हैं। ठीक है। श्रीमती के कनिमो जी, चलिए बैठिए। Thank you, sir. Since this question is related to rural unemployment, I just like to ask, given the fact that the average number of days of employment provided per household in the NREGA scheme
is less than 50 days. What are the measures that the government is taking to ensure that 100 days of employment are because the entire scheme was intended to give minimum 100 days of employment, and we are not even able to reach 50 days. What is the government, doing to ensure that at least 100 days of employment is given and the money, the payment and wages are given to the people in different states who are working in this Narega scheme are getting their payment on time, because it's been delayed by a few months in most of the states? And is the government planning to give them delay allowance? Because that is also part of the scheme, that if the payments are delayed, that they are expected to give delay allowance. So what is the government responding to this? Thank you. माननीय अध्यक्ष महोदय, ये प्रश्न उत्तर प्रदेश से संबंधित बेरोजगारी भत्ता से और वहाँ मनरेगा में काम करने वाले लोगों से संबंधित है। माननीय सांसद महोदय ने प्रश्न पूछा, उनको हम पहुँचा देंगे। उत्तर प्रदेश के लिए ही पूछा है, उत्तर प्रदेश के लिए पूछा। श्री शशि थरूर जी। Thank you, sir. Actually, I would have the same problem with the minister, because Mr. Speaker, sir, the question is headlined unemployment allowance. So that's what we're asking about. The specific question may have been about UP, but we can ask about the principle, sir, because according to Section 7.1 of the Manrega rules, if an applicant for employment under the scheme is not provided such employment within 15 days of receipt of his application seeking employment, or from the date on which the employment has been sought in the case of an advance application, whichever is later, he shall be entitled to a daily unemployment allowance in accordance with the section, quote unquote, sir. I want to ask the Honourable Minister, I can tell you from my experience in the state of Kerala, this is not being done, sir. And to the best of my knowledge, in many states, we are not finding the government actually compensating Manrega applicants. In my own state, the number of applicants is more than twice the number of jobs offered. Only a handful of people are getting the full 100 days, sir. So if the government has a rule like this, that means that if somebody doesn't get the requested employment within 100 days of Manrega, they should be paid unemployment allowance. Now, where is the government doing this? I would like the Honourable Minister to explain. UP and every other state, but certainly in my state of Kerala, this is a genuine problem for our rural workers. And in Kerala, sir, 92% of Manrega workers are women, because they're running women-run households. We really need to ensure that this protection is given, sir. And given this, can you tell us what mechanisms you have in place to ensure that the states are paying the money they're supposed to pay? Is the central government giving the states the money to enable them to pay it? Thank you, sir. महोदय, एक तो इस प्रश्न से जुड़ा हुआ नहीं है, लेकिन विद्वान मित्र जिस ढंग से प्रश्न को उठाए हैं, मैं एक मिनट आपके सामने देश का चित्र रखना चाहता हूं। अगर 2014 तक जिस पार्टी से जुड़े हैं, केवल 1660 श्रम दिवस ही बन पाया था। अभी 2700 श्रम दिवस बन चुके हैं। और जहां तक पैसे का सवाल है, अरे मैं वही बता रहा हूं, चिल्लाने से नहीं होगा, ये चिल्लाने से नहीं होगा। हमें भी चिल्लाने आता है, हम ज्यादा चिल्लाना जानते हैं। चिल्लाने से नहीं होगा। ये 2,13,000 खर्च किए और 6,74,000 हमने खर्च किया। लेबर बजट राज्य सरकार लेकर के आती है, लेबर बजट की स्वीकृति हम करते हैं। और ये काम देना, मैं तो कहता हूं कि जो अधिकारी काम नहीं दे रहे हैं, राज्य सरकार उनके ऊपर पूछे। भारत सरकार की ओर से कोई दिक्कत नहीं है, न पैसे की दिक्कत है, न लेबर की दिक्कत। बजट बढ़ाइए सर, पैसे दे दीजिए उनको। 24 डॉक्टर पोन गौतम सिंगामणि। क्वेश्चन नंबर 24। माननीय मंत्री जी, माननीय सदस्य। Sir, my first supplement is, in the reply by the Honourable Minister, it has been stated that most of works which are pending under the said program
in certain states or in hilly states, sir. The very purpose of PMGSY is to make road connectivity in rural as well as in hill terrain areas. Kalvarani Hills and Yerkad Hills fall in my Kallakurchi parliamentary constituency, which needs better road connectivity. My question is, what are the steps the government proposed to take to remove the bottlenecks to complete the road projects in those states where the work is still pending despite many extensions? माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को अवगत कराना चाहती हूं। उसके पहले प्रधानमंत्री सड़क योजना लागू करने वाले स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी को भी मैं बहुत बहुत अभिनंदन करना चाहती हूं। प्रधानमंत्री सड़क योजना एक गांव जो अलग थे उनको जोड़ने के लिए था। ये बात सही है कि जहां पहाड़ी एरिया है वहां सड़क बनाने में कहीं न कहीं दिक्कत आती है, पानी बरसता है। फिर भी मैदानी क्षेत्रों में सड़कों की बहुत तेज गति से काम हुआ है, 1 और 2, 3, और उसमें भी राज्यों को हमने समय बढ़ाया है। जहां 19 तक था उसके बाद हमने 22 तक किया और 22 के बाद 2 के लिए हमने 24 तक कर दिया है, 3 के लिए 25 तक कर दिया है। ये सड़कों का काम राज्यों को करके पूरा करना है। Honorable member. Specific question. Sir, I would like to note that there is a difference in allocating funds for districts in Tamil Nadu in rural areas, sir. So I would like to know from the Honourable Minister whether the government is considering to sanction further road projects and sanction funds equally for all districts in Tamil Nadu. Madam, when will the aircard road be built? You please answer that. माननीय अध्यक्ष महोदय, सड़क एक सतत प्रक्रिया है जिसकी जब पूरी होती है उसको निधि जारी की जाती है। 1, 2 और इस टाइम 3 का काम चल रहा है, लेकिन कई राज्य अभी 1 और 2 को पूरा नहीं कर पाए। इसलिए जिन राज्यों से सदस्य आते हैं अपने राज्यों को प्रेरित करें कि पहले 1 और 2 को पूरा करें। पैसे की कमी नहीं है, पैसा हमारा पूरा जा रहा है, लेकिन अभी पूरी 2 और 1 की सड़क नहीं बन पाई। हम 3 में पहुंच चुके हैं। मैं बधाई देना चाहती हूँ उत्तर प्रदेश सरकार को। उत्तर प्रदेश सरकार ने लगभग पूरा कर लिया है। इसके लिए उत्तर प्रदेश सरकार में पहली सरकार है प्रदेश केंद्र में देश में जो सड़कों का काम पूरा किया है। रामकृपाल यादव। सर, आभार व्यक्त करते हैं सर आपका कि आपने एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन के लिए मुझे अनुमति प्रदान की है। सर, ये प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना पूरे अटल बिहारी वाजपेयी स्वर्गीय नहीं है, उनको आदर। उन्होंने एक कंसेप्ट के साथ प्रारंभ किया और पूरे देश में गांव को सड़कों से जोड़ने का एक नया उदाहरण पेश करने का काम किया है और वर्तमान मोदी जी की सरकार ने इस पर बहुत बड़ी गति देने का काम किया है। मैं सर आपके माध्यम से अपने राज्य बिहार के संदर्भ में जानना चाहूंगा कि जैसा कि पता है कि फेज 1, फेज 2, फेज 3 सड़कों के निर्माण के लिए धनराशि आवंटित की गई। मैं ये जानना चाहता हूं आपके माध्यम से कि बिहार में फेज 1, फेज 2 की जो सड़कों के लिए आपने लक्ष्य निर्धारित किया था वो पूरा हुआ कि नहीं, और फेज 3 में आपने कितना किलोमीटर सड़क के निर्माण की अनुमति प्रदान की है, अब तक उसकी क्या प्रगति है, ये हम जानना चाहेंगे, खासतौर पर बिहार के संदर्भ में। सर, थैंक यू। महोदय, माननीय सदस्य ने बिहार से जुड़ा हुआ प्रश्न पूछा है। वैसे तो ये नहीं था। फेज 1, फेज 2 में वो सड़कें बची है जो उग्रवादी से जुड़ा हुआ क्षेत्र है। फेज 3 में 6162 किलोमीटर का लक्ष्य दिया गया, जो अभी तक केवल स्वीकृत तो हो गई है, वो 5605 किलोमीटर, और स्वीकृत किए जाने बाकी हैं अभी केवल 267 फेज 3 में।
श्री के मुरलीधरन। The PMGSY road is the direction from the central government. The width will be 8 meters. But in the state of Kerala, most of the roads are only 6 meters. So I request the honorable government that should adopt a state-specific rule for this purpose. Then only we can, especially the state of Kerala, will be get benefit because our we want an exemption or a state-specific rule. माननीय अध्यक्ष महोदय, केरल से संबंधित प्रश्न पूछा है, उनका उत्तर मैं जरूर लिखित में भेजूंगी, लेकिन जो अभी तक पूर्ण सड़कें हुई हैं उनको 2006 से मार्च 2014 तक 411 किलोमीटर, अप्रैल 2014 से अब तक 8000 ये लंबित सड़कें पूरी की गई हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, सतत प्रक्रिया है प्रधानमंत्री सड़क योजना। किसी भी राज्य में कहीं कमी है उसको पूरा करने के लिए हम बिल्कुल, हमारा मंत्रालय खुला दरबार है। 1, 2 और 3 जब तक ये तीनों फेज की पूरी नहीं हो जाती तब तक हम आगे का कार्रवाई नहीं कर सकते। सुदीप बंदोपाध्याय जी, आप सुदीप नहीं, आपने लिखाया है। सर मेरा 23rd का थे, मैं पूछे? मेरा 24 मैंने दिया। तो मैं थोड़ा सर गिरिराज सिंह जी का देखने से मेरा प्रश्न आ जाते हैं। नमस्कार। तो आपको ये पूछना बार बार बोलते हैं, आपसे हम लोगों ने मिला था, आप लोगों ने भी जवाब दिया था कि मंत्री को भेजो, मंत्री को साथ बात करें। हम लोग गए थे आपको मिलने के लिए, आप नहीं थे, मिनिस्टर ऑफ स्टेट का घर पे गए थे और वहाँ आधा घंटा इंतजार किया। सर आपका कल विषय आ गया था। सर प्रश्न है ये आ गया था कि 100 डेज वर्कर्स चाहे आवास योजना, ये सबको लिए आप लोग करप्शन ये सब बात उठाते हैं। सर ये बंगाल तो एक बड़ा स्टेट है, 38,000 गांव है, जो गांव में ये अभियोग आया वहां से पेमेंट स्टॉप करिए ना। पूरा स्टेट को क्यों रोक देते हैं रुपया देने से? 2 साल से रुपया नहीं देता, ये बहुत बड़े दुख की बात है। सर आई वांट टू हियर फ्रॉम यू। सर गिरिराज जी, माननीय अध्यक्ष जी आपसे सुनना चाहते हैं, प्लीज। सवाल से संबंधित प्रश्न नहीं, मैं दे रही जवाब। मैं यद्यपि इस सदन का सवाल नहीं है, लेकिन जिस तरह से मेरे को झूठा आरोप लगाया गया, इन्होंने आधा घंटे का समय मांगा था 5 लोगों का, मैंने कहा 5 लोग आ जाइए। 5 लोग के बाद 10 मिनट के बाद कहते हैं हम 10 लोग आएंगे, हमने कहा 10 लोग आ जाइए। फिर बोले जनता से मिलिए, मैंने कहा आपका जो प्रतिनिधि मंडल आया है जिस इशू को लेकर के, उसके पहले टेबल में बात करिए। सुनिए पहले माननीय अध्यक्ष महोदय, 2.5 घंटा मैं अपने ऑफिस में बैठी रही जहाँ मुझे आधा घंटा बैठना था। फिर बोले हम पूरे सांसद आएंगे, हमने कहा पूरे सांसद आ जाइए, अकेले नहीं मिलूंगी। महुआ मोइत्रा, उन्होंने कहा मैं अकेले नहीं, आज आपका डेलीगेट आया, डेलीगेट से मिलूंगी, जिस इशू को लेकर के उस संबंध में बात करिए। लेकिन अध्यक्ष जी मुझे खेद है, ये मिलने के लिए तैयार नहीं थे, इन्हें प्रोपोगंडा करना था, मेरे ऑफिस में धरना देना था। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं 2.5 घंटा बैठी रही, 2.5 घंटा रात में 6 बजे से लेकर के 8:30 बजे उठी हूँ और मेरे को बोला पीछे गेट से निकल गई। अध्यक्ष महोदय, मैं 4 नंबर गेट से जाती हूँ, 4 नंबर से ही आती हूँ और 4 नंबर से गई हूँ। इन्हें मांगना नहीं था, इन्हें पश्चिम बंगाल की जनता की चिंता नहीं है, इन्हें सिर्फ राजनीतिक रोटियां सेकनी है। इन्होंने राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए इसी भवन में आकर के धरना दिया। मैं 2.5 घंटा बैठी रही, मैं उसके लिए इनसे चाहूंगी इस तरह का झूठा बयान नहीं दें। मुझे झूठा बोला, मुझे महुआ मित्रा ने कहा कि साध्वी निरंजन ज्योति जैसा पापी हो तो पाप की जरूरत नहीं है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं संत हूँ और उसका परिणाम इनको मिल गया। श्री तापिर गांव जी,
श्री तापिर गांव जी, आप पूछिए। तापिर गांव। ऑनरेबल स्पीकर सर, मैं ऑनरेबल मिनिस्टर से 2 बार मिला हूं। हमारा अरुणाचल प्रदेश में 3 जिला है जहां उग्रवादियों का डिस्टर्बेंस है। PMJSY फेज 1, फेज 2 का लेफ्ट आउट हुआ। मंत्री जी ने कहा कि मैंने परमिशन दे दिया है, लेकिन परमिशन तो दिया है, लेकिन पान तो नहीं दिया। तो स्टेट गवर्नमेंट कैसे फेज 1 और फेज 2 का लेफ्ट आउट PMJSY को कैसे बनाएंगे? मैं मंत्री जी से जवाब चाहता हूं। और पान कैसे रिलीज करेंगे फेज 1, फेज 2 का, ये मंत्री जी से जवाब चाहता हूं। ये सदस्य, आप इनका माननीय मंत्री जी इनका जवाब दो। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने मेरे पास आए और मैंने इनके कहने पर समय अवधि दिया हूं, बढ़ाया हूं। राज्य सरकार से अनुरोध कर रहा हूं कि वो पूरा कर दे। क्वेश्चन नंबर 25, अब ये बोलो। मनोज राजौरिया जी। क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25। माननीय मंत्री जी, माननीय सदस्य जी, धन्यवाद स्पीकर महोदय। धन्यवाद स्पीकर महोदय। जिस तरीके से आप प्रश्न पूछिए। माननीय धन्यवाद स्पीकर महोदय। जिस तरीके से देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने किसानों के सम्मान के लिए, किसानों की उन्नति के लिए पिछले लंबे समय से काम किया, उसी अवधि के उसी कार्यक्रम के तहत माननीय प्रधानमंत्री जी ने किसानों को सम्मान देने के लिए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की घोषणा की थी। और आज उस घोषणा से मेरे संसदीय क्षेत्र करौली के 1,46,953 और धौलपुर के 1,52,271 किसानों सहित राजस्थान के 80 लाख से अधिक और पूरे देश के 11 करोड़ से अधिक किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का फायदा मिला है। मैं इसके लिए माननीय प्रधानमंत्री जी का आभार व्यक्त करता हूं। साथ में ही माननीय मंत्री जी से एक सवाल करना चाहता हूं कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो किसानों के हित के लिए ये प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि जो की है, इसमें बचे हुए किसानों को या 100% किसानों को लाभ पहुंचाने के लिए माननीय मंत्री से आग्रह करूंगा कि भारत सरकार ऐसे क्या प्रयास कर रही है कि 100% किसानों तक प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का लाभ पहुंच सके। माननीय अध्यक्ष जी, 2018 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किसान सम्मान योजना शुरू की थी। तब से अभी तक 15 किस्तों में हम 11 लाख किसानों के लिए 11 करोड़ किसानों के लिए 2.81 लाख करोड़ रुपया डीबीटी के तहत हम पहुंचाए सर। अभी ये योजना विश्व का अत्यंत बड़ा योजना है। डीबीटी के तहत योजना जारी की है। इसे विदेश में भी इसका तारीफ हो रही है सर। हम ये योजना देने के समय राज्य सरकार से आंकड़ा मांगे थे। उसी समय हमको 11 करोड़ आंकड़ा मिला था। उसके बाद इसी में 2 करोड़ किसानों फर्जी निकले। उसके बाद हम किसानों में जागृति की है, मोबाइल ऐप बनाए हैं एंड वेबसाइट में खुद वो एप्लीकेशन डालने के लिए मौका दिया है। अभी हम ई-केवाईसी के तहत फेस आइडेंटिफिकेशन करने का भी प्रावधान इसी में किया है। इसीलिए हमारा सरकार का इच्छा है किसान सम्मान योजना को सैचुरेशन पॉइंट में लाना, सब किसान को वो देना। ऐसे करके हम अभी हमारे काम शुरू किए हैं सर। इसीलिए ये बड़ा योजना विदेश में भी इसका तारीफ हो रहा है सर। सप्लीमेंट्री। धन्यवाद माननीय मंत्री महोदय जी। मैं एक सवाल और आपसे पूछना चाहूंगा
कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने जिस तरीके से पिछले 9 वर्षों में किसानों को आर्थिक संबल और उन्नति करने के लिए उनकी फसल को समर्थन मूल्य देने के लिए एमएसपी का जो मूल्य बढ़ाया है, किसानों को अधिकतम फसलों पर एमएसपी दी और अधिक से अधिक फसलों की खरीद की घोषणा की। कुछ फसलें ऐसी भी रही जिसमें प्रधानमंत्री जी ने एमएसपी को 1.5 गुना से भी अधिक मूल्य पर उनकी फसलों की खरीद की। मैं आपसे माननीय मंत्री महोदय जी से आपके माध्यम से जानना चाहूंगा कि पिछले 9 वर्षों में कुछ किन किन फसलों को 1.5 गुना से अधिक एमएसपी पर उन्होंने खरीदने का काम किया और 9 वर्षों में कितनी फसलों की उन्होंने किसानों से खरीद की और किसानों को लाभ दिया और उनका आर्थिक उन्नति में उनके सम्मान को बढ़ाने में सहयोग किया। माननीय अध्यक्ष जी, किसानों को उनके उत्पाद में लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करने के लिए कृषि लागत और मूल्य आयोग की सिफारिश के आधार पर 22 मैंडेटेड कृषि फसलों के लिए एमएसपी दे रही है सर। हमारे सरकार 2018-19 में बजट में हम बताए थे उत्पादन के लागत का 1.5 गुना स्तर पर हम ये घोषणा किया है, उसके आधार पर हम एमएसपी देना है ऐसा हम बताए थे। उसका आधार पर 2018-19 में मैंडेटेड खरीफ, रबी और अन्य बागवानी फसलों के लिए एमएसपी ऑल इंडिया वेटेड एवरेज कॉस्ट प्रोडक्शन का लागत पर कम से कम 50% मुनाफे के साथ निर्धारित की जाती है सर। वर्ष 2014-15 में ये खाद्यान्नों का खरीदे में 759.44 लाख मीट्रिक टन था। अभी ये बढ़कर सर ये साल लास्ट ईयर में 2022-2023 में 1062.69 लाख मीट्रिक टन खरीदी हुई है सर, जिसमें 1.6 करोड़ से ज्यादा किसानों को लाभ हुई है एंड एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन प्रोक्योरमेंट ऑफ फूड ग्रेन्स इंक्रीज्ड 1.06 lakh crores in 2020-23. It was 1.06 crore in 2014 में था। अभी वो बढ़कर 2.2 लाख करोड़ तक पहुंच गए सर। हर साल ये बढ़ रही है एंड एमएसपी के तहत हम अभी ज्यादा खरीद हो रही है। दलहन तिलहन में हम इसका सीलिंग को निकाल दिया है। 100% हम दलहन को अभी देश में खरीद रहे हैं, इसीलिए हर साल वो खरीद ज्यादा हो रही है एंड उसका मूल्य भी ज्यादा हो रही है। श्रीमती रंजीता कोली। धन्यवाद पीढ़ियों के लिए यही की सुरक्षा करना हमारी नैतिक जिम्मेदारी है। हमें स्थायी ऊर्जा स्रोतों की ओर बदलाव करना चाहिए, ग्रीन हाउस गैस परिवर्तन को कम करना चाहिए और जिम्मेदार खपत और उत्पादन के बढ़ावा देना चाहिए। इसके लिए सभी क्षेत्रों, सीमाओं और राजनैतिक विचारधाराओं में सहयोग की आवश्यकता है। कानून निर्माताओं के रूप में हमारे पास ऐसी नीतियां बनाने की शक्ति है जो नवाचार की प्रोत्साहन करती है, नवीनीकरण ऊर्जा में निवेश करती है और उद्योगों के उनके पर्यावरण प्रभाव के लिए जवाबदेह बनाती है। आइए हम अल्पकालिक लाभ से अधिक अपने ग्रह की भलाई को प्राथमिकता है और एक ऐसे भविष्य की दिशा में काम करें यहाँ स्वच्छ हवा, स्वच्छ पानी और स्थिर जलवायु सुनिश्चित हो। निष्क्रियता में कोई विकल्प नहीं है। धन्यवाद अध्यक्ष जी। धन्यवाद। माननीय श्री विप्लव कुमार देव जी, कंसर्न ओवर मिसयूज ऑफ टेक्नोलॉजी एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टू क्रिएट डीप फेक्स। माननीय विप्लव कुमार देव, नॉट प्रेजेंट। माननीय श्री मुजीबुल्लाह खान जी, डिमांड टू स्टार्ट न्यू रूट फॉर वंदे भारत। मुजीबुल्लाह खान जी सर, प्लीज, आपका समय शुरू हो गया है। Thank you, sir. In order to meet Odisha's demand for
connectivity, very necessary for Odisha to have great connectivity various regions, and witness that Vande Bharat train between Puri and Howrah in West Bengal, along with a recent addition of a train between Puri and Raulkela connectivity, the same massive practical and reading towards it is impressive further Vande Bharat Express train to be introduced in Odisha. The state of Odisha has suffered a neglect from the central government as reflected by its power rail connectivity. Further, the degree of connectivity is spread across the region of Odisha. For instance, there are very few express trains connecting between Odisha and Bhubaneswar. Between Odisha and Bhubaneswar, both the express train mentioned above by the track towards the another part of Odisha. The proposal for a new connectivity in running between Bhubaneswar and Hyderabad by some having a Vande Bharat between two hubs will the travel time reduce travel time 7 hours. A major complaint death of trains running between the two locations. This new introduction will lead to further connectivities of passengers, will give a much needed push a connectivity. Thank you. थैंक यू, धन्यवाद श्री मुजीबुल्लाह खान जी। माननीय श्रीमती संगीता यादव, कंसर्न ओवर प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय मेंटली चैलेंज पीपुल। माननीय संगीता यादव जी, माननीय संगीता यादव जी, प्लीज। नहीं, 0 आवर नहीं लगा। कंसर्न ओवर प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय मेंटली चैलेंज पीपुल। माननीय सदस्य, आप जो आप देते हैं यहाँ बोलने के लिए, उन विषय पे ध्यान रखें और बोलें प्लीज। सॉरी सर, आज मैंने देखा नहीं, कल लगा था मेरा। धन्यवाद। डॉक्टर राधा मोहन दास अग्रवाल जी, रिक्वेस्ट फॉर प्रोविजन ऑफ सैलरीज एंड अलाउंस टू लोकल रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंसी। माननीय उपसभापति महोदय, भारत के संविधान में यह व्यवस्था है कि व्यक्ति काम के बदले में वेतन पाए और समान काम के बदले में समान वेतन पाए, लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण है इस देश में जनप्रतिनिधियों के साथ ही दोहरा आचरण किया जा रहा है। राष्ट्रपति महोदय, उपराष्ट्रपति महोदय, केंद्र के मंत्रीगण, राज्य के मंत्रीगण, माननीय सांसदगण, माननीय विधायकगण, इन सब ने संवैधानिक तरीके से और कानून बना करके अपने अपने वेतन की, अपने अपने भत्ते की और अपने अपने पेंशन की व्यवस्था की हुई है। ये व्यवस्था संविधान प्रबद्ध माध्यमों से हम लोगों ने की है, लेकिन दुखद है इस देश में लाखों की संख्या में ऐसे जमीनी जनप्रतिनिधि हैं, ग्राम प्रधान से लेकर के और मेयर तक, जो जमीनी धरातल पर बहुत महत्वपूर्ण काम करते हैं। विकास की जो भी योजनाएं हम यहाँ बनाते हैं, जमीनी धरातल पर उनको लागू करने का काम वही करते हैं। वो प्रत्यक्ष जनता के संबंध में रहते हैं, लगातार जन समस्याओं को लेकर के उन्हें 24 घंटे काम करना होता है। हमने इन बड़े जनप्रतिनिधियों के लिए संविधान के तौर तरीके से वेतन की, भत्ते की और पेंशन की व्यवस्था कर दी। भारत अकेला ऐसा देश होगा शायद जिसने संवैधानिक रूप से 73वें और 74वें संशोधन के माध्यम से ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में लोकतंत्र का विकेंद्रीकरण किया और स्थानीय निकायों को चलाने के लिए जनप्रतिनिधियों की संवैधानिक रूप से व्यवस्था की। उनके अधिकार दिए, उनके दायित्व दिए, लेकिन जो कुछ उनको नहीं दिया वह था उनका वेतन नहीं दिया,
उनका भत्ता नहीं दिया और उनका पेंशन नहीं दिया। मैं जानना चाहता हूं इस सदन से, इस सौतेले और इस दोहरे आचरण का आधार क्या है? क्या वह जो छोटे जनप्रतिनिधि होते हैं, क्या उनके परिवार नहीं होते, उनके माँ बाप नहीं होते, उन्हें अपने माँ बाप की चिंता नहीं करनी होती, अपने बच्चों की चिंता नहीं करनी होती? आखिर किन कारणों से आज तक हमने संवैधानिक रूप से उनके लिए यह व्यवस्था नहीं की? स्थानीय आधार पर सरकारें, मुख्यमंत्री दया की तरह उनको वेतन, उनको भत्ता देते हैं, ब्यूरोक्रेसी उनको नियंत्रित करती है। यह दोहरा आचरण इस देश में समाप्त होना चाहिए। अगर हम संविधान संशोधन लेकर के जनप्रतिनिधियों को लाए थे तो हमें उस कानून में यह व्यवस्था करनी चाहिए थी कि हम उन्हें आर्थिक रूप से समस्त बनाते। हमने नहीं किया, हमने लोकतंत्र का मजाक उड़ाया है, हमने उन्हें अधिकारियों के आधार पर छोड़ दिया है। और इसलिए मैं सरकार से मांग करता हूं, अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से सरकार से मेरी अपेक्षा है, सरकार संविधान संशोधन करे 73वें और 74वें संशोधन में, और अपने सारे स्थानीय जनप्रतिनिधियों के लिए वेतन की, भत्ते की और नॉट गोइंग ऑन। थैंक यू। माननीय श्री विक्रमजीत सिंह साहनी जी, डिमांड टू इम्प्लीमेंट यूनिफॉर्म नेशनल लेवल पैरामीटर फॉर रिलीज ऑफ प्रिजनर्स। माननीय विक्रमजीत सिंह साहनी जी, नॉट प्रेजेंट। माननीय सदस्य, 0 आवर आप देते हैं तो उसके महत्व को समझना भी चाहिए, उस वक्त मौजूद भी रहना चाहिए। अगर हाउस में है तब आपका ध्यान उस पर नहीं है तो ये आपके लिए सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन का विषय। बैठे आप, कोई ऐसा प्रोविजन नहीं, आप जानते हैं रूल्स को राघव जी, फिर भी आप पूछ रहे, प्लीज। डॉक्टर फौजिया खान जी, रिक्वेस्ट टू एड्रेस द इशू ऑफ मिसिंग वीमेन इन इंडिया। डॉक्टर फौजिया खान जी, प्लीज। Thank you, sir. Sir, the issue of missing women in the country is alarming, with 10,61,648 women alone in the years 18 and above, and 2,50,430 girls below 18 years have reported missing between 2019 and 2021. Over 2 lakh women went missing in the state of Madhya Pradesh alone between the year 2019 and 2021, sir. Yet, the reasons have remained undisclosed. Sir, the suspected reasons behind the disappearance of these women are diverse, like trafficking, trade, and in minuscule cases, elopement. Tackling this issue requires collective action on various fronts: strengthening law enforcement to identify trafficking networks, enhancing border control, establishing a database for accurate identification of the reasons for the disappearances. Additionally, the numbers have come as a surprise to many, indicating the lack of awareness of the incidents of disappearance of women. Therefore, public awareness campaigns, community involvement, educational programs can help prevent vulnerable individuals from falling prey to traffickers. Despite designated stop centers, the unprecedented increase in numbers suggests the possibility of organized criminal activities, sir. A recommendation to address the issue of missing women involves the establishment and maintenance of a comprehensive register by the government documenting details of every woman reported missing. This register should serve as a centralized database, enabling efficiency tracking and tracing efforts. Sir, additionally, specialized teams should be formed to investigate each case with a focus on identifying potential foul play. These teams could comprise experts from law enforcement, social services, and legal professionals to ensure a thorough and coordinated approach in understanding the circumstances behind each disappearance to ensure accountability and effectiveness. Sir, this issue is of grave concern. How can women go missing like this? Just without any reason, women missing is a grave issue, sir. The government must pay attention to this. श्री
Rajiv Shukla, concern over poor state of under trials and the imperative for judicial reforms. Not present. Shri Kailash को इसके दायरे में लाया जाए और कंसेशनल जो प्रीमियम रेट्स है उन वो अप्लाई हो। माननीय अध्यक्ष महोदय, निश्चित रूप से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार किसानों के साथ खड़ी रही है और खड़ी रहती है हमेशा। और जम्मू कश्मीर के अंदर जब सेव का अगर भाव कोरोना के समय में कम हुआ था तो उस समय भारत सरकार ने उसकी खरीद की थी, आपको ये अच्छी तरह से ध्यान में है। और निश्चित रूप से मैं ये कह सकता हूं कि जम्मू कश्मीर के अंदर भी इसको कवर करने के लिए निर्णय निश्चित रूप से राज्य सरकार लेती है। इसमें राज्य सरकार का पूर्ण अधिकार है राज्य सरकार के अंदर। और मैं यही कह सकता हूं कि भारत सरकार की ओर से इस प्रकार कोई अगर विषय आएगा तो निश्चित रूप से गंभीरता विचार। प्रश्नकाल समाप्त। कल माननीय सदस्यगण, मुझे कुछ माननीय सदस्यों द्वारा कुछ विषयों पर स्थगन प्रस्ताव की सूचना प्राप्त हुई है। मैंने स्थगन प्रस्ताव की किसी सूचना के लिए अनुमति प्रदान नहीं की गई है। सभा पटल पर रखे जाने वाले पद आइटम नंबर 2 श्री कृष्णपाल सामने कार्यसूची में क्रम संख्या 2 पर मेरे नाम के सामने उल्लिखित सूचीबद्ध दस्तावेजों को सदन के पटल पर रखता हूं। आइटम नंबर 3 डॉक्टर संजीव कुमार बालियान जी से आज लोकसभा की संशोधित कार्यसूची में क्रम संख्या 3 पर मेरे नाम के समक्ष दर्शाए गए पत्र सदन के पटल पर रखता हूं। आइटम नंबर 4 श्री नित्यानंद राय जी। आज की पुनरीक्षित कार्यसूची में क्रमांक संख्या 4 पर मेरे नाम के सम्मुख उल्लेखित दस्तावेज सभा पटल पर रखता हूं। आइटम नंबर 5 सुश्री शोभा करांदलाजे जी। I lay the paper shown at serial number 5 of the revised list of business in the Lok Sabha for today on the table of the House. आइटम नंबर 6 श्री कैलाश चौधरी जी। माननीय सभापति महोदय जी, आपकी अनुमति से मैं आज की लोकसभा की संशोधित कार्यसूची में मेरे नाम के सम्मुख मद संख्या 6 पर उल्लेखित पत्र सभा पटल पर प्रस्तुत करता हूं। आइटम नंबर 7 श्री अजय कुमार जी। कार्यसूची में क्रम संख्या 7 पर मेरे नाम के सम्मुख उल्लिखित दस्तावेज सभा पटल पर रखता हूं। आइटम नंबर 8 महासचिव जी। Sir, I have to report that Rajya Sabha at its sitting held on 4th December 2023 passed the Post Office Bill 2023. Sir, I lay on the table the Post Office Bill 2023 as passed by Rajya Sabha on the 4th of December 2023. आइटम नंबर 9 महासचिव जी। Sir, I lay on the table a copy duly authenticated by the Secretary General Rajya Sabha of the Constitution 128th Amendment Bill 2023 passed by the Houses of Parliament and assented to by the President as the Constitution 106th Amendment Act 2023 since a report was last made to the House on the 19th of September 2023. आइटम नंबर 10 श्री निशीत प्रमाणिक जी। महोदय, आपकी अनुमति से मैं वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के बारे में श्री सुशील कुमार सिंह संसद सदस्यों द्वारा पूछे गए अतारांकित प्रश्न संख्या 3112 के 8 अगस्त 2023 को दिए गए उत्तर में शुद्धिकरण में हुए विलंब के कारण बताने वाला वक्तव्य अंग्रेजी संस्करण सभा पटल पर प्रस्तुत करता हूं। शून्यकाल श्री M.K. राघवन जी। M.K. राघवन, सॉरी प्लीज आपको जी। I wish to draw a grave disparity shown to Kerala. Today only Kerala and another state are not allotted an AIIMS-like institute. The government of Kerala had in advance identified Kinalur in my constituency Kozhikode, sufficient land for establishing this prestigious medical institute. I have also repeatedly followed this
for the last very many years. Yet, it is a dream come true. Sir, the availability of the AIMS at Calicut, a region which is deprived of advanced specialized medical centers, will be a major boon to the people of 7 districts in the Mahua region of Kerala and some regions of the nearby states like Karnataka and Tamil Nadu. Sir, the district is notorious for frequent Nipah and other virological outbreaks. The entire Mahua region is also prone to various lifestyle diseases including cancer, cardiac, diabetes, respiratory ailments and others. Sir, the setting of the AIMS in Kozhikode will enhance the healthcare as well as research facilities to address common disease apart from helping people get treatment at doorstep. Sir, I strongly request both the Health Minister and Finance Minister to include the setting up of the proposed AIMS for Kerala at Kozhikode in the next budget proposal positively. Thank you, sir. Shri Pradyut Bardoloi ji. I raise my concern and I would like to register my grave concern and urge the relevant departments of the Government of India, especially Ministry of Home and Healthcare and Social Justice Department to take urgent action because there has been proliferation of the drugs use and substance abuses on the rise in this country. So you'll be surprised to know that in the northeastern region, in certain remote areas now, in the states of Manipur, in the states of Arunachal Pradesh and Assam and even Mizoram, so extensive poppy cultivation is expanding. And not only poppy cultivation, but also their processing plants have been set up. Thereby, there have been a very rise of the different types of drugs coming to the rest of the country from the valleys of Assam. So, as per the report of NDDTC and AIMS 2019-20, it is reported that over half of the total drug users of India come mainly from 8 states, 4 of which are in the northeast itself: Assam, Manipur, Sikkim and Mizoram. So my state, Assam, is reported to currently have over 4 lakh drug users with 8 vulnerable districts, including in my constituency called Nagaon. So Nagaon has become a conduit district. A large quantity of drugs are every day coming out of through that area to the rest of the country. So my request to the Government of India to take urgent action to stamp these menace, and also, sir, the ministry should put up a rehabilitation center, counseling, and add a new dimension so that the drug abusers can be put at bay and counseling can be done and rehabilitation of the drug users can be taken up, sir. Thank you. Thank you. Shri N.K. Premchandran ji. Thank you very much, Mr. Chairman, sir. So this is the first time in my parliamentary experience I got the ballot as number 1, but I couldn't make it because of my learned friends. Sir, thank you very much for providing me this opportunity. The matter is pertaining to my constituency, the Greenfield National Highway 744, starting from my constituency, Kadampattukonam, Paripalli to Edaman, Ariyangav, Tenmala and Chengotan to Tirumangalam. That is National Highway 744. Greenfield Highway has been declared by the Government of India, minutes NHAI, but it is quite unfortunate that land acquisition has already been done. 3A notification is there, 3D notification has been completed, but so far the acquisition proceedings are not completed, and thereby the people who have already surrendered the land or people already consented for land acquisition is in big trouble because they are not able to transact any business on the land which has already been under acquisition. What is the problem now is that state government has, once the state government has agreed that they will pay 25% of the total cost of land acquisition will be borne by the state government. That was the assurance given by the state government, but unfortunately, the state government has withdrawn from the promise. So, the state government has withdrawn. The state government has withdrawn
The state government has withdrawn from the assurance and they are not ready and willing to pay the 25% of the land acquisition cost. And subsequently, the Government of India, Ministry of Road and Transport, Nitin Gadkari has suggested that if you are not able to pay the 25% of the land acquisition cost, GST exemption may be given for the materials of the construction, and also royalty for the rock blasting has to be given. And the state government and the central government, they had series of discussions, but so far no final decision has been taken. What is the problem is, it is 2 years back, the acquisition proceedings have started and the people are suffering. They are ready and willing to surrender the land. Notification is over. They are not getting the compensation. They are in big difficulty. So my submission to the Government of India is 25% of the total cost of land acquisition will come only 250 crores of rupees. Why should you depend and rely on the state government? The total cost of the construction of the road is 2,700 crores. If the Government of India is able to bond 2,700 crores of rupees for the national highway, greenfield highway, new highway, why should we rely upon the state government? So my submission to the Government of India is, please bear the total cost of the construction of the highway and expedite the steps of the acquisition, complete the acquisition at the earliest, and the compensation be provided to the people belonging to that area, and the proceedings have to be initiated at the earliest of National Highway 744. Thank you very much, sir. Thank you, Chairman, sir. आपको बहुत बहुत धन्यवाद मुझे मौका देने के लिए। पश्चिम बंगाल के सरकार ने हमेशा अपने जनता को पॉलिटिकल कारणों से वंचित किया कर रहा है। पश्चिम बंगाल की सरकार ने 2020 में एक डिसीजन लिया कि कॉमन सर्विस सेंटर जो केंद्र द्वारा चलाया जाता है उसको बंद कर देने के लिए। अब सोचिए, कॉमन सर्विस सेंटर केंद्र द्वारा चलाया गया ऐसा एक प्रोजेक्ट है जिसके माध्यम से जो साधारण लोग हैं, जो जनता है, उनको तरह तरह के हेल्प मिलता है। जो केंद्रीय जो प्रकल्प है, जो प्रोजेक्ट्स है, उसका हेल्प मिलता है। उसके साथ साथ जो आधार कार्ड का भी हेल्प उनको मिल सकता है वहां से, उनके द्वारा बहुत बहुत काम हो सकता है सीएससी के द्वारा। बंद सिर्फ नहीं किया, इसके कारण 40,000 लोग जो युवा इसके साथ जुड़े हुए थे, जो वहां पे जिनका इनकम होता था, जो सीएससी चलाते थे, उनको जो पंचायत की ऑफिस से वहां से डरा के, गुंडे देकर, धमका के उसको बाहर निकाल दिया गया कि आप यहाँ पे सीएससी नहीं चला सकते, सीएससी आपको बंद करना पड़ेगा। जो ऐसी सरकार, जो सरकार अपनी जनता की नहीं सुनती, जो सरकार अपने जनता को प्रताड़ित करती है, वो सरकार यहाँ पे आके अपने जनता के लिए जो आंसू, जो देखने वाला आंसू बहाते हैं। ऐसा नौबत आ गया कि उन्होंने, सरकार ने ये डिसीजन लिया कि जो इकोनॉमिक सेंसस है वो नहीं किया जाएगा पश्चिम बंगाल में। आप बताइए चेयरमैन सर, अगर इकोनॉमिक सेंसस नहीं होगा तो कैसे पता चलेगा कि पश्चिम बंगाल में कौन आदमी गरीब है, कौन अमीर है? और अगर इकोनॉमिक सेंसस नहीं हुआ तो कहां से लोगों को वो आप प्रोजेक्ट बनाएगा? आपके पास अगर डेटा ही नहीं है तो आप गरीबों के लिए प्रोजेक्ट कैसे बनाएंगे? तो इसके ऊपर जनता की डिमांड के कारण हमने कलकत्ता हाई कोर्ट में पीआईएल भी लगाया और कलकत्ता हाई कोर्ट ने राज्य सरकार को बोला है कि आप इसके ऊपर आपका अपना एफिडेविट दाखिल कीजिए। पश्चिम बंगाल सरकार डिले कर रहा है, एफिडेविट भी नहीं दाखिल कर पा रहा है और उनको 12 तारीख तक का टाइम दिया गया। अगर विदिन 12 आप अगर एफिडेविट नहीं कर पाए तो आपको 50,000 रुपये का जुर्माना आएगा पश्चिम बंगाल सरकार के ऊपर। तो इस संदर्भ में मैं माननीय मंत्री जी से अनुरोध करता हूं, पश्चिम बंगाल की जनता को हित को ध्यान में रखते हुए रेल स्टेशन और पोस्ट ऑफिस जो है वहां पे सीएससी फिर से चालू किया जाए, तो पश्चिम बंगाल के जनता उस सीएससी का लाभ ले पाए। नहीं तो पश्चिम बंगाल की सरकार पश्चिम बंगाल की जनता को प्रताड़ित कर रही है। Thank you, sir. Sir, this is regarding my state, Odisha. Sir, there were 34 government and 124 private polytechnics, which includes 22 new polytechnics, including one in my parliamentary constituency, Berhampur, under the scheme of submission on polytechnics under coordinated action for skill development, covering all the 30 districts with at least one government polytechnics in Odisha.
Sir, I thank the Union government for providing central financial assistance for implementation of the schemes, upgradation of existing polytechnics for 11 polytechnics and construction of women's hostel for 13 polytechnics. However, sir, there has been a critical issue before the state, and that is shortage of trained faculty required for these polytechnics. In the Odisha, there is only government polytechnic at Bhubaneswar, which has an extension center, that is National Institute for Technical Teachers Training and Research, Calcutta, under the Ministry of HRD, providing only short-term training, that is without any practical skill training facilities. Odisha doesn't have a board of practical training for which technician and graduate apprenticeship program and graduates are hampering. Sir, through you, I request the Honorable Minister for Education to consider setting up of a technical teachers training institute on the pattern of National Institute for Technical Teachers Training and Research with practical training facilities to enable the Odisha to create a pool of trained teachers of the polytechnics to maintain quality of teaching in government and private polytechnics at Barampur and Odisha, sir. Thank you, sir. Thank you. Thank you. Shri Om Prakash Bhopal Singh ji. धन्यवाद सभापती महोदय. मी महाराष्ट्रातील अतिशय ज्वलंत विषयाकडे केंद्र सरकारचं लक्ष वेधू इच्छितोय. अध्यक्ष महोदय, मराठा समाज आणि धनगर समाज हा आरक्षणासाठी महाराष्ट्रामध्ये रस्त्यावर उतरलाय. मराठा समाजाला आरक्षण मिळावं म्हणून जवळपास 100 पेक्षा अधिक युवकांनी स्वतःच्या प्राणाची आहुती हे आरक्षण मिळावं म्हणून त्या ठिकाणी दिलेली आहे. अध्यक्ष महोदय, 15/11/2018 गायकवाड आयोगाच्या शिफारशीनुसार मराठा समाजाला 13% नोकरी आणि शिक्षणामध्ये त्या ठिकाणी आरक्षण दिलं गेलं. हे आरक्षण दिल्याच्या नंतर या आरक्षणाच्या विरोधात उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली की उच्च न्यायालयाने ती याचिका फेटाळली. त्याच्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयात हे आरक्षण रद्द करण्याच्या दृष्टीने याचिका दाखल झाली. ही याचिका दाखल झाल्याच्या नंतर 20/9/2020 रोजी याच सार्वभौम सभागृहात मी केंद्र सरकारकडे मागणी केली होती की तामिळनाडूमध्ये 50%ची आरक्षणाची मर्यादा ओलांडली गेल्याच्या नंतर सुद्धा तिथलं आरक्षण टिकलं होतं. तर केंद्र सरकारनं त्याच पद्धतीने हस्तक्षेप करून ह्या सुद्धा सर्वोच्च न्यायालयातल्या याचिकेमध्ये हस्तक्षेप करावा आणि हे आरक्षण टिकण्याच्या दृष्टीने प्रयत्न करावा. पण दुर्दैवानं त्या ठिकाणी तिथं लक्ष दिलं गेलं नाही त्या मागणीकडे आणि 9 नोव्हेंबर 2020 रोजी या मराठा समाजाच्या आरक्षणाला दुर्दैवानं सुप्रीम कोर्टामध्ये स्थगिती मिळाली. अध्यक्ष महोदय, याच्यानंतर 18/3/2021 आणि 14/12/2022 या 2 वेळेसही हे आरक्षण सुप्रीम कोर्टामध्ये न टिकण्यामागचं प्रमुख कारण होतं की आरक्षणाची मर्यादा 50% पेक्षा जास्त ओलांडल्या गेल्यामुळं हे आरक्षण सुप्रीम कोर्टानं रद्दबातल ठरवलं होतं. मी या दोन्ही वेळेस मागणी केली होती की केंद्र सरकारनं आरक्षणाची मर्यादा 50% पेक्षा वाढवण्याच्या दृष्टीनं तशा पद्धतीनं संवैधानिक दुरुस्ती आणून ती आरक्षणाची मर्यादा 50% पेक्षा जास्त वाढवावी. त्याचबरोबर नोव्हेंबर 2023 रोजी सुद्धा खासगी विधेयकाच्या माध्यमातून सुद्धा प्रायव्हेट मेंबर बिलच्या माध्यमातून सुद्धा ही आरक्षणाची मर्यादा संविधानिक दुरुस्ती करून वाढवावी अशा प्रकारची मागणी मी लोकसभेकडे केलेली आहे. अध्यक्ष महोदय, एवढंच नाही, शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे या पक्षाच्या शिष्टमंडळानं महामहिम राष्ट्रपती महोदयांची सुद्धा भेट घेऊन मराठा आणि धनगर समाजाचं आरक्षण मिळण्याच्या बाबतीत केंद्र सरकारनं लक्ष घालावं, आरक्षणाची मर्यादा वाढवावी यासाठी भेट घेतली. त्यांना सुद्धा एक तशा प्रकारचं निवेदन त्या ठिकाणी दिलं गेलंय. अध्यक्ष महोदय, महाराष्ट्रामध्ये कायदा आणि सुव्यवस्थेचा प्रश्न त्या ठिकाणी निर्माण होतोय. 24 डिसेंबर पर्यंत सरकारनं पहिल्यांदा एक मुदत दिली, राज्य सरकारनं दुसऱ्यांदा एक मुदत दिली, पण दुर्दैवानं जो शब्द दिला तो राज्य सरकारकडून पाळला गेलेला नाही. त्यामुळं याच्या बाबतीत
मराठा समाजामध्ये, धनगर समाजामध्ये प्रचंड प्रमाणात त्या ठिकाणी असंतोष आहे. आपल्या माध्यमातून केंद्र सरकारकडे माझी विनंती आहे की आता लोकसभेचं अधिवेशन चालू आहे, तर केंद्र सरकारनं तातडीनं संविधानिक दुरुस्तीचं विधेयक आणून आरक्षणाची मर्यादा 50% पेक्षा जास्त करून मराठा समाजातील युवकांना त्या ठिकाणी न्याय द्यायचं काम करावं, ही मागणी मी आपल्या माध्यमातून केंद्र सरकारकडे करतो. श्री टी.आर. पारिवेंद्र महोदय, मैं एसोसिएट कर रहा हूँ. ओके ओके, सेंड द स्लिप. श्री टी.आर. पारिवेंद्र जी, यस प्लीज. Thank you, Chairman, for giving me the opportunity. 2 मिनट में अपनी बात कहिए, प्लीज. To raise an important issue for a speedy implementation of Women Reservation Bill named Nari Shakti Vandan Abhiyan, which was passed in the Parliament on 20 September 23 during the special session. The said bill has many special features like 1/3 of the seats in Lok Sabha and state assemblies and the legislative assemblies including SC/ST seats. Further, seats reserved for women will be rotated after each delimitation as determined by law made by the Parliament, through which the government made all women more powerful and self-empowered in the decision-making body. In this context, I would like to emphasize that even though the Honorable Union Home Minister has clarified during the discussion on the bill that reservation for women will not be implemented in the upcoming 2024 election. The reservation will be effective after the census conducted after the commencement of the bill has been published. In view of the above, I urge upon the Union Government to take early action to conduct census and to constitute delimitation commission to decide which seat will go to the women after the delimitation exercise. Thank you. श्री विष्णु दयाल राम जी. धन्यवाद सभापति महोदय. मैं आपका ध्यान एक अति महत्वपूर्ण विषय की ओर आकृष्ट करना चाहता हूं. मेरे संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत 2 जिला आते हैं, पलामू एवं गढ़वा. ये दोनों जिले आकांक्षी जिलों की सूची में हैं और यहाँ की 80% से ज़्यादा आबादी कृषि पर निर्भर करती है. परंतु दुर्भाग्यवश ये दोनों जिले रेन शैडो एरिया में पड़ते हैं, जिसका नतीजा ये होता है कि प्रतिवर्ष यहाँ तो या तो अतिवृष्टि होती है या अनावृष्टि होती है, जिससे फसलें मारी जाती हैं और लोग बेरोजगारी का शिकार हो जाते हैं, पलायन के लिए मजबूर हो जाते हैं. यहाँ पर किसी प्रकार का कोई उद्योग धंधा नहीं है, जबकि उद्योग धंधा स्थापित करने के लिए यहाँ पर सारे तत्व मौजूद है. जमीन है, खनिज है, पानी है, बिजली है, वगैरह वगैरह. उद्योग धंधों के नाम पर मात्र एक कॉस्टिक सोडा फैक्ट्री है जिसका उत्पादन क्षमता बहुत सीमित है और रोजगार देने की क्षमता और भी ज़्यादा सीमित है. ऐसी परिस्थिति में लोग पलायन करने के लिए मजबूर हो जाते हैं और प्रतिवर्ष जब झारखंड से बाहर रोजगार के लिए जाते हैं तो उनकी लाशें आती है जो बहुत हृदय विदारक सीन उत्पन्न करती हैं. ऐसी परिस्थिति में मेरा आपके माध्यम से माननीय उर्वरक एवं रसायन मंत्री जी से अनुरोध है कि वहाँ पर खाद का कारखाना स्थापित करने की कृपा करें ताकि लोगों को रोजगार मिल सके, कृषि की उपज में वृद्धि हो सके और पलायनवाद की भी समस्या समाप्त हो सके. धन्यवाद. श्री सप्तगिरी शंकर उलाका जी. Thank you, Speaker, sir, for giving this opportunity. Sir, this is a very serious issue and a long pending issue which is impacting my constituency, Jaipur. Sir, this is about the transfer of EPF past accumulations of employees of erstwhile Built Graphic Paper Products Limited, BGPPL, Unit Seva, which comes under OR/BAM/2910. They are now reporting compliance to
RPFC Barampur being employees of Messrs. Mother Earth Resources Private Limited, MERPL, Seva, which is ORBM/2468945. Sir, isme the problem is this Seva unit, which was sold by BGPPL to MERPL in the month of February 2020. But after that, the PF amount, the accumulated PF accumulation, this is under RPFC Kolkata, and they need to transfer it to RPFC Barampur. Sir, this has been, we've been told that all permissions are now available. The trust is ready with the requisite fund towards the payment of the past accumulation. It is also confirmed the concern that entire fund is generated from accretion of the trust and not from sale of any securities or otherwise. So the retired legal heirs of expired employees have been approaching multiple times, and whenever I go there, they approach me on their pending dues. As the matter is pending for more than a year and a half, this has put the concerned employees towards unexplainable difficulties. So the district administration has also written a letter to the chairman, Central Board of Trustees on 10th April 2023, but there has been no response. We've been following with the Regional Provident Fund Commissioner, EPF of Calcutta. There is no response. KCDPF Trust, Calcutta, they have written to RPFC Calcutta to resolve the issue of PF transfer. There is no response. The RPFC Barampur, some fellows from them, they visited Jaipur also. They are saying they're helpless until RPFC Calcutta transfers the fund to RPFC Barampur. So, sir, through you, I would like to request the Honorable Minister of Labour and Employment to take up the issue and instruct the transfer of Provident Fund of retired expired employees of Messrs. Mother Earth Resources Private Limited, Jaipur, from the KCT PF Trust Calcutta to RPFC Barampur, Odisha, in the largest interest of employees of MS Mother Earth Resources Private Limited, Jaipur, Koraput, Odisha, sir. Thank you, sir. I would appreciate if the ministry would take this cognizance of the situation and the ground reality and do the thing at the earliest. Thank you, sir. Sir, with a heavy heart, I would like to draw the kind attention of this August House as well as the Minister for Home about the sad plight of people of Tamil Nadu. So the recent flood have battered more than 1 crore people in city of Chennai, districts of Tiruvallur, Kanjipuram, Chengalpet, and Ranipet also. So the situation is very grim, and people are they are inside the home for the past 3 days. From 3rd onwards, there is a continuous torrential rain. And cyclone is its fury has fully dedicated its fury to the people of Tamil Nadu. So it was so heavy and could not bear with it, and people are stranded elsewhere. The trains are halted outside the city of Chennai, and flights are not moving. And more people, thousands and thousands of people are even, they could not get the food supplied by the government of Tamil Nadu, and government ministers are going shelter to shelter to help the people, but they could not extend their hands, helping hands to the public, because flood waters are in the streets. All the streets are flowing like rivers. So where is a chance to move to the people, sir? CM Tamil Nadu is having day in night. Even today morning, early morning also, he went out to see the people of Chennai, but he could not reach so many people together. So this is sorry state of affairs is prevailing in Tamil Nadu, and Government of India should come forward to help. In fact, yesterday the Home Minister has spoken to the Honorable Chief Minister of Tamil Nadu. It is good. And at the same time, State of Tamil Nadu has sent 3 memorandums. Financial memorandums have been sent to the Government of India for an amount of 6,230 crores. But today the CM has asked for 5,000 crores, at least 5,000 crores for a stopgap arrangements. This matter has to be immediately, it has to be considered without fail, and they should extend the helping hand in time. In time means they have to do it
quickly, and central team should be sent to the states, to the districts, wherever the problem arises, and quickly this team should go. Enough team should go so that in one go they should assess the situation, what is the damage occurred, how the more than 8 people have died so far, and we don't know what is the toll as of now. So this is more important issue. Even yesterday, when I have discussed the matter in the BSc, both Parliamentary Affairs Minister and other ministers, they have agreed that it should be given topmost priority. But what is happening, sir? The fag end of the 0 hour, you are allowing me to speak. This is not good, sir. So actually, I thought that this should have a priority over the issues. I don't think that the other issues are not. They are also good issues. But at the same time, priority should be given to the human nature. That is what I am telling you, sir. So kindly see that Government of India should come forward. The Home Minister should specifically take care to see that the amount is dispatched quickly, and also along with the men and machineries, so that to help the state of Tamil Nadu quickly, sir. Thank you, sir. You all are supporting the Baluji's argument, sir. It's a valid and legitimate demand, sir. ठीक है बैठिए श्री जयदेव गल्ला जी इसी थैंक यू सर ठीक है आप नाम भेजिए ना प्लीज नाम भेज दीजिए अभी तो बैठिए अभी तो उनको बोलने दीजिए प्लीज सेम सब्जेक्ट आप बैठिए बालू साहब बैठिए प्लीज सेम सब्जेक्ट हाँ About Andhra also, we also have problem, no cyclone. बैठिए तो सही आपका विषय निश्चित रूप से सब सहमत हैं और मुझे पूरा विश्वास है कि सरकार पहले से भी संज्ञान ले रही है और भी अधिक सक्रिय होकर के संज्ञान लेगी जी सर Thank you, sir. As the honourable member, Mr. T.R. Balu, has mentioned about the cyclone, we also have the same problem in lower coastal Andhra Pradesh. There has been very heavy rain over the last 2 days due to the cyclone over the west central Bay of Bengal of southern AP, sir. The Indian Meteorological Department announced landfall of Mishong today, somewhere between Bapatla and Machilipatnam in lower coastal Andhra Pradesh. Heavy rains have devastated the standing crop in tens of thousands of hectares in coastal and other districts of Andhra Pradesh. This cyclone has brought tears to the farmers, as the crop which is ready for harvest is lost before their very eyes, sir. The state government is still in the process of identifying and assessing the damage, and it may take some time to come to the conclusion about the damage to crop, life and property. Due to the heavy rains, roads have been damaged, supply of electricity is disturbed, people are not able to fetch essentials apart from other problems being faced by them. In view of the above, I appeal the Honourable Prime Minister, Shri Modi ji, for immediately sending the central team once the rain recedes for assessing the damage caused to the standing crop, roads, buildings, electricity supply and other infrastructure facilities, and submitting its report to the government for release of central assistance. Pending the report of the central team, I request the Honourable Prime Minister and the Honourable Home Minister to release 5,000 crores to Andhra Pradesh as an interim relief immediately to deal with the relief and rehabilitation work due to cyclone Mishong. Thank you very much, sir. Shri Mohan Bhai Kundaria ji. जी मोहन भाई आपका माध्यम से विदेश मंत्री का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि सौराष्ट्र क्षेत्र के विद्यार्थियों और उद्योगों के लिए वीजा फैसिलिटी सेंटर अहमदाबाद में होने के कारण 250 से 500 किलोमीटर दूरी जाना पड़ता है। इसलिए राजकोट औद्योगिक सेंटर है, यहाँ एम्स हॉस्पिटल है, इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी है, तो इसके लिए वीजा फैसिलिटी सेंटर राजकोट में मिलने के लिए आपका माध्यम से मैं मंत्री का ध्यान आकर्षित करना और विनती भी करता हूं। थैंक यू। जी श्री एस रामलिंगम जी। मिस्टर लाल जी। மாண்புமிகு மாற்றுத் தலைவர் அவர்களே, don't use these words please. மயிலாடுதுறை okay and nothing is going on நிலையத்திற்கு அருகில் மாப்படுகை பாலம் அமைக்க வேண்டும் என்பது என்னுடைய கோரிக்கை. ரயில்வே நிலையத்திலிருந்து சுமார் 100 மீட்டர் தொலைவில் இருக்கிறது இந்த மாப்படுகை சாலை. ஆம்புலன்ஸ்
தீயணைப்பு வண்டிகள் கூட அந்த சாலையில் நேரத்திற்கு சென்று சேர இயலவில்லை. சுமார் அரை மணி நேரம் ஒவ்வொரு புகைவண்டி நிற்கும் போதும் சாலை மூடப்படுகிறது. நூற்றுக்கணக்கான வாகனங்கள் தேங்கி கிடக்கிறது. இந்த மயிலாடுதுறை புகைவண்டி நிலையத்தை புனரமைப்பதற்காக 24 கோடி ரூபாய் ஒதுக்கி இருக்கிறோம் என்று சொன்னார்கள். ஆனால் 6 மாத காலமாக நானும் அமைச்சரை 3 முறை சந்தித்து இந்த கோரிக்கையை வைத்தேன். இன்று வரை எந்த பலனும் ஏற்படவில்லை. என்னுடைய நாடாளுமன்ற தொகுதி வளர்ச்சி நிதியிலிருந்து அந்த சாலையொட்டி உடனடியாக எஸ்கலேட்டர் அமைப்பதற்காக 3.25 கோடி ரூபாய் ஒதுக்கி கொடுத்தும் பணி துவங்கப்படவில்லை. Please stop. Right now the arrangement of translation is not here. आपको मैं बाद में बुलाऊंगा. I will call you later. Now please you sit down. I will call you later. Please. हो जाता है, इसमें कोई खास बात नहीं है. नोटिस थोड़ा देर में आया. We will. Yes. Please cooperate. You all know the issues and the problems and what is the system. Shri V.K. Shri Kandan ji. Respected Chairman ji, Bharat Earth Movers Limited is a profit-making company with orders worth more than rupees 10,000 crore one through mostly global tenders. The company had made a profit of rupees 278 crore in 2022-2023 and the government so far got rupees 400 crore in the form of dividends. A unit of BEML at Kanjikot in my parliamentary constituency has already delivered 1,500 heavy military trucks, 300 railway coaches and 500 metro bogies. The government had to abandon a move of disinvestment in BEML in 2016 due to stiff opposition. The privatization move again is not in the interest of our nation's security. Therefore, I urge upon the government not to privatize BEML and withdraw such a move immediately. Thank you, sir. Shri Raghuram Krishna Raju ji. Thank you, Honorable Chairman, sir. This is regarding the Independence Gram Swaraj, which is initiated by Mahatma Gandhi, and later on the government followed, and in the government of Narendra Modi ji, lot of priority has been given to all the Gram Panchayats and lot of funds are also being released. In this case, last year to the government of Andhra Pradesh, 569 crores got released to the Gram Panchayats, but not even a single penny has come to the accounts of the Gram Panchayats, which was given under 15th Finance Commission. And in the 14th Finance Commission, starting from 2019 to 2023, around 8,629 crores got released, but nothing has been credited to the accounts. We all have met the Sarpanchas Association of Andhra Pradesh, where all party members are there, predominantly dominated by my present party. We all have met Honorable Minister Giriraj Singh ji and given a representation. He is kind enough to give a note to the state government to give back the money within 10 days. But in the last 3 months also, nothing has happened. Now, with this, the villagers are greatly suffering, and the dream of the Honorable Government of India, led by Narendra Modi ji, is not getting honored. So I once again request Honorable Minister Giriraj Singh ji, who was here till now, I had already briefed him this morning also, through the Honorable Chairman, sir, to take it up immediately on priority. And one more minute, sir, just one more minute, I'll finish. And there has been a new system known as volunteer system, which has totally replaced the Sarpanchas and the ward member system, wherein totally dysfunctional. The village system has got totally dysfunctional. I request the Honorable Member Panchayati Raj, as far as the village
development is concerned, it should be left with only the Panchayat, Sarpanch and the ward members, not with the volunteers. Thank you, sir. Okay. Dr. Dhal Singh Bisain ji. बहुत बहुत धन्यवाद सभापति महोदय। जैसा कि आप जानते हैं कि वर्तमान युग डिजिटल का है और इसके लिए बहुत ज़्यादा अच्छे नेटवर्क की आवश्यकता होती है और जैसा कि आपको विदित है अध्यक्ष महोदय कि वर्तमान में सारे काम ऑनलाइन होते हैं, चाहे वो ऑफिस के काम हो, किसानों के काम हो, पढ़ाई लिखाई के काम हो, चाहे विभागीय सारे काम हो, इन सब के लिए चाहे सार्वजनिक वितरण प्रणाली का काम हो, सभी काम के लिए ऑनलाइन बैंकिंग करनी हो तो भारत जो है एक डिजिटल लेन देन के लिए विश्व में प्रसिद्ध है और डिजिटल लेन देन हो या कार्यालयीन कार्य इन सब के लिए मोबाइल नेटवर्क अति आवश्यक है अध्यक्ष महोदय। किंतु आज भी अनेक क्षेत्र ऐसे हैं जहां मोबाइल नेटवर्क सब जगह ठीक से कार्य नहीं कर पा रहा है और जिसके कारण से इन सारे विभागीय छात्र छात्राओं और अनेक सारे कामों के लिए नेटवर्क की उपलब्धता ठीक से नहीं होने के कारण, नेट ठीक नहीं चलने के कारण सारे काम प्रभावित होते हैं और विशेष करके बीएसएनएल का और बीएसएनएल का जाल लगभग उसके अलावा पूरे प्रदेश में नहीं सारे देश में बीएसएनएल एक अपने नाम के लिए जाना जाता है। पर सभापति महोदय अभी भी मेरे लोकसभा क्षेत्र में 2G सेवाओं से आगे बीएसएनएल नहीं बढ़ पाया है, जबकि अन्य जो प्रतिस्पर्धी संस्थाएं हैं वो 3G, 4G और 5G तक चली गई हैं और जिसके कारण से स्पीड में नेटवर्क नहीं मिलने के कारण से सारे लोग परेशान हैं, छात्र छात्राएं परेशान हैं, जो गांव में काम करने वाले पढ़ने वाले छात्र हैं वो परेशान हैं। इसलिए आपके माध्यम से मैं माननीय मंत्री जी से अनुरोध करना चाहता हूं कि ग्रामीण इलाकों में भी बीएसएनएल की सेवाएं और सुदृढ़ हो, अच्छी हो और इसके अलावा अन्य प्रतिस्पर्धी संस्थाएं उनका भी नेटवर्क अच्छा चले ताकि ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को सारे ऑफिसेस को काम करने में अच्छी सुविधा मिल सके। आपने समय दिया सभापति महोदय, बहुत बहुत धन्यवाद। श्रीमती अनुराधा चिंता जी। Thank you, Chairman, sir. Sir, people living near oil and gas drilling sites in Andhra Pradesh, East Godavari districts face the risk of being exposed to oil or natural gas leakages from the plants located in the vicinity, especially in the Dr. B.R. Ambedkar Koresema district, which has been witness to such incidents in the past. According to reports, GAIL operates pipelines extending to a length of 430 kilometers. ONGC operates 120 kilometers of pipelines, and Reliance operates a 36-kilometer pipeline in the Koresema region. Though the officials of said companies have been asked to replace old pipelines in the region to ensure the safety and safety of the local communities and prevent mishaps and prevent frequent gas leakages from the existing pipelines, there is an immediate need to establish a crisis management facility in the district considering the operations of numerous oil and natural gas producing companies in the said region to effectively handle emergencies of crisis. I would therefore request to the government to take immediate steps to include a comprehensive risk assessment for the oil and natural gas operations in Koresema district and ensure the establishment of a crisis management facility at the earliest. Thank you. Dr. Sanjeev Kumar Shangri ji. Thank you, Honorable Chairperson, for giving me this opportunity to speak on railway issues of Kurnool Parliamentary Constituency. Sir, Kurnool Parliamentary Constituency, which I represent, deserves additional railway facilities in view of its overall backwardness. Andhra Pradesh has 3 regions with diverse culture and dialect. Rayalaseema region is one of them, and Kurnool is the gateway of Rayalaseema. Kurnool, the erstwhile capital of Andhra State, is a backward district in all respects. Demographic indicators stand testimony to this fact. Kurnool was capital of Andhra State from 1953 to 56, and the capital was shifted from Kurnool to Hyderabad when states were reorganized on linguistic basis. There is a strong feeling in Kurnool region that a serious historical mistake was done when the capital was surrendered in favor of Hyderabad. The region was neglected for 7 decades by successive governments. This injustice should be relieved. Kurnool region is very backward as per the report of Sivaramam Krishnan Committee, an expert committee which was constituted under Section 6 of the AP Reorganization Act 2014. Kurnool region has challenges of high dependency ratio of 55%, low literacy rate of 65%, low urbanization of 29%, and has a young
growing workforce. These problems need to be addressed with a humane touch, sir, and every investment in public utility cannot be seen from a commercial angle. Following the principles of natural justice, all regions of India should be developed equally. All of us should agree that injustice was meted out to Andhra Pradesh with unfair state bifurcation. We need a helping hand from the union government. Sir, economic growth, employment, income generation, and equitable distribution of growth are essential for all regions of Andhra Pradesh. It is distressing to note that domicile migration, that is distress migration from this area, is in lakhs every year. Nearly 3 lakh people migrate to different areas from Kurnool parliamentary constituency. The area has problems of water supply, though Tungabhadra River traverses 95 kilometers in Kurnool district. Only 60% of cultivable land receives water supply. People hardly cultivate 1 crop per year. So people travel hundreds of kilometers in search of job. People are asking for a better connectivity with cities like Visakhapatnam and Vijayawada, which are the 2 cities of Andhra Pradesh. National highway connecting Kurnool and Vijayawada, which traverses through reserve forest, needs upgradation. Road journey is tedious, and there is no express train connecting between Kurnool and Vijayawada and Visakhapatnam. So at least a good railway connectivity is needed for this region. We are not asking for a new railway track. We are just asking for a train service on the existing railway tracks. As a representative of 22 lakh population of Kurnool region, I have been requesting railway authorities for some facilities like train halls at Madhikera, Kosigi and Adoni, direct train service from Kurnool to Mumbai in favor of thousands of North Indian families doing business in Kurnool, and speeding up of construction of railway rehabilitation workshop at Kurnool. Sir, I made nearly 15 representations to Railway Ministry in past 4 years. Response is not encouraging. I take this opportunity to request the Honorable Minister of Railways to please start a daily train service from Kurnool to Visakhapatnam via Vijayawada. A tri-weekly train with number 07237 was running on ad hoc basis, but that too was withdrawn recently for reasons better known to the officials. Thank you. Sir, passenger services cannot be viewed in commercial angle. Occupancy of the service was good enough and would have improved further had it been a daily service. Sir, to conclude, I request the Minister of Railways to restart the train on daily basis, and I hope this facility can bring solace to the injured hearts of people who feel that many historical blunders were committed against the region. There should be equitable development of all regions of the country. Thank you, Chairman, sir. Give me opportunity to raise very urgent and public importance matter which is related to my parliamentary constituency. Sir, the flight and agony of cashew workers who are workers in Kollam and Alappuzha in Kerala who are striking for want of renewed wages and decent benefits from their occasion is a grim and unfortunate picture of the crisis engulfing the cashew sector in Kerala, which is livelihood of more than 3.5 lakh workers, a majority of them being women from backward communities. The minimum wages of cashew workers are not revised even after 10 years since then Ummanchandi government, which was the last government to have increased the wages of cashew workers. The present state government under Chief Minister Pinarayi Vijayan has ignored the plight of cashew workers and their wages is not revised. The present wages are even lower than wages of Manrega workers. The strike of cashew workers, including in my parliamentary constituency, various cashew factories like Karimulakal, Nornad and adjacent constituency, Kayangulam and also Adinad, Kollam. So all factories come under Cashew Development Corporation. Demanding rise the minimum wages is not limited to Kollam district alone, but also these cashew workers are striking not only in Kollam district, other districts also. My Kalappi, Pathanamthitta, Thiruvananthapuram district also facing this crisis. So, but sir, the benefits of cashew workers, including ESI and PF benefit, also not getting properly because the ESI benefit is denied cashew workers because of the thin attendance, the working hours and also working days also working days also not properly. That's why ESI benefit also and also PF benefit also not getting for cashew workers. So I am coming, sir. Sir, the women cashew workers earn
500 rupees per day. Now workers are getting 35 for shelling 1 kg of raw cashew and 45 for peeling the kernel. The merged sum they get in a while does not even cover their food expense or medical emergencies. Many women's cashew workers are now working as household help and do other sundry jobs sustain themselves. Sir, there was a time when more than 780 licensed cashew factories function in Kerala, which has now reduced less than 800 cashew factories. Please. Sir, I am coming, very important, I am coming, sir. Sir, the 1980s and 1990s, cashew has peaked 1,25,000 metric tons, which has sealed down to less than 20,000 tons. This situation indicates alarming crisis of entire industry. Banks have owned up numerous cashew factories and more than 10 cashew factory owners. More than 10 cashew factory owners whom small size factories own have committed suicide in Kerala. Therefore, the plight of the cashew workers must be addressed by declaring special package for welfare of cashew workers with the umbrella welfare option, including ex gratia, financial support during the period of. Sir, I am complete. आप अधिक समय लेंगे तो किसी अन्य मान्य सदस्य का अवसर समाप्त होगा. 1 minute, sir. Last point. Please conclude immediately. Last point. Sir, financial support during the period of unemployment, free medical treatment, and ESI hospital soft loans. The cashew workers must be given their fair share outstanding. Come to the demand outstanding. Yeah, I am coming to point, sir. So, outstanding bonds and other benefits of denied them due to winding down cashew factory, additional benefits, loan waivers, medical facility, all cashew workers, irrespective of the last status of employment and premium payment. With these words, sir, so very serious matter, and also the. धन्यवाद सभापति महोदय. धन्यवाद सभापति महोदय. जीरो आवर की समय की मर्यादा का हम सभी को ध्यान रखना चाहिए. थोड़ा बहुत 10-15 सेकंड चल सकता है, बट नॉट मिनट्स. प्लीज. धन्यवाद सभापति महोदय. आपका जोहार. मेरे लोकसभा रांची जो हटिया विधानसभा के नगड़ी नामक स्थान है, जहां से स्वर्ण रेखा पवित्र नदी निकलती है, जो रांची शहर होकर गुजरते हुए जमशेदपुर से होते हुए बंगाल की खाड़ी में गिरती है. 474 किलोमीटर लंबी इस नदी, जो झारखंड की लाइफलाइन कही जाती है, रांची की लाइफलाइन कही जाती है. झारखंड की प्राचीन संस्कृति में इस नदी का सांस्कृतिक और धार्मिक महत्व है. रांची में चुटिया नामक स्थान में स्वर्णरेखा नदी एक सहायक नदी हरमू से में आकर मिलती है. इस संगम पर करीब 500 वर्ष पुराने नागवंशी कालीन 21 शिवलिंग नदी के चट्टानों में उत्कीर्ण है. कभी नागवंशी राजाओं की राजधानी चुटिया होती थी और वह सांस्कृतिक अवशेष एक जीवंत धनाढ्य संस्कृति की कहानी कहता था. किंतु अफसोस यह है कि झारखंड की जेएमएम एंड कांग्रेस की सरकार की अनदेखी के कारण, उदासीनता के कारण, गैर योजना से तेजी से बढ़ते शहरीकरण के कारण यह नदी एक हरमू में मिलती है, वो नदी क्या नाले में तब्दील हो चुकी है. नदियों के किनारे अतिक्रमण, शहर का सीवरेज जो सिस्टम, उसका पानी और स्वर्णरेखा नदी में गिरता है. दिल्ली की यमुना नदी से भी स्थिति उस स्वर्णरेखा नदी की खराब हो गई है. इन दोनों नदियों के संगम तल के स्थल पर स्वर्णरेखा बिल्कुल काली पड़ती हुई जा रही है. आज से लगभग 10-15 साल पहले पूर्व से हजारों की संख्या में छठ व्रती वहां अर्घ देने जाते थे. महोदय सभापति महोदय, बहुत अहम विषय है मेरे राज्य सारे के विषय अहम होते हैं. मैं भी वहां सावन के महीनों कांवर लेके उस स्वर्णरेखा के नदी के तट से पानी लेकर पहाड़ी मंदिर पर बाबा का अभिषेक करने जाते थे. वहां अनेक तरह के मेले, आप कृपा करके भोजन आप चाहते हैं बताइए. हर एक घर से एक मुट्ठी चावल और दाल लेकर प्रसाद बनाया जाता था. लेकिन नदी के प्रदूषण होने कारण लोगों ने इस नदी से खुद को दूर कर लिया. अब छठ और कार्तिक पूर्णिमा दोनों में श्रद्धालुओं की संख्या कम हो गई.
नदी के चट्टानों में उसकी आप जो कृपया सीलिंग करके है मांग रखिए। वो तेजी से क्षरण हो रहा है। मेरी यह डिमांड है कि दीर्घकालीन योजना बनाकर इस स्वर्णरेखा नदी जो पवित्र नदी इसको बचाया जाए, क्योंकि वहां की सरकार से कोई उम्मीद नहीं है। यह नदी एक सांस्कृतिक धरोहर है, उसको कैसे हम सब बचाएं, इस पर आपका ध्यान, आपके माध्यम से सरकार का ध्यान हम आकृष्ट करना चाहते हैं। श्री एस रामलिंगम जी। மாண்புமிகு மாற்றுத் தலைவர் அவர்களே, மயிலாடுதுறை புகைவண்டி நிலையத்தில் சுமார் 100 மீட்டர் தொலைவில் மாப்படுகை நெடுஞ்சாலை அமைந்துள்ளது. இதில் மேம்பாலம் இல்லாத காரணத்தினால் அவசர காலத்தில் ஆம்புலன்ஸ், தீயணைப்பு வாகனங்கள் கூட செல்ல முடியாத நிலை. எனவே இந்த லெவல் கிராசிங் நம்பர் 229 இதில் உடனடியாக மேம்பாலம் கட்டப்பட வேண்டும். கடந்த 24/11/23 அன்று பொதுமக்கள் மிகப்பெரிய அளவில் கூடி சாலை மறியல் செய்தார்கள். அப்போது மாவட்ட ஆட்சியர் தலையிட்டு விரைவில் இதற்கான பரிந்துரையை நான் அனுப்புகிறேன் என்று சொல்லியிருந்தார். இருந்தும் கூட இதுவரை எந்த பணியும் துவங்கப்படவில்லை. இந்த ரயில்வே தடத்தில் நூற்றுக்கணக்கான வாகனங்கள் அரை மணி நேரத்திற்கு ஒரு முறை தேங்கி கிடக்கிறது. அது மட்டுமல்ல, இதே மயிலாடுதுறை புகைவண்டி தடத்தில் இரட்டை வழிப்பாதை விழுப்புரம் வரை அமைக்கப்பட வேண்டும் என்று பலமுறை வற்புறுத்தி இருக்கிறேன். இதுவரை செய்யப்படவில்லை. மயிலாடுதுறை புகைவண்டி நிலையத்தில் எஸ்கலேட்டர் அமைப்பதற்காக முதல் பிளாட்பாரத்திலிருந்து 3வது பிளாட்பாரம் செல்ல முடியாத நிலையில் என்னுடைய தொகுதி மேம்பாட்டு நிதியிலிருந்து 3.25 கோடி ரூபாய் ஒதுக்கீடு செய்தும் புகைவண்டி துறையில் இதுவரை அதற்கான பணிகள் துவங்கப்படவில்லை. மேலும் 24 கோடி ரூபாயில் புனரமைக்கிறோம் என்று சொல்லிக் கொண்டே இருக்கிறார்கள். 2 வருட காலமாகிறது. எந்த பணியும் இதுவரை துவங்கப்படவில்லை. நான் இப்போது கேட்டுக்கொள்வதெல்லாம் மிக மிக அவசரமான ஒன்று. இந்த மேம்பாலம் லெவல் கிராசிங் 229 இந்த மேம்பாலம் அமைந்தால்தான் அந்த பகுதியில் பல்வேறு சுற்றுலா தலங்களை இணைப்பதற்கான வழிவகை ஏற்படும். எனவே உடனடியாக இந்த மேம்பாலத்தை அமைத்து தர வேண்டும் என்று கேட்டுக்கொள்கிறேன். நன்றி, வணக்கம். श्री अधीर रंजन जी। Sir, I would like to flag the attention of this government that it is alarming to note that there is no respite of ethnic conflict and violence in the state of Manipur. Sir, it is paradoxical to note that on the one hand, both the central government and state governments are glibly claiming the peace and normalcy being restored in the state of Manipur. But on the other hand, the grave situation itself which is prevailing over there is an eloquent testimony of the abysmal failure of the state government of West Bengal, state government of Manipur. So the issue has come to such a pass that even day before yesterday, 13 deaths have been reported in the newspaper. But the issue is that the government has been found totally impervious to the intensity of the violence, to the sensitivity of the northeastern state, as if nothing is happening over there. So the government of Manipur has been totally failed to maintain the law and order situation in Manipur, and the situation has been right to discharge. एक मिनट में अपनी बात कहिए। The situation has been right. Sir, situation has been right to impose presidential rule. सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से आज भारत सरकार के एक अत्यंत महत्वाकांक्षी परियोजना हर घर जल योजना के संबंध में सरकार का ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूं। मानवर एक ड्रीम प्रोजेक्ट है जिसके आस में गांव के अंतिम छोर पर बैठा व्यक्ति टकटकी लगाए देख रहा है, लेकिन मेरे लोकसभा क्षेत्र प्रतापगढ़ में हर घर जल योजना के कार्य करने वाली एजेंसियां मनमाने तरीके से गुणवत्ता विपरीत कार्य करके धन का अपव्यय कर रही हैं। इस तरह के
समय से परियोजना पूरे न होने से संशय प्रतीत होता है। वहीं दूसरी ओर प्रधानमंत्री सड़क निर्माण योजना से लेकर राष्ट्रीय राजमार्ग तथा गांव ग्रामीण की सड़कों के किनारे लेने वाली एजेंसियों ने सबलेट कर स्थानीय लोगों को काम दे दिया गया है। उन्होंने स्वयं भी सबलेट कर दूसरे लोगों को काम देकर गांवों की गुणवत्ता को दरकिनार करते हुए बनी हुई सड़कों के किनारे गांव की इंटरलॉकिंग। शुक्रिया स्पीकर साहब, तुसी बहुत ही महत्वपूर्ण विषय उठाउण दा मौका दिता। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ मेरा खेतर है, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ट्रेन ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ रेल विभाग के आर्डर के नाल ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ बनामुखी ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ लालकुआं जयनगर अजमेर ते टाटानगर माध्यम से माननीय जल शक्ति मंत्री को ध्यान आकर्षित करता हूं कि जो सड़कें गांव के ग्रामीण क्षेत्रों में टूट गई हैं, ऐसी कार्यदायी संस्थाओं पर कानूनी कार्रवाई की जाए। 1 मिनट प्लीज, 1 मिनट, अगले वक्ता के नाम में बोल दूंगा सर जी। शुक्रिया स्पीकर साहब रेल विभाग वालों ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ट्रेन ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ बनामुखी लालकुआं जयनगर अजमेर टाटानगर नंगल डेरा बाबा नानक पठानकोट ਤੇ चंडीगढ़ बंद कर ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਧੁੰਦ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਲਾਇਆ 1 ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 29 ਜਨਵਰੀ ਤੱਕ 2 ਮਹੀਨੇ ट्रेन बंद ने। ਧੁੰਦ सिर्फ 15 दिन ਪੈਂਦੀ है। पठानकोट डेरा बाबा नानक पट्टी ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਖਾਸ ਕਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀ ट्रेन ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਰਾਜਧਾਨੀ ਹੈ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਹੈ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕ ਉੱਤੇ ਸਫ਼ਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। 2 ਮਹੀਨੇ ਲੋਕ ਕਿਵੇਂ ਜਾਣਗੇ? किसान अपनी फसल लैके ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਆਏਗਾ? मजदूर ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਵਾਸਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੱਕ ਕਿਵੇਂ ਪਹੁੰਚ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਘਰ ਕਿਵੇਂ ਪਹੁੰਚੇਗਾ? वीरेंद्र जी माइक आप लंबी बात बोलने लगते हैं। बैठो यार, सब बैठो तो बोले जी। अरे बोलिए सर। मेरी सरकार तो दरखास्त है कि 1 दसंबर तो 29 फरवरी तक ਜਿਹੜੀਆਂ ट्रेन बंद कीतियां ने ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ बहाल किया जाए ताकि लोग वीरेंद्र जी सुखी रहें। श्री वीरेंद्र सभापति महोदय, मैं भारत की संसद को और यहाँ बैठे हुए सभी सांसदों को और देश में यहाँ अनुपस्थित सांसदों को मैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देना चाहता हूँ। भारत सरकार की योजनाओं को लागू करने के लिए, जैसे विश्वकर्मा योजना है, किसान योजना है, प्रधानमंत्री आवास योजना है, इसके लिए मैं अपने लोकसभा क्षेत्र बलिया में एक कार्यक्रम लोक संवाद का चला रहा हूं, गांव सभा से लोकसभा तक। उसमें सारे संबंधित अधिकारी उपस्थित रहते हैं, डीएम, सीडीओ और सभी संबंधित अधिकारी और सारे विभाग के अपने सरकार की योजनाओं को लाभार्थी बनाते हैं। गांव सभा का सदस्य जो कभी पूछा नहीं जाता था, उस संसद के लोक संवाद के कार्यक्रम में उपस्थित रहता है। और मैं निवेदन करता हूं कि पहले इसको लाभार्थी बनाओ, फिर 5 लोगों को ये लाभार्थी बनाएगा। मैं वहां के, हमारा लोकसभा क्षेत्र बलिया 2 जिलों में पड़ता है, उत्तर प्रदेश के बलिया और गाजीपुर। मैं वहां के डीएम, गाजीपुर के डीएम और बलिया के डीएम और सीडीओ, दोनों जिला के सीडीओ को मैं बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि सारे संबंधित अधिकारियों को बुलाकर लाभार्थी वहीं बनाते हैं और उनको 5 लोगों को लाभार्थी बनाने का मैं निवेदन करते हैं। आपकी आप चाहते क्या है? आपकी क्या डिमांड है? लोकसभा आपकी मांग क्या है? गांव सभा से लोकसभा तक का कार्यक्रम, भारतीय लोकतंत्र को भी गांव सभा की कार्यवाही 2 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।
Hello and a very warm welcome viewers. You're watching this special presentation of Sunset TV with your host Kriti Mishra. India's criminal justice system is set for a complete overhaul. The government has introduced 3 key bills to replace colonial era courts with the objective of speeding up trials by laying down specific timelines, boosting rates of conviction by improving the quality of evidence and providing relief and protection to victims. So what are the key provisions in the bill? What are the major recommendations of the Parliamentary Committee on Home Affairs? Well, we've packed everything for you in this edition, so come along. India's criminal justice system has been predominantly shaped by laws and regulations inherited from the British colonial era. In the post-independence years, these legal foundations underwent alterations and amendments to align with the evolving requirements of modern times. The experience of 7 decades of Indian democracy calls for comprehensive review of our criminal laws, including the Code of Criminal Procedure, and adopt them in accordance with the contemporary needs and aspirations of the people of India. The pre-independence criminal laws were used by the British to protect their colonial interests, to rule the people and the country, and to maintain their authority and supremacy over India. There was a need for comprehensive review of the criminal laws, the Criminal Procedure Code, the Indian Penal Code, and the Indian Evidence Act, and adapt them according to the present-day needs and aspirations. In fact, Prime Minister of India also advocated for the need to revamp all the legislations enacted across all departments during the British era. देश ने 1,500 से ज्यादा पुराने और अप्रासंगिक कानूनों को रद्द कर दिया है। इनमें से अनेक कानून तो गुलामी के समय से चले आ रहे हैं। In accordance with the basic principles enshrined in the Constitution of India, it was proposed to bring about fundamental comprehensive changes in the framework of Indian criminal laws. With this objective in view, the existing Indian Penal Code of 1860, the Code of Criminal Procedure 1973, and the Indian Evidence Act 1872 would now be repealed and replaced by the Bharatiya Nyaya Sanhita 2023, the Bharatiya Nagrik Suraksha Sanhita 2023, and the Bharatiya Sakshi Bill 2023, respectively. The Home Affairs Minister introduced these 3 key bills in the Lok Sabha on 11th of August 2023. ये तीनों कानूनों को रिप्लेस कर इनकी जगह जो 3 नए कानून बनेंगे, उनकी आत्मा होगी भारत के नागरिकों को संविधान प्रदत्त सारे अधिकार जो मिले हैं, इसकी सुरक्षा. The main problems in present legal system are very complex. There's huge pendency of cases in the courts. There's low conviction rate, and the amount of fine prescribed in the laws is very less, from 10 rupees to 500. There's overcrowding of under-trial prisoners in prisons. There's very little use of modern technology in the legal system. And there's delay in investigation, pending hearing process, and delayed justice due to inadequate use of forensic evidence. The new bills seek to historically address the problems in the criminal justice system to strengthen law and order, simplify legal procedure, provide speedy justice, and adapt the criminal justice system with the technological advancements. Further, all the outdated references have been deleted in the proposed bills. These bills seek to create a legal structure which is citizen-centric and to secure life and liberty of citizens and adopt them in accordance with the contemporary needs and aspirations of the people. The Bharatiya Nyaya Sanhita 2023 repeals the Indian Penal Code 1860. Key changes proposed in the bill include sedition. CrPC defines sedition as bringing or attempting to bring hatred or contempt or exciting disaffection towards the government. It is punishable with imprisonment term between 3 years and life imprisonment and or a fine. The bill removes this offence. It instead penalizes the following: exciting or attempting to excite secession, armed rebellion, or subversive activities, encouraging,
feelings of separatist activities, or endangering sovereignty or unity and integrity of India. These offences may involve exchange of words or signs, electronic communication or use of financial means. These will be punishable with imprisonment of up to 7 years or life imprisonment and a fine. Terrorism. The bill defines terrorism as an act that intends to threaten the unity, integrity and security of the country, to intimidate the general public or disturb public order. The bill also penalizes conspiring, organizing or assisting in preparation of any terrorist act within an imprisonment term between 5 years and life imprisonment and a fine of at least 5 lakh rupees. Petty organized crime. The bill makes attempting or committing petty organized crime punishable with imprisonment between 1 and 7 years and a fine. Death penalty for gang rape of minor. IPC allows death penalty for gang rape of women below 12 years of age. The bill now allows death penalty for gang rape of women below 18 years of age. The Bharatiya Nagrik Suraksha Sanhita 2023 was introduced in the Lok Sabha on 11th of August. It repeals the Code of Criminal Procedure 1973. The code provides for procedure for arrest, prosecution and bail for offences under various acts, including the Indian Penal Code of 1860. The highlights of this bill are trials in electronic mode. The bill provides that all trials, inquiries and proceedings may be held in electronic mode. It also provides for the production of electronic communication devices likely to contain digital evidence for investigation, inquiry or trial. Electronic communication includes communication through devices such as mobiles, computers or telephone. Forensic investigation. The bill mandates forensic investigation for offences punishable with at least 7 years of imprisonment. Timelines for procedures. The bill prescribes timelines for various procedures. For instance, it requires medical practitioners who examine rape victims to submit their reports to the investigating officer within 7 days. Trial in absence of offender. The bill provides for conduct of trial and pronouncement of judgment in the absence of a proclaimed offender. This shall be done when such a person has absconded to evade trial and there is no immediate prospect of arresting him. The Bharatiya Sakshi Bill 2023 was introduced in the Lok Sabha on 11th of August. It repeals the Indian Evidence Act of 1872. The Act provides rules for the admissibility of evidence in legal proceedings. The highlights of Bharatiya Sakshi Bill are admissibility of electronic or digital records as evidence. The bill provides that electronic or digital records will have the same legal effect as paper records. It expands electronic records to include information stored in semiconductor memory or any communication devices like smartphones or laptops. Oral evidence. Under the Act, oral evidence includes statements made before courts by witness in relation to fact under inquiry. The bill adds any information given electronically to be considered as oral evidence. Secondary evidence. The bill expands secondary evidence to include oral and written admissions and the testimony of a person who has examined the document and is skilled in the examination of documents. दस्तावेजों की परिभाषा का विस्तार कर इलेक्ट्रॉनिक या डिजिटल रिकॉर्ड, ईमेल, सर्वर लॉन्ग्स, कंप्यूटर, स्मार्टफोन, लैपटॉप, एसएमएस, वेबसाइट, लोकेशनल साक्ष्य, डिवाइस पर उपलब्ध मेल और मैसेजेस, ये सभी को कानूनी वैधता देता है, जिससे अदालतों के अंदर जो कागजों के ढेर लगते हैं, अंबार लगते हैं, वो समाप्त हो जाएंगे। अब हमने सर्च और जब्ती में वीडियोग्राफी को कंपलसरी करा है, जो अब वीडियोग्राफी केस का हिस्सा होगी। पुलिस द्वारा ऐसी रिकॉर्डिंग के बिना कोई भी चालान, चार्जशीट रखा जाएगा, वो वैध नहीं होगा। हमारा दोष सिद्धि का प्रमाण बहुत कम है। आजादी के 75 साल के बाद भी हम दोष सिद्ध नहीं कर पाते हैं। मान्यवर, इसीलिए फोरेंसिक साइंस को हमने बहुत बढ़ावा देने का काम किया। The need to reform and rationalize the Code of Criminal Procedure, as also the need to undertake a comprehensive review of the criminal justice system of India, has been expressed
from several quarters from time to time. The Law Commission of India, in its various reports, has recommended several amendments in the criminal laws of the country. Rajya Sabha Chairman Jagdeep Dhankar referred these 3 bills to the department-related Parliamentary Standing Committee on Home Affairs on 18th August 2023 for submitting its report within 3 months. The committee, during its deliberations, held a total of 12 meetings spanning more than 45 hours. 19 domain experts were called before the committee to present their views on the bills. The experts invited to participate in the deliberations included senior advocates practicing in the Supreme Court and various high courts, renowned university professors, retired judges, Chairman of Law Commission of India, retired Director General of Police, and besides, the representations received from private individuals and organizations and members of Parliament and ex-members of Parliament were also examined by the committee. Some of the major observations and recommendations of the committee include: the text of all 3 bills is in English language and hence the proposed legislations are not in violation of provisions of Article 348 of Constitution. The Sanhita has widened the scope of definition of gender by including transgenders. For the first time, community service has been introduced as a punishment in Sanhita for petty offences. The committee appreciates the government for introducing death penalty as a punishment for the offence of gang rape on a woman below 18 years of age, which was not provided in the IPC. The committee has recommended the government to seek the opinion of Attorney General and Solicitor General of the country with regard to Clause 1012, which is apparently about mob lynching. The committee appreciates the government for enhancing the punishment under Clause 104 on causing death by negligence from 2 years to 7 years. However, the committee has recommended reducing this punishment to 5 years as the proposed punishment of 7 years is unreasonably long. The committee commends the addition of Offence of Terrorist Act in the Sanhita. The committee compliments the government in deleting the term sedition from criminal law by rephrasing it without compromising the security of the state. The committee has recommended the government to include Section 377 of IPC in the Sanhita. A recommendation has also been made to retain Section 497 of IPC on adultery in the Sanhita by making it gender neutral. This is 75th year of our independence. Now, the salient features: the Bharatiya Nyaya Sanhita number of sections have been reduced from 511 to 356 and the chapters from 23 to 19. This is regarding Bharatiya Nyaya Sanhita, that is Old Indian Penal Code. We have used the word Nyaya, not a dand, not a penal, because this is a democracy. We are giving justice, not dand, not a penalty. 24 sections have been deleted from Old Indian Penal Code, 22 have been added, and a large number of sections have been rearranged. The existing laws stemming from the colonial era no longer represented the present-day dynamics and aspirations of Indian society. The existing laws have often been criticized for being outdated and not in tune with the present-day needs. The proposed Bharatiya Nyaya Sanhita seek to change the nature of law towards providing justice rather than punishment and would be a step forward to remove traces of colonial mindset. It was a mammoth task of drafting comprehensive amendments to the criminal laws and 4 years of intense discussions for making new laws that imbibe Indian thought process and the Indian soul. A comprehensive review of criminal justice system in our country was the need of the hour to bring it on par with the contemporary aspirations of the people of India. Well, viewers, that's all I have for you in this edition. Thanks for watching and stay tuned to Sunset TV. Goodbye for now from my side.
कांग्रेस की कटु आलोचना करने के बावजूद डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिष्ठा एक अद्वितीय विद्वान और विधिवेता की थी। यही कारण था कि 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता मिलने के बाद बनी अंतरिम सरकार में बाबा साहब अंबेडकर को देश का पहला कानून और न्याय मंत्री बनाया गया। 29 अगस्त 1947 को बाबा साहब अंबेडकर को स्वतंत्र भारत के नए संविधान की रचना के लिए बनी संविधान की मसौदा समिति के अध्यक्ष पद पर नियुक्त किया गया। संविधान निर्माण के लिए उन्होंने 60 देशों के संविधानों का अध्ययन किया। गहन चिंतन मंथन के बाद 2 साल 11 महीने और 18 दिनों में भारत का संविधान तैयार हुआ, जिसे 26 नवंबर 1949 को अंगीकार किया गया। अपने काम को पूरा करने के बाद बाबा साहब ने कहा, मैं महसूस करता हूं कि संविधान साध्य है, लचीला है, पर साथ ही ये इतना मजबूत भी है कि देश को शांति और युद्ध दोनों। गवर्नमेंट made all women more powerful and self-empowered in the decision-making body. In this context, I would like to emphasize that even though the Honorable Union Home Minister has clarified during the discussion on the bill that reservation for women will not be implemented in the upcoming 2024 election. The reservation will be effective after the census conducted after the commencement of the bill has been published. In view of the above, I urge upon the Union government to take early action to conduct census and to constitute delimitation commission to decide which seat will go to the women after the delimitation exercise. Thank you. श्री विष्णु दयाल राम जी। धन्यवाद सभापति महोदय। मैं आपका ध्यान एक अति महत्वपूर्ण विषय की ओर आकृष्ट करना चाहता हूं। मेरे संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत 2 जिला आते हैं, पलामू एवं गढ़वा। ये दोनों जिले आकांक्षी जिलों की सूची में हैं और यहाँ की 80% से ज़्यादा आबादी कृषि पर निर्भर करती है, परंतु दुर्भाग्यवश ये दोनों जिले रेन शैडो एरिया में पड़ते हैं, जिसका नतीजा ये होता है कि प्रतिवर्ष यहाँ तो या तो अतिवृष्टि होती है या अनावृष्टि होती है, जिससे फसलें मारी जाती हैं और लोग बेरोजगारी का शिकार हो जाते हैं, पलायन के लिए मजबूर हो जाते हैं। यहाँ पर किसी प्रकार का कोई उद्योग धंधा नहीं है, जबकि उद्योग धंधा स्थापित करने के लिए यहाँ पर सारे तत्व मौजूद है, जमीन है, खनिज है, पानी है, बिजली है, वगैरह वगैरह। उद्योग धंधों के नाम पर मात्र एक कॉस्टिक सोडा फैक्ट्री है, जिसका ही उत्पादन क्षमता बहुत सीमित है और रोजगार देने की क्षमता और भी ज़्यादा सीमित है। ऐसी परिस्थिति में लोग पलायन करने के लिए मजबूर हो जाते हैं और प्रतिवर्ष जब झारखंड से बाहर रोजगार के लिए जाते हैं तो उनकी लाशें आती है जो बहुत हृदय विदारक सीन उत्पन्न करती हैं। ऐसी परिस्थिति में मेरा आपके माध्यम से माननीय उर्वरक एवं रसायन मंत्री जी से अनुरोध है कि वहाँ पर खाद का कारखाना स्थापित करने की कृपा करें, ताकि लोगों को रोजगार मिल सके, कृषि की उपज में वृद्धि हो सके और पलायनवाद की भी समस्या समाप्त हो सके। धन्यवाद। श्री सप्तगिरी शंकर उलाका जी। Thank you, Speaker, sir, for giving this opportunity. Sir, this is a very serious issue and a long pending issue which is impacting my constituency, Jaipur. Sir, this is about the transfer of EPF past accumulations of employees of erstwhile Built Graphic Paper Products Limited, BGPPL, Unit Seva, which comes under OR/BAM/2910. They are now reporting compliance to RPFC Barampur being employees of Messrs. Mother Earth Resources Private Limited, MERPL, Seva, which is ORBAM/2468945. Sir, isme the problem is this Seva unit, which was sold by BGPPL to MERPL in the month of February 2020. But after that, the PF amount, the accumulated PF accumulation, this is under RPFC Kolkata, and they need to transfer it to RPFC Barampur. Sir, this has been, we've been told that all permissions are now available.
The trust is ready with the requisite fund towards the payment of the past accumulation. It is also confirmed the concern that entire fund is generated from accretion of the trust and not from sale of any securities or otherwise. So the retired legal heirs of expired employees have been approaching multiple times, and whenever I go there, they approach me on their pending dues. As the matter is pending for more than a year and a half, this has put the concerned employees towards unexplainable difficulties. So the district administration has also written a letter to the chairman, Central Board of Trustees on 10th April 2023, but there has been no response. We've been following with the Regional Provident Fund Commissioner, EPF of Calcutta. There is no response. KCDPF Trust, Calcutta, they have written to RPFC Calcutta to resolve the issue of PF transfer. There is no response. The RPFC Barampur, some fellows from there, they visited Jaipur also. They are saying they're helpless until RPFC Calcutta transfers the fund to RPFC Barampur. So, sir, through you, I would like to request the Honorable Minister of Labour and Employment to take up the issue and instruct the transfer of Provident Fund of retired expired employees of Mrs. Mother Earth Resources Private Limited, Jaipur, from the KCT PF Trust, Calcutta to RPFC Barampur, Odisha, in the largest interest of employees of MS Mother Earth Resources Private Limited, Jaipur, Koraput, Odisha, sir. Thank you, sir. I would appreciate if the ministry would take this cognizance of the situation and the ground reality and do the thing at the earliest. Thank you, sir. Sir, with a heavy heart, I would like to draw the kind attention of this August House as well as the Minister for Home about the sad plight of people of Tamil Nadu. So the recent flood have battered more than 1 crore people in city of Chennai, districts of Tiruvallur, Kanjipuram, Chengalpet, and Ranipet also. So the situation is very grim, and people are they are inside the home for the past 3 days. From 3rd onwards, there is a continuous torrential rain. And cyclone is its fury has it has fully dedicated its fury to the people of Tamil Nadu. So it was so heavy and could not bear with it, and people are stranded elsewhere. The trains are halted outside the city of Chennai, and flights are not moving. And more people, thousands and thousands of people are even, they could not get the food supplied by the government of Tamil Nadu, and government ministers are going shelter to shelter to help the people, but they could not extend their hands, helping hands to the public, because flood waters are in the streets. All the streets are flowing like rivers. So where is a chance to move to the people, sir? CM Tamil Nadu is having day in night. Even today morning, early morning also, he went out to see the people of Chennai, but he could not reach so many people together. So this is sorry state of affairs is prevailing in Tamil Nadu, and Government of India should come forward to help. In fact, yesterday the Home Minister has spoken to the Honorable Chief Minister of Tamil Nadu. It is good. And at the same time, State of Tamil Nadu has sent 3 memorandums. Financial memorandums have been sent to the Government of India for an amount of 6,230 crores. But today the CM has asked for 5,000 crores, at least 5,000 crores for a stopgap arrangements. This matter has to be immediately, it has to be considered without fail, and they should extend the helping hand in time. In time means they have to do it quickly, and central team should be sent to the states, to the districts, wherever the problem arises, and quickly this team should go. Enough team should go so that in one go they should assess the situation, what is the damage occurred, how the more than 8 people have died so far, and we don't know what is the toll as of now. So this is more important issue. Even yesterday, when I discussed the matter in the BSc, both Parliamentary Affairs Minister and other ministers, they have agreed
that it should be given topmost priority. But what is happening, sir? The fag end of the 0 hour, you are allowing me to speak. This is not good, sir. So actually, I thought that this should have a priority over the issues. I don't think that the other issues are not. They are also good issues. But at the same time, priority should be given to the human nature. That is what I am telling you, sir. So kindly see that Government of India should come forward. The Home Minister should specifically take care to see that the amount is dispatched quickly, and also along with the men and machineries, so that to help the state of Tamil Nadu quickly, sir. Thank you, sir. You all are supporting the Baluji's argument, sir. It's a valid and legitimate demand, sir. ठीक है बैठिए श्री जयदेव गल्ला जी इसी थैंक यू सर ठीक है आप नाम भेजिए ना प्लीज नाम भेज दीजिए अभी तो बैठिए अभी तो उनको बोलने दीजिए प्लीज सेम सब्जेक्ट आप बैठिए बालू साहब बैठिए प्लीज सेम सब्जेक्ट हाँ अबाउट आंध्रा आल्सो वी आल्सो हैव प्रॉब्लम नो साइक्लोन बैठिए तो सही आपका विषय निश्चित रूप से सब सहमत हैं और मुझे पूरा विश्वास है कि सरकार पहले से भी संज्ञान ले रही है और भी अधिक सक्रिय होकर के संज्ञान लेगी जी सर थैंक यू सर एज द ऑनरेबल मेंबर Mr. T.R. Balu has mentioned about the cyclone, we also have the same problem in lower coastal Andhra Pradesh. There has been very heavy rain over the last 2 days due to the cyclone over the west central Bay of Bengal of southern AP, sir. The Indian Meteorological Department announced landfall of Mishong today, somewhere between Bapatla and Machilipatnam in lower coastal Andhra Pradesh. Heavy rains have devastated the standing crop in tens of thousands of hectares in coastal and other districts of Andhra Pradesh. This cyclone has brought tears to the farmers, as the crop which is ready for harvest is lost before their very eyes, sir. The state government is still in the process of identifying and assessing the damage, and it may take some time to come to the conclusion about the damage to crop, life and property. Due to the heavy rains, roads have been damaged, supply of electricity is disturbed, people are not able to fetch essentials apart from other problems being faced by them. In view of the above, I appeal the Honourable Prime Minister, Shri Modi ji, for immediately sending the central team once the rain recedes for assessing the damage caused to the standing crop, roads, buildings, electricity supply and other infrastructure facilities, and submitting its report to the government for release of central assistance. Pending the report of the central team, I request the Honourable Prime Minister and the Honourable Home Minister to release 5,000 crores to Andhra Pradesh as an interim relief immediately to deal with the relief and rehabilitation work due to cyclone Mishong. Thank you very much, sir. श्री मोहन भाई कुंडारिया जी जी मोहन भाई आपका माध्यम से विदेश मंत्री का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि सौराष्ट्र क्षेत्र के विद्यार्थियों और उद्योगों के लिए वीजा फैसिलिटी सेंटर अहमदाबाद में होने के कारण 250 से 500 किलोमीटर दूरी जाना पड़ता है। इसलिए राजकोट औद्योगिक सेंटर है, यहाँ एम्स हॉस्पिटल है, इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी है, तो इसके लिए वीजा फैसिलिटी सेंटर राजकोट में मिलने के लिए आपका माध्यम से मैं मंत्री का ध्यान आकर्षित करना और विनती भी करता हूं। थैंक यू। जरा सा जी श्री एस रामलिंगम जी மாண்புமிகு மாற்றுத் தலைவர் அவர்களே, don't use these words please. மயிலாடுதுறை okay and nothing is going on நிலையத்திற்கு அருகில் மாப்படுகை பாலம் அமைக்க வேண்டும் என்பது என்னுடைய கோரிக்கை. ரயில்வே நிலையத்திலிருந்து சுமார் 100 மீட்டர் தொலைவில் இருக்கிறது இந்த மாப்படுகை சாலை. ஆம்புலன்ஸ் தீயணைப்பு வண்டிகள் கூட அந்த சாலையில் நேரத்திற்கு சென்று சேர இயலவில்லை. சுமார் அரை மணி நேரம் ஒவ்வொரு புகைவண்டி நிற்கும் போதும் சாலை மூடப்படுகிறது. நூற்றுக்கணக்கான வாகனங்கள் தேங்கி கிடக்கிறது. இந்த மயிலாடுதுறை புகைவண்டி நிலையத்தை புனரமைப்பதற்காக 24 கோடி ரூபாய் ஒதுக்கி இருக்கிறோம் என்று சொன்னார்கள். ஆனால் 6 மாத காலமாக நானும்
அமைச்சரை 3 முறை சந்தித்து இந்த கோரிக்கை வைத்தேன். இன்று வரை எந்த பலனும் ஏற்படவில்லை. என்னுடைய நாடாளுமன்ற தொகுதி வளர்ச்சி நிதியிலிருந்து அந்த சாலையொட்டி உடனடியாக எஸ்கலேட்டர் அமைப்பதற்காக 3.25 கோடி ரூபாய் ஒதுக்கி கொடுத்தும் பணி துவங்கப்படவில்லை. Please stop. Right now the arrangement of translation is not here. आपको मैं बाद में बुलाऊंगा. I will call you later. Now please you sit down. I will call you later. Please. हो जाता है, इसमें कोई खास बात नहीं है. नोटिस थोड़ा देर में आया. We will. Yes. Please cooperate. You all know the issues and the problems and what is the system. Shri V.K. Shri Kandan ji. Respected Chairman ji, Bharat Earth Movers Limited is a profit-making company with orders worth more than rupees 10,000 crore won through mostly global tenders. The company had made a profit of rupees 278 crore in 2022-2023, and the government so far got rupees 400 crore in the form of dividends. A unit of BEML at Kanjikot in my parliamentary constituency has already delivered 1,500 heavy military trucks, 300 railway coaches and 500 metro bogies. The government had to abandon a move of disinvestment in BEML in 2016 due to stiff opposition. The privatization move again is not in the interest of our nation's security. Therefore, I urge upon the government not to privatize BEML and withdraw such a move immediately. Thank you, sir. Shri Raghuram Krishna Raju ji. Thank you, Honorable Chairman, sir. This is regarding the Independence Gram Swaraj, which is initiated by Mahatma Gandhi, and later on the government followed, and in the government of Narendra Modi ji, lot of priority has been given to all the Gram Panchayats, and lot of funds are also being released. In this case, last year, to the government of Andhra Pradesh, 569 crores got released to the Gram Panchayats, but not even a single penny has come to the accounts of the Gram Panchayats, which was given under 15th Finance Commission. And in the 14th Finance Commission, starting from 2019 to 2023, around 8,629 crores got released, but nothing has been credited to the accounts. We all have met the Sarpanchas Association of Andhra Pradesh, where all party members are there, predominantly dominated by my present party. We all have met Honorable Minister Giriraj Singh ji and given a representation. He is kind enough to give a note to the state government to give back the money within 10 days. But in the last 3 months also, nothing has happened. Now, with this, the villagers are greatly suffering, and the dream of the Honorable Government of India, led by Narendra Modi ji, is not getting honored. So I once again request Honorable Minister Giriraj Singh ji, who was here till now, I had already briefed him this morning also, through the Honorable Chairman, sir, to take it up immediately on priority. And one more minute, sir, just one more minute, I'll finish. And there has been a new system known as volunteer system, which has totally replaced the Sarpanchas and the ward member system, wherein totally dysfunctional. The village system has got totally dysfunctional. I request the Honorable Member Panchayati Raj, as far as the village development is concerned, it should be left with only the Panchayat, Sarpanch and the ward members, not with the volunteers. Thank you, sir. Okay. Dr. Dhal Singh Bisain ji. बहुत बहुत धन्यवाद सभापति महोदय। जैसा कि आप जानते हैं कि वर्तमान युग डिजिटल का है और इसके लिए बहुत ज़्यादा अच्छे नेटवर्क की आवश्यकता होती है, और जैसा कि आपको विदित है अध्यक्ष महोदय कि वर्तमान में सारे काम ऑनलाइन होते हैं,
चाहे ऑफिस के काम हो, किसानों के काम हो, पढ़ाई लिखाई के काम हो, चाहे विभागीय सारे काम हो, इन सब के लिए, चाहे सार्वजनिक वितरण प्रणाली का काम हो, सभी काम के लिए ऑनलाइन बैंकिंग करनी हो तो भारत जो है एक डिजिटल लेन देन के लिए विश्व में प्रसिद्ध है और डिजिटल लेन देन हो या कार्यालय कार्य, इन सब के लिए मोबाइल नेटवर्क अति आवश्यक। अध्यक्ष महोदय, किंतु आज भी अनेक क्षेत्र ऐसे हैं जहां मोबाइल नेटवर्क सब जगह ठीक से कार्य नहीं कर पा रहा है और जिसके कारण से इन सारे विभागीय छात्र छात्राओं और अनेक सारे कामों के लिए नेटवर्क की उपलब्धता ठीक से नहीं होने के कारण, नेट ठीक नहीं चलने के कारण सारे काम प्रभावित होते हैं और विशेष करके बीएसएनएल का और बीएसएनएल का जाल लगभग, उसके अलावा पूरे प्रदेश में नहीं सारे देश में बीएसएनएल एक अपने नाम के लिए जाना जाता है। पर सभापति महोदय, अभी भी मेरे लोकसभा क्षेत्र में 2G सेवाओं से आगे बीएसएनएल नहीं बढ़ पाया है, जबकि अन्य जो प्रतिस्पर्धी संस्थाएं हैं वो 3G, 4G और 5G तक चली गई हैं और जिसके कारण से स्पीड में नेटवर्क नहीं मिलने के कारण से सारे लोग परेशान हैं, छात्र छात्राएं परेशान हैं, जो गांव में काम करने वाले पढ़ने वाले छात्र हैं वो परेशान हैं। इसलिए आपके माध्यम से मैं माननीय मंत्री जी से अनुरोध करना चाहता हूं कि ग्रामीण इलाकों में भी बीएसएनएल की सेवाएं और सुदृढ़ हो, अच्छी हो और इसके अलावा अन्य प्रतिस्पर्धी संस्थाएं उनका भी नेटवर्क अच्छा चले ताकि ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को सारे ऑफिसेस को काम करने में अच्छी सुविधा मिल सके। आपने समय दिया सभापति महोदय, बहुत बहुत धन्यवाद। श्रीमती अनुराधा चिंता जी। Thank you, Chairman, sir. Sir, people living near oil and gas drilling sites in Andhra Pradesh, East Godavari districts face the risk of being exposed to oil or natural gas leakages from the plants located in the vicinity, especially in the Dr. B.R. Ambedkar Koresema district, which has been witness to such incidents in the past. According to reports, GAIL operates pipelines extending to a length of 430 kilometers. ONGC operates 120 kilometers of pipelines, and Reliance operates a 36-kilometer pipeline in the Koresema region. Though the officials of said companies have been asked to replace old pipelines in the region to ensure the safety and safety of the local communities and prevent mishaps and prevent frequent gas leakages from the existing pipelines, there is an immediate need to establish a crisis management facility in the district considering the operations of numerous oil and natural gas producing companies in the said region to effectively handle emergencies of crisis. I would therefore request to the government to take immediate steps to include a comprehensive risk assessment for the oil and natural gas operations in Koresema district and ensure the establishment of a crisis management facility at the earliest. Thank you. Dr. Sanjeev Kumar Shangri ji. Thank you, Honorable Chairperson, for giving me this opportunity to speak on railway issues of Kurnool Parliamentary Constituency. Sir, Kurnool Parliamentary Constituency, which I represent, deserves additional railway facilities in view of its overall backwardness. Andhra Pradesh has 3 regions with diverse culture and dialect. Rayalaseema region is one of them, and Kurnool is the gateway of Rayalaseema. Kurnool, the erstwhile capital of Andhra State, is a backward district in all respects. Demographic indicators stand testimony to this fact. Kurnool was capital of Andhra State from 1953 to 56, and the capital was shifted from Kurnool to Hyderabad when states were reorganized on linguistic basis. There is a strong feeling in Kurnool region that a serious historical mistake was done when the capital was surrendered in favor of Hyderabad. The region was neglected for 7 decades by successive governments. This injustice should be relieved. Kurnool region is very backward as per the report of Sivaraman Krishnan Committee, an expert committee which was constituted under Section 6 of the AP Reorganization Act 2014. Kurnool region has challenges of high dependency ratio of 55%, low literacy rate of 65%, low urbanization of 29%, and has a young growing workforce. These problems need to be addressed with a humane touch, sir, and every investment in public utility cannot be seen from a commercial angle. Following the principles of natural justice, all regions of India should be developed equally. All of us should agree that injustice was meted out to Andhra Pradesh with unfair state bifurcation. We need a helping hand from the union government. Sir, economic growth, employment, income generation, and equitable distribution of growth are essential for all regions of Andhra Pradesh. It is distressing
to note that domicile migration, that is distress migration from this area, is in lakhs every year. Nearly 3 lakh people migrate to different areas from Kurnool parliamentary constituency. The area has problems of water supply, though Tungabhadra River traverses 95 kilometers in Kurnool district. Only 60% of cultivable land receives water supply. People hardly cultivate 1 crop per year. So people travel hundreds of kilometers in search of job. People are asking for a better connectivity with cities like Visakhapatnam and Vijayawada, which are the 2 cities of Andhra Pradesh. National highway connecting Kurnool and Vijayawada, which traverses through reserve forest, needs upgradation. Road journey is tedious, and there is no express train connecting between Kurnool and Vijayawada and Visakhapatnam. So at least a good railway connectivity is needed for this region. We are not asking for a new railway track. We are just asking for a train service on the existing railway tracks. As a representative of 22 lakh population of Kurnool region, I have been requesting railway authorities for some facilities like train halls at Madhikera, Kosigi and Adoni, direct train service from Kurnool to Mumbai in favor of thousands of North Indian families doing business in Kurnool, and speeding up of construction of railway rehabilitation workshop at Kurnool. Sir, I made nearly 15 representations to Railway Ministry in past 4 years. Response is not encouraging. I take this opportunity to request the Honorable Minister of Railways to please start a daily train service from Kurnool to Visakhapatnam via Vijayawada. A tri-weekly train with number 07237 was running on ad hoc basis, but that too was withdrawn recently for reasons better known to the officials. Thank you. Thank you. Sir, passenger services cannot be viewed in commercial angle. Occupancy of the service was good enough and would have improved further had it been a daily service. Sir, to conclude, I request the Minister of Railways to restart the train on a daily basis, and I hope this facility can bring solace to the injured hearts of people who feel that many historical blunders were committed against the region. There should be equitable development of all regions of the country. Thank you, Chairman, sir. Give me opportunity to raise very urgent and public importance matter which is related to my parliamentary constituency. Sir, the flight and agony of cashew workers who are workers in Kollam and Alappuzha in Kerala who are striking for want of renewed wages and decent benefits from their occasion is a grim and unfortunate picture of the crisis engulfing the cashew sector in Kerala, which is livelihood of more than 3.5 lakh workers, a majority of them being women from backward communities. The minimum wages of cashew workers are not revised even after 10 years since then Ummanchandi government, which was the last government to have increased the wages of cashew workers. The present state government under Chief Minister Pinarayi Vijayan has ignored the plight of cashew workers and their wages is not revised. The present wages are even lower than wages of Manrega workers. The strike of cashew workers, including cashew workers, are striking not only in Kollam district, other districts also. My Kalappi, Pathanamthitta, Thiruvananthapuram district also facing this crisis. So, but sir, the benefits of cashew workers, including ESI and PF benefit, also not getting properly because the ESI benefit is denied cashew workers because of the thin attendance, the working hours and also working days also working days also not properly. That's why ESI benefit also and also PF benefit also not getting for cashew workers. So I am coming, sir. Sir, the women cashew workers earn 500 rupees per day. Now workers are getting 35 for shelling 1 kg of raw cashew and 45 for peeling the kernel. The merged sum they get on in a while does not even cover their food expense or medical emergencies. Many women's cashew workers are now working as household help and do other sundry jobs sustain themselves. Sir, there was a time when more than 780 licensed cashew factories function in Kerala, which has now reduced less than 800 cashew factories. Please. Sir, I am coming, very important, I am coming, sir. Sir, the 1980s and 1990s, cashew has peaked 1,25,000 metric tons, which has sealed down to less than 20,000 tons. This situation indicates alarming crisis of entire
industry, banks have owned up numerous cashew factories and more than 10 cashew factory owners. More than 10 cashew factory owners whom small size factories own have committed suicide in Kerala. Therefore, the plight of the cashew workers must be addressed by declaring special package for welfare of cashew workers with the umbrella welfare option, including ex gratia, financial support during the period of. Sir, I am complete. आप अधिक समय लेंगे तो किसी अन्य मान्य सदस्य का अवसर समाप्त होगा. 1 minute, sir. Last point. Please conclude immediately. Last point. Sir, financial support during the period of unemployment, free medical treatment, and ESI hospital soft loans. The cashew workers must be given their fair share outstanding. Come to the demand outstanding. Yeah, I am coming to point, sir. So, outstanding bonds and other benefits of denied them due to winding down cashew factory, additional benefits, loan waivers, medical facility, all cashew workers, irrespective of the last status of employment and premium payment. With these words, sir, so very serious matter, and also the. धन्यवाद सभापति महोदय. धन्यवाद सभापति महोदय. 0 आवर की समय की मर्यादा का हम सभी को ध्यान रखना चाहिए. थोड़ा बहुत 10-15 सेकंड चल सकता है, बट नॉट मिनट्स, प्लीज. जी धन्यवाद सभापति महोदय, आपका जोहार. मेरे लोकसभा रांची जो हटिया विधानसभा के नगड़ी नामक स्थान है, जहां से स्वर्ण रेखा पवित्र नदी निकलती है, जो रांची शहर होकर गुजरते हुए जमशेदपुर से होते हुए बंगाल की खाड़ी में गिरती है. 474 किलोमीटर लंबी इस नदी, जो झारखंड की लाइफलाइन कही जाती है, रांची की लाइफलाइन कही जाती है. झारखंड की प्राचीन संस्कृति में इस नदी का सांस्कृतिक और धार्मिक महत्व है. रांची में चुटिया नामक स्थान में स्वर्णरेखा नदी एक सहायक नदी हरमू से में आकर मिलती है. इस संगम पर करीब 500 वर्ष पुराने नागवंशी कालीन 21 शिवलिंग नदी के चट्टानों में उत्कीर्ण है. कभी नागवंशी राजाओं की राजधानी चुटिया होती थी और वह सांस्कृतिक अवशेष एक जीवंत धनाढ्य संस्कृति की कहानी कहता था. किंतु अफसोस यह है कि झारखंड की जेएमएम एंड कांग्रेस की सरकार की अनदेखी के कारण, उदासीनता के कारण, गैर योजना से तेजी से बढ़ते शहरीकरण के कारण यह नदी एक हरमू में मिलती है, वो नदी क्या नाले में तब्दील हो चुकी है. नदियों के किनारे अतिक्रमण, शहर का सीवरेज जो सिस्टम, उसका पानी अब स्वर्णरेखा नदी में गिरता है. दिल्ली की यमुना नदी से भी स्थिति उस स्वर्णरेखा नदी की खराब हो गई है. इन दोनों नदियों के संगम तल के स्थल पर स्वर्णरेखा बिल्कुल काली पड़ती हुई जा रही है. आज से लगभग 10-15 साल पहले पूर्व से हजारों की संख्या में छठ व्रती वहां अर्घ देने जाते थे. महोदय सभापति महोदय, बहुत अहम विषय है मेरे राज्य सारे विषय अहम होते हैं. मैं भी वहां सावन के महीनों कांवर लेके उस स्वर्णरेखा के नदी के तट से पानी लेकर पहाड़ी मंदिर पर बाबा का अभिषेक करने जाते थे. वहां अनेक तरह के मेले, आप कृपा करके नारायण भोजन आप चाहते हैं ये बताइए. हर एक घर से एक मुट्ठी चावल और दाल लेकर प्रसाद बनाया जाता था. लेकिन नदी के प्रदूषण होने कारण लोगों ने इस नदी से खुद को दूर कर लिया. अब छठ और कार्तिक पूर्णिमा दोनों में श्रद्धालुओं की संख्या कम हो गई. नदी के चट्टानों में उत्कीर्ण जो शिवलिंग है मांग रखिए, तेजी से क्षरण हो रहा है. मेरी यह डिमांड है कि दीर्घकालीन योजना बनाकर इस स्वर्णरेखा नदी जो पवित्र नदी, इसको बचाया जाए, क्योंकि वहां की सरकार से कोई उम्मीद नहीं है. यह नदी सांस्कृतिक धरोहर है, उसको कैसे हम सब बचाएं, इस पर आपका ध्यान, आपके माध्यम से सरकार का ध्यान हम आकृष्ट करना चाहते हैं. श्री एस रामलिंगम जी. மாண்புமிகு மாற்றுத் தலைவர் அவர்களே, மயிலாடுதுறை புகைவண்டி நிலையத்தில் சுமார் 100 மீட்டர் தொலைவில் மாப்படுகை நெடுஞ்சாலை அமைந்துள்ளது. இதில் மேம்பாலம் இல்லாத காரணத்தினால் அவசர காலத்தில் ஆம்புலன்ஸ், தீயணைப்பு வாகனங்கள் கூட செல்ல முடியாத நிலை. எனவே இந்த லெவல் கிராசிங் நம்பர் 229
இதில் உடனடியாக மேம்பாலம் கட்டப்பட வேண்டும். கடந்த 24/11/23 அன்று பொதுமக்கள் மிகப்பெரிய அளவில் கூடி சாலை மறியல் செய்தார்கள். அப்போது மாவட்ட ஆட்சியர் தலையிட்டு விரைவில் இதற்கான பரிந்துரையை நான் அனுப்புகிறேன் என்று சொல்லியிருந்தார். இருந்தும் கூட இதுவரை எந்த பணியும் துவங்கப்படவில்லை. இந்த ரயில்வே தடத்தில் நூற்றுக்கணக்கான வாகனங்கள் அரை மணி நேரத்திற்கு ஒரு முறை தேங்கி கிடக்கிறது. அது மட்டுமல்ல, இதே மயிலாடுதுறை புகைவண்டி தடத்தில் இரட்டை வழிப்பாதை விழுப்புரம் வரை அமைக்கப்பட வேண்டும் என்று பலமுறை வற்புறுத்தி இருக்கிறேன். இதுவரை செய்யப்படவில்லை. மயிலாடுதுறை புகைவண்டி நிலையத்தில் எஸ்கலேட்டர் அமைப்பதற்காக முதல் பிளாட்பாரத்திலிருந்து 3வது பிளாட்பாரம் செல்ல முடியாத நிலையில் என்னுடைய தொகுதி மேம்பாட்டு நிதியிலிருந்து 3.25 கோடி ரூபாய் ஒதுக்கீடு செய்தும் புகைவண்டி துறையில் இதுவரை அதற்கான பணிகள் துவங்கப்படவில்லை. மேலும் 24 கோடி ரூபாயில் புனரமைக்கிறோம் என்று சொல்லிக் கொண்டே இருக்கிறார்கள். 2 வருட காலமாகிறது. எந்த பணியும் இதுவரை துவங்கப்படவில்லை. நான் இப்போது கேட்டுக்கொள்வதெல்லாம் மிக மிக அவசரமான ஒன்று. இந்த மேம்பாலம் லெவல் கிராசிங் 229 இந்த மேம்பாலம் அமைந்தால்தான் அந்த பகுதியில் பல்வேறு சுற்றுலா தலங்களை இணைப்பதற்கான வழிவகை ஏற்படும். எனவே உடனடியாக இந்த மேம்பாலத்தை அமைத்து தர வேண்டும் என்று கேட்டுக்கொள்கிறேன். நன்றி, வணக்கம். श्री अधीर रंजन जी. Sir, I would like to flag the attention of this government that it is alarming to note that there is no respite of ethnic conflict and violence in the state of Manipur. Sir, it is paradoxical to note that on the one hand, both the central government and state governments are glibly claiming the peace and normalcy being restored in the state of Manipur. But on the other hand, the grave situation itself, which is prevailing over there, is an eloquent testimony of the abysmal failure of the state government of West Bengal, state government of Manipur. So the issue has come to such a pass that even day before yesterday, 13 deaths have been reported in the newspaper. But the issue is that the government has been found totally impervious to the intensity of the violence, to the sensitivity of the northeastern state, as if nothing is happening over there. So the government of Manipur has been totally failed to maintain the law and order situation in Manipur, and the situation has been right to discharge. एक मिनट में अपनी बात कहिए. The situation has been right. Sir, situation has been right to impose presidential rule. सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से आज भारत सरकार के एक अत्यंत महत्वाकांक्षी परियोजना हर घर जल योजना के संबंध में सरकार का ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूं. मानवर एक ड्रीम प्रोजेक्ट है जिसके आस में गांव के अंतिम छोर पर बैठा व्यक्ति टकटकी लगाए देख रहा है, लेकिन मेरे लोकसभा क्षेत्र प्रतापगढ़ में हर घर जल योजना के कार्य करने वाली एजेंसियां मनमाने तरीके से गुणवत्ता विपरीत कार्य करके धन का अपव्यय कर रही हैं. इस तरह के समय से परियोजना पूरे न होने से संशय प्रतीत होता है. वहीं दूसरी ओर प्रधानमंत्री सड़क निर्माण योजना से लेकर राष्ट्रीय राजमार्ग तथा गांव ग्रामीण की सड़कों के किनारे लेने वाली एजेंसियों ने सबलेट कर स्थानीय लोगों को काम दे दिया गया है. उन्होंने स्वयं भी सबलेट कर दूसरे लोगों को काम देकर गांवों की गुणवत्ता को दरकिनार करते हुए बनी हुई सड़कों के किनारे गांव की इंटरलॉकिंग. शुक्रिया स्पीकर साहब, तुसी बहुत ही महत्वपूर्ण विषय उठाउण दा मौका दिता. ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਮੇਰਾ ਖੇਤਰ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਟ੍ਰੇਨ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ ਰੇਲ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਆਰਡਰ ਦੇ ਨਾਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ बनामुखी अमृतसर तो लालकुआं जयनगर अजमेर के टाटानगर माध्यम से माननीय जल शक्ति मंत्री को ध्यान आकर्षित करता हूं कि जो सड़कें गांव के ग्रामीण क्षेत्रों में टूट गई हैं, ऐसी कार्यदायी संस्थाओं पर कानूनी कार्रवाई की जाए. एक मिनट प्लीज, एक मिनट, अगले वक्ता के नाम में बोल दूंगा सर जी. शुक्रिया स्पीकर साहब रेल विभाग वालों अमृतसर तो चलने वाली ट्रेन जड़ियां ने वो अमृतसर तो बनामुखी लालकुआं जयनगर अजमेर टाटानगर
नंगल डेरा बाबा नानक पठानकोट ते चंडीगढ़ बंद कर दित्तियां गईयां ने। धुंध का बहाना लाया 1 दसंबर तो लैके 29 जनवरी तक 2 महीने ट्रेन बंद ने। धुंध सिर्फ 15 दिन पैंदी है। पठानकोट डेरा बाबा नानक पट्टी ते ਜਿਹੜੀ खासकर चंडीगढ़ ਨੂੰ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀ ट्रेन हज़ारां लोग ਜਿਹੜੇ ਨੇ चंडीगढ़ राजधानी है हाई कोर्ट है हज़ारां लोग उत्ते सफर करते हैं। 2 महीने लोग किवें जाणगे? किसान अपनी फसल लैके अमृतसर दे विच किवें आएगा? मजदूर जिहड़ा है वो अपनी मजदूरी वास्ते अमृतसर तक किवें पहुंच करेगा ते मजदूरी करन तो बाद घर किवें पहुंचेगा? वीरेंद्र जी माइक आप लंबी बात बोलने लग गए हैं। बैठो यार सब बैठो तो बोले जी अरे बोलिए सर। मेरी सरकार तो दरखास्त है कि 1 दसंबर तो 29 फरवरी तक जिहड़ियां ट्रेन बंद कीतियां ने उन्हां नूं बहाल किया जाए ताकि लोग वीरेंद्र जी सुखी रहन। श्री वीरेंद्र सभापति महोदय, मैं भारत की संसद को और यहाँ बैठे हुए सभी सांसदों को और देश में यहाँ अनुपस्थित सांसदों को मैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देना चाहता हूँ। भारत सरकार की योजनाओं को लागू करने के लिए जैसे विश्वकर्मा योजना है, किसान योजना है, प्रधानमंत्री आवास योजना है, इसके लिए मैं अपने लोकसभा क्षेत्र बलिया में एक कार्यक्रम लोक संवाद का चला रहा हूं, गांव सभा से लोकसभा तक। उसमें सारे संबंधित अधिकारी उपस्थित रहते हैं, डीएम, सीडीओ और सारे संबंधित अधिकारी और सारे विभाग के अपने सरकार की योजनाओं को लाभार्थी बनाते हैं। गांव सभा का सदस्य जो कभी पूछा नहीं जाता था उस संसद के लोक संवाद के कार्यक्रम में उपस्थित रहता है और मैं निवेदन करता हूं कि पहले इसको लाभार्थी बनाओ, फिर 5 लोगों को ये लाभार्थी बनाएगा। मैं वहां के हमारा लोकसभा क्षेत्र बलिया 2 जिलों में पड़ता है, उत्तर प्रदेश के बलिया और गाजीपुर। मैं वहां के डीएम, गाजीपुर के डीएम और बलिया के डीएम और सीडीओ दोनों जिला के सीडीओ को मैं बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि सारे संबंधित अधिकारियों को बुलाकर लाभार्थी वहीं बनाते हैं और उनको 5 लोगों को लाभार्थी बनाने का मैं निवेदन करते हैं। आपकी तो आप चाहते क्या है? आपकी क्या डिमांड है? लोकसभा आपकी मांग क्या है? गांव सभा से लोकसभा तक का कार्यक्रम भारतीय लोकतंत्र को भी गांव सभा की कार्यवाही 2 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। बहुत बहुत धन्यवाद स्पीकर साहब। मिल जाता है मिनिस्टर कैन रिप्लाई पे विस्तार से देंगे ना। कन्वेंशन है सर, शॉर्ट सभी लोग बोले, मैं बहुत विस्तार से, आप बिठाना मत, लंबा जवाब दूंगा। नॉर्मली इनिशियल इंट्रोडक्शन हो चुका है बिल का। माननीय अमर सिंह जी, नॉर्मली मूवर विल स्पीक समथिंग। धन्यवाद स्पीकर साहब। आज 2 बिलों पर चर्चा हो रही है। एक तो जम्मू कश्मीर रिजर्वेशन अमेंडमेंट है, दूसरे में नॉमिनेशंस की अमेंडमेंट है। सर, जो रिजर्वेशन वाला अमेंडमेंट बिल है उसमें तो सिर्फ जो शब्दों का उपयोग है, पहले जो 2004 का बिल है उसमें वर्ड यूज्ड है अंडर प्रिविलेज क्लासेस, वीक एंड अंडर प्रिविलेज क्लासेस, उसको नए बिल में ओबीसी कर दिया है, अदर बैकवर्ड क्लासेस कर दिया है। वो तो इतना ही है। वो सर
ये पॉजिटिव आप अमेंडमेंट ला रहे हैं क्योंकि जम्मू कश्मीर में उस नाम से वीक एंड अंडर प्रिविलेज क्लासेस में उनको रिजर्वेशन सिर्फ 2% थी, और जब वो स्टेट से बाहर, अब तो स्टेट नहीं बची यूटी है, जब कभी सूबे से बाहर या भारत सरकार की किसी नौकरी को अप्लाई करना चाहते थे तो उनको ओबीसी वाला बेनिफिट नहीं मिलता था क्योंकि नाम डिफरेंट था। तो इसलिए मैं इसको पॉजिटिव अमेंडमेंट मानता हूं और मैं इसका सपोर्ट करता हूं। लेकिन सर, इसमें जो मुद्दा असली है, और जब 370 धारा समाप्त करी जा रही थी तब ये सारी ओबीसी क्लासेस को जिनका नाम अलग था, वीक एंड अंडर प्रिविलेज क्लासेस, उनसे वादा किया गया था कि आपको जैसे सारे भारतवर्ष में 27% रिजर्वेशन मिलती है वो आपको मिलेगी। जम्मू कश्मीर में तो अभी 2% मिलती है। तो मैं बेनती करूंगा स्पीकर साहब आपको, आपके माध्यम से गृह मंत्री जी को, क्योंकि देखिए नाम तो अच्छा हो गया, बढ़िया है, लेकिन नाम के साथ वो जो उनकी असली मांग है ये सभी ओबीसी क्लासेस की, और आपने वहां वादा भी किया था, उसका आप क्या कर रहे हैं? कोई सदन को वो जरूर बताइए, नहीं तो नाम चेंज तो हो गया, भारत सरकार में वो नौकरियों में अप्लाई कर पाएंगे, वो सही है, लेकिन जम्मू कश्मीर अब आपके पास है, यूटी है, सेंट्रली एडमिनिस्ट्रेटेड है, 2% रिजर्वेशन को आप किधर लेके जा रहे हैं? वो बहुत मुख्य मुद्दा है। हम निवेदन करेंगे गृह मंत्री जी से आपके माध्यम से कि वो जब भी जवाब दें तो इस बात पे जवाब जरूर दें कि केवल नाम ही चेंज करना है या ये जो ओबीसी सारे जम्मू कश्मीर के हैं उनका जो बनता हक है रिजर्वेशन का वो भी दिया जाएगा। ये पहली बात सर मैं निवेदन करना चाहता हूं। सर, दूसरी बात ये है, क्योंकि इसके होने के बाद उनको नौकरियों में, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में सभी जगह फायदा होगा, इसमें कोई डाउट वाली बात नहीं, इसीलिए तो हम कह रहे हैं कि अच्छी बात हुई। पर सर, जो आज भी SC, ST, OBC के जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के जहाँ शिक्षा पाने के लिए जहाँ नौकरी रिजर्वेशन है, लेकिन वो पाने के लिए जो आज वो मुद्दे हैं वो भी मैं गृह मंत्री जी से पूछना चाहूंगा कि अगर आप ये जम्मू कश्मीर के लोगों को क्या कोई स्कॉलरशिप एजुकेशन का देंगे? उनकी एजुकेशन को आप बढ़ोतरी कैसे करेंगे? वो कमजोर लोग हैं, गरीब लोग हैं, कैसे आप करेंगे? वो मैं आपसे सर सवाल जरूर पूछना चाहता हूं, क्योंकि जो हायर एजुकेशन का इस मुल्क का तजर्बा है, मैं वो केस को छेड़ना नहीं चाहता हैदराबाद वाले को। सर, जो SC, ST लड़के लड़कियां PhD करते थे, MPhil करते थे, उनका स्कॉलरशिप या तो बहुत कम कर दिया गया है, जहां करीब करीब बंद कर दिया गया है, वो अब भटकते हैं चारों ओर। तो वो ये जम्मू कश्मीर वालों के साथ भी यही होना है, इसलिए वो मुद्दे को मैं आज रेज करना चाहता हूं, क्योंकि गृह मंत्री जी आप सारी सरकार देखते हैं, आप इसका जवाब जरूर दीजिए कि आप स्कॉलरशिप पे क्या करेंगे, क्योंकि स्कॉलरशिप बहुत बड़ा इशू है, सारे हिंदुस्तान का इशू है, जम्मू कश्मीर का तो है ही है, तो इसलिए मैं इसको रेज कर रहा हूं आपके साथ। और दूसरा मैं ये भी कहना चाहता हूं सर कि आपने जो वादा किया था वहां, अब तो 4 साल हो गए, आप इलेक्शन कब करा रहे हैं? क्योंकि वहां डेमोक्रेसी तो करनी चाहिए ना, आज नहीं कल जब भी है आप इलेक्शन कमीशन का जवाब दे देते हैं। सर, जब तक आप गृह मंत्री जी आप नहीं कहेंगे कि नहीं मैं वहां इलेक्शन करवा सकता हूं फोर्सेस के साथ, इलेक्शन कमीशन क्या करेगा? तो आपको उस पर भी बताना चाहिए कि आप वहां डेमोक्रेसी कब दे रहे हैं उन लोगों को, क्योंकि लद्दाख में आपने इलेक्शन करा दिए, अब जम्मू कश्मीर वाले इलाके को छोड़ दिया। तो मेरी बेनती है उस पर भी सर हम लोगों को कोई ना कोई बात बताइए।
अगली बात सर जो मैं आपसे करना चाहता हूं, मतलब वो सारे हिंदुस्तान के एक्सपीरियंस से बात करना चाहता हूं, तो जम्मू कश्मीर में भी वही होगा सर। सारे हिंदुस्तान में जो भारत सरकार के इंस्टीट्यूट हैं, जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं, जो आपके ITI और सारे हैं, उसमें सर आज SC ST टीचरों की कितनी भर्ती हुई है। यहां सर लोकसभा में, राज्यसभा में भी जवाब दिया था कि अबाउट 60% पोस्ट खाली पड़ी है। तो सर ये तो नॉमेनक्लेचर तो बहुत अच्छा पॉजिटिव स्टेप है, लेकिन नॉमेनक्लेचर से अकेले में मुद्दा निपटता नहीं है ना, उसके साथ उस लाइन में जितनी बातें जुड़ी हुई हैं उनका सारा का भी तो सोल्यूशन करना पड़ेगा। उनकी पोस्ट रिजर्व कर दी, उनकी भर्ती नहीं हो रही, तो कहां जाएंगे वो? रिजर्वेशन हो गई पर भर्ती नहीं कर रही है। तो सर मेरा कहने का मतलब है क्योंकि आप सारी सरकार चलाते हैं प्रधानमंत्री जी के बाद, तो आपसे जवाब इसलिए मांग रहे हैं कि आप किसी डिपार्टमेंट से भी पूछना तो आप पूछ सकते हो। देखिए, जो स्टूडेंट्स का SC ST OBC का हिंदुस्तान में हालत है वो ये है सर, पिछले कई सालों से जब से ये स्कॉलरशिप सर, इवन जो जनरल पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप था वो सर भारत सरकार 100% देती थी, 100%। बहुत सालों से, 30, 40, 50 साल से। आपकी सरकार आई, आपने 60-40 कर दिया कि हम तो 60% देंगे, 40% स्टेट्स दें। स्टेट्स की तो ऐसी हालत है, वो तो तनख्वाहें नहीं बांट रहे। तो हुआ क्या है कि कॉलेजेस में, स्कूल्स में, हायर इंस्टीट्यूशंस में SC ST बच्चों का नंबर बहुत गिर गया है। मैं सर पंजाब की एग्जांपल बताता हूं, जब आप 100% देते थे तो SC ST स्कॉलरशिप 3.5 लाख से 4 लाख स्टूडेंट्स को मिलता था। 3.5 लाख से 4 लाख के करीब स्टूडेंट्स को पंजाब में ये स्कॉलरशिप। अब सर लेस देन 1 लाख को मिल रहा। तो मतलब क्या निकला? दैट मीन्स पंजाब अकेले में करीब 2-2.5 लाख शेड्यूल्ड कास्ट, वहां ट्राइबल नहीं है, वो स्टूडेंट्स जो हैं वो कॉलेजों से और स्कूलों से निकल गए हैं, क्योंकि उनको अफोर्ड करने वाली हालत नहीं है। तो इसलिए सर मैं आपके सामने रेज कर रहा हूं, ये जम्मू कश्मीर में भी इशू बनेगा। तो इसलिए आपसे बेनती है कि जब आप कानून ला रहे हैं तो कंप्रीहेंसिव सर सारी चीजें लाइए, उसके साथ आप हमें सारी चीजें बताइए। यही नहीं, स्टूडेंट्स के जो सुसाइड हो रहे हैं ITIs में, हायर इंस्टीट्यूशंस में, सर उसमें आपकी सरकार क्या कर रही है वो हमें बात बता दीजिए, क्योंकि बहुत सारे सर मुद्दे हैं इस बात पे। तो इसलिए मैं आपकी अमेंडमेंट की तो सपोर्ट करता हूं, लेकिन सर ये मेरी बेनती है कि दूसरे जो साथ जुड़े बुरे मुद्दे हैं A to Z, उन सब का सर आप कोई समाधान करिए और हम लोगों को गाइड करिए। सर जो दूसरा अमेंडमेंट ला रहे हैं जिसमें वो 3 लोग नॉमिनेट करने हैं, उसमें सर मेरा कहना बहुत छोटा सा मेरी बेनती है उसमें कि सर जम्मू कश्मीर में सर पंजाबी आदमी भी बहुत बसता है, स्पेशली इन जम्मू रीजन, श्रीनगर में थोड़े कम हैं। तो सर पंजाब की ओर से मैं बेनती करना चाहूंगा, सर कोई हमारा भी कोई आदमी उसमें नॉमिनेट करिए उन 3 लोगों में, पंजाब का आदमी। मैं पगड़ी वाला नहीं कहूंगा, कोई पंजाबी तो कर दीजिए, क्योंकि वहां हमारे इतने पंजाबी रहते हैं। बाकी आप करिए, उसमें कोई बात नहीं। ऐसा नहीं कि सर पंजाब इग्नोर हो जाए। पंजाबी लैंग्वेज बस सर वहां पहले चलती थी, वो बंद कर दी, तो वो भी उसको चालू करिए। वहां सर होती थी, वो उसको बंद कर दिया। मेरा कहने का मतलब ये है कि सर बहुत सारे इश्यूज है जम्मू कश्मीर के, अच्छी अमेंडमेंट आप लेके आए, से साथ जुड़े मुद्दे भी निपटाने का करिए। और लास्ट बात कहना चाहता हूं, सर भारत सरकार में जॉइंट सेक्रेटरी और सेक्रेटरीज पे सर ये SC ST OBC का कोई नंबर बढ़ाइए। मैं एग्जैक्ट परसेंटेज बोलना नहीं चाहता हूं, क्योंकि सर वैसे मुझे सारा पता था, मैं बोलना नहीं चाहता हूं। और उनको जब आप भारत सरकार सर लेके आते हैं
तो उनको जरा अच्छी पोस्टिंग भी दीजिए। उनको हमेशा ही कभी उधर, मैं किसी डिपार्टमेंट का नाम नहीं, पर आई अंडरस्टैंड दैट थिंग, पर सर उनको, क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री जी SC ST की, OBC की, उनके भले की इतनी बात कहते हैं, तो यार सर जो उनके ऑफिसर्स बन गए हैं, IAS IPS बन गए हैं, उनको जरा, उनको भी इम्पोर्टेंट पोस्टिंग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में दे दिए। आप अभी पावर में हैं, तो मैं उस बिल का सर समर्थन करता हूं, लेकिन जो मैंने दूसरी बेनतियां करी हैं, मैं उसका सर जवाब चाहता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। अब दूसरे का तो मुझे पता। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। अध्यक्ष महोदय, मैं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी और गृह मंत्री अमित शाह जी का बहुत आभार प्रकट करना चाहता हूं, जिन्होंने ये जम्मू कश्मीर आरक्षण संशोधन विधेयक 2023 और जम्मू कश्मीर पुनर्गठन संशोधन विधेयक को जहां पर लाया है। महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि देखिए, जम्मू कश्मीर की जितनी भी ये समस्याएं हैं, ये कोई आज ही डिमांड नहीं आई या आज ही इसकी ज़रूरत नहीं पड़ी, ये वर्षों से इसकी ज़रूरत थी। लेकिन स्वार्थ की राजनीति करते हुए यो पहली सरकारें जहां पर रही हैं, उन्होंने जम्मू कश्मीर की तरफ कोई ध्यान जो है वो नहीं दिया। और विशेष तौर पर कांग्रेस जो वोट बैंक की राजनीति करती है, हमेशा से करती आ रही है, लोभ लुभावने नारे भी देती है, लेकिन समस्याओं का समाधान करने की उनका कोई प्रयास जो है वो नहीं कभी भी रहा है। मैं कहना चाहता हूं कि देखिए, जब 19 में धारा 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर को इंसाफ मिला और वो सारी बेसिक सुविधाएं जो जम्मू कश्मीर के लोग जिसके हकदार थे, 70 वर्षों से वंचित थे, वो सारी सुविधाएं भी आज उनको जो है वो मिल रही हैं। और एक के बाद एक वो सारे विधेयक भी, कानून भी जम्मू कश्मीर में लागू हो रहे हैं, जो कि पहले से ही होने चाहिए थे। और आज जिस विधेयक की जहां पर बात हो रही है, ये एक बहुत बड़ा वर्ग है और इसकी बहुत बड़ी एक डिमांड भी थी, और कुछ और भी ऐसे लोग थे जो इससे वंचित भी रह रहे थे। लेकिन आज देश के गृह मंत्री जी ने ये जहां पर विधेयक लाकर उन सब जो वर्ग के लोग थे उनके साथ इंसाफ करने का जो है वो काम किया है। महोदय, मैं बताना चाहता हूं कि देखिए, इसमें जैसे जहां पर हमारे भाई कह भी रहे थे, ये दुर्बल और शोषित वर्गों के नाम से जो विधेयक था, या इस अन्य पिछड़ा वर्ग के नाम से करने का जो है उपबंध जहां पर है, ये अब पूरे देश की भांति जम्मू कश्मीर में भी लागू हो जाएगा और इसी नाम से जाना जाएगा। और जहां पर चर्चा हो रही थी कि भाई नाम बदलने से कुछ नहीं होता, मैं ये कहना चाहता हूं कि महोदय देखिए, एक के बाद एक जो कानून जम्मू कश्मीर में बदले गए हैं, उन सब का लाभ जो है वो जम्मू कश्मीर की जनता को जो है वो मिल रहा है। और विशेष तौर पर धारा 370 हटने के बाद वहाँ की माता बहनों को, नौजवानों को और बाकी जो हमारे वाल्मीकि समाज के लोग थे, जो गोरखा समाज के लोग थे, जो हमारे वेस्ट पाकिस्तान के रिफ्यूजीज थे, और उसके अलावा भी कई ऐसे लोग थे जिनको 70 वर्षों तक इंसाफ जो है वो नहीं मिला था। तो जैसे ही ये बदलाव आया तो आज उनको भी वो सारे लाभ जो हैं वो मिल रहे हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि इस विधेयक के पास होने के बाद भी ये सारी सुविधाएं उन हमारे जो अदर बैकवर्ड क्लासेस के भाई हैं उन सबको जो है वो मिलेंगी। और विशेष तौर पर जैसे जहां पर कहा गया कि सेंटर की जो नौकरियां होती थी उनमें भी उनको आरक्षण जो है वो नहीं मिलता था,
लेकिन आज ये आरक्षण बढ़ भी जाएगा और सेंटर में भी उनको ये सारी सुविधाएं जो है वो मिलेंगी और बराबर का हिस्सा जो है अब इन हमारे वर्गों को भी जो है वो मिलेगा। महोदय, शिक्षा आधारों की बात हो चाहे दूसरे आधारों की बात, जो आज तक नहीं होता था वो आज वहाँ पर होगा और जो डिमांड उनकी थी और कई बार उन्होंने संघर्ष भी किए और मुझे ये कहते हुए खुशी होती है कि जम्मू कश्मीर में अब तक ओबीसी आरक्षण नहीं था। जम्मू कश्मीर आरक्षण संशोधन विधेयक के जरिए जम्मू कश्मीर आरक्षण अधिनियम 2004 में बदलाव का प्रावधान किया गया है। इसके तहत कमजोर और वंचित वर्गों की शब्दावली को बदलकर अन्य पिछड़ा वर्ग कर दिया जाएगा। इस विधेयक के कानून बनने के बाद पहली बार राज्य में ओबीसी को दूसरे राज्यों की भांति सरकारी नौकरियां और छात्रवृत्ति आरक्षण सहित बाकी अन्य लाभ भी जो है मिलेंगे और संवैधानिक अधिकार जो है उन्हें हासिल होगा। और इसके साथ साथ जहां तक मेरी जानकारी है कि कुछ और ऐसे हमारे समाज के लोग थे, जैसे कि जाट समाज के हमारे जो लोग थे वो भी इस कैटेगरी में जो है वो आ जाएंगे, जिसका कि बड़ी देर पहले से ही उनको जो था इसका इंतजार जो था। महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि केंद्र सरकार ने समय समय पर जम्मू कश्मीर की उन्नति और जम्मू कश्मीर के विकास के लिए कदम जो हैं वो उठाए हैं और एक नहीं अनेकों। जम्मू कश्मीर का चहुमुखी विकास तो हो ही रहा है, लेकिन इसके साथ साथ ही मैं ये भी कहना चाहता हूं कि देखिए, जहां पर बहुत बड़ी तादाद में हमारे विस्थापित जो हैं कश्मीरी पंडित और इसके अलावा भी अधिकृत जम्मू कश्मीर जो पीओके जिसे हम कहते हैं वहां के विस्थापित भी जो हैं वो बढ़ता हुआ 50.5 है अक्टूबर 2023 में और डोमेस्टिक एयर ट्रैफिक में 11% की बढ़ोतरी हुई है अक्टूबर 2023 में। अब मैं अपने विपक्ष के सम्मानित सदस्यों के संज्ञान में लाना चाहता हूं, अगर एयर ट्रैफिक में बढ़ोतरी हो रही है तो मानी हुई बात है अर्थव्यवस्था में कुछ ना कुछ सुधार दिखाई पड़ रहा होगा, इसी कारण से यह दिखाई पड़ रहा है। सितंबर 2023 में जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन है वो 5.8% की ग्रोथ के साथ लगातार ग्रोथ कर रहा है, जो अगस्त के अनुसार अगस्त की तुलना से अगर पूरे देखें तो विगत 14 महीनों में सबसे अधिक है। अब अगर ओवरऑल एक्सपोर्ट देखें तो अक्टूबर में 9.43% ईयर ऑन ईयर बेसिस के ऊपर बढ़ा हुआ है, जो $62.26 बिलियन के आसपास पहुंचा है। सर्विसेज ट्रेड सरप्लस एक्सपोर्ट में हम 22% की वृद्धि करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, अक्टूबर 2023 का डाटा है। परंतु हम आए किस चुनौती से, यह भी ध्यान रखना चाहिए। बैंकिंग सेक्टर में एक बहुत बड़ी चुनौती थी, वो चुनौती ये थी कि उस जमाने में जितने नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स थे, बैंकों को जो लोन दिए गए थे, वो हमारे लिए एक बहुत बड़ी चुनौती थी और एनपीए 2014-15 के टाइम में बहुत तेज गति से आगे बढ़ रहा था। अब आईएमएफ प्रोजेक्ट करता है कि इंडिया की ग्रोथ भी आगे बढ़ रही है, हमारा बैंकिंग सेक्टर काफी बेहतर तरीके से आगे बढ़ता हुआ दिखाई पड़ रहा। मैं इस संदर्भ में एक कोट करना चाहता हूं, मान्यवर, ये मैं नहीं कह रहा हूं, पिछली सरकार, बाद में हमारी सरकार में भी रहे, 2018 में अपने एक साक्षात्कार में रघुराम राजन जी ने कहा था, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स बॉम्ब ऑन मोदी वन रिजीम, इवन दो द राजन सेड दैट द लेंडिंग बैंक्स ऑफ 2006 to 8 was the origin of the bad loans which was in the UPA government। ये रघुराम राजन जी ने कहा कि 2006 से 8 के बीच में जो बैड लोन्स दिए गए उसके लिए भले ही आज, और ये नवंबर 2018 को उन्होंने एक साक्षात्कार दिया है, उसमें आया है। इसलिए हमने आज स्थिति ये की कि जन जन तक उस धन को पहुंचाया, उसको सुरक्षित किया और जन कल्याणकारी कार्यों में उसको स्थापित करने का प्रयास किया। और आज आप देखिए, पब्लिक सेक्टर बैंक्स ने 1 लाख करोड़ रुपए का रिकॉर्ड प्रॉफिट अर्जित किया है फाइनेंशियल ईयर 2022 और 23 में। यानी कहां वो बैड लोन्स में दबे जा रहे थे और कहां वो रिकॉर्ड प्रॉफिट करते हुए नजर आ रहे हैं। और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एसबीआई, जिसके बारे में भी मात्र चंद महीने पहले की तो बात है, जो कहा जाता था कि साहब ये खराब हो गया, डूब गया, वगैरह वगैरह, आज स्थिति यह है कि एसबीआई हैज बिकम द मोस्ट प्रॉफिटेबल कंपनी इन द इंडिया एंड एज पर द रीसेंट क्वार्टरली रिजल्ट
in quarter first of 2033-34, SBI has earned a profit of 18,537 crores. यानी ये जो है प्राइवेट और सरकारी दोनों के हिसाब से ये सबसे अधिक आया है। और कहां हम कर्ज के अंधेरे में डूबे थे और आज मोदी जी ने उसे कर्ज के अंधेरे से निकालकर बैंकिंग व्यवस्था को जन कल्याण के सवेरे तक लाने में सफलता हासिल की है। और अगर हम पिछले समय में देखें तो ट्विन बैलेंस शीट जो बैंक्स एडॉप्ट करते थे वो अपने आप में एक समस्या थी, परंतु वित्त मंत्री जी के नेतृत्व में जिस प्रकार के प्रावधानों में परिवर्तन किया गया उस कारण से अब ये ट्विन बैलेंस शीट एक नए समाधान के रूप में आगे बढ़ रही है। आज अगर देखा जाए तो हम 2 लाख करोड़ रुपए के वर्थ के इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरर एक्सपोर्ट कर रहे हैं। अब भारत 1500 से अधिक ग्लोबल कैपेसिटी सेंटर्स का केंद्र बनता जा रहा है। नाउ मैं ये कोट करना चाहता हूं कि इंडिया इज द मोस्ट प्रिफर्ड लोकेशन फॉर शेयर्ड ग्लोबल सर्विसेज, ये डेलॉयट ने 2003 में कहा है। और हमारी सरकार ने कुछ महत्वपूर्ण निर्णय लिए, जैसे रेट्रोस्पेक्टिव टैक्सेस को रिपील किया। रेट्रोस्पेक्टिव टैक्सेस के कारण जो एक अनसर्टेनिटी बनी रहती थी अर्थव्यवस्था को लेकर वो समाप्त हुई। और जहां तक गरीबी और पॉवर्टी की बात करते हैं तो यूएनडीपी की 2022 की रिपोर्ट को मैं कोट करता हूं, द रिलेटिव रिडक्शन फ्रॉम 2015-16 टू 2019-21 was faster. It is 11.9% year as compared to the previous time. यानी मोदी जी की सरकार आने के बाद गरीबी उन्मूलन बहुत तेज गति से हुआ। ये यूएनडीपी की रिपोर्ट कह रही है, ये हम नहीं कह रहे हैं। और आईएमएफ का ये कहना है कि एक्सट्रीम पॉवर्टी वाज मेंटेन्ड बिलो 1% इन 2022 बिकॉज ऑफ प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना। यानी वो साफ मान रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी ने जो योजना बनाई उस कारण से जिसको हम गंभीर कहते हैं, गंभीर गरीबी कहते हैं, वो 1% से नीचे पे आई है। अब आईएमएफ की चीफ क्रिस्टिना जॉर्जिएवा ने अभी कहा है, 1 साल पहले उन्होंने कहा इंडिया डिजर्व टू बी कॉल्ड एज द ब्राइट स्पॉट एंड अदरवाइज द डार्क होरिजन बिकॉज इट हैज बीन द फास्ट ग्रोइंग इकोनॉमी इवन ड्यूरिंग दीज डिफिकल्ट टाइम। And most importantly, this growth is underpinned by structural reforms. यानी आईएमएफ चीफ ये बात की तस्दीक कर रही हैं कि मोदी जी के नेतृत्व में जो आधारभूत संरचनागत परिवर्तन हुए उसी कारण से भारत एक ब्राइट स्पॉट के रूप में उभरता हुआ दिखाई पड़ रहा है। और जो इन्फ्लेशनरी प्रेशर्स हैं उसको देखते हुए भारत ने तुलनात्मक दृष्टि से महंगाई पर सबसे बेहतर नियंत्रण पाने में सफलता हासिल की है। ये कौन कह रहा है? ये कह रहे हैं मिस्टर नोएल क्विन, हु इज अ ग्रुप चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द एचएसबीसी, और ये उन्होंने 2022 में कहा। मैंने इसीलिए सिर्फ वो बातें कोट करने का प्रयास किया जिनके की द्वारा ये समझा जा सके कि किस प्रकार से अर्थव्यवस्था की इन चुनौतियों में हम क्रमशः आगे बढ़ रहे हैं। और मैं यह भी एक बात बताना चाहूंगा कि भारत की अर्थव्यवस्था अपने आप में किस प्रकार से आगे बढ़ रही है। मैं एक कोट करना चाहता हूं, एक नोबेल प्राइज विनर हैं स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर, हिज नेम इज माइकल स्पेंस, जिन्होंने 2022 में कहा, कोट, द ग्लोबल इकोनॉमी इज अंडरगोइंग अ रिजीम चेंज टुडे। इंडिया इज आउटस्टैंडिंग परफॉर्मर नाउ, इट्स अ पावर हाउस ऑफ डिजिटल एंड लाइफ साइंस realms, it is thriving digital ecosystem, and India is instead a digital system replacing existing retail systems. Entrepreneurs, companies, and are building solution to integrate existing and sometimes very small retail business into a digitally enabled supply chains, making them more effective. अर्थात विश्व का जो आधुनिक सप्लाई चेन व्यवस्था है, जो आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसको मोदी जी के नेतृत्व में जो डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है उसने एक बड़ा परिवर्तन लाने की स्थिति बनाई है। अब मैं यहां पर यह कहना चाहता हूं कि वर्तमान समय में यदि हम देखें तो हमने उस जिम्मेदारी का निर्वाह किया है कि गरीब के पास जरूरत पड़ने पे जीवन की आवश्यकताएं भी रहीं, विकास के नए सोपान भी बनते रहे, रेलवेज का मॉडर्नाइजेशन हो, 90% से अधिक इलेक्ट्रिफिकेशन हो गया हो, 70 से अधिक एयरपोर्ट बन गए हो, भारत चीन सीमा के ऊपर हैवी इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण हो, वो भी किया है, कोविड वैक्सीन भी सबके लिए उपलब्ध कराया है। और इसके बावजूद
आज पहली बार ऐसा मौका है जब G20 और G7 कंट्रीज में हम दुनिया में सबसे बेहतर स्थिति में नजर आ रहे हैं। मुझे लगता है कम से कम ईमानदारी से इस बात को समझने का प्रयास करना चाहिए। परंतु ये जानते हैं क्यों हुआ है? कारण यह है कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी इस बात को भली भांति उन्होंने समझा कि उनका धन को किस मार्ग से व्यय करना चाहिए। मैं कोट करता हूं, हमारे धर्मशास्त्रों में कहा गया है, धनात् धर्मः तथा सुखम। धन वही सुख का कारक होता है जो धर्म के मार्ग से व्यय होता है। यानी जो जिसका धर्म है उसको सही दिशा में, गरीब के लिए, विकास के लिए। मगर क्या बताएं मान्यवर, जो लोग धर्म के समूल नाश का संकल्प लेते हो उनके लिए जो संपत्ति है वो भी विपत्ति बन जाती है और वो सुख कारक बनने के रास्ते पर नहीं चल पाती है। परंतु मैं कहना चाहूंगा कि मोदी जी के नेतृत्व में उन्होंने जैसी युक्ति बनाई है उस कारण से जो आर्थिक विपत्ति थी वो अब संपत्ति की तरफ बढ़ती हुई नजर आ रही है। अब यहां पर मैं एक और बात भी कहना चाहूंगा मान्यवर, कई बार लोग ये कहते हैं कि साहब आप लोग आर्थिक विषय की बात करते हैं, मगर मैं ध्यान दिलाना चाहूंगा कई बार आर्थिक विषयों की बात करते करते लोग किसी दूसरे विषय पे चले जाते थे। मैं ये याद दिलाना चाहता हूं कि एक दौर था मान्यवर जब भारत की अर्थव्यवस्था का मजाक उड़ाया जाता था। क्या कहा जाता था? ये 2% से ऊपर कभी ग्रो ही नहीं कर सकते। इसको कहा जाता दिस इज ए हिंदू ग्रोथ रेट। ये कह के हमारा मजाक उड़ाया जाता था कि ये कभी 2% से ऊपर ग्रो नहीं कर सकते मान्यवर। मगर जब से हम लोग आए हैं, यानी जो लोग कहते हैं कि उन्हें हिंदू ग्रोथ रेट ज्यादा अच्छी लगती थी, अब ये 7.8% की हिंदुत्व की ग्रोथ रेट है, क्योंकि अब वो लोग आए हैं जो हिंदुत्व में विश्वास करते हैं। और मैं ये भी एक याद दिलाना चाहता हूं, इसे कोई संयोग माने या दैवयोग माने, मान्यवर जब भारत स्वतंत्र हुआ, इस बार की दीपावली के लिए मैं एक और बात भी कहना चाहूंगा, एक नया परिवर्तन भारत का जानते कैसे आया? ये सब कुछ जनता के सहयोग, समर्थन और मोदी जी की युक्ति के साथ तो हो ही रहा है। एक नया स्वरूप भी भारत का उभर रहा है। वो क्या है? जब मान्यवर देश आजाद हुआ तो उस समय भारत की अर्थव्यवस्था पे ताला लगा हुआ था। हमारे तुरंत विपक्षी लोग कहते साहब कुछ था नहीं, बहुत कुछ हम कर नहीं सकते थे। और जब ताला खुला उस समय श्री राम लला विराजमान भी ताले में ही थे। जैसे ही राम मंदिर का आंदोलन शुरू हुआ, अर्थव्यवस्था के अंदर भी नया परिवर्तन शुरू हुआ। 90 से 92 का ही दौर है अर्थव्यवस्था में भी बदलाव का, भारत की अर्थव्यवस्था के खुलने का, भारत की राजनीति की व्यवस्था के भी बदलने का। और यही वो दौर है जिस समय विवादित ढांचा भी गिरा और नेहरूवियन मॉडल भी समाप्त हुआ। यानी अगर आप देखें तो वो दौर था जब फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व भी 1 बिलियन पे था। परंतु मैं ये याद दिलाना चाहता हूं, कुछ लोग लगेगा ये तुलना है क्या, तो मैं ये भी याद दिलाना चाहता हूं, उसके बाद एक बड़ा दौर आया जब 2003-4 में, आप याद करिए, हम करंट अकाउंट सरप्लस कंट्री बने। 2003-4 के चौथे क्वार्टर में हम सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था हुई और इंडिया सक्सेस स्टोरी 2003-4 में कही जाने लगी। यही वो दौर था जब खुदाई हुई और 70 खंबे निकले थे, जहां से साबित हो गया था कि श्री राम लला विराजमान के पास ही वो मंदिर है। अब आप आइए साहब, उसके बाद 2019 में जब जजमेंट आया तो तब 1 बिलियन था, जब खंबे निकले तो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व 100 बिलियन था, अब मोदी जी के नेतृत्व में 500 बिलियन पहुंच गया। और इतना ही नहीं मान्यवर, अब जब राम मंदिर बनने जा रहा है तो हम 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था है, चौथे बड़े स्टॉक एक्सचेंज है, तीसरे बड़े ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर हैं, दूसरे बड़े मोबाइल के मैन्युफैक्चरर हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट करने वाले हम नंबर 1 के देश हैं और चांद के अछूते कोने को छूने वाले देश भी बन गए। और अब अगर आप देखें तो हम G20 में सबसे ऊपर बढ़ते चले जा रहे हैं। यह कह के मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूं, कुछ ऐसे संयोग होते हैं जिनको देखने के लिए एक अलग दृष्टि चाहिए, जिसके लिए रामचरितमानस में एक चौपाई है कि सुमति कुमति सबके उर रही, यानी अच्छी मति और बुरी मति सबके मन में रहती है। नाथ पुराण निगम यह कहीं, ये पुराण और उपनिषद ये बताते हैं। और जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, जहां कुमति तहां विपत्ति निधाना। तो इसलिए जो जो हम धनात् धर्मात् तथा सुखम की दृष्टि के साथ संपत्ति बढ़ते गए, वहां इस देश में संपत्ति आती गई। ऑन द लाइटर नोट एंड ऑन द सीरियस नोट मैं ये भी कहना चाहूंगा, हम सब चाहते हैं कि भारत वर्ल्ड की नंबर 1 की इकोनॉमी बने और मां लक्ष्मी की कृपा इस देश पे बनी रहे, पर मां लक्ष्मी भी कमल पर ही विराजती हैं। और मैं अंत में ये कहना चाहता हूं
कि इस बात को भली भांति समझ लीजिए, आप जितने आरोप प्रत्यारोप मोदी जी के ऊपर लगाते हैं, आप देखिए पूरी दुनिया में एक सुनामी आई हुई है। चाइना, अमेरिका जैसे देश जूझ रहे हैं। ब्रिटेन में यह कहा जाता है कि जब जाड़े का मौसम आ गया है कि दे हैव हार्डली मनी आइदर टू हीट और टू ईट, यानी या तो खा लो या बिजली का बिल पेमेंट कर लो। उस दौर में, मैं अगल बगल वालों की बात नहीं कर रहा हूं कि श्रीलंका और पाकिस्तान में क्या हो गया। जनाब, हमारा कैप्टन कितनी कुशलता के साथ इस सुनामी से भरी लहरों में लेके जा रहा है, मगर क्या कह रहे हैं विपक्ष वाले, अरे अगल बगल के पलटे जहाजों को मत देखो, दूर दराज के डहते जहाजों को मत देखो, ये जहाज के अंदर मुझे कुछ हिचकोले क्यों नजर आ रहे हैं उसके ऊपर देखो। तो मैं उनके लिए कहना चाहूंगा अपनी सरकार की तरफ से, और देखिए ये भी एक संयोग है, जब मैंने राम मंदिर की बात कही, संयोग से इस समय हमारी वित्त मंत्री जी के नाम में भी सीता भी है, रमण भी है और निर्मल भी है, यानी नई दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। तो हम मोदी जी की तरफ से आपको एक लाइन कहना चाहेंगे अर्थव्यवस्था पे, जो आप लोग कहते हैं कि हमें इल्जाम मत दीजिए, बहुत अफसोस होता है। हमें इल्जाम मत दीजिए, बहुत अफसोस होता है। बड़ी तरकीब से कश्ती यहां तक लेके आए हैं, बदल देते हैं हम दरिया की लहरें अपनी हिम्मत से, आंधियों में भी अक्सर चिराग हमने जलाए। और फिर मैं एक बिंदु और कहकर, एक पंक्ति और कह के बात को समाप्त करता हूं। G20 में जो लोगों ने देखा उससे बहुत साफ दिखाई पड़ रहा है कि अब हमारे साथी समझ पाए न समझ पाए, भारत की जनता उसे समझ रही है और वो उत्तरोत्तर उस दिशा में आगे आ रही है जो नए भारत का स्वप्न मोदी जी के नेतृत्व में साकार होता दिख रहा है। तो मैं ये कहता हूं कि स्वप्न देखा था कभी, वो आज हर धड़कन में है। हम अर्थव्यवस्था के जो स्वरूप में जा रहे हैं, स्वप्न देखा था कभी, वो आज हर धड़कन में है। एक नया भारत बनाने का इरादा मन में है और बढ़ रहे हैं हम प्रगति की ओर, उस रफ्तार से कर रहा है विश्व भी हमको नमन उस पार से। धन्यवाद। श्री पी चिदम्बरम सर, 10 minutes. Thank you, sir. More than enough. Sir, after listening to the learned professor of Lucknow University, I'm sure that all of us are convinced that Amrit Kal has begun. And by going the number of times he was applauded by the treasury benches, I think he should be in line for a ministership now. I wish him well. If all is well in the world and God is in his heaven and India is growing at the fastest rate in the world, why is the impact of that growth not felt on the ground? This is the question which my friend Derek asked, and I try to supplement that in the few minutes I have. We are a large economy. We are growing at the fastest rate in the world. We are innovative. We have the largest FDI coming into the country. But why is it not seen on the ground? And I specifically want to ask, why is it not seen in the inflation numbers and the unemployment numbers? Let's take only those two. Now, what are the unemployment numbers? And I'm going by official numbers. The government doesn't like the CMIE numbers, so we'll avoid the CMIE numbers. Mercifully, the BJP no longer talks about 2 crore jobs being created every year. Thank you for small mercies that you are not making these tall claims. That's one of the election jumlas. I didn't know the word jumla unless I heard it first from the Honorable Home Minister.
Now let's focus on a few numbers. This is official numbers of the periodic labor survey. The worker population rate in this country is 46%, which means the number of workers to the population is 46. It's quite low, but let's take it as acceptable given the various circumstances of the country. Of the worker population, that is 46% of the total population, male worker population is 69%, but the female is only 22%. Of the worker population, less than 50% actually work. So if you apply 50% on 46%, effectively it means only that 23% of the people work. This has more or less been constant in the last 9.5 years of the BJP government. Now, why, I ask, if we have such scintillating growth, why is this numbers not improving? Now, my learned friend Derek O'Brien gave the numbers. In the age group 15 to 24, the unemployment rate is 23.22. Among graduates under the age of 25, the unemployment rate is 42%. Graduates between the year 25 to 29, it is still 23%. Graduates between the years of 30 to 34, it is close to 10%. It's 9.8%. A graduate in this country, and I spoke at a college, I said, I'm not frightening you, but you will graduate here. But unfortunately, 1 out of 4 will be unemployed. And even until the age of 35, 1 out of 10 will be unemployed. Why is this spirited growth, scintillating growth, not turning into jobs? That's the first question I'm asking. And keep in mind, most employment in this country is self-employment, 57%. Regular wage employees has declined from 24% to 21%. Apart from the quantity, the quality of employment is also poor. So I want the government to answer, why is this 10-year splendid period not reflecting in employment figures? The second one is about price rise. And on price rise, yes, inflation has come down in the last couple of months. I'm not disputing that. But please remember that even today, the CPI inflation is above the tolerance limit of 4 to 6% of the RBI. Food and light inflation is 4.3. Fuel and light inflation is 4.3. Food inflation is 9.2. What does the combination of high unemployment and high prices, what does it mean? It means that, and I think Derek hinted at that, it means that there is a cut, the impact will be felt in the cut in domestic consumption, cut in household consumption. The impact is you borrow more. Credit growth is driven in this country, according to the RBI, on personal loans and gold loans. The net financial assets of households has plummeted to the lowest level, 5.1%. What does this mean? It means that people are consuming less, people are borrowing more, they are liquidating their household assets and savings,
and their net financial savings has come down to a historical low, a 50-year low of 5.1%. It also shows up elsewhere. It shows up, for example, in matters like child malnutrition. I'll just give you the numbers of child malnutrition, and are shocking numbers. They're shocking numbers of child malnutrition. Today, among children, you will find that 16.3% of children are undernourished, 19.3% of children are wasted, 35.5% of children are stunted. It shows up again in the food that the children get. And add to that Derek's numbers, under the age of 5, so many people die because of hunger. Why is it not showing up in consumption? It also shows up in education. Their mental growth. Today, in a class 8, only 70% of the children can read a class 2 text. And only 45% of children can do basic arithmetic. In class 8, you can't do basic arithmetic, you can't read a class 2 text. So ultimately, the question is, who is this government for? Is it for the poor, or is its policy so skewed that it is favor of the rich? The numbers are undisputed. I have not seen a single government spokesman dispute these numbers. 23 crore people of India are poor when the poverty bar is very low. Poverty bar is 1,286 rupees per month per person in urban areas and 1,089 rupees per month per person in rural areas. With such a low poverty bar, 23 crore people are poor. And it shows up in inequality. The bottom 50% owns 3% of national wealth and gets 13% of the national income. And the top 5% owns 60% of national wealth, and top 1% holds 22% of the national income. So ultimately, this growth is unacceptable. This kind of growth is unacceptable. We need more balanced growth. But then I end with the final question that I've been asking the government for many, many months, for which I have not got an answer. I hope I will get an answer today. In 91-92, India's GDP was 25 lakh crore. In 12 years, in 2003-04, it doubled to 50 lakh crore, doubled. In 10 years, under UPA, it doubled to 100 lakh crore, 25 to 50 to 100. I ask one simple question. If you are growing at such a fast rate, such a record-breaking rate, will you 100 lakh crore? The finance minister, honorable finance minister, knows the answer. I know the answer. You know the answer. But I want the honorable finance minister. I want the honorable finance minister to say the answer is known to the finance minister, the former finance minister. I'm out of it. Whether the GDP will double in their Amrit Kal period under the NDA government, will it grow to 200 lakh crore by March 2024? And I want the honorable finance minister to answer that question. Thank you, sir. Dr. Kanimoji NVN Somu. Honorable Chairman, sir. 9 minutes. Yes, sir. Honorable Chairman, sir.
I'm wondering the timing of the discussion on the economic situation in the country. In today's Hindu business headlines, we had a headline stating that Indian banks writes off rupees 10.6 lakh crore in 5 years, and 50% of that is being linked to the large corporates. This is how the corporates gets their freebies, is one thing which we have to make a note. India's DGP crosses $4 trillion for the first time. Sir, there is no doubt the Indian economy is growing. India is set to outspace Japan and Germany shortly as the fastest growing economy in the country. And the government also claims that the GST collections has touched a record high. But always Tamil Nadu has got the brunt of not getting it back what we give it to the Indian government. But the pertinent question of whether the fruits of the GDP growth has reached India's poor and lower middle class. No, the government has failed miserably in managing the economy. What is the use of boasting that India's foreign exchange reserves have increased? Indian economy grows faster than US economy with 7.6% GDP growth when 80% of the population is suffering in poverty. It's not a boon, it's a curse. US is 37.5 trillion economy with a population of 33 crore, but India's population is 142 crores. In terms of per capita GDP, India ranks 139th in the world, and India's external debt is 172 lakh crores. India has witnessed a surge in private debt, especially in the corporate and the household sectors, due to the easy credit availability and low interest rate. During the UPA's 10-year rule, only rupees 2.20 lakh crore was written off. For a kind information, as of now, the Indian banks have written off as rupees 10.6 lakh crore in the 5 years. However, this also possesses a risk of default and financial instability, especially the income growth slows down, or 6% of national income in 2019, up from 37% in 1980. Similarly, the top 10% of wealth holders owned 77% of total wealth in 2019, up from 66% in 2000. High inequality can lead to social unrest, political instability, and lower economic growth. Unemployment rate has touched 10%. The unemployment of youth aged between 18 to 25 is touched abnormally low to 25%. Only a very small percentage of people are lucky to get a regular employment in government and private companies. Sir, more than 40 lakh government jobs are vacant, and the government has promised to create 2 crore new jobs every year, could not fill even 10 lakh vacant jobs. Too much emphasis on privatization of government and public sector companies will destroy the social structure of the country. The reservation system followed in our country is indispensable for upholding social justice and removing inequality. Reservations are not provided in any private sector, and if the governments keep on privatizing the reservation system, will derail, and the social justice and equitable distribution of wealth is under threat. Therefore, I urge the government to introduce a bill to provide reservation in the private sector before it sells everything. This government behaves like a good salesman, but not a good Samaritan. The economic disparity and the social inequality is witnessing a worst phase in independent India. When the world thrives on dollar economy, the continuous fall in the value of Indian rupee against US dollar can do a lot of bad than good. My senior colleagues in Treasury benches criticized vehemently the then government's failure to provide a stable rupee in 2013. You have promised to people of India that when you come to power, you will stabilize the value of Indian rupee against US dollar and bring the value of $1 US to rupees 40. What happened after your government captured the power in 2014 is a history known to everyone. Our Honorable Finance Minister has even said in public Indian rupee is falling, only US dollar is raising. This is a candid statement
accepting the failure of the government to stabilize the value of Indian rupee against the US dollar. Due to the extreme rupee-dollar rate fluctuations, India's nominal GDP affects badly. The export gain is lost by a mile through import loss. The value of India's import is much higher than export. The widening gap in trade deficit is not good for any country. India is no exception. Our country's trade deficit with other countries, especially China, is going to affect the Indian economy very much. Too much dependence on imports from China will destroy the prospects of indigenous manufacturing and development. I think the warning bell is ringing. It's a wake-up call for the government to reduce the country's over-dependence on China in importing. Another time bomb of our country is facing at the moment is the escalating prices of the essential commodities and food items. The World Economic Forum predicts that the cost of living crisis sparkled by fluid and food price hikes will hit women the most. The rising prices have hit almost everyone, either it be a milkman, a fish vendor, an auto or a taxi driver, or the pensioners. All are affected very badly, but the union government is still having a blind eye to the precarious situation in the country right now it is in. Transportation cost has gone up by 20 to 30% due to the steep hike in the prices of petrol, diesel and CNG. It is causing a ripple effect on the vegetable prices. The steep hike in the CNG prices had made life miserable for the auto and cab drivers. CNG is now sold over rupees 69 per kg. We demand the government should provide rupees 35 per kg subsidy on the CNG so that they can survive. The agriculture sector is the backbone of our country. Nearly 70% of the total population thrives on agriculture and agro-based activities. The government once claimed that it will double the farmers' income has done too little to save the life of the farmers of this country. The increasing incident of farmers committing suicide is a national shame. The government should address the needs of the farmers as a top priority because the whole country depends on them. If the government can't stop its farmers committing suicide, if the government can't uphold social justice and socio-economic equality, if the government cannot control the escalating prices of essential commodities, if the government can't provide employment opportunities for 1/3 of its youth population, if the government can't provide affordable health care to its poor citizens, there is no point in boasting that our country is fastest growing economy in the world. Sir, among the Indian states, Tamil Nadu is the second largest economy and third largest exporting state, contributing 9% to the India's net exports. Under the dynamic leadership of our Honorable Chief Minister, through M.K. Stalin, the Industries Department of Government of Tamil Nadu is taking several proactive measures as several foreign companies interested in signing agreement with TIDCO, an industrial arm of the Government of Tamil Nadu. In Tamil Nadu, 179 projects at a cost of rupees 8.6 lakh crore relating to Tamil Nadu has been included in the National Infrastructure Pipeline. These projects will be implemented in the next 5 years. Thus, Tamil Nadu is emerging fast as a champion economy and advanced industrial state in the country. I urge the government to allocate adequate funds and to provide all necessary support to Tamil Nadu to release an unprecedented growth and pinnacle of success in economic growth, industrial development and employment generation. Thank you, sir. Thank you, Dr. Kanimoji ji. Dr. Ashok Kumar Mittal ji, 9 minutes, 9 minutes. सभापति महोदय, आज मैं शॉर्ट ड्यूरेशन डिस्कशन के माध्यम से अपने देश की अर्थव्यवस्था पर चर्चा करने जा रहा हूं। सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि मैं एक हलवाई का बेटा हूं, एक दुकानदार का बेटा हूं। तो मैं आज जो इस पर चर्चा करूंगा, एक अर्थशास्त्री होने के नाते नहीं, एक आम आदमी पॉइंट के हिसाब से मैं इस पर चर्चा करना चाहूँगा। मुझसे पूर्व मेरे वरिष्ठ साथी बोल रहे थे, बता रहे थे कि हमारा देश फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है, हमारा जीडीपी की ग्रोथ दुनिया में सबसे ऊपर है, हमारा किसान खुशहाल है, युवा को रोजगार मिल रहा है और देश का विकास हो रहा है। लेकिन मैं वर्तमान में हमारी अर्थव्यवस्था को एक आम आदमी के माध्यम से एक्सप्लेन करना चाहूँगा 4 पंक्तियों में। तनख्वाह का कुछ रुपया राशन में गया, कुछ खर्च हुआ दवाई पर, थोड़ा बहुत लेन देन हुआ, बाकी खर्च हो गया बच्चों की पढ़ाई पर, मोहताज हो गया आम आदमी,
फिर से पाई पाई पर, मोहताज हो गया आम आदमी फिर से पाई पाई पर। समझ में नहीं आता कि क्या बोलूं देश की अर्थव्यवस्था पर। हमें सिर्फ फिगर्स नहीं देखने, हमें फैक्ट्स भी देखने होंगे। हम फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है, लेकिन हमारे यहाँ 80 करोड़ से अधिक लोग अभी भी गरीबी की रेखा से नीचे हैं। पिछले सप्ताह भारत सरकार ने इनिशिएटिव लेते हुए 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन देने की सुविधा अगले 5 वर्ष के लिए बढ़ाई। बहुत बढ़िया किया, लेकिन इसका दूसरा पहलू देखें कि ये जाहिर करता है कि अभी तक 80 करोड़ लोग गरीबी से ऊपर नहीं आ पाए कि उनको मुफ्त राशन देना पड़ रहा है। हम ग्रोथ को जीडीपी से एक्सप्लेन करते हैं, जीडीपी का, लेकिन एक आम आदमी का क्या मतलब जाता है? गैस, डीजल, पेट्रोल, क्योंकि इसी से उसका घर चलता है और इन सब की कीमतें लगातार बढ़ती जा रही हैं। हमने G20 का बहुत सफल आयोजन किया, ये गर्व की बात है, लेकिन जब हम दूसरी तरफ देखें ग्लोबल हंगर इंडेक्स में हम 121 देशों में से 111वें नंबर पर आते हैं। भारत सरकार का मिशन है कि आखिरी व्यक्ति तक विकास पहुंचना चाहिए, पर मुझे समझ नहीं आ रहा कि ऐसा क्यों नहीं हो पा रहा। कहा जाता है कि मानव शरीर 5 तत्वों से बना है, उसमें एक तत्व भी कम हो तो हम रोगी हो जाते हैं। ऐसे ही अर्थव्यवस्था है जो भी मेरे हिसाब से 5 बुनियादी तत्वों से बनी है। सबसे पहले मैं दुकानदार भाई की बात करूंगा। हमारे देश में 10 करोड़ से ऊपर दुकानदार परिवार है, 10 करोड़ से ऊपर। उनके साथ साथ मैं एक सेल्फ हेल्प ग्रुप की बात करूंगा, जो हमारी 10 करोड़ से ऊपर महिलाएं, बहनें, माताएं सेल्फ ग्रुप चलाती हैं, 20 करोड़। दूसरी तरफ यहाँ हम जाएं, चांदनी चौक एशिया की सबसे बड़ी इलेक्ट्रॉनिक मार्केट है, और वहाँ पर 90% वस्तुएं चाइना की बनी हुई बिकी हैं। मुझे समझ नहीं आता कि मेक इन इंडिया में हम अभी तक क्यों पीछे हैं। सिंपल आंकड़े बताते हैं, भारत चाइना से 57.51 बिलियन का इंपोर्ट करता है, और सिर्फ डॉलर 57 बिलियन डॉलर का इंपोर्ट करता है, और सिर्फ 9 बिलियन डॉलर का एक्सपोर्ट करता है। तो मुझे समझ नहीं आता ये हमारी कैसी आत्मनिर्भरता है। मल्टीनेशनल अमेज़न और दूसरी कंपनियों ने भारत में आके हमारे दुकानदार भाई, हमारे सेल्फ ग्रुप वालों का बुरी तरह से प्रॉब्लम में ला दिया है, क्योंकि यदि वो कोई भी सामान इनके थ्रू बेचते हैं तो 30% कमीशन हमें अमेज़न को देना जाता है, जो कि विदेशी कंपनियों के विदेशों में जाता है। हमारा दूसरा तत्व है किसान भाई। हमारे भारत सरकार डायरेक्ट बेनिफिट स्कीम कर रही है और काफ़ी कुछ कर रही है, बट दूसरी तरफ अभी कल ही होम मिनिस्ट्री ने नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़े जारी किए, और उसमें भारत में पिछले वर्ष 2022 में 1 करोड़ 70 लाख सुसाइड हुए, जिसमें से 50 से 60 हज़ार किसान भाइयों के या हमारे मजदूर भाइयों के थे। वो ऐसा क्यों हो रहा है? वो ऐसे क्यों मजबूर हो रहे हैं? आउटस्टैंडिंग लोन्स, इन सब बातों की वजह से। और हर एग्रीकल्चर हाउस होल्ड पर 74 हज़ार रुपये का आउटस्टैंडिंग लोन है। तो मुझे लगता है ये एक चिंता का विषय है। हमारा तीसरा तत्व है हमारे युवा। हम यंग युवा, हमारे यहाँ यूथ है। डेमोग्राफिक डिविडेंड लग रहा है कहीं हमें डेमोग्राफिक डिसास्टर ना बन जाए। उनके लिए हम रोजगार के उतने अवसर पूरे नहीं कर पा रहे। बेरोजगारी की सीमा बढ़ गई है, परसेंटेज बढ़ गई है, 8% हो गई है, और हमारे युवाओं को गलत तरीके से इम्पैक्ट कर रही है। और साथ साथ इसके हमारे इंटेलिजेंट लोग बाहर विदेशों में जा रहे हैं। अब मैं चौथे तत्व पर आऊँगा, मजदूर वर्ग।
देश की अर्थव्यवस्था का मूल है, क्योंकि कोई भी प्रोडक्शन, कंस्ट्रक्शन का काम हमारे मजदूर भाई ही करते हैं। 2019 में मनरेगा के लिए एक रिपोर्ट प्रस्तुत हुई जिसमें बताया गया कि 71% मजदूरों को कोई रिटर्न जॉब कॉन्ट्रैक्ट नहीं दिया गया। 54% मजदूर भाइयों को पेड लीव नहीं मिलती और ग्रामीण क्षेत्रों में 77% और शहरों में 80% मजदूर प्रतिदिन 8 घंटे से ज़्यादा काम करते हैं। और हमारा 5वां तत्व आएगा MSME या हमारे छोटे उद्योग, कॉटेज इंडस्ट्री। भारत सरकार जॉब क्रिएशन की बात करती है, लेकिन हमारे कितने उद्योग बंद हुए? 19,000 से ऊपर MSME 2021 और से मार्च 2023 के बीच में बंद हुए हैं, जिससे तकरीबन 1.5 लाख लोग बेरोजगार हुए हैं। इन सब चीज़ों को मैं चाहूँगा मंत्री महोदय ध्यान दें, और कुछ मैं सजेशन देना चाहूँगा कि हमारा देश एक महादेश है, हम में क्षमता है, पोटेंशियल है कि हम सुपर पावर बन सकें। तो इसके लिए मैं उम्मीद करूँगा कि सबसे पहले हमारे किसान भाइयों के लिए हम थोड़ा सा ध्यान दें। कृषि को सोशल सर्विस ना बनाएं, उसको एक एंटरप्रेन्योरशिप के तौर पे उसको हम आत्मनिर्भरता भी किसानों में पैदा करें। और सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा इसमें आएगा किसान भाइयों को के लिए MSP गारंटी के लिए सरकार कानून बनाए और उनको प्रॉफिटेबल बनाए और उनको सस्टेनेबल बनाए। दूसरी हमारी शिक्षा व्यवस्था की हम बात कर रहे हैं। एक ज़माने में हम सुपर पावर कहते थे, हमने तक्षशिला, नालंदा विश्वविद्यालय पूरी दुनिया को दिए, जबकि दुनिया में विश्वविद्यालय हुआ ही नहीं करते थे। लेकिन अब हमारा सिर्फ एजुकेशन पर खर्चा 2.8% है। तो मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि इसको बढ़ाकर 5% किया जाए GDP का। बाकी हमारे यहाँ इनइक्वालिटी है, उसमें यदि मैं चाहूँगा सरकार जो कैसे उसको डिवाइड कर सकती है अमीरों और गरीबों में, सो दैट जो सभी वर्ग को पूरा, जो देश की तरक्की का पूरा हिस्सा मिल सके। और अगली बात मैं चाहूँगा अपने दुकानदार भाइयों के लिए कि सरकार उनके लिए कानून लाए जिसमें सोशल सिक्योरिटी, वर्किंग कैपिटल और अन्य तरीके से हम उनकी सहायता दे सकें। मैं उम्मीद करूँगा कि मंत्री जी इस पर पूरा ध्यान देंगे। और मैं अपनी बात एक दो पंक्तियों से ख़त्म करना चाहूँगा कि सरकारी फाइलों में तो गांव का मौसम गुलाबी है, ये आंकड़े भ्रमित हैं, ये दावे किताबी हैं, बड़ी है दूरियां अब तक अमीर और गरीब में, किसी के कुत्ते पर रेशमी चादर, कोई बिन कपड़े बेहाल है। धन्यवाद। धन्यवाद डॉक्टर अशोक कुमार मित्तल जी। माननीय श्री सुजीत कुमार जी। माननीय सुजीत कुमार जी। Thank you, Deputy Chairman, sir. Sir, at the outset, I would like to congratulate our countrymen because recently we reached the $4 trillion economy benchmark for the first time. And sir, we have become, it's well known that we have become the third largest economy by purchasing power parity index and the fifth largest economy by market exchange rate. Sir, we have amply demonstrated to the world our inherent strength facing the twin challenges of the Russia-Ukraine conflict and also the COVID challenges. Sir, we are all set to achieve between 6.2 to 6.5, 6.8, we can debate on the numbers, but very healthy growth numbers in FY 23-24. Fastest growing economy, many speakers have already spoken about it. We are the fastest growing large economy in the world. And sir, we also are very likely to become a $5 trillion economy by 2027. And sir, if the dots are connected well, the economic dots are connected well, then we, by the end of the Amrit Kal, by the end of 2047, we will be a developed economy as well. Sir, now this is possible, sir, if, as I said, we connect all the economic dots properly. But in my view, sir, there are three things that the government needs to focus on to achieve these goals and the vision. Sir, first and foremost, fulfilling the aspirations of our citizens, particularly our youth and women, and I'll elaborate on it at length.
Secondly, sir, boosting the MSMEs. Sir, today, Honorable Member Lakshmikant Bajpayee also during 0 hour spoke about the need to protect and support our MSMEs. And sir, I'll second him. I cannot agree with him anymore. Sir, we need to strongly boost our MSMEs and give impetus to our job creation and entrepreneurship. And third and foremost, sir, is the need to focus on education, innovation, and R&D. Sir, in her budget speech, Honorable Finance Minister also gave priorities to these 3 areas that I have just referred to. But, sir, I do find some lacuna, and I'll talk about it, sir. So let me go to the economic empowerment of our youth and our women. Sir, the Honorable Prime Minister spoke of 4 castes recently during one of the election speeches. He spoke of youth, women, farmers, and the youth, and the poor, sorry. Sir, let's come to the youth. We are the most youthful nation in the world. 2/3 of our population is under 35. Half of our population is under 25. When Honorable Member Ashok Mittal was speaking about the demographic dividend turning into demographic disaster, so that's a reality. That's a genuine concern that we have today. We need to take care of our youth, job creation, unless we want to see a disaster, demographic disaster. So talking of empowerment of women, sir, female worker population ratio is only 22%, which Honorable Member Chidambaram was talking about. Sir, I would like to refer to a model of women empowerment from my state of Odisha, sir, where 70 lakh women have been economically empowered over the years, and the self-help groups that they were part of are now becoming SMEs, small and medium enterprises. So this is a verifiable model of economic empowerment for women, which I think can really help us to achieve our economic goals. Thirdly, sir, doubling farmers' income. Sir, the government had spoken about doubling farmers' income by 2022. It has not happened. Sir, in Odisha, we have already doubled farmers' income a couple of years ago. In fact, we have received the Krishi Karman Award many times by Government of India, which showcases the importance and impetus that we have given to farmers. And sir, talking of inclusive growth, sir, there was a wide gap between the per capita income, national per capita income, and the state's per capita income in the year 2020-21. Today, sir, that has been drastically gapped. The gap has been drastically bridged. And today, sir, we are almost at par with the national per capita income. And sir, I'll give you statistics. Sir, the development expenditure of Odisha has increased more than 20 times over the last 20 years. Sir, more than 20 times over 2 decades. This is a huge, huge humongous spend on development expenditure, which is shown in all our indicators and parameters. Sir, I'll come to the focus on education, innovation, R&D. Sir, way back in the 60s, Kothari Commission had recommended that we spend 6% of our GDP on education. We are nowhere close, sir, today. Sir, I will compliment the government of the day, and particularly Honorable Education Minister, that in this year's budget, the budget estimate of education is 1,13,000 crore roughly, which is 13% increase over the revised estimate of 22-23. Definitely, sir, this is the highest increase in outlay in expenditure over the RE of the previous year. But, sir, it's still not enough. It's only 2.8% of the budget, of our union budget. In contrast, sir, in Odisha, 30,000 crore has been earmarked for education in this year's budget, which is 12.3% of the total budget outlay of the state. 12.3% of the total budget outlay of the state is for education, sir. Sir, I think inspiration can be drawn by union government from Odisha on this. Sir, I'm extremely passionate about education, but I was sorry and sad to note that in her budget speech, the Honorable Finance Minister spoke about 7 priorities, what she called Saptarishis. But education was not one of the priorities or Saptarishis. And we all know, sir, the foundation of any nation is education. No nation can progress economically, socially, or otherwise without focusing on education. So this is why I urge again the government to focus on education. Sir, I'll come to PM Poshan. Sir, Honorable Member Chidambaram ji spoke about, sir, child malnutrition. He gave some numbers, 16% undernourished, 35% stunted. These are numbers. Sir, again, I'm sad to note that the budget estimate for 23-24 for PM Poshan is 9% less than the RE, the revised estimate of 22-23. Sir, this will definitely reflect in poor learning outcomes and education outcomes. Sir, I'll come to, sir, R&D. Sir, Honorable PM has often spoken about India becoming a $1 trillion digital economy.
which will be roughly 20% of our economy when we become a $5 trillion economy. But, sir, tell me, sir, which nation can become a digital economy without focusing on R&D? And today we spend only 0.7% of our GDP on R&D. Comparable numbers, sir, Israel 4.9, US 4.5, sorry, US 3, South Korea 4.5, China roughly 2, we are only at 0.7. Sir, I compliment the government. I laud them because they brought in the Anusandhan National Research Foundation bill. And Prime Minister has often spoken about Jai Jawan, Jai Kisan, Jai Vigyan, Jai Anusandhan. But, sir, we need to really focus on Anusandhan or research if we want to become a developed economy in the next couple of decades, at least. And, sir, finally, sir, I'll come to the focus on MSMEs. Sir, we are growing, no doubt, but it is not a job-led growth. Sir, I'm afraid that is becoming a job-less growth. Sir, that is because, sir, our focus on MSMEs is not to the extent what it should be. Sir, today MSMEs are crying for capital. They do not have access to capital. Sir, there are statistics, sir, that if the loan amount is less than 1 crore, then the default is roughly 1%. But if the loan amount is more than 100 crore, then the default is over 40%, sir. So who takes loans over 100 crores? It's the large enterprises. But the MSMEs take loan less than 1 crore and their default rate is less than 1%. But still, sir, we have not done justice to our MSMEs by giving them access to capital, by giving them access to technology. So, sir, I'll again urge the government, sir, MSMEs are the job creators of our country. They create wealth for the nation. They contribute 30% to our GDP. Sir, they roughly create 123 million jobs. Sir, that is roughly 12 crore jobs. Still, we are neglecting our MSMEs. Sir, if we have to really focus on the economy, then we need to focus on the MSMEs because, sir, sir, finally, sir, since you have, sir, since my time is over, sir, I'll just conclude by saying that, sir, India, that is Bharat, is a union of states. So if we have to grow socially and economically, then we need to take the states along. And this is why, sir, my Honorable Chief Minister, Sri Naveen Patnaik, has always believed in the philosophy of cooperative federalism. Sir, for him, empowering the 4.5 crore Odias socially and economically has been his highest duty. And this is why, sir, he has been appealing in various forums through the parliament and otherwise that, sir, we need support from the government of India to better our daily density, to better our railway density, to have, sir, more funds which we are Please conclude. Please conclude. Sir, I'm concluding, sir. So this is what. Sir, the Honorable PM has spoken about Purvodaya, which is the rise of the East. Sir, how can we have Purvodaya unless, sir, states like Odisha are supported economically by Government of India by, sir, giving us the funds that are due to us, by, sir, giving us the tele-density, the highways, the banking facilities that we, sir, badly need. Thank you. Manni Sri V. Vijay Sai Reddy ji. Deputy Chairman, sir, thank you very much. And I also thank my party president and Honorable Chief Minister of Andhra Pradesh, Y.S. Jagan Mohan Reddy Garu, for giving me an opportunity to speak on this particular subject, sir. Sir, for the last 10 years, India has been on the brink of massive economic transformation, which the opposition is not in a position to realize. Sir, for the last 10 years, again, we have grown from being 10th highest GDP to 5th highest GDP in the world, which my colleague, Honorable former Finance Minister Chidambaram couldn't realize it. Sir, in the next 5 years, under the leadership of Modi ji, we are poised to become third largest economy in the world, crossing 5 trillion mark. Please, Mani Jairam ji, baith kar baat nahi. Please, you speak to the chair. Sir, Deputy Chairman, sir, India continues to retain its fast-growing economy status even in the face of global economic slowdown. And we have faced the COVID situation. Even during COVID situation, there is no economic stride, and it continues to grow in the economy. Sir, last year, our GDP growth stood at massive 7.2%, which was twice the average of emerging market economies. And our Honorable former Finance Minister extensively spoke about the GDP.
and he was all along talking negative about the GDP, and he couldn't realize that there is a growth. And currently, we have surpassed the market expectations and registered a 7.6% growth during second quarter of this current 2023-24. Sir, and coming to the tax collections, which the opposition has to realize the importance. There is a significant growth in the tax collections that has become the norm, and this has fueled the economic growth, sir. Sir, within 10 years, the direct tax collections have increased by 160%, and from 6.4 lakh crore in 2013-14 to 16.6 lakh crore in financial year 2022-23. Sir, this year, this 6 months from April to September, tax collections increased by 18%. Sir, till now, the GST collections, now up to this direct taxes and then indirect taxes, till now, GST collections for this financial year stands at 13.3 lakh crore, averaging 1.66 lakh crore monthly. This is whopping 12% hike over the last year. The increase in tax collections without substantial tax hikes goes to show that the government efficiency in improving our tax compliance and expanding the tax base. Sir, even there is no applaud from the treasury benches. Opposition, I'm very sure they will not applaud. Sir, coming to the digital payments. India continues to dominate the digital payment landscape. Sir, we recorded 89 million digital transactions in 2022, which is more than 4 leading countries combined together. Sir, this accounted almost half of the global real-time payments. And sir, and I also should, up to this, it's all positive points, sir. From now, I have to tell the negative points also, and at least to satisfy my friend Jairam Ramesh. Sir, we must not be complacent with our achievements. And sir, many issues continue to hinder the India's economic growth, sir. Sir, the first I would like to point out among the negatives is depreciating rupee, which is very, very alarming. Sir, rupee was worst performing Asian currency in 2022. Sir, for the first time ever, the value of rupee crossed 80 against the dollar. Currently, it stands at 83.4, which is very, very alarming. Sir, it is successively, the rupee is depreciating year after year, from minus 8.5% in 2018 and minus 10% in 2022. Sir, depreciation of rupee has got a significant impact on the overall development of the country, sir. Sir, depreciation of rupee has a direct impact on the manufacturing sector, since India is a net importer of raw materials and fuel. These two are very important because we completely depend on the fuel imports, sir. Manufacturing growth has already started showing the signs of stress and has slowed significantly this fiscal year. Sir, as per RBI, every 5% fall in the value of a rupee, inflation increases by 15%, 15 basis points, that is 0.15%. Sir, foreign investors, this has another effect of depreciating the rupee, sir. Foreign investors have pulled out 18 billion from Indian markets, more than 12 billion sell-off during 2008 global recessions. Sir, the next issue which I would like to bring to your kind notice is the reality remains that top 10% of the Indian population holds more than 60% of the country's wealth, while the bottom 15% of the population has only 6% of the wealth, sir. Even though the per capita income has more than doubled, that is 1.97 lakh since 2014, India ranks 142nd among 197 countries in terms of per capita income. The last point, sir, which I would like to bring to your notice is widening widening trade deficit, which is again alarming. Sir, India's overall trade deficit
deficit reached 122 billion in financial year 2022-23 compared to $82 billion in the previous year. So the government data indicates that India's trade deficit hit a record high in the month of October, and more so, more alarming is, all the more concerning is India's widening trade deficit with China, and historical high of 83 billion in 2022, and is expected to cross 100 billion mark in 2023 only towards China, sir, from China. Sir, in conclusion, we cannot afford to be complacent, and we should take the necessary steps. I request the Honorable Finance Minister, though there are positive aspects, there are also negative aspects in this economic growth. So I request the Honorable Finance Minister to address all these issues and make the economy more strengthened. Thank you very much, sir. Thank you. Thank you, माननीय वी विजय साई रेड्डी जी. माननीय प्रोफेसर मनोज कुमार झा जी. माननीय उपसभापति जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद. मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगा, आज सुबह जब पता चला कि इकोनॉमिक सिचुएशन इन द कंट्री पर शॉर्ट ड्यूरेशन डिस्कशन है, तो मुझे कभी नहीं लगा था कि हमारी पूरी बातचीत टैक्सेशन, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स और वगैरह वगैरह की चीज़ों में रहेगी. अर्थव्यवस्था का वो एक चेहरा हो सकता है, लेकिन एक जनप्रतिनिधि जो राज्यसभा और लोकसभा में बैठे हुए हैं, उनके लिए आर्थिक परिस्थिति पे जब हम बात करते हैं ना, तो सर सबसे पहले गरीब की थाली नजर आती है. गरीब की, आप फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व कुछ भी रख लो, लेकिन अगर गरीब की थाली में ऊपर परिलक्षित नहीं हो रहा है, तो फाइल भी किताबी है और गांव भी किताबी. मैं सिर्फ, और हाँ, बहुत बढ़िया कहा जावड़ेकर साहब ने कहा 80 करोड़ लोगों को, हालांकि मैं उस शब्द का इस्तेमाल नहीं करूंगा कि मुफ्त कुछ नहीं होता है सर. मैं कई बार सदन में बोल चुका हूं, अगर 80 करोड़ लोगों को आपको अनाज देना पड़ रहा है, तो मुझको अर्थव्यवस्था पर कोई टिप्पणी नहीं करनी है कि आर्थिक परिस्थिति क्या है, कितनी समावेशी है, वगैरह वगैरह. सर, माननीय उपसभापति जी, सुधांशु जी जब बोल रहे थे, तालियां बज रही थी सत्ता पक्ष से, बजती भी हैं. अब विजय साई रेड्डी जी को कष्ट हुआ तो उन्होंने कह भी दिया कि ताली क्यों नहीं बजा रहे हो. तो जब सुधांशु जी ताली बजा रहे के वक्तव्य पे ताली बज रही थी, तो मुझे लगा कि गांव शहरों के बेरोजगार पर यह ताली कितनी भारी पड़ रही होगी. प्रधानमंत्री जी 14 में जब पहली बार चुने गए, तो वो मंदिर मस्जिद की साइज के लिए नहीं चुने गए थे. 2 करोड़ प्रतिवर्ष नौकरियां उनका वादा था. 2 दाएं 20 करोड़. एक श्वेत पत्र तो बनता है कि हम कहां हैं. सर, माननीय उपसभापति महोदय, मैं कुछ चीजें आपके मध्य, क्या ऐसा तो नहीं है कि हम मानव विहीन और मानवीयता विहीन ग्रोथ स्टोरी के पक्ष में भजन गा रहे हैं, करतल ध्वनि कर रहे हैं? सर, कोई भी वैसा ग्रोथ जो फेसलेस हो, जॉबलेस हो, उस ग्रोथ से देश की हकीकत नहीं बदलती है. सर, बड़ी बड़ी बात लोग कर रहे थे. अभी पिछले महीने ये खूबसूरत किताब आई है, वेल रिसर्च्ड. आधी किताब में सर रेफरेंस है, ये है अनइक्वल. सर, हम किन देशों से पीछे हो गए हैं पता है? छोड़िए अमेरिका यूरोप की बात, बांग्लादेश और नेपाल इनकम इनइक्वालिटी को एड्रेस करते हुए मानवीय सूचकांक में हमको पीछे छोड़ चुका है. ये है सर दस्तावेज, ये अनइक्वल. स्वाति नारायण की. बीते दिनों बिहार में एक जातिगत सर्वेक्षण हुआ. मैं चाहूंगा तमाम हमारे भाजपा के मित्र, उनको ना उससे मतलब ना हो, उसके प्रति विरोध हो, लेकिन एक बार उस दस्तावेज को पढ़िए, क्योंकि उन आंकड़ों में नंबर के बाद आर्थिक सामाजिक परिवेश भी जाहिर हुआ है. और तब प्रधानमंत्री जी, पुनः ले जाऊंगा 14 में बिहार गए थे. बिहार को स्पेशल स्टेटस की बात वो करके आए थे, हाजीपुर, दरभंगा, पटना. सर, बिहार को आपकी जरूरत है माननीय सत्ता पक्ष. बिहार के पास रेवेन्यू के साधन कमतर हैं. बिहार को लेबर सप्लाई स्टेट के नजरिए से मत देखिए, बिहार को स्पेशल स्टेटस दीजिए. क्योंकि अगर आप इस किताब का विश्लेषण करें, सरकार के आंकड़ों का विश्लेषण करें, तो आपको साफ दिखेगा कि बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश
देश के बाकी राज्यों से पिछड़ रहा है। उसके अलावा दूसरा पहलू कहता हूं माननीय उपसभापति महोदय, इस किताब में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को धृत किया गया है नॉर्थ साउथ डिवाइड के संदर्भ में भी, और ये पुरानी बात है सर। एफडीआई को ही देखिए कि नॉर्थ में कितना, साउथ में कितना, तो ये फर्क आपको साफ नजर आ जाएगा। इसलिए मैं कहता हूं कि बिहार को नए नजरिए से देखिए। जो शुरुआत वहां के मुख्यमंत्री नीतीश जी, तेजस्वी जी ने की, आप हैंड होल्डिंग करिए और स्पेशल स्टेटस दीजिए। दूसरी चीज सर, अगर मनरेगा में रूरल डिमांड बढ़ रहा है तो रूरल डिस्ट्रेस को एक्नॉलेज करिए। उसको एक्नॉलेज किए बगैर बात नहीं बनेगी। उसको डिनाल से अब कुछ हासिल नहीं कर पाए। पॉवर्टी इंडेक्स पर आपने कई वर्षों से काम नहीं किया। आप आंकड़ों के बारे में तो सरकार का दृष्टिकोण है कि विश्व के टिम्बकटू में अगर एक आंकड़ा पक्ष का कोई बोल दो तो उसको प्रदर्शनी लगा देंगे। अगर कोई आंकड़ा सरकार को असहज करता है तो कहेंगे हम तो इसको मानते ही नहीं है, इनकी तो मेथोडोलॉजी खराब है। साहब नहीं, ये डिफरेंशियल दृष्टिकोण मत रखिए। हंगर इंडेक्स पे खुल के कहिए हम मीट नहीं कर पाए हैं। ये सत्ता पक्ष और विपक्ष का मामला नहीं है, ये मामला है हमारे कलेक्टिव फेलियर का। हमें एड्रेस करना होगा। आपको असल में लग गया सर, बस 1 मिनट लूंगा माफी के साथ सर, आपको असल में लगता है कि आप इनकम इनइक्वालिटी की बात ना करें, पॉवर्टी रिडक्शन की बात ना करें, अनएम्प्लॉयमेंट एड्रेसिंग की बात ना करें, चुनाव आप फिर भी जीत जा रहे हैं। मैं मानता हूं आपने वो तिलिस्म विकसित कर लिया है कि समस्याओं को एड्रेस किए बगैर भी चुनाव कैसे जीते जा सकते हैं। लेकिन जिन बोतल से निकला ये जिन देश पर बहुत भारी पड़ने जा रहा है। वेल्थ टैक्स को लेकर के, इनकम इनइक्वालिटी को लेकर मैंने कहा वेल्थ टैक्स 16 में आपने अबॉलिश कर दिया। किसानों के बारे में सर मैं कहता हूं, आप कहते हैं शेयर बाजार उछल रहा है, बड़ी तारीफ होती है सर। शेयर बाजार उछले और एक किसान आत्महत्या कर ले, एक युवा बेरोजगार आत्महत्या कर ले, तो आप किस चीज को कहेंगे सर? और कुछ नहीं कहना चाहता। हाशिए के समूहों में पॉवर्टी की जो परिस्थिति है, आप बिहार का डेटा देखिए। आखिरी सर, एक सुधांशु जी बड़ी अच्छी चीजें बता गए, हमें तो लगा कि हम तो बेकार परेशानी है गरीबी से, भुखमरी से। 30 सेकंड सर। तो मैं आपके माध्यम से अपने मित्रवर्ग को कहता हूं, जब कश्ती साबितो सालिम थी, साहिल की तमन्ना किसको थी? अब ऐसी शिकस्ता कश्ती पे साहिल की तमन्ना कौन करे? जय हिंद सर। थैंक यू, धन्यवाद प्रोफेसर मनोज कुमार झा जी। माननीय श्री एलामारम करीम जी। Thank you, sir. The real state of our economy concerning around the people will be clearly understood by the latest RBI report, which says the household's financial assets, including bank deposits and cash equity investment, fell down sharply to 5.1% of the GDP in the fiscal year ended in the March 2023. See, on the other hand, the household debt increased 5.8% of the GDP in the financial year 2023, which is the second highest annual increase since independence. Recent RBI data also reveals that bank, financial institution, credit to institutions bar business marked a decline, while personal loan portfolio has increased in volume during in the current quarter, which clearly signals further slowing down of the economy along with the rise in the people's indebtedness and resultant distress. Sir, in addition to these technical issues, there are broader concerns about the overall economic direction of the country. Tax concession and incentives are given to the rich corporates, are widening the gap between the two Indias, the rich and the poor. Real income of the top 1%, the cronies of Modi government, rose by 30% from 7.9 lakh crores in 2019 to 10.2 lakh crores in 2022. While the real income of the lowest 25%, who are shouting slogans for you, by the 11% from rupees 3.8 lakh crores to 3.4 lakh crores.
Sir, a relentless propaganda continues to boost the Indian economy's resurgence. The recent G20 summit was used to project India as an emerging economic powerhouse in the world. But the truth is that India has the lowest per capita GDP among the G20 countries. That was hidden. Ranks the lowest in terms of human development indices and records the lowest labor force participation rate, Chidambaram told you, reflecting the very high level of unemployment. The continued decline in the people's purchasing power is impeding the economic growth as this leading declining levels of domestic demand. This in turn leads to declining levels of investments. This means potentially further declining levels of employment guarantee. New proposals for investment in the economy have rapidly declined. Over the last year, 72.5% in government sector and 79% in private investments. Sir, massive propaganda bliss is launched over the grand success of Make in India. That was the slogan from 2014. Its target for manufacturing sector growth over this decade was 12.14%. The reality is that since 2013-14, this averaged only 5.9% per annum. The tall claim, where it has gone? The share of the manufacturing GDP was targeted to reach 25%. This, however, remained stagnant at around 16.4%. But when 2011 and 11-12 and 21-22, jobs in manufacturing sector declined from 12.6% to 11.6%. I am concluding, sir. Deepening rural distress is reflected in the demand for jobs under MNREGS. Last year, this grew by 15.3%, and compared to 2019-20, this grew by 29.4%. But unluckily, the allocation for MNREGS drastically cut down in the last budget. Fresh evidence that have emerged about the Adani Group manipulation, that is also a part of this economic policy. Manipulation of stock prices of its companies calls for a serious probe. The final Financial Times and Guardian already have time based is on over. inputs from the organized crime and Alarm corruption. Karim 1 ji, minute. your time is over already. A report project revealed Please how conclude. to close associates of such companies. Conclude, please. And buy millions of dollars of shares in Adani companies. Sir, these are the affairs of the Indian economy. The tall claim has no truth. I conclude with this. Thank you. Mani Sri Anil Prasad Hegde ji. Thank you, Deputy Chairman, sir. When we are crossing a river in a boat, if there is a hole in the boat and the water starts trickling in, taking a mug or a tumbler and pouring the water out of the boat is not the solution, sir. Plugging the hole needs to be the solution. Sir, देश में बेरोजगारी, महंगाई, भूखमरी के बारे में आंकड़ा बहुत सारे हैं. Important thing is plugging the hole, sir. I want to give you three examples. Most of my life, I was opposing the Congress policies, being in the Janata Party, Janata Dal Parivar, and later being part of the NDA. But I want to point out to you, sir, in 1985, the then government of Rajiv Gandhi had launched the oil seed technology mission, because of which by 1993-94, we were almost self-sufficient in edible oil. Subsequently, governments started reducing import tariffs, as a result of which cheap edible oil started flooding the Indian market, and India became dependent on import of edible oil, sir. Sir, this has become a pretext for the government to give permission to
genetically modified mustard. So giving permission to GM crops is not plugging the hole, sir. So इसी सदन में कल 6 दिसंबर है, 6 दिसंबर 2012 को तत्कालीन लीडर ऑफ द अपोजिशन मल्टी ब्रांड रिटेल के डिबेट के संदर्भ में उन्होंने कहा था कि देश पड़ोसी देश से चीप गुड्स भारत आने के बारे में उन्होंने कहा था और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर रिफॉर्म्स के बारे में भी उन्होंने कहा था। अभी यहाँ पर साथी अशोक मित्तल और कन्नीमोली जी भी चाइना के बारे में जिक्र कर रहे थे। माई इन्फॉर्मेशन सर is that millions of people, including Falun Dafa practitioners, Uyghur Muslims in Xinjiang, are subjected to forced labor in Chinese prisons. And because of the violation of human rights, labor laws, and environmental laws, our neighbor is able to manufacture cheap goods, which makes us less competitive. Illegal organ trade of innocent prisoners like Falun Dafa, Uyghur Muslims are flourishing business there. So long as we do not plug the hole by starting a campaign to stop human rights violation, labor law violation, environmental law violation inside China, I feel it is difficult for India's manufacturing sector to improve. Sir, finally, देश में जातियां हार्ड रियलिटी है सर। देश में कई सारे पिछड़ी जातियों को आरक्षण के बावजूद विकास का फायदा पहुंचा नहीं है। इसलिए नीतीश कुमार का नेतृत्व का मेरा पार्टी के सरकार बिहार में कास्ट बेस्ड सेंसस लागू किया है। जब तक देश में कास्ट बेस्ड सेंसस नहीं करते हैं तब तक सरकार का बनाया हुआ पॉलिसीज का फायदा कई सारे जातियों को नहीं पहुंचेगी। सर, हैंस by ordering a caste based census we need to plug the hole. And finally sir, I also request the government to give special status to Bihar. Thank you. Thank you. धन्यवाद माननीय अनिल हेगड़े जी। माननीय अब्दुल वहाब जी। माननीय अब्दुल वहाब जी। Yes sir. Thank you very much. 3 minutes sir. The occasion to talk. Mr. Chidambaram, from Chidambaram to all opposition parties were telling about the gravity of our Indian economy, how it is going on. No doubt, as our comrades tells, this our GDP is grown to the level which we never expected. Ultimately, the GDP per person, where it is, that was the only question I want to ask to the government of India. There are a lot of abhayans. Prime Minister ka naam mein, this name, that name, and removed all the other name. But ultimately, it is getting to the really needy people. I am working mainly on tribal areas. There, a lot of projects are there, lot of money also there. But it is not coming down because of a lot of hurdles. In the same way, Indian economy, everybody is saying that, okay, we are this level, that level, but our Vijay Reddy, lately he came to the point. Before he has to. It is compulsion, not because of his intention. Compulsion, they have to have this one, this stand. Almost all parties, everybody is threatened. But what our government is saying, okay, semi-final over. All the 10 matches in, you see this one, Indian matches against the World Cup, everything we gave with, but at last what happened in Ahmedabad Modi Stadium? He was there with the blue jackets, our Prime Minister. We are also behind him. What happened? That is what going to happen in 2024. This is not be a hat-trick. Unless and until, maybe they can win, unless and until, they have to see the real problem. Not this $1 trillion. It is coming to, most of the money is coming to me also, just like me people, little, 1 or 5%, including that one maybe. But it is not going to the real people. That 80 crores. Our Manoj was telling clearly. So
please spend some money or get some money from wherever it is and pump to the, in Manrega or whatever it is, which is helping people, real people, not the big corporates. I know when I am starting, if I am telling Adani, you will put the bill. Stop. Everybody is telling about Adani or other, then it is, time is over. I hope, I don't know. Now, just... Yes, your time is over. 3 minutes already. Okay. That is the thing. 3 minutes. When we are telling about the real point, it will be coming. Anyway, everybody, you are giving 1 minute. Give me that 1 minute, just a minute only. Please, because my request conclude. is, whatever our comrades say, this much crores and all, our Tamil Nadu people asking 5,000 crores only because of flood, that situation. But Kerala government, the dues in different areas is more than 5,000 crores. Release something, some little thing. That is where my request. Thank you very much. Thank you, Abdullah. And for the great performance of Thank you, Manni Sri Sushil Kumar Modi ji. 20 मिनट समय है माननीय उपसभापति महोदय, देश की आर्थिक स्थिति पर बोलने के लिए मैं पार्टी की ओर से खड़ा हुआ हूं। महोदय, अभी चिदम्बरम साहब भाषण कर रहे थे, वो बार बार कह रहे थे कि ग्रोथ इज नॉट रिफ्लेक्टेड ऑन द ग्राउंड, इज नॉट सीन ऑन द ग्राउंड। मुझे पता नहीं किस ग्राउंड की बात कर रहे हैं वो। अभी 3 राज्यों में चुनाव हुआ तो ग्रोथ अगर वहाँ जमीन पर दिखाई नहीं पड़ता तो फिर जीते कैसे, फिर परिणाम हमारे पक्ष में कैसे आया। तो ग्रोथ देखने के लिए भी चश्मा चाहिए। अगर टीन का चश्मा लगा लेंगे तो कुछ भी दिखाई नहीं पड़ेगा, अगर पार्टी के चश्मे से देखेंगे तो कुछ भी ग्रोथ दिखाई नहीं पड़ेगा। और सती महोदय, ये जो दूसरी तिमाही है 23-24 की दूसरी तिमाही, आरबीआई से लेकर देश के तमाम जो अर्थशास्त्री थे उनका आकलन फेल कर गया। यहाँ तक कि आरबीआई ने भी कहा कि 6.5% ग्रोथ होगा और हुआ कितना, 7.6% ग्रोथ दूसरी तिमाही के अंदर इस देश के अंदर हुआ है। और मैं सदन को बताना चाहूँगा, ये जो 23-24 की दूसरी तिमाही है उसमें यूके का ग्रोथ कितना है, 0.6%, चाइना का ग्रोथ 4.9, अमेरिका का 5.2, रशिया का 5.5 और भारत का ग्रोथ है 7.6। और इसलिए आज भारत दुनिया में सबसे तेज गति से विकसित होने वाला विकास दर वाला देश है। सभापति महोदय, महंगाई पर बार बार चर्चा हो रही है। अगर लोग इतने ही दुखी होते, इतने ही नाराज होते, तो फिर मैं मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ की बात करना चाहूँगा। और इस देश में कितने प्रदर्शन हुए सभापति महोदय, दुनिया के 50 देशों में लाखों लोग सड़कों पर आ गए पेट्रोल डीजल की महंगाई, खाने पीने की चीज़ों की महंगाई के विरोध में। लेकिन भारत में 10,000 लोग भी कहीं सड़कों पर नहीं आए। क्यों नहीं आए? महंगाई है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इन कारकों की महंगाई नहीं है, लेकिन लोगों को मालूम है कि महंगाई का कारण नरेंद्र मोदी नहीं है, भारतीय जनता पार्टी नहीं है, केंद्र की सरकार नहीं है, कोविड कारण है, रूस यूक्रेन युद्ध कारण है और दुनिया के तमाम देश महंगाई का मुकाबला कर रहे हैं। और सभापति महोदय, 4 चीज़ों के अंदर सबसे ज़्यादा महंगाई का असर दिखाई पड़ता है। पहला पेट्रोलियम पदार्थ, दूसरा एडिबल ऑयल खाद्य तेल, तीसरा फर्टिलाइज़र और चौथा दाल। सभापति महोदय, इन चारों में से कोई भी चीज़ हम भारत में पैदा नहीं करते हैं पूरे तौर पर। पेट्रोलियम पदार्थ 85% इंपोर्ट करते हैं। अगर अंतर्राष्ट्रीय बाजार में पेट्रोलियम पदार्थों की कीमत बढ़ेगी तो भारत में बढ़ने से हम कैसे रोक पाएंगे? एडिबल ऑयल, दुनिया के बाकी देश से ये खाद्य तेल नहीं खाते, केवल भारत के लोग खाते हैं। और 60% एडिबल ऑयल हम इंपोर्ट करते हैं। फर्टिलाइज़र, 60% फर्टिलाइज़र का रॉ मटेरियल हम इंपोर्ट करते हैं। दाल, अमेरिका के लोग दाल नहीं खाते हैं, फ्रांस और जर्मनी के लोग दाल नहीं खाते, दाल खाता है भारत और पैदा करता है म्यांमार
और दाल भी हमको और आयात करना पड़ता है। प्रति पौधे में सबसे पहले पेट्रोलियम डीजल के बारे में इस सदन को बताना चाहूँगा कि श्रीलंका में पिछले 2 वर्षों में सितंबर 21 से लेकर सितंबर 23 का आंकड़ा मेरे पास है, पेट्रोलियम के दामों में कितनी वृद्धि हुई? 61%। पाकिस्तान में कितनी वृद्धि हुई? 60.68%। छोड़ दीजिए पाकिस्तान बांग्लादेश की बात, अमेरिका में कितनी वृद्धि हुई पेट्रोल के दामों में? 46.31%। जर्मनी में 19.41, फ्रांस में 26.47, स्पेन में 24.92, इटली में 24.27। इंग्लैंड के अंदर पेट्रोल के दामों में 2 साल में 15% की वृद्धि हुई। और सदन को शायद ज्ञात नहीं होगा कि भारत में पिछले 2 वर्षों के अंदर पेट्रोल के दामों में बढ़ोतरी नहीं हुई, बल्कि 4.56% की घटोतरी हुई है, यानी निगेटिव ग्रोथ हुआ है। यानी जहां सितंबर में 101 रुपया 34 पैसा पेट्रोल का दाम था, वहाँ 2023 में घटकर 96.72 हो गया। और सती महोदय, उसी प्रकार डीजल, श्रीलंका में 115% और की वृद्धि हुई है डीजल के दामों में, पाकिस्तान में 67, फिर अमेरिका 48.68, जर्मनी 31.46, स्पेन, इटली, यूके में उस आंकड़ों में नहीं जाऊंगा। और भारत में डीजल के दाम में 2 वर्षों में कितनी वृद्धि हुई? केवल 0.96%, यानी केवल 1% की वृद्धि हुई। और आप कहते हैं कि पेट्रोलियम पदार्थों का दाम बढ़ गया। और ये आंकड़े आप चाहे तो इन आंकड़ों को वेरीफाई कर लें। और सती महोदय, भारत सरकार ने 2 बार पेट्रोल और डीजल पर एक्साइज ड्यूटी को कम करने का काम किया, और कुल मिलाकर 2 बार में 13 रुपया पेट्रोल पर और 16 रुपया डीजल पर एक्साइज ड्यूटी में कटौती की है। अब पिछले 2 वर्षों में पेट्रोल और डीजल के दामों में कोई वृद्धि नहीं हुई। कोई बता दे कि पेट्रोल और डीजल के दाम में भारत के अंदर कोई वृद्धि हुई है क्या? और सती महोदय, यहाँ भी राजनीति हो रही है। बीजेपी शासित राज्यों ने पेट्रोल और डीजल पर एक्साइज ड्यूटी या वैट को घटाने का काम किया, लेकिन जो विपक्ष के राज्य थे उन्होंने घटाने के बजाय बढ़ाने का काम किया। और उसका भी मैं आंकड़ा देना चाहूँगा सती महोदय। अभी राजस्थान का चुनाव हुआ है, गांधीनगर में पेट्रोल 96 रुपया 63 पैसा और जयपुर में पेट्रोल 108 रुपया 45 पैसा, यानी 12% ज़्यादा है गांधीनगर से जयपुर में पेट्रोल का दाम। गुवाहाटी में 98 रुपया गुवाहाटी में, और डायरेक्ट साहब के कोलकाता में पेट्रोल 106 रुपया 42 पैसा। तो अगर केंद्र के कारण का बढ़ा होता तो आखिर कलकत्ते में 106 रुपया और गुवाहाटी में 98 रुपया क्यों है? लखनऊ में 96 रुपया और बेंगलोर में 101 रुपया, गोवा में 97 रुपया, रायपुर में 102 रुपया, भोपाल में 108 रुपया और अमरावती में 111 रुपया। जी महोदय, कांग्रेस शासित राज्यों ने पेट्रोल और डीजल के दामों में कोई कटौती नहीं की, और बीजेपी शासित राज्यों ने उसके दाम में कटौती की। और जब बात आती है एलपीजी की, तो सदन को ये मालूम है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने एलपीजी के दामों में और जो उज्ज्वला योजना के तहत जो सिलेंडर मिलता था उसमें कुल मिलाकर 300 रुपये की राहत दी है, और सामान्य कंज्यूमर को 200 रुपये की राहत दी है। इससे पेट्रोलियम कंपनियों को 28,000 करोड़ का नुकसान हुआ, 28,000 करोड़ का, और भारत सरकार ने 22,000 करोड़ रुपया उनको पिछले साल देकर उसकी क्षतिपूर्ति करने का काम किया है। सती महोदय, ये नरेंद्र मोदी की सरकार है। पेट्रोल में ब्लेंडिंग, ये जो इथेनॉल की ब्लेंडिंग हो रही है, ये जब 14 में नरेंद्र मोदी जी आए, इस समय 1.53% पेट्रोल में ब्लेंडिंग होती थी। आज कितनी ब्लेंडिंग हो रही है? 12%। और इससे देश को कितना फायदा हुआ? विदेशी मुद्रा 73,000 करोड़, डायरेक्ट साहब 70,000, द कंट्री हैज सेव्ड 73,000 करोड़ एज अ फॉरेन एक्सचेंज सेविंग।
कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन 402 लाख मेट्रिक टन एमिशन कम हुआ। अमाउंट पेड टू द डिस्टिलरीज 1,26,000 करोड़। और फार्मर्स को कितना मिला? 76,000 करोड़ रुपया और किसानों को मिला है। सचिव महोदय, ये है नरेंद्र मोदी की सरकार। और सचिव महोदय, आप कहते हैं कि आप बार बार कहते हैं कि उसी प्रकार फर्टिलाइजर, सचिव महोदय फर्टिलाइजर भारत सरकार ने अगले 3 साल के लिए 3,70,000 करोड़ की सब्सिडी का अपने बजट में और प्रोविज़न किया, 3,70,000 करोड़। और मैं सदन को बताना चाहूँगा कि जो फर्टिलाइज़र का जो रॉ मटेरियल है और फर्टिलाइज़र ये बाहर से आता, भारत के अंदर केवल 40% तैयार होता है, बाकी बाहर से आता है। और मैं सदन को बताना चाहूँगा कि यूरिया के दाम, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में यूरिया का दाम है 2,450 और किसानों को कितने में मिलता है? 266 रुपये में किसानों को मिलता है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज प्रोवाइडिंग अ सब्सिडी ऑफ 2,183 पर बैग टू द फार्मर्स इन दिस कंट्री। डीएपी में सब्सिडी कितनी मिल रही है? 2,501 रुपया। एनपीके में सब्सिडी कितनी? 1,918। और आपने सारे कारखाने बंद कर दिया। गोरखपुर का खाद का कारखाना नरेंद्र मोदी जी ने चालू किया, बरौनी का खाद का कारखाना हमारी सरकार ने चालू किया। और सचिव महोदय, अभी कह रहे थे कि करोड़पति बन गए। ये बात ठीक है कि हमारे करोड़पति बनना कोई गुनाह नहीं है, चोरी करके कोई करोड़पति न बने। और ठीक है डायरेक्ट साहब, in 1617 there were only 68,263 crorepati in this country. Now the figure has gone to 1,69,000. तो जो टैक्स पेयर है, जो 1 करोड़ से ज़्यादा जिनकी अर्निंग है, जो टैक्स देते हैं, उनकी संख्या 68,000 से बढ़कर 1,69,000 हो गई। ये तो खुशी होना चाहिए कि आप दुखी है कि करोड़पति क्यों हो गए। तो सब लोग कंगाल बना दीजिए, सब लोग कंगाल हो जाएं। लेकिन दूसरी ओर मैं ये भी सदन को बताना चाहूँगा, ये नरेंद्र मोदी जिनके कारण 13,50,00,000 लोग गरीबी की जंजीर से मुक्त हो गए। पिछले उनके पहले कार्यकाल में, दीदी थोड़ा 1 मिनट, उनके पहले कार्यकाल में 13.5 करोड़ लोग गरीबी की जंजीर से मुक्त हो गए और मिडिल क्लास में शामिल हो गए। सचिव महोदय, 15-16 में इस देश में 24.85% गरीब थे और 19 और 21 में घटकर कितना हो गया? 15%। तो आखिर गरीब कहाँ चले? गरीब देव इंटर ये मिडिल क्लास। सचिव महोदय, और यूएनडीपी की रिपोर्ट है, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम की रिपोर्ट है कि 2005-06 में 64.5 करोड़ गरीब थे इस देश के अंदर, 64.5 करोड़। और 2021 में घटकर हो गए 23 करोड़। 15 साल में इस देश के अंदर 41 करोड़ लोग गरीबी से मुक्त हो गए और वो मिडिल क्लास में प्रवेश कर गए। तो सचिव महोदय, एक और हमने जहाँ गरीबों का ख्याल रखा, वहाँ पर यहाँ पर लोग उद्योगों के माध्यम से पैसा कमाएं, इसका भी ध्यान रखा है। और सचिव महोदय, अभी बैंकों की बात हो रही थी, और कि बैंकों का एनपीए की क्या स्थिति है। बैंक का प्रॉफिट 22-23 में पहली बार बैंकों का प्रॉफिट, दे हैव अर्न्ड अ प्रॉफिट ऑफ 1 लाख करोड़। नॉट अ सिंगल बैंक इज इन रेड, दे आर अर्निंग प्रॉफिट। ये आपके कार्यकाल में क्यों नहीं हुआ? 22-23 में क्यों 1 लाख करोड़ का 22-23 में बैंकों को प्रॉफिट हुआ है? और भारत सरकार ने जो कैपिटलाइज करते थे, बैंकों को पैसा देना बंद कर दिया। 3 साल से 1 पैसा नहीं दिया बैंकों को। और बैंक अपने बलबूते जो हैं, और जो एनपीए हैं, जो नॉन परफॉर्मिंग एसेट है, वो 11.2 था, 17-18 में घटकर 5.2% हो गया। तो सचिव महोदय, ये जो एनपीए अगर कम हुआ है तो इसका कारण क्या है? सचिव महोदय, जीएसटी का कलेक्शन
एक साल में 6 बार जीएसटी का कलेक्शन, दैट इज क्रॉस 1,60,000। जो लोग गब्बर सिंह टैक्स कहते हैं जीएसटी को, तो अगर हिम्मत है तो अपने राज्य हिमाचल में और जहां आपकी सरकार कर्नाटक में जीएसटी को हटा दीजिए। अगर वो गब्बर सिंह टैक्स है तो जीएसटी के कारण 1,60,000 करोड़ का कलेक्शन एक साल में एक बार नहीं बल्कि 6 बार इस एक साल के अंदर हो चुका है। और सती महोदय, एक समय था कि मोबाइल हम इंपोर्ट करते थे। आज से 10 साल पहले 98% मोबाइल हम इंपोर्ट करते थे। और मैं सदन को बताना चाहूँगा कि आज 99% मोबाइल मेड इन इंडिया है। हमने मोबाइल को इंपोर्ट करना बंद कर दिया। और इस साल 11 बिलियन का मतलब हो गया 88,000 करोड़ के मोबाइल फ़ोन जो है और हमने एक्सपोर्ट करने का काम किया है। श्रीमती महोदय, नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं। भारत मंडपम के उद्घाटन के अवसर पर उन्होंने भाषण देते हुए कहा था कि जब वो प्रधानमंत्री बने उस समय भारत दुनिया की 10वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था थी, 10th इकोनॉमी थी दुनिया की 2014 में, और सेकेंड टर्म में वो दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है। और उन्होंने देश की जनता को गारंटी दिया, मोदी की गारंटी, कि तीसरे टर्म में इंडिया दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगी। हम जर्मनी को पीछे छोड़कर हम 2 साल में 4th हो जाएंगे और फिर जापान को पीछे छोड़कर 2027 तक हम दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएंगे। और श्रीमती महोदय, केवल हम दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था ही नहीं बनेंगे, 5 ट्रिलियन इकोनॉमी, जो $5 ट्रिलियन की जो इकोनॉमी है, 27-28 तक भारत 3rd लार्जेस्ट केवल जीडीपी में नहीं बनेगा बल्कि $5 ट्रिलियन इकोनॉमी में भी बदल जाएगा। हमारा सपना है, प्रधानमंत्री जी चाहते हैं कि 2047 तक भारत एक विकसित देश बन सके, एक एडवांस इकोनॉमी बन सके, और उसी दिशा के अंदर भारत की सरकार काम कर रही है। और इसलिए श्रीमती महोदय, हम लोगों ने महंगाई को नियंत्रित करके दिखलाया है। अभी जो आंकड़े आए अक्टूबर के, वो 4.87, आरबीआई का 4 +2 का जो रेंज है, अक्टूबर 2023 में वो आंकड़ा 4.87 का है। तो हमने महंगाई को नियंत्रित करके दिखलाया है। और जहाँ तक खाद्य तेल की बात है, खाद्य तेल पिछले 1 साल में उसके दाम में 18% की गिरावट है, मस्टर्ड ऑयल में, वनस्पति में 12% की गिरावट है, सोया में 20%, पाम ऑयल में 15%। यद्यपि ये खाद्य तेल भारत में पैदा नहीं होता है, फिर भी हम लोगों ने और उसके अंदर उसको भी और नियंत्रित करके दिखलाया है। और साथ ही महोदय, उसी प्रकार जो गरीबों के लिए जो 81 करोड़ गरीबों को मुफ्त में अनाज दिया जा रहा है, और अब तो सरकार ने ऐलान किया है कि अगले 5 साल तक 81 करोड़ लोगों को 5 साल तक, दिसंबर 2028 तक और अनाज मिलेगा। अंत में आप घंटी न बजा दें, मैं एक बात और कह दूँ। इस बीच के अंदर हमारे मित्र कह रहे थे कि नरेंद्र मोदी जी ने बिहार के अंदर सभा में कहा कि विशेष राज्य का दर्जा देंगे। मैं चुनौती देता हूँ, कभी भी किसी भाषण में नरेंद्र मोदी जी ने बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने का कभी ऐलान नहीं किया था, नंबर 1। नंबर 2, कि जब केंद्र में यूपीए की सरकार थी, उसी समय रघुराम राजन कमेटी का गठन करवाया था नीतीश कुमार जी ने चिदम्बरम साहब से मिलकर, और रघुराम राजन कमेटी ने रिपोर्ट दिया कि अब देश के किसी भी राज्य को विशेष राज्य का दर्जा नहीं दिया जा सकता है। इतना ही नहीं तो 14th फाइनेंस कमीशन, चूँकि 5th फाइनेंस कमीशन ने 69 के अंदर पहली बार स्पेशल कैटेगरी स्टेटस का कंसेप्ट दिया था, लेकिन 14th फाइनेंस कमीशन ने 2015 में विशेष राज्य के दर्जे की अवधारणा को ही खत्म कर दिया। इसलिए 14th और 15th फाइनेंस कमीशन में कहीं भी स्पेशल कैटेगरी शब्द आया ही नहीं है। तो महोदय, जब 14th फाइनेंस कमीशन ने, रघुराम राजन कमेटी ने, इंटर मिनिस्ट्रियल ग्रुप ने खत्म कर दिया, और जब लालू जी देश में रेल मंत्री थे, बड़े ताकतवर मंत्री थे, रात को 12 बजे राष्ट्रपति को उठाकर बिहार की विधानसभा को भंग करवा दिया। उस समय उन्होंने बिहार को विशेष राज्य का दर्जा क्यों नहीं दिलवाया?
जब नीतीश जी रेल मंत्री थे उस समय बिहार को विशेष राज्य का दर्जा क्यों नहीं दिलवाया? और नरेंद्र मोदी ने तो विशेष राज्य के दर्जे से बिहार को जितना मिलता उससे ज़्यादा दे दिया। जो पैकेज दिया पीएम पैकेज, 1,40,000 करोड़ का पैकेज दिया बिहार को। पीएम पैकेज केवल भारत में अकेला राज्य बिहार है जिसको केंद्र की सरकार के द्वारा पैकेज दिया गया। लेकिन जब चुनाव नज़दीक आता है तो विशेष राज्य का दर्जा, विशेष राज्य का दर्जा। आंध्र का तो घोषणा थी सोनिया जी का कि घोषणा थी सदन के अंदर कि आंध्र को विशेष राज्य का दर्जा देंगे, कहाँ मिला? अब देश के किसी भी राज्य को स्पेशल कैटेगरी का स्टेटस नहीं मिल सकता है। राज्य को मदद मिलेगी, केंद्र मदद करेगा, लेकिन इसको पॉलिटिकल मुद्दा न बनाए तो मुझे लगता है कि और ज़्यादा बेहतर होगा। इसलिए सती महोदय, नरेंद्र मोदी जी पर लोगों को भरोसा है कि यही व्यक्ति जो महंगाई नियंत्रित कर सकता है, यही व्यक्ति है जो देश का विकास कर सकता है। और इसीलिए आज 12 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री हैं और 4 राज्यों के अंदर सहयोगी दल के साथ मिलकर सरकार चल रही है। देश के 51% क्षेत्रफल पर भारतीय जनता पार्टी की सरकारें चल रही हैं। और इसलिए सती महोदय, अर्थव्यवस्था को हमने बेहतर बनाकर दिखलाया है। हमें गर्व है नरेंद्र मोदी पर कि विपरीत परिस्थितियों में भी भारत को जिस संकट से उबार कर और उन्होंने यहाँ तक पहुँचाया है, मुझे पूरा विश्वास है कि 5 महीने के बाद जब लोकसभा के चुनाव होंगे, ये ग्रोथ, ये सड़क पर, ये नीचे दिखाई, जमीन पर दिखाई पड़ेगा और लोग विकास के नाम पर वोट देंगे, सांप्रदायिक और जातीय गणना के नाम पर वोट नहीं देंगे। जातीय गणना का मुद्दा तो बहुत उछला था मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में, कहाँ लोगों ने वोट दिया, कहाँ वो मुद्दा बना? तीन शब्दों के साथ मुझे पूरा विश्वास है कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हम भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाएंगे और भारत को आगे ले जाएंगे। धन्यवाद। श्री राजीव शुक्ला, 8 मिनट्स। धन्यवाद सभापति जी। सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद दूंगा कि आपने इस आर्थिक मुद्दे पर इस सदन में बहस की अनुमति दी, जो कि एक बहुत ज़रूरी आज के वक्त में है। मैं कोई अर्थशास्त्री नहीं हूँ और न अर्थशास्त्री की तरह बोलूँगा। मैं एक सामान्य व्यक्ति के जो समझ में आता है उसी आधार पर अपनी बात रखूँगा। मेरा अपना मानना है कि विदेश नीति और आर्थिक नीति, इन दोनों पर कोई भी सरकार आए, किसी भी पार्टी को समानता रहती है और रहनी चाहिए। यही अभी तक की परंपरा रही है। अगर 1991 में नरसिम्हा राव सरकार ने आर्थिक सुधार लागू किए थे, तो उसके बाद चाहे देवगौड़ा जी की सरकार हो, चाहे गुजराल साहब की सरकार हो, चाहे वाजपेयी जी की सरकार हो, अटल जी की, उन्होंने उसको पालन किया था। एक बार मैं पत्रकार के रूप में नरसिम्हा राव जी के साथ जो है स्पेन गया था और वो प्रधानमंत्री थे, उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, तो वहाँ पत्रकारों ने ये प्रश्न उठाया कि आप तो ये आर्थिक सुधार लागू कर रहे हैं, आप सबको बता रहे हैं कि आप इंडिया में ये चेंजेज कर रहे हैं, रिफॉर्म्स ला रहे हैं, लेकिन कल आपकी सरकार नहीं रहेगी तो क्या होगा? तो उन्होंने बड़ा फेमस सेंटेंस वहाँ बोला था, द प्रोसेस ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स इज इरिवर्सिबल। कोई भी सरकार आए इसको बदल सकती नहीं है। तो ये चीज़ जो है लगातार चलती रहनी चाहिए, ये नीतियाँ लगातार चलती रहनी चाहिए। मैं किसी की आलोचना या किसी की प्रशंसा की बात नहीं कर रहा हूँ। और लेकिन कुछ प्रयोग पिछले 10 साल से हो रहे हैं जिसमें पिछली सरकारों की चीज़ों को अंडू करने की कोशिश हो रही, उनको बदलने की कोशिश हो रही। हमारे मित्र सुशील मोदी जी सम्मानित अभी बात कर रहे थे कि चुनाव के नतीजों से, जो चिदम्बरम साहब की बात का जवाब दे रहे थे कि उन्होंने कहा था कि ग्राउंड पे नहीं दिख रहा, तो उन्होंने चुनाव के नतीजों का हवाला दिया। सुशील जी, चुनाव के नतीजे 5 साल पहले क्या थे? तीनों राज्य हम जीते थे, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, और उसके बाद लोकसभा हार गए थे 5 महीने बाद। तो अगर उस दृष्टि से देखा जाए तो आपका ये तर्क कहीं बैठता नहीं है। इसलिए मुझे लगता है कि इस जो बहस को हम उसी गंभीरता से रखें जिस मुद्दे पर आर्थिक स्थिति की वो है, और उसकी हम शुरुआत इस चीज़ से करते हैं। और अगर इसके आंकड़ों का, इलेक्शन कमीशन का आंकड़े है, पूरे उसमें 4,81,00,000 वोट जो है भाजपा को मिला है और 4,91,00,000 कांग्रेस को मिला है, 10 लाख ज़्यादा। तो हम इसको अगर उस तरह से गणना करके देखेंगे तो फिर ये बात कहीं रही नहीं जाएगी कि, तो इसलिए जो है हम समझते हैं कि चेयरमैन साहब ने बहुत मतलब गंभीरता से इस विषय पे डिस्कशन के लिए रखा है, तो हम उसी पे जाते हैं। सबसे पहले पुराना गाना है कि जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा।
तो वादों पे जाते हैं। तो वादा नंबर 1 क्या था कि हम काला धन वापस लाएंगे। वापस तो आया नहीं, उल्टे जो मॉर्गन स्टैनली की रिपोर्ट है जिसको कोट किया था सुधांशु जी ने, 6 लाख उद्यमी जिनको एंटरप्रेन्योर बोलते हैं विदेश चले गए। यहाँ की 2 लाख ने तो नागरिकता सरेंडर कर दी भारत की। और उद्यमी जब जाता है तो सोचो कि वो लाखों लोगों का जो है, वो लाखों लोगों का के रोजगार को जो है छोड़ के जाता जो भारत में मिलना था। वहाँ जाके उद्योग लगा रहे हैं, बाहर के लोगों को रोजगार मिल रहा है और उसके अलावा जो है यहीं से पैसा जा रहा है। तो उल्टे जो पैसा 4 लाख करोड़ आना था, 10 से 15 लाख करोड़ के करीब पैसा बाहर जा चुका है देश का। ये गंभीर विषय है, इस पे मुझे लगता है वित्त मंत्री जी को सोचना चाहिए कितनी भारी संख्या में उद्यमी या एंटरप्रेन्योर्स देश छोड़ के क्यों जा रहे हैं, वो बाहर क्यों बस रहे हैं। तो ये उनको सोचने की बात है कि वो क्यों ऐसा हो रहा है। और ऐसा नहीं कि देशभक्त नहीं थे, देशभक्त थे। मॉर्गन स्टैनली के रुचि शर्मा ने 2016 में फिक्की की स्पीच में कहा था, 2016 में वार्निंग दी थी, तब मुश्किल से जो है 50,000 लोग गए थे कि क्यों भारतीय बिजनेसमैन, भारतीय इंडस्ट्रियलिस्ट या एंटरप्रेन्योर्स देश छोड़ के क्यों जा रहे हैं, उनको रोको। तो ये चीज़ देखने की है कि क्या ये सरकारी एजेंसियों के ज़रूरत से ज़्यादा दबाव की वजह से जा रहे हैं या क्या वजह है, उनके साथ अन्याय हो रहे हैं, इसको समझने की आवश्यकता है। दूसरा वादा था 50 रुपये लीटर पेट्रोल, 40 रुपये डीजल, हमारी सरकार आएगी। आप कह रहे हो कम हो गया, मुझे तो कहीं कम नहीं दिखाई दे रहा। अब आप गणना बता रहे हो कि इस राज्य में 96 का, वहाँ 106 का, 50 और 40 रुपये का तो नहीं है जो पहले था कि 50 और 40 रुपये में बिकेगा डीजल पेट्रोल। वो वादा तो पूरी तरह गलत साबित हुआ। और ये तब मैं तो योजना मंत्री था, जो है ब्रेंट क्रूड की रिपोर्ट रोज आती थी। हमारे ज़माने में $115, $120 का जो है तेल मिलता था, क्रूड ऑयल, और उसके बाद जो है हाँ हम 60 रुपये पे देते थे। लेकिन यहाँ पे तो बहुत सस्ता, यहाँ तक कि एक वक्त $22 पे पहुँच गया था इस सरकार में, और अभी भी 40, 50, 60 के अल्ले पल्ले रहता है, 80 के अल्ले पल्ले रहता है, पहले से बहुत कम है। फिर भी ये दाम क्यों बढ़ रहे हैं? तो इसको जो है हमें देखना चाहिए कि हम क्यों 100 के पार चला गया पेट्रोल, और डीजल भी उसी के करीब करीब पहुँचा। इसका आप जानते हैं कि सबसे ज़्यादा असर ट्रांसपोर्ट पर पड़ता है। जब ट्रांसपोर्ट महंगा होता है, माने कि माल ढुलाई, तो हर चीज़ की कीमत बढ़ जाती है। और ये जनरल महंगाई को बढ़ाने में सबसे गजब इसका मतलब प्रभाव पड़ता है। और ये आप कहें कि चुनाव के पहले कम कर दो, चुनाव खत्म होते फिर बढ़ जाता, तो ये चुनाव से लिंक नहीं करना चाहिए। मुझे लगता है पेट्रोल डीजल के दाम जो हैं या क्रूड ऑयल के दाम के हिसाब से उसका फ़ायदा जनता को देना चाहिए। तीसरा वादा था कि 2022 तक हर किसी को पक्का मकान। क्या हुआ पक्का मकान हर किसी का? तीसरा वादा पूरा हुआ, और ये वादा तो लाल किले से दिया गया था, आज तक कोई पक्का मकान नहीं बना। चौथा वादा था डॉलर के मुकाबले रुपया। जब 50 हो गया था मनमोहन सिंह की सरकार में, तो इतना हंगामा हुआ था कि ये देश की इज्जत गिर गई, देश का अपमान हुआ है। रुपया कमज़ोर हो गया, मतलब भारत देश का विश्व में अपमान हो गया। इतना हंगामा, वीडियो आप निकाल के देख लीजिए, क्या क्या नहीं कहा गया था। आज 80 से लेके 85 के बीच में डॉलर है, लेकिन कोई शब्द नहीं बोला जाता, कहीं किसी किस्म का देश का अपमान नहीं हो रहा। तो ये पांचवा वादा भी उसी तरह से, चौथा वादा भी उसी तरह से विफल हुआ। और पांचवा वादा 2 करोड़ रोजगार, जिसको अन्य लोगों ने भी बोला है। तो अब तक जो है मेरे हिसाब से 20 करोड़ नौकरी मिल जानी चाहिए थी। लेकिन अगर आप देखें जो आंकड़े हमारे पास हैं, बेरोजगारी की दर जो 5% होती थी 2014 से पहले, वो 10.09, 10 मतलब 11% के करीब हो गई। ब्लूमबर्ग ने सेंट्रल फॉर मॉनेटरी इंडियन इकोनॉमी के हिसाब से 40 करोड़ लोग घरों में बैठे हैं, बिना नौकरी के 40 करोड़ लोग घरों में बैठे हैं जिनके पास नौकरियां नहीं। और क्वालिटी ऑफ जॉब तो बहुत ही कम है इसके हिसाब से। पिछले साल 1,70,00,000 लोगों ने सेंट्रल गवर्नमेंट की नौकरी के लिए अप्लाई किया था, जिनमें से 38,850 को सिर्फ नौकरी मिली। इंजीनियर जो पढ़ाई लिखाई में जो इंजीनियर हैं, बड़े बड़े उसमें किए हैं, वो सब जो है अप्लाई कर रहे हैं चपरासी की नौकरी, सफाई कर्मचारी की नौकरी। वही अगर अच्छी अर्थव्यवस्था होती तो पढ़े लिखे लोग ऑफिस में, फैक्ट्री में काम कर रहे होते और उनको ज़रूरत नहीं पड़ती कि इस तरह की कोई चीज़ करते हैं। आप देखो ना, 80 करोड़ लोगों को आप मुफ्त अनाज देना पड़ रहा, अच्छी बात है, हम इसका समर्थन करते हैं। लेकिन ये योजना, खाद्य सुरक्षा बिल, जयराम जी यहाँ बैठे हैं,
मनमोहन सिंह सरकार लाए थे और उस समय ये लागू हुआ, तो उसी के प्रावधान की अच्छी बात है, इसमें कोई नहीं, नई सरकारें आती हैं देती हैं, लेकिन जो है इसको चालू रखना चाहिए, देना चाहिए, गरीब को भोजन मिलना चाहिए। लेकिन ये नौबत क्यों आई, ये कभी सोचा? आज हालत ये है कि अगर वो बेचारा परेशान है, वो नौकरी करना चाहता है लेकिन नौकरी नहीं है, वो नहीं मुफ्त अनाज लेना चाहता, वो अपमान के साथ नहीं जीना चाहता, लेकिन हम नौकरी नहीं दे पा रहे, हम रोजगार नहीं दे पा रहे, हम कुछ नहीं कर पा रहे, तो घर में बैठा मजबूरी में। आपने देखा कोरोना के वक्त लाखों लोग पैदल 800-800 किलोमीटर चल के गए, क्योंकि 4 घंटे का नोटिस दिया गया। अगर 2, 4, 5, 10 दिन का नोटिस होता, लोग ट्रेन से पहुंच जाते कैसे? और वो लौट के आए नहीं, कभी कोशिश नहीं कि उनको वापस ले आ जाए, वो गांव में बैठे। तो ये जो है हम देते हैं, अच्छी बात है, लेकिन हमें कम से कम उनको काम देना चाहिए। अगर 10,000 सरकारी नौकरी का अगर वो निकलता है वैकेंसी, तो 4-4 लाख लोग हो जाते हैं, लाठी चार्ज करनी पड़ती है। पुलिस में भर्ती का देख लीजिए, टीचर्स की भर्ती का देख लीजिए, कैसे लोग जो है लाठी चार्ज का सामना करना पड़ता है। तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए, और इस तरह के हमें रोजगार के अवसर पैदा करने चाहिए कि नौबत ना आए। छठा, महंगाई का सबने बोला, डायरेक्ट ने भी बोला, सारे लोगों ने यहाँ पे बोला। कौन चीज़ सस्ती बता दीजिए? न गेहूँ सस्ता, न चावल सस्ता, न तेल सस्ता, न नमक सस्ता, न चीनी सब्जी, न सब्जी दाल सस्ती, न सीमेंट सरिया, ईंट मकान, दही जलेबी तक सस्ती नहीं। तो क्या स्थिति है जब कुछ सस्ता नहीं है, रेल का किराया तक बढ़ रहा? तो जो महंगाई दर है इसको काबू करने की आवश्यकता है, क्योंकि महंगाई जो है बहुत ज़बरदस्त बढ़ती चली जा रही। जो वादा था उसके मुकाबले महंगाई दर नहीं है। 7वां वादा स्वच्छ भारत था, बहुत अच्छी बात, हम सब लोग खुश रहे। 1-2 साल तो अच्छा चला, कई मंत्रियों ने झाड़ू लगाई, सड़कें साफ की, इधर किया उधर किया, खूब फोटो छपे, गांधी जी का चश्मा लगा के जगह जगह होर्डिंग पोस्टर लगे। आज कोई सफाई पे बात ही नहीं हो रही, जगह जगह कूड़े के ढेर हैं, जगह जगह पिए, और टॉयलेट एक प्रेम कथा। इस तरह से फिल्म, जब भी कोई काम शुरू होता है सरकार में, पहले बॉलीवुड से फिल्म बनवा देते हैं, फिर वो फिल्म के जरिए जो है पूरा ही चलता है। और आज टॉयलेट्स की हालत देखो गांव-गांव में, भाजपा के हमारे सांसद बताते हैं कि किस इस तरह की स्थिति है। सर, टॉयलेट्स की स्थिति जो है वो स्टोर बन गए हैं, गोदाम से बन गए, लोग उनमें कपड़ा सामान दूसरी चीज़ें रख रहे हैं, क्योंकि उनमें पानी का समुचित इंतजाम नहीं, उनको सफाई का इंतजाम नहीं, तो वो टॉयलेट से बने बनाए पैसा बर्बाद, उनका कुछ हुआ नहीं। तो मेरा अनुरोध है सरकार से कि टॉयलेट्स की जो बुरी हालत है उसको भी देख के काम करें, है ना। 8वां, सर थोड़ा सा टाइम दे दीजिए, 5 मिनट। 8वां, अभी तो ये तो सर सिर्फ ये, अब तो मैं सुझाव दूंगा, अब कुछ सुझाव भी है ना सरकार में, तो पॉजिटिव डिस्कशन पे हूँ। 8वां वादा सबका साथ सबका विकास। सर, सबका साथ सबका विकास 8वां वादा। सर 10 वादे, फिर उसके बाद सुझाव 10, बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा। तो 8वां वादा सबका साथ सबका विकास। जब मैं योजना मंत्री था तो मोदी जी हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी थे, और वहाँ पे आते तो उन्होंने बहुत अच्छा एक प्रेजेंटेशन किया था योजना में, जिसमें कैसे राज्यों को बिना भेदभाव के केंद्र सरकार को मदद देनी चाहिए। किसी भी विपक्षी दल नहीं सकते सर प्लीज, किसी सरकार को जो है विपक्षी दलों के साथ भेदभाव नहीं होता। बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन था। उसी के बाद फ्लैगशिप स्कीम में सर 20% का, मतलब जो 20% का फ्लेक्सिबिलिटी दी गई थी राज्य सरकारों, उन्हीं के सुझाव के आधार पर। लेकिन आज हम देख रहे हैं जो विपक्ष की सरकार है उनको न जीएसटी का पूरा एलोकेशन मिलता है, न अन्य सहायता नहीं मिलती, और उनके साथ तो सबका साथ सबका विकास कैसे होगा? अगर जो इस तरह से भेदभाव होगा तो बड़ा मुश्किल होगा। और यही नहीं, आपको अगर पता हो कि 9वां वादा जीडीपी ग्रोथ हमारे ज़माने में 7.03 रही और 9 तक टच की थी, अब 5.25 है। हालांकि 6 का क्लेम कर रहे हैं, लेकिन 5.25 का आंकड़ा हमारे पास है। 10वां वादा है जीएसटी, सरल टैक्स के लिए पूरा, जैसे भारत आजाद हुआ, बस यही आखिरी वादा है। इसका तो और लिस्ट लंबी है, नहीं बोलेंगे, लेकिन इसका जीएसटी सर, जीएसटी आपको पता है कि जैसे भारत आजाद हुआ तो उसी तरह आधी रात में कर प्रणाली, कैसी सरल कर प्रणाली है कि पूछो मत। आप व्यापारी से जाके पूछ लीजिए, दुकानदार से पूछ लीजिए, परेशान है जिस तरह का जीएसटी है, जिस तरह से तंग हो रहे हैं इस जीएसटी से। और भाजपा के हमारे लोग ज़्यादा अच्छी तरह जानते हैं, व्यापारी वर्ग काफ़ी इनके साथ रहा, उस सब इनसे रोते हैं आके कि क्या हमारी गति है। ये जीएसटी का सरलीकरण भी होना चाहिए, क्योंकि सर बड़ा जरूरी है। इन्होंने रामायण की चौपाई पर सुधांशु जी ने, तो उसी
सुंदरकांड की हम चौपाई पढ़ते हैं सर। सचिव वैद्य गुर तीन जब अप्रिय बोले भयास, आपका सेक्रेटरी, आपका डॉक्टर और आपका गुरु अगर डर के मारे आपके सामने आपकी तारीफ कर रहा, तो राज धर्म और देह, तो राज धर्म और देह तीन का होत बेगही नाश। इन चौपाई के जवाब में तुलसीदास जी की चौपाई है। अब सर सुझाव राजीव जी, ये बात लागू कहाँ कर रहे हो? हैं? ये बात किसके बारे में कह रहे हो? समझने की है, ये बात समझने की है। और श्री कार्तिकेय शर्मा सर मेरा रह गया सुझाव तो रह गए। एक मिनट सर। श्री कार्तिकेय शर्मा सुनिए सर मेरा सुझाव। सर आई लोग द चेयर लिख कर दे देना। ठीक। राजीव जी, you have taken 50% more time than time allocated. Thank you, Chairman, sir. And every Chairman, time sir. you cross the time limit, I looked at wish to Jairam. express my gratitude to you, allowing me to speak on this very important discussion. 1 second. Last 30 seconds. 30 seconds. एक तो शेयर मार्केट से सब सारी खुशी नहीं होती है। शेयर मार्केट में जो भी हो, लेकिन पैसे का विकेंद्रीकरण होना चाहिए। कुछ लोगों के पास सिमट के नहीं रखना चाहिए, क्योंकि कहते हैं कि 10% लोगों के पास 77% वेल्थ है, वो नहीं होना चाहिए। पहला सुझाव। दूसरा, निर्यात और आयात के मुकाबले निर्यात ज़्यादा, आयात कम है, तो मेरे ख्याल से इसकी वजह से बैलेंस ऑफ पेमेंट, जो करंट अकाउंट डेफिसिट है, ट्रेड डेफिसिट, इस पर सब पे बहुत फर्क पड़ता है। तो सरकार से, वित्त मंत्री से अनुरोध है कि इसका ख्याल रखें कि किसी तरह से हमें निर्यात बढ़ाया जाए और आयात हमारा कम किया जाए। तीसरा, इंफ्रास्ट्रक्चर में गडकरी जी ने बहुत अच्छा प्रयास किया, काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन जो वर्ल्ड बैंक के हिसाब से अभी $1.5 ट्रिलियन का इंफ्रास्ट्रक्चर और बढ़ाना है। तो मेरा सरकार से सुझाव की कोशिश करनी चाहिए। श्री कार्तिकेय शर्मा लास्ट कम ऑन। एक तो रह गया सर, नहीं ईज ऑफ बिजनेस रखिए, कुछ रिजर्व में रखिए। ईज ऑफ बिजनेस में क्या है कि परेशान है लोग ईडी और जीएसटी वालों से, और इसके अलावा आप इधर से बोल रहे हो, कुछ रिजर्व में रखिए, से रेड टेपिज्म से। तो इस पर सर हमें कोशिश करनी चाहिए, ईज ऑफ बिजनेस हमें बढ़ाना चाहिए। और कार्तिकेय जी 3 minutes Sir. Go ahead. Sir, from inheriting an Indian economy which was slipping southwards to being painted as the global bright spot, with the Indian economy registering the fastest growth rate among large economies for 2 successive fiscals, and in the course for the 3rd time in financial year 24, is a stellar achievement of the Modi government that invites deep analysis. The journey of Indian economy was steered clear through the phases of global slowdown in 2019, COVID lockdowns, commodity price steep escalation due to the war in Ukraine and global tensions, and tightening of global financial conditions. India's economy has been the fastest growing among the world's 20 largest economies for the 7 of the past 9 years. And those were only the 7 years in the past 76 years that India has achieved this distinction. India's USD 3.3 trillion GDP overtook that of the UK in the fiscal year ending March 31, 2022, making it the 5th largest economy in the world. The Indian economy, according to the IMF estimates, will emerge as the world's 3rd largest economy by 2027, hopping over Japan and Germany as its GDP crosses US $5 trillion. By 2047, India aspires to be a developed economy. Under the visionary leadership of the Honorable Prime Minister Modi. Sir, I would like to quote a couplet from the famous poet Wasim Barelvi. दरिया का सारा नशा उतरता चला गया, दरिया का सारा नशा उतरता चला गया, वो डुबाते रहे मुझे और मैं उभरता चला गया। दुनिया समझ में आई मगर आई देर से, कच्चा बहुत था रंग उतरता चला गया। Sir, we have achieved success in improving our GDP from 2.3 trillion in 2014 to 3.75 trillion now. On the ground, in 13-14, our per capita income was 68,000 rupees, which has now increased to 1,80,000 rupees in 22-23. In 2014, the capital expenditure was 3.9 lakh crores, and the union government under the leadership of Prime Minister has increased it to rupees 10 lakh crores by 2023. A senior member of parliament before me spoke about the issue of states. The union government has increased the allocation to the states under the various schemes
from rupees 30 lakh crores during 2004 to 14 to about 100 lakh crores in the 9 years from 14 to 23. Between 2004 and 14, tax collections was 19 lakh crores, which has now increased to 70 lakh crores in the 9 years from 14 to 23. GST collection has reached rupees 1.87 lakh crores in April 2023, and monthly average GST collection is 1.69 lakh crores. Our foreign exchange reserves were 309 billion. Today they stand at 593 billion. So, sectors like hydrogen, semiconductor, electric vehicles, solar, energy, defense, Sharma ji, drone space, mining... and please conclude, Sharma ji, please. Thank you, sir. Next speaker is GVL Narasimha Rao garu. GVL Narasimha Rao garu. Speak loudly, sir. Speak loudly. Thank you, Chairman, sir. When we speak about the resurgence of Indian economy, it is important for us to reflect on India's historical economic stature and see in that trend, in that over centuries, how India has become, how over decades India has become stronger. Today, we are certainly celebrating as the 5th largest economy. This is a great achievement for the country. We have been able to, from the 10th position in 2014, in a matter of few years, we have reached the 5th largest economy position today. And a report yesterday by the S&P, it states how India is going to be the 3rd largest economy by 2030. So by the time Honorable Prime Minister completes his term in 2029 and gets ready for his 4th term, India would have become the 3rd largest economy in the world. And if you go back a few centuries ago, in ancient India, we were the largest economy of the world. We were known as the golden bird, Sone ki chidiya, until 5th century AD. This remained India's position in the global, in the global scenario. But 1,000 years of rule by invaders, by foreign rulers, has robbed India not only of its rich wealth, it also robbed India of its confidence. So when Honorable Prime Minister took over as the Prime Minister of the country, he has given a complete new direction to India's economy. He has instilled confidence in India's growth story, and Amrit Kal has truly begun. We are certainly passing through this Amrit Kal. And Atmanirbhar Bharat is the strategy for achieving India's preeminent position in the global economy. And I would like to tell our friends from across the treasury benches, the opposition benches, I'd like them to know. In 2004, when UPA came to power, India was the 12th largest economy. They were in power for 5 years until 2009. India moved from the 12th to the 11th rank. And they remained in power for another 5 years. In those 5 years, they could take India from the 11th to only 10th rank. But look at the geometric growth experienced during the rule of the Honorable Prime Minister. India, I think you have blamed it as Hindu rate of growth. You have used governments of the Congress denomination in the early years of independence have used this term Hindu growth, Hindu rate of growth, to deride Hindu religion. But during 10 years of your rule, what have you done to Indian economy? You have not been able to. You claim to have given great growth during the years of Manmohan Singh regime, but all that India could move was from the 12th rank to the 11th rank, going on to 10th rank. But Prime Minister Modi ji, in a manner of 9 years,
he has taken India to the 5th rank, and in a manner of years, by the completion of his next term, we are going to be the 3rd largest economy in the world. This is certainly a huge achievement for the country, and that is what is giving the BJP and Honorable Prime Minister and his leadership a huge fillip in India's elections. So, inflation. Our friends, I have busted their theory of growth. We gave growth. We were high growth. We gave a high growth economy, and I told them how India's position remained globally at the same, almost at the same level through 10 years of UPA. And let me now bust their inflation claims. During the first 5 years of Prime Minister Narendra Modi ji, the average inflation rate in India was only 4.4%, well below the RBI ordained level, which is range between 4 to 6%. Look at the Congress party's performance. Look at the UPA performance. What was the inflation levels in the UPA rule? In 4 years, between 2004 and 2014, inflation levels were well below 10%. Double-digit inflation, what UPA has given this country. It was 13.9% in 2009 and 10. And under Prime Minister Modi ji, at a time when the world is experiencing one of the highest levels of inflation, India has been able to contain inflation well below even the RBI levels. Let me give you some numbers. The US inflation level is above 7%. Let me give you the exact number. UK, US experienced over 7%, highest inflation in 40 years. UK is experiencing one of the highest inflations in the last 30 years. It is currently 7.9%. It was in June 2023, which is a high after 41 years. Europe is also struggling with inflation. Germany, which is Europe's largest economy, also has one of the highest inflation levels. It is only India which has not only maintained high growth during the post-COVID period, it has also maintained very, very low to moderate levels of inflation. So the friends from the Congress who claim there is high inflation must look back, because any comparisons that you do, any comparison of any performance, you have to do over time. You have to do spatially, and you have to do cross-sectionally. And time series performance clearly tells us how Congress governments have given only inflation and not a real growth. Let me give some more numbers. One of the highest levels of inflation in India's post-independent India were 19.3% in 91-92 under a Congress leadership, 95-96, 12.8%, and under Srimati Indira Gandhi, it even touched double-digit. It crossed even 30% for 2 years. So this is the Congress story. So every time Congress comes to power, they bring inflation along, and it is only the BJP-led governments, the NDA governments under Prime Minister Narendra Modi ji, which have given a relief to the common man. Jab Congress aati hai, tab mehengai lati hai. I think this would be a nice slogan that would go along with them, because in Karnataka, where they came to power only in early this year, in May this year, soon after they came to power, they hiked milk prices by 3 rupees per litre. They hiked electricity charges, though through a very indirect mechanism, by increasing fuel and power purchase cost elements in this. They have increased every commodity that a common man needs for his survival. So the Congress party's only guarantee is mehengai guarantee.
is inflation guarantee and nothing else. So, if you look at our performance, India's GDP growth for the last year was 7.2%, the fastest growing economy of all the major economies in the world. And this has been possible. This high growth trajectory has become possible because of a measured response, because of a judicious economic policies that the government pursued, mainly during the COVID and post-COVID era. And friends from the opposition, all of them claim that India's economy can only be revived by putting money directly into the hands of the people, by giving helicopter money. But that kind of any country, all countries that have followed that prescription have actually failed. And these are the countries which are experiencing one of the highest inflation levels in half a century. Prime Minister Narendra Modi ji's economic vision and economic policy is today being hailed as the best in the entire world. What has made this kind of economic transformation, this kind of a turnaround possible? Let me give a few illustrations. Let me cite a few cases. One, the Atmanirbhar vision. I think COVID, which is a challenging period for the entire globe, was used to unveil a new economic vision that was Atmanirbhar Bharat vision that has actually helped India transform its economy. Also, our governance principle, Prime Minister's governance principle of Sabka Saath, Sabka Vikas, Sabka Vishwas, actually translated into money reaching to the most needy people and ensuring that they do not suffer the hardships of the COVID period, and they are able to lead a very happy and a healthy life. Second, a digital revolution. I think the whole world is overawed by the success of Indian economic digital revolution. Today, in October 2023, we have touched an all-time high of 11.4 billion UPI transactions, crossing even 10 billion transactions. In October 2023, we have touched an all-time high of 11.4 billion UPI transactions, crossing even 10 billion transactions that we got successively for the 3 months. And this resulted in a digital transaction of over 17.16 lakh crore. So this certainly was a contributor. It transformed Indian economy into a cash-based economy, into a digital economy. Clearing the banking mess, because what the UPA left for Narendra Modi ji was a banking sector in complete mess. This government has not only cleaned up the banking sector, it has actually infused dynamism into the sector. Today, the Indian banking sector is one of the best performing banking sectors anywhere in the world. While many banks, even central banks, have experienced difficulties abroad, Indian economy, Indian banking sector is going through its best periods. Gross NPAs and net NPAs are at their decadal lows. And public sector banks have their resources have now been used for acting as pillars of Jan Kalyan. In fact, public sector banks have recorded profits of over 1 lakh crore in the last financial year, and that money has been plowed into financing the welfare of the poor. Also, we have seen how a transparent regime like the GST, which is a huge contribution of Honorable Prime Minister. GST collections are at their highest levels. 1.72 lakh crore was the GST collection in October 2023. This is the second highest ever. A few months ago, a year ago, 1 lakh crore also was considered to be a very important milestone to be achieved. And today, we have crossed 1.73 lakh crore. This clearly shows the buoyancy in the Indian economy.
It shows the resurgence in the Indian economy, and anyone who disputes it can only get their validation in these numbers. There is also a surge in direct tax income, direct tax revenues. The direct tax revenues are 10.6 lakh crore till 9th November, as against 10.6 lakh crore previous year during the same period, which has registered a near 22% healthy growth. This clearly shows even the net growth in corporate income tax collections shows a 12.5% rise. So there is a resurgence in the Indian economy across all the sectors. The investments, both the private investment and the foreign direct investment, have shown a big improvement. The foreign direct investment during the UPA 10 years, during the UPA 10 years was $304 billion, which has more than doubled to $628 billion so far. This is an increase of more than 100%. So with this kind of a performance, the country is poised to achieve its economic goals and very soon to become third largest economy in the world and going back to achieving India's ancient glory under Prime Minister Narendra Modi ji. Yehi Modi ji ki guarantee hai. Thank you. Thank you very much. Thank you. Next speaker is Dr. Ami Yazni. Ji, Madam. Hearing the Treasury benches speak about the state of the economy, and they speak only from 2014 onwards, I would like to remind them that we have to go back to 1991 when we had the new economic policy. That is the point when the borders for economy were opened for foreign investment to come in the country. When foreign investment policy was taken, at that time, Dr. Manmohan Singh ji was the finance minister. I would just like to point out a few things before I just come to the main 2 points. Structural reforms were ushered in, and the structural reforms take a long time to result, and it took a long time. It takes always, you look at the world economy in any way. So this 1991 was the starting point. So we may have to refer to these points and not just jump to that we have become independent only in 2014. Now, coming to the state of economy today, 3 main factors, 3 main areas, which I would like to say in a short time. First is the farmer section, the agriculture sector. Some of the data is not even in the formal economy because they are landless farmers who are working on farms. That productivity is not reflecting in the formal economy. That farmer section or that particular sector is devoid of any reforms today. They are wanting some kind of reforms which is not reflecting in the economy, and we are seeing landless farmers. We are seeing farmers who are wanting some kind of reforms, and they want credit, they want equipments and several other things. The second sector, which is very important and which nobody is talking about, is the MSME sector. The MSME sector has got 630 lakh units, which are micro units. Post-COVID, quite a few high number, I do not want to go into the data of 15,000 or 20,000 have closed down. Where is the credit facility? You talk about schemes, but have these schemes percolated to those units? Have those units revived? Have the labor force been able to re-enter these particular units? Whether the technology transfer, and you are continuously talking about comparing with Germany, Europe, UK, US, and you want to take only talk about foreign. Have you tried to look internally, locally? You are giving food, ration, to more than 50% of the population. 80 crores people are getting free ration. What about employment? Coming to employment later on, back to MSME sector. Where are the credit facilities? Where is the credit which is required to revive a unit and give them life? And this
MSME sector is the backbone of the economy. And you are not speaking about this backbone of the economy. You are not speaking of the MSME sector. You are not talking about technology transfer to this particular section. And you are not even having the right data on the MSME, that whether they are surviving, they are going to revive, or they are going to see that the economy gets strengthened. Sir, the third is the gig workers. We have not got a workforce which is regular. They don't even get retirement perks. They don't get any health care because they are gig workers. You talk about these gig workers, they are not regular workers because industry does not employ them. You have graduates who come out of universities because you have got tremendous universities flourishing, private universities. And you have got different economic education policies for these universities. The graduates who come out are unemployed youth. Why are the youngsters of our country going abroad? I do not want to give the numbers that form the diaspora outside, but what about looking internally at our economy? All the data which is coming is foreign direct investment, export, but then you have to look at what has happened to export and import. The export has gone down, you are importing. So where is Make in India? Where is Make in India? And let me tell you, sir, all these schemes which they are naming, they were started by UPA. This National Manufacturing Policy 2011 became Make in India. Now, if you are making in India, where are the products? What are you doing? Why is there so much import of these components? Why are you not manufacturing? Why are you not employing your youth? Why are you not equipping them so that the economy becomes sound? And you go on talking about third largest economy. So let me tell you, sir, that our country became the third largest economy in purchasing power parity in 2011. This indicates that India's overall economic output, adjusted for the relative cost of living, was the third highest in the world. This shows that it implies that a higher standard of living for Indian citizens. Today, we talk about poverty, but we do not have poverty alleviating programs. On the contrary, we are making them handicapped by giving rations. We are not equipping them, we are not empowering them to become able-bodied people who can be employed. You are not creating employment opportunities, but you want to talk about schemes that you have renamed. So in the end, I would like to say that you have to look at the global hunger index. Where do we stand? We have to look at malnutrition for children. Our children are being wasted, stunted growth. You have to look at female infanticide. You have to look at mortality for children. What are we doing in the healthcare system? So when you talk about the state of the economy, you don't only have to talk about comparing with other countries, you have to look inward. When you make your economy strong, then you can speak about the state of the economy and not the ruling dispensation's head or people who are manning certain ministries. It's not their work, it's the work of the scheme, and it was from 1991 onwards that the institutions were put in place. These institutions acted as regulatory mechanisms. Where are those institutions? Why are these institutions not getting accountable for not performing? These are these non-performing assets, apart from the non-performing assets of the bank. We have not been able to bring that money back. Forget about the black money you talked about. Forget about 15 lakhs going to each one's account. We have not been able to say anything about that. The ruling dispensation has got some kind of a fixation. They are living post-2014. They forget their own childhood, that they studied in good educational institutions. They don't give credit to their own parents, their own grandparents who got freedom to this country, and are only having a straight-jacketed formula post-2014. But what have you done after 2014? Where is that education required? Where is the skill which is required to equip our youngsters to see that they become good employers, they can also create employment for other people? Where is that economy's backbone? MSME, where have you done that revival? You talk about portals, Digital India, where is that computer education? And what are these portals doing? The data on Udyam portal shows that the industries that closed down, the MSME, there is no detail. The licenses got cancelled. They couldn't revive. And they're all sitting. What about the cooperatives? You want to start at the local level, at the village level. They don't get revived. You want to give employment to women. Where are the women getting employment? They have not got a re-entry in the workforce. They cannot get back in the workforce post-COVID. They're sitting at home. So what are you doing
for empowerment of women. You may bring the reservation bill with a caveat, but where is the empowerment for women? How will she become economically empowered? You are not giving her health care. You are not giving her meals which are nutritious. So, sir, these are the factors which need a proper data. Where is the data, sir? There is no data. Where are those institutions providing data on all these indicators? These indicators will tell the state of the economy of this country, not who is manning the country or who are manning the institutions. And so one last point, sir. Please that conclude. unless and until we change the game, we cannot succeed by changing the names. You may change the name of all the policies, of all the schemes, but if you cannot perform, you become a non-performing asset. The state of the economy, the students, the youngsters of this country are reading, they're watching, they're looking at all the Nehruvian era and the Rajiv Gandhi era for computerization, for all kinds of digital work which is now happening on that day. Please was already conclude, Dr. created. Yamni. And that is why the state of the economy is not as the way it is projected by the ruling dispensation. Please. Thank you very much, sir. Thank you. Next speaker is Shri Jose K. Mani ji. 3 minutes. So the economic well-being of our citizens transcends political affiliations. It is a matter of national urgency. The economic indicator unfortunately paint a concerning picture. While the government claims economic growth, the rising unemployment rate tell a different story, impacting the lives of millions. So, to assess whether an economy is growing, to assess economic activity, to find out whether the economy is robust, we need to assess the lower strata of people, which consist of the farmers, laborers, and workers. Whether the standard of living has improved. And if you go in the plight of these strata of people, we find that they are struggling for existence, they are struggling for survival, they are struggling to make the ends meet. And not only that, we find that from the data all here, we find that the gap between the haves and have-nots have increased. And about the 40% of the national wealth consists of even 1% of the population. That shows that the wealth is being amassed by a smaller portion of the population. So this really shows that the government is pro-corporate, pro-industry. There is nothing wrong in pro-industry, but it should not be at the expense of the farmers, the lower strata of the people. So when you take the agrarian crisis continues to hunt our farmers, suicide and distress in the rural sector persist. According to the National Crime Records Bureau, it states that the report states that 154 people, that is the farmers and daily wage laborers in India, commit suicide. It's a huge number. I think it is the largest in the world. So definitely there is something wrong with the system. We need to find, and really when you go in deep, we can find that the economy, when the activities are there, it is not translated into the farmers. Please conclude, Jose. Yeah. Please conclude, Jose K. Mani, please. Sir, please. When the live example, I can tell you that the rubber farmers of Kerala, sir, you know the rubber farmers. Please, sir, 1 minute, sir. 1 minute, sir. Sir, sir, it is a strategic product. That's why in 1947 the Rubber Act was enacted and the rubber board, electron rubber board was introduced. But we know that
the price please conclude. of Your the time natural is rubber over. can be Please, improved Maniji, please. only at the policy of the central government. If there is no, we find that any states where is no political gain by the BJP, they will not give any development at all. Please. It is discrimination. Please, we Maniji, need please to conclude. see the nation as one. If there is no political gain, no development, in the farmers are not helped. Please. So have a heart, actually help the rubber farmers. It is for the nation's development. Thank you very much. Next speaker is Sri Mahesh Jatmalani ji, please. Not present. Not present. Next speaker is Sri Vaiko ji, MDMK. Mr. Vice Chairman, sir. 3 minutes, Vaiko ji, please. I'm so thankful to you for giving me this opportunity to participate in the discussion on the economic situation in the country. India's current GDP is $3.75 trillion US, which the present BJP government claims it would go to $5 trillion in 2025. But who will be benefited by this growth? It is a jobless growth. Unemployment is increasing. As on October 2023, it is 10.505%. The educated unemployed youth in the country are struggling to get employment opportunities. We are witnessing every year 1 crore job loss in our country, and the wages of the workers are falling drastically. We are witnessing the continuing agrarian crisis. You have promised doubling the farmers' income, but unfortunately, farmers' income did not get doubled, but at the same time, suicides of the farmers got doubled. Our banks are in deep crisis. What is the remedy that they are putting forward? The bank NPAs are rising, and the government is providing further concessions to the corporates to write off their loans, but they are not prepared to reduce or write off the loans of farmers, students, and small entrepreneurs in the MSME sector. This country has also faced inflationary pressures over the years, influencing the current unemployment rate in India. High inflation rates can erode the purchasing power of consumers, leading to reduced demand for goods and services. This can have a cascading effect on business, resulting in cost-cutting measures, including layoffs and hiring and firing jobs, leading to higher unemployment rates. Already there is a decline growth of 4.3% against 15.5% year over year in trade. Transport, hotels and communications industry. As I said, inflationary pressures lead to price rise in the essential commodities. Raw cotton prices increase in the inputs for agriculture and livestock. Higher GST rate for common items are reducing the purchasing power of the common man. The structure of public sector undertakings in your regime is crumbling. One by one, the public sector unit is sold to the corporate giants. When the crude oil is sold at a lower price in the international market, I am not able to understand why the union government is not reducing petroleum retail price to the common people. The price of LPG has been increased manifold in the last 2 years, and it is now beyond the affordability of the poor people. You have a scheme called Ujjwala, but how many people are registered in that scheme? And in that also you have restricted the number of cylinders in the year. So the government should bring down the price of petrol, diesel and LPG, keeping the interests of the common man. The spinning industry in Tamil Nadu has been facing unprecedented losses for several months. For the first time in the last 20 years, exports of yarn and textiles have declined by around 28%. A mill having about 10,000 spindles would produce 2,500 kilograms of yarn per day, which is incurring a loss of 1 lakh per day. The structure of state finance is also very much affected. After the introduction of GST, the revenue has come down. There is no proper distribution of GST collections to the states. The states which are supporting the ruling party at the center are given a favorable position as compared to the states which are ruled by the opposition parties. Our state, Tamil Nadu, is not getting its rightful due from the, from the GST collections despite demands from the state government. The recent Migjam cyclone has created havoc
and the coastal districts of Tamil Nadu, apart from Andhra Pradesh. Our fishermen have lost their livelihood for the last 6 days. Their boats and nets have been washed away. The farmers have lost their standing crops due to waterlogging. In the city of Chennai, the whole city was submerged due to unprecedented heavy rains for the last 2 days. Though the state government is doing its best by providing shelter and food at the community centers for the people living in the low-lying areas, it is the due fury of mutual nature, which is a big challenge. The union government should rescue and relief materials and financial assistance to the state without delay. Very important point. धन्यवाद। माननीय श्री समीर उरांव जी। बहुत बहुत धन्यवाद उपसभापति महोदया, आपने आज के भारतीय अर्थव्यवस्था संबंधित विषय पर सदन में चर्चा करने के लिए भाग लेने का अवसर आपने दिया है। उपसभापति महोदया, पिछले 9 वर्षों में माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमारी सरकार ने विभिन्न निर्णय के कारण आज भारत की अर्थव्यवस्था को विश्व में सबसे आगे बढ़ाया है और बहुत तेजी से उभरती अर्थव्यवस्था में से एक है। उपसभापति महोदया, आज विश्व में भारतीय अर्थव्यवस्था 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। समूचे विश्व में पिछले कुछ वर्षों में रूस, यूक्रेन युद्ध, इजराइल, हमास युद्ध, कोरोना महामारी जैसे अनेकों संकट का सामना करना पड़ा है। इसके बावजूद इन सारे समस्याओं के कारण विश्व के लगभग सभी देशों की अर्थव्यवस्थाओं पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा है। परंतु माननीय प्रधानमंत्री जी के सोच एवं आर्थिक अनुशासन के कारण इन अनेकों संकटों का सामना करने के पश्चात भी भारत की अर्थव्यवस्थाएं स्थिरता के साथ समूचे विश्व का मार्गदर्शन कर रही है। उपसभापति महोदया, आज सरकार की मजबूत आयात निर्यात नीतियों के कारण देश में विदेशी मुद्रा का भंडार अपने देश के अंदर उच्च स्तर पर हो रहा है। सरकार द्वारा अनेक जन कल्याणकारी योजनाओं का संचालन इस देश के अंदर अपने यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में हो रहा है। सरकार द्वारा ऐसे देश के अंदर जो जरूरतमंद लोगों को मुफ्त में अनाज वितरण करके असहाय लोगों को, विकलांग लोगों को और वृद्ध लोगों को पेंशन योजनाओं के माध्यम से ये लाभ प्रदान करने का भी काम हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हो रहा है। इतने बड़े स्तर पर इन सामाजिक योजनाओं पर खर्च के बाद भी देश की अर्थव्यवस्था लगभग सकारात्मक रूप से आगे बढ़ रहा है। उपसभापति महोदया, सरकार द्वारा एक देश एक टैक्स के रूप में जीएसटी को लागू किया गया। जीएसटी को लागू करने के पश्चात व्यापारियों को टैक्स के नियमों में से सरलता मिली है। इसके परिणाम स्वरूप इस वित्तीय वर्ष में सरकार को ऐतिहासिक रूप से अब तक के सबसे बड़े जीएसटी संग्रह प्राप्त हुआ है। वर्ल्ड बैंक तथा इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जैसे संस्थाओं द्वारा आगे के वर्षों में भी भारतीय अर्थव्यवस्था को विश्व में सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक देखा जा रहा है। उपसभापति महोदया, इसी के कारण आज देश के प्रत्येक क्षेत्र में विदेशी निवेश में वृद्धि हुई है। विश्व के अनेक देशों की तुलना में पिछले कुछ वर्षों में सर्वाधिक विदेशी निवेश की यदि किसी देश को प्राप्त हुआ है तो वह भारत है। उपसभापति महोदया, पेंडेमिक आवर में जिस प्रकार से हमारे प्रधानमंत्री जी ने वोकल फॉर लोकल के सूत्रों के आधार पर हमारे स्थानीय उत्पादकता को किस प्रकार से
यहाँ के युवकों के माध्यम से जो आगे बढ़ाया है, जैसे जो है हम जनजाति क्षेत्र से आते हैं, झारखंड से आते हैं, झारखंड में वन क्षेत्र है, वहाँ जो है वनोत्पाद है, नॉन टिम्बर फॉरेस्ट प्रोड्यूस है। वहाँ किस प्रकार से हमारे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जनजाति कार्य मंत्रालय में जो है ट्राइफेड का वंधन विकास केंद्र के माध्यम से वहाँ के जनजाति क्षेत्रों में हमारे माताएं युवकों ने जिस प्रकार से ऐसे वन उपज को कलेक्शन करके उसको प्रोसेसिंग करके उसको विपणन के क्षेत्र में आगे बढ़ाया। प्रधानमंत्री जी ने पेंडेमिक आवर में जिस प्रकार से यहाँ की उत्पादकता, जो पौष्टिकता और यहाँ के जो खाद्यान्न पदार्थों में जो ह्यूमिडिटी पावर था, उसको दुनिया के देशों में वो मेडिकल इक्विपमेंट के साथ में पहुँचाने का काम किया और वहाँ उनकी उत्पादकता बढ़ने के साथ आमदनी बढ़ रहा है। आज हम गाँव में 10 साल पहले जाता थे तो हम उस समय कुछ नहीं देखते थे। आज जब 10 साल के बाद मैं जाता हूँ इन 9 वर्षों के अंदर में, तो मैं पूछता हूँ कि भाई ये क्या है, तो नहीं, हम लोग एक मिनी राइस मिल बैठा है यहाँ पे, सारे लोग हम लोग मिल करके आसपास के जो भी धान का उपज होता है उसको हम यहाँ चावल बनाते हैं, इससे हमारी आमदनी बढ़ रही है। तो ऐसे अर्थव्यवस्था में एक गांव भी सहभागिता हो करके ये भारत की अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने में सहभागी हो रहे हैं। इसलिए उपसभापति महोदया, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जिस प्रकार से 2014 में जब हमारे माननीय मोदी जी ने प्रधानमंत्री बने थे, तब भारत की डीजीपी 112 लाख करोड़ के आसपास थी। आज भारत की जीडीपी 300 लाख करोड़ के आसपास हो गया है। 2025 तक सरकार ने भारत को $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाने का लक्ष्य रखा है। सरकार की आर्थिक उपलब्धियां का लाभ देश की आम जनता को भी हुआ है। 2014 में देश में प्रति व्यक्ति आय लगभग 17,000 रुपये थी। पिछले 9 वर्षों में सरकार की नीतियों के कारण, प्रधानमंत्री जी की दृढ़ इच्छा शक्ति के कारण, उनके मेहनत के कारण आज प्रति व्यक्ति आय लगभग 1,75,000 हो गई है। उपसभापति महोदया, पिछले 9 वर्षों में देश के एक्सपोर्ट लगभग दुगुना हो गया है। सरकार निरंतर देश की आर्थिक उन्नति के लिए हर मोर्चे पर कार्य कर रही है। अतः मुझे विश्वास है कि सरकार की आर्थिक नियत व नीति के कारण जल्द ही भारत विश्व की सर्वोच्च अर्थव्यवस्था में पहुंचेगा और निश्चित रूप से आज देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी इन दिशाओं पर एक भारत श्रेष्ठ भारत और आत्मनिर्भर भारत, स्वावलंबी भारत की यात्रा कर रहे हैं। उसमें पूरे देश भर के लोग उनके यात्रा में सहभागी होकर के आगे बढ़ रहे हैं। निश्चित रूप से विश्वास है कि हम ये आने वाले दिनों में, ये 2024 में हम निश्चित रूप से अर्थव्यवस्था की दृष्टि से हम तीसरे स्थान पर पहुंचेंगे और उसके और आगे जाने पर प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हम जो है पहले स्थान तक भी पहुंच सकते हैं, ऐसा विश्वास है। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। माननीय श्री जी.के. वासन जी। Thank you, Madam. The country has demonstrated resilience and adaptability in face of persistent global challenges. We all know natural disasters like COVID has cost the economy of this country. Even yesterday in Tamil Nadu, in Chennai and neighboring districts of Chennai, because of cyclone-triggered rain, water bodies have been overflowing and surplus water release has caused damage to the infrastructure of Chennai and nearby districts. Madam, the Army, NDRF and state agencies are involved in the relief and resume operations. But the damage caused for the Chennai city and the neighboring districts need more attention immediately.
I request the central government to take care Please trust of us. the need of the... What happens Yes. in future also will be in the best interest of the people of Jammu and Kashmir. We are now heading into very crucial 25 years before we end up in 2047. And Jammu Kashmir has started discovering its unexplored resources. Today we have a huge lithium store which has been discovered in Riyasi. We have the highest railway bridge in Jammu and Kashmir of the world. We have the longest Asia tunnel, road tunnel, Chennai Nashri, which is named after Sama Prasad Mukherjee. We have the Purple Revolution, which is being talked over all over the world, born from Jammu and Kashmir, Gulmarg and Bhadrawa, the lavender. So many new avenues and resources which had remained unexplored earlier, thanks to Prime Minister Modi's drive, his push, and also the technology that we are discovering that. And I'm sure in the next 25 years, when India reaches that pedestal which we have envisaged, Jammu Kashmir is going to add maximum value to achieve that target. So we have a very critical role. I think I call upon all of us to become a party of that journey of ascent of India, of which Jammu and Kashmir is going to play a lead role. Thank you, Speaker, sir. Thank you. Thank you. Shri Shrang Appa Bani. माननीय अध्यक्ष महोदय, जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन संशोधन विधेयक 2023 और जम्मू और कश्मीर आरक्षण विधेयक 2023 पर 4 साल बाद केंद्र सरकार ने सामाजिक बदलाव लाने का ये बड़ा कदम उठाए। सरकार ने वंचित पिछड़े वर्गों को दूसरे राज्यों की तहत संवैधानिक अधिकार देने की दिशा और कदम बढ़ाए, जिसका मैं स्वागत करता हूं। माननीय अध्यक्ष जी, 5-6 अगस्त 2019 में भारतीय संसद में जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा देने वाले अनुच्छेद 370-35 को रद्द किया है, जो कि केंद्र सरकार का एक बहुत ही बड़ा सराहनीय कदम था, जिसके परिणाम स्वरूप जम्मू और कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेशों में जम्मू और कश्मीर और लद्दाख हूं, क्योंकि कभी ऐसा लगता नहीं था कि जम्मू और कश्मीर में 370 कलम ये निरस्त किया जाएगा, बल्कि जम्मू और कश्मीर में जो पीड़ित है उनकी जो हालत देखी जाए तो जम्मू संशोधन विधेयक के जरिए केंद्र सरकार ने प्रदेश के एसटी की सूची में पहाड़ी, गड्ढा, ब्राह्मण, पदारी, जनजाति और कोली समुदाय को शामिल करने का प्रावधान किया है। ये बहुत ही बड़ा सराहनीय कदम है। माननीय अध्यक्ष महोदय, कुछ ही प्रवासियों ने दिल्ली जब जम्मू कश्मीर में आतंकवादी हमले हुए थे, तब दिल्ली, बेंगलोर और पुणे जाने का विकल्प जम्मू कश्मीर ने पीड़ितों में लिया। जम्मू और कश्मीर सरकार के पास उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार वर्तमान में 46,517 परिवार है, जिनमें 1,58,976 व्यक्ति जम्मू और कश्मीर सरकार के राहत संगठन के साथ पंजीकृत है, जिन्होंने पिछले 3 दशकों में पंजीकरण किया है। जैसे कि मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि जम्मू और कश्मीर का जो पीड़ित है, खासकर जम्मू कश्मीर में रह रहे पीड़ित जनजाति है, उसमें ज्यादा कर कश्मीरी हिंदुओं की हत्या हुई और कश्मीरी हिंदू को अन्य राज्यों में पलायन करना पड़ा। ऐसे कई सारे परिवार है कि जिस परिवार के कुछ लोग भी बचे नहीं। माननीय प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री जी का मैं आभार प्रकट करना चाहता हूं कि कई पार्टियों को ऐसा नहीं लग रहा था कि 370 कदम हटाया जाएगा और जम्मू और कश्मीर के परिवारों और लोगों को राहत मिलेगी। आज केवल ये राहत नहीं तो वहां पर आगे चलकर राजनीतिक रिजर्वेशन भी वहां के लोगों को मिलेगा
पूरी तरह से आज अगर जम्मू और कश्मीर में देखा जाए तो लोग माननीय मोदी जी को बधाई देते हैं, क्योंकि गोली के बंदूक के नोक पर लोग जी रहे थे आज तक। आज पूरी तरह से शांति से लोग जी रहे। जिन्होंने पत्थर हाथ में लिया था वो आज उनके हाथ को काम देने का प्रयास माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जम्मू और कश्मीर के लोगों में हो रहा है। तो मैं इसलिए माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय गृह मंत्री को धन्यवाद देना चाहता हूं। ये भी बात मैं यहाँ रख रहा हूं, जब 1990 में ये सब हुआ तब महाराष्ट्र गवर्नमेंट में 1995 में भारतीय जनता पक्ष शिवसेना की सरकार आई, तब बाला साहब के नेतृत्व में पीड़ित पंडितों को खासकर महाराष्ट्र में एजुकेशन रिजर्वेशन देने का प्रयास किया। आज भी महाराष्ट्र में जितने पीड़ित पंडित रहते हैं उसके घर में बाला साहब ठाकरे का फोटो है, क्योंकि उसमें उनको सभी परिवार को एजुकेशन रिजर्वेशन 1% महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने दिया है। मैं ये भी कहना चाहता हूं कि कई ऐसे राज्य हैं, उन राज्यों में जाति के आधार पर आंदोलन होते हैं, जाति के आधार पर कोई बंटवारा चाहता है। मैं खासकर इससे लगकर महाराष्ट्र की एक बात कहना चाहता हूं। महाराष्ट्र में मराठा समाज काफी बड़ा संख्या में, आज मराठा समाज वहां आंदोलन कर रहे हैं। ओबीसी समाज भी भारी मात्रा में, समाज में दूरी ना हो इसलिए खासकर केंद्र सरकार ने, माननीय प्रधानमंत्री ने ध्यान देके समझौता समाज में करना चाहिए। बैठ के दोनों समाज में किसका रिजर्वेशन कम नहीं करके पूरी तरह से मराठा समाज के जितने पीड़ित है, शैक्षणिक दृष्टिकोण से जिनको आरक्षण देने की आवश्यकता है, उसमें राज्य सरकार से मिलकर आप समझौता कर मराठा समाज और ओबीसी समाज को न्याय देने की कोशिश करनी चाहिए। माननीय राज्य के मुख्यमंत्री एकनाथ जी शिंदे साहब, उनके ऊपर खासकर भरोसा है लोगों का, वो प्रयास कर रहे हैं, लेकिन केंद्र की इस माध्यम से मैं कहना चाहता हूं, केंद्र की सहायता इसमें आवश्यक है। फिर से माननीय प्रधानमंत्री का मैं आभार प्रकट करना चाहता हूं, क्योंकि जम्मू और कश्मीर सर के राज्य में एक शांतता बहाल करने का प्रयास माननीय प्रधानमंत्री ने किया है। विपक्ष के कई लोग कुछ भी कहने दो, लेकिन मैं 1 साल पहले जम्मू कश्मीर में गया था, तब मैं देखा है लोगों के दिल का डर हट गया है। लोगों के दिल में पूरी तरह से माननीय प्रधानमंत्री की द्वारा एक सहायता करने जैसा एक माहौल है। और आगे चलकर देश में या विदेश में जितने दादा पर्यटक आते, इतने सालों में नहीं आए, 3 दशकों से, आज विदेश से ही पर्यटक जम्मू कश्मीर में आएगी और पर्यटक आके ये पूरे देश के आर्थिक रूप से सहायता भी इस द्वारा होगी। मैं फिर से माननीय प्रधानमंत्री का धन्यवाद देना चाहता हूं और ये दोनों विधेयक पर मेरी पार्टी शिवसेना की तरफ से मैं उसको सहमति देना चाहता हूं। धन्यवाद। आरिफ। Thank you for giving the opportunity to speak on Jammu and Kashmir Reorganization Amendment Bill 2023 and the Kashmir Reservation Amendment Bill 2023 to express the views of the CPIM. Sir, these bills are nothing but an attempt by this government to keep alive the Kashmir issue ahead of the coming parliament elections. Sir, we have no objection in providing reservation for communities for nominating members of unrepresented communities, but that should not force skewed political interests. Sir, I wish to draw your attention on how this government treated the Anglo-Indian community in this country by taking away the nominated seats from them in Lok Sabha as well as state assemblies, including Kerala a few years ago, which existed there since 1951. Sir, about the nomination, giving the power to the Lieutenant Governor to nominate members is nothing but giving the BJP to nominate members. Sir, coming to the reservation of the scheduled tribes, we know the double standards of the
applied by the BJP government. So we have seen the government boasting about the electing a president from the scheduled tribe community, at the same time kept away her from the inaugural ceremony of this new parliament building. So no, sir. President is the sole custodian of the parliament. President giving assent to the bills. President giving, sending the summons to the members coming here, and President alone addressing the both parliament houses, sir, both the houses. So first and most eligible person inaugurate the parliament, but you purposely kept away from the inaugural ceremony, sir. And now you are speaking about the reservation given to the scheduled tribes. Sir, the SC/ST reservation for BJP is nothing but a ceremonial piece like a cherry above the pudding or the cake. But the core of it is still hatred towards the downtrodden sections here. Sir, the discussion of this kind was necessitated by the BJP government out of the way decision to take away the special status of the state of Jammu and Kashmir by virtue of Article 370 of our Constitution and reorganize it into 2 union territories. Sir, one thing we should understand, it was also against the wishes of our constitutional forefathers who had promised to keep high the aspirations of the people of Jammu and Kashmir while agreeing to join the dominion of India. Sir, our ancestors have regarded Jammu and Kashmir as the crown of India at the top, but this government has downgraded Jammu and Kashmir to the status of crown, only because the majority of the people are Muslims, whom the RSS oppose the ideology. The special status of the Jammu and Kashmir was abolished, which itself shows the intolerance of the BJP government. Sir, I wish to remind the government that they have also not kept the promise of holding the election to Jammu and Kashmir Assembly as the Honorable Amit Shah ji had promised on the floor of this house in many times. I wonder when the appropriate time comes. Will it come in the end of the century, sir? So instead the government is, including the minister, is repeating the rhetoric that it has successfully conducted the election to the local self-government institutions. What is the reality, sir? Sir, I had been in Jammu and Kashmir as a member of participating in the study tour of the Standing Committee on Housing and Urban Affairs a few months back. Sir, how come this government could claim that with just 15 or 20% of the total voter turnout as a success? 80% of the voters were not participated in the local body elections, sir. Also, I could not witness any development revolution in Kashmir as claimed by this government and the members from Ladakh, except the schemes implementing all over India, Jal Jeevan Mission, PMAY, and Making in India, etc., etc., etc. Sir, even after the abrogation of the Article 370, you could not control the terrorism in the valley. Sir, the news has been coming about the terrorist activities still continuing in the valley. Sir, we all know that the RSS has put forward 4 political agendas as its declared goals. The abolition of special status of Kashmir is just one among them. The others being demolition of Babri Masjid, the enactment of Citizenship Amendment Act to deny the citizenship to Muslims on the basis of religion, and the final one being the Uniform Civil Code, sir. Sir, in all respect, the BJP government is preparing to transform India into a Hindu religious state. And we have just seen the portrayal of Dhanvantari, a Hindu god replacing the national symbol in the logo of National Medical Commission, is a beginning, sir. Sir, the BJP government is portraying the victory in the recently held assembly election to Rajasthan, Madhya Pradesh and the Chhattisgarh as a license to act its whims and fancies. Sir, I wish to remind the still don't have a mandate. Even half of the voters of India, and if stand united, the opposition parties have a strong chance to win in the heart of the voters, sir. At the end, sir, on behalf of the family members of the great martyrs of the Pulwama, I urge upon the government to conduct a free and fair judicial inquiry upon the truth revealed by the former Jammu and Kashmir Governor Sri Satyapal Malik upon the Pulwama
Pulwama incident. With these words, I conclude my speech. Still, thank you very much, sir. Sir, I rise to support the first bill, Jammu and Kashmir Reservation Amendment Bill 2023, but to oppose Jammu and Kashmir State Reorganization Amendment Bill 2023. Sir, rightly, when Jitendra Singh ji was speaking, Saugat Rai he was commenting from this side also. He was specifically narrated the first Prime Minister of India, Pandit Jawaharlal Nehru, the architect of new nation, new India. And he is narrating him as he has done a blunder, Nehruvian blunder. He has used the phrase Nehruvian blunders. Sir, the present India, I'm not going to the details of the wonderful achievement made by Pandit Jawaharlal Nehru, the secular fabric and the secular symbol of India, who has made India in this form, and it is being as Union of India only because of Pandit Jawaharlal Nehru, and even Kashmir is still an integral part of India. That is only because of the policy enunciated by Pandit Jawaharlal Nehru, his diplomatic policy which he has adopted as far as Kashmir is concerned. Otherwise, the situation of India would have been different, because most probably the Kashmir would not have been, even the present position would not have been there as far as Kashmir is concerned. So I urge upon the Honorable Minister to withdraw that word, Nehruvian blunders, as far as this Kashmir issue is concerned. Such a observation is not expected from a responsible minister from the cabinet. It is not expected. So first of all, I would like to request the Honorable Minister kindly withdraw the remarks made by the Honorable Minister, the responsible minister, making Nehruvian blunders as far as this Kashmir situation is concerned. Sir, as far as the bill is concerned, the first bill is the Jammu and Kashmir Reservation Amendment Bill. Absolutely, it is a harmless bill, definitely. The socially and educationally backward classes has to be replaced or substituted in the place of weak and privileged classes. Fully, I agree with it, and that can be passed. There is no doubt about it. But as far as the Jammu Kashmir State Reorganization Amendment Bill 2023 is concerned, sir, we are all well aware that on 5th and 6th of August 2019, elaborate discussion took place regarding Article 370 and also the State Reorganization Bill, Jammu Kashmir State Reorganization Bill. Detailed discussion took place. We have made our reservation as far as J&K State Reorganization is concerned. Sir, I would like to know from the Honorable Home Minister, what is the constitutional propriety of this government going for an amendment to a bill which is already been made by the Parliament, which is pending before the Supreme Court for final verdict? Sir, as far as to my limited information, it is already been, the hearing of the matter is already over. The matter is pending before the Supreme Court. We all know that a matter which is pending before the Supreme Court can never be discussed even in the House. That is the rule which is being observed by us. But here what the government is doing, government is coming with a bill and moving an amendment bill. That bill is pending before the Supreme Court for the final verdict. The hearing is over. Why don't the government wait for the final verdict? That too, the constitutional validity of the bill is being questioned. And it is a 5-member constitution bench is looking after that issue. When that matter is pending, you are bringing with amendments, means it is not with bona fide intention to give reservation to the scheduled caste and scheduled tribes, and not with an intention to give the Kashmir migrants or for the displaced persons. The intention of the second bill, that is a State Reorganization Amendment Bill, is lacking bona fides. Hence, I oppose the bill on that ground itself, because it is a matter pending before the judicial. We know the rules of practice. As far as the rules and
procedure and conduct of business of our Lok Sabha also. No matter which is pending before the Supreme Court can be agitated or be discussed in the House. That is the precedent, that is the convention, that is the rules, and rules of practice is there. At the same time, the government is coming with an amendment bill so as to amend a bill statute which is pending before the Supreme Court is not good, especially a constitution bench, 5-member constitution bench is agitating or looking into this constitutional validity of the bill. That is the first point which I would like to make. Sir, coming to the bill, that is section 15A and section 15B, two new provisions are to be incorporated other than the reservation. Sir, 15A, notwithstanding anything contained in subsection 3 of section 14, the Lieutenant Governor of the Union Territory of Jammu and Kashmir may nominate not more than 2 members, one of whom shall be a woman from the community of Kashmir migrants, according to 15A. According to, by virtue of 15B, it will be from the displaced person from Pakistan-occupied Jammu and Kashmir to the Jammu Kashmir Legislative Assembly. Sir, my question is, what is this nomination? And the Legislative Assembly, you have not reconstituted the Legislative Assembly. You are not ready for an election process. You know that the delimitation process is already complete. Almost all the formalities have already been complied. Why there is an inordinate delay in having the elections? Why the inordinate delay in reconstituting the State Legislative Assembly? Why you are providing this unfettered authority to nominate a particular person from a particular community to the Lieutenant Governor? That means this is inferring the fact that you are not going to conduct the election. You have no proposal and you have no intention to have the proper elections so as to put up a populistic government in the state of Jammu and Kashmir. That is why you are giving the nomination authority to the Lieutenant Governor, means you are not believing in a populistic government. This nomination process has to be taken back. At least the nomination or the nomination of a particular person should be on the advice of the elected government or at least the advice of the State Legislative Assembly. Unfortunately, that is not being done, and it is unfettered authority, discretion is being provided to the Lieutenant Governor by virtue of section 15A and section 15B of the Act. That is totally undemocratic. That is to be opposed. So I urge upon the government, kindly review the position of nomination by the Lieutenant Governor. Instead, you may give the authority to the State Legislative Assembly so as to elect 2 representatives, one from the displaced persons category and another from the migrant Kashmiris category. That is the proper democratic forum or the proper democratic way by which 2 persons from these 2 categories have to be elected. That is the second point which I would like to make. Sir, the point is, at the time of that is general discussion on the Kashmir issue, sir, at the time of the discussion of on 5th and 6th of August 2019, what the assurance given by the Honorable Minister, Home Minister Sri Amit Shah ji, that is election will be conducted at the earliest and the populistic government will be put in place. He has used the word, still I remember, at the earliest. And also there was a genuine demand from all corners of all walks of life. Everybody was demanding to get back the statehood status. That will also be considered. These are the 2 promises being made by the Honorable Home Minister. I think that the first is, at the earliest, the election will be conducted and a populistic government will be put in place in the place of this government, Lieutenant Governor. That will be done. But unfortunately, even after 5, this is 2020-23, it is fag end of the 2023 calendar year. Even after 5 years of this gap, the government, union government, is not able to reconstitute the State Legislative Assembly and to conduct the election. Then how can you win the confidence of the people of Jammu and Kashmir? That is the question. Why the government is not able to conduct the election? Why you are not able to have reconstitute the Legislative Assembly of Jammu Kashmir Union Territory? Why? Because that itself shows that you are not able to bring normalcy back in the Union Territory of Jammu and Kashmir. Is not the reason by which the election cannot be held?
is not the reason why which the Legislative Assembly could not be constituted. That is why we are suggesting that the normalcy have to be, yes sir, I'm concluding. The normalcy has to be brought back. Almost all the members have already cited recently on commanding officer of a battalion is killed. Major is killed, 3 captains, so many police security personnel have already been killed. So you are claiming that the normalcy have come back. So at the same time, last point, at the same time a new term has been spelled out by the security forces that hybrid militancy is there. Yes, I do agree that there is no stone pelting in the Union Territory of Jammu and Kashmir, but hybrid militancy is there, is being admitted by the security personnel of the Jammu and Kashmir. So that is the reason by which you are not able to hold the election and to bring back normalcy in the state. Sir, my suggestion is, first you have to take the people of Jammu Kashmir into confidence. Without taking the people of Jammu Kashmir into confidence, you can never win over the political situation, turbulent situation in the state of Jammu and Kashmir or the Union Territory of Jammu and Kashmir, but that is still lacking. You are trying to take political advantage out of the Kashmir situation, not to win the minds and the hearts of the people of the Jammu Kashmir. Then only you can win over the situation in the state of Jammu and Kashmir and can bring back normalcy. For that, the government has to take positive initiative steps. One of the major steps is to bring back the normalcy, to hold the election, and second is to give back the statehood status to the state of Jammu and Kashmir. With this point, I conclude. Thank you very much, sir. Shri Asaduddin Owaisi. शुक्रिया मोहतरम चेयरमैन साहब, आपने मुझे बोलने का मौका दिया। मैं जम्मू कश्मीर रिजर्वेशन अमेंडमेंट बिल और जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन अमेंडमेंट बिल की मुखालिफत में खड़ा हूं सर। ये दोनों बिल हमारे आइन के खिलाफ हैं और दूसरा जो बिल है सर, जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन अमेंडमेंट बिल, ये ना सिर्फ हमारे आइन के खिलाफ है बल्कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1952 के भी खिलाफ है। सर, यहाँ पर क्योंकि वक्त बहुत कम है, मैं इस कम वक्त में इस ऐवान के सामने इस बात को रखना जरूरी समझता हूं कि जिसमें कहा गया कि डिस्प्लेस पर्सन का जो डेफिनेशन दिया गया है, इसमें मैं हुकूमत से जानना चाहता हूं कि क्या ये बात सच नहीं है कि 1989 में कारण में, करना में, पूंछ में, रजौरी में जब फौज हमारी वहां पर गई थी तो 28 गांव के लोग हमारी वतन अजीज की सरजमीन छोड़कर पड़ोसी मुल्क में चले गए और आज तक 2001 का सेंसस, 2011 का सेंसस ये कहता है कि अनइनहैबिटेटेड गांव है। क्यों नहीं हम उनके लिए प्रोविजन रख रहे हैं? और ये रखना जरूरी है। और जितने वहां पर गए हैं ये मुजफ्फराबाद में रहते हैं, 40,000 के करीब, जिसमें सिर्फ 3% कश्मीरी हैं, बाकी सब गुज्जर और पहाड़ी हैं। इन्होंने हमारी फौज को जमीन दी और आप उनको भूल रहे हैं और सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए प्रोविजन रख रहे हैं जो इनको आप नजरअंदाज कर रहे हैं। दूसरी बात यह है सर कि आप नॉमिनेशन करेंगे, नामजद करेंगे, कौन नामजद करेगा? एक अवाम की मुंतखबशुदा हुकूमत की सिफारिश पर एलजी नॉमिनेट करेगा, नामजद करेगा, या फिर दिल्ली से नामजद करेंगे? तो आप यहां से कंट्रोल कर रहे हैं, ये तो आइन के खिलाफ है। आप तो जमहूरियत को सबवर्ट कर रहे हैं, अवाम का जो मैंडेट है, फैसला सबवर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। और तीसरी बात सर, मैं ये जानना चाह रहा हूं कि आखिर क्या वजह है कि आप ये रिजर्वेशन क्यों करना चाह रहे हैं कश्मीरी पंडित के लिए? नाम तो लीजिए कश्मीरी पंडित का आप। और अगर आप ये करना चाह रहे हैं तो बताइए सिक्योरिटी थ्रेट कश्मीर में है या नहीं है? आप कहते हैं कि कोई सिक्योरिटी थ्रेट नहीं है। जब सिक्योरिटी थ्रेट नहीं है तो फिर आप नॉमिनेशन क्यों करना चाह रहे हैं? आखिर क्यों आप 370 निकालने के बाद वहां पर हर महीना पाकिस्तान से दहशतगर्द आकर श्रीनगर में गोली मारते हैं, राजौरी में मारते हैं, हर महीना 5-5 लोग मरते हैं, कैप्टन मरता है, हवलदार मरता है, लेफ्टिनेंट कर्नल मरता है, तो आपका कौन सा नॉर्मलसी रेस्टोर किया? कुछ रेस्टोर नहीं किया आप। लोग, हमारे सिपाही मर रहे हैं मगर आप बाजा बजा रहे हैं कि अमन हमने कायम कर दिया 370 को निकालकर। सर, जम्मू के डोगरा लोगों का बहुत बड़ा नुकसान आपने कर दिया। 112 राइस मिल थे, अब सिर्फ 6 राइस मिल बचे हुए हैं। बताइए आपने कौन सा बड़ा तीर मार दिया 370 निकालकर? पूरा पंजाब से लोग आकर जम्मू को टेक ओवर कर रहे हैं, वहां का पॉलिटिकल इक्विलिब्रियम आपने डिस्टर्ब करके रख दिया। चेंबर ऑफ कॉमर्स के रोज लोग रहे, सेक्रेटेरिएट आप मुंतकिल करते थे अभी विंटर में, पूरा जम्मू की इंडस्ट्री को आपने बर्बाद कर दिया, पूरे होटल खाली हैं। तो और आखिरी बात सर,
मैं हुकूमत से जानना चाह रहा हूं कि एक आपके इंडस्ट्रियल एस्टेट में एक कमरा आपने बनाया है क्या? बताइए भाई, अंबानी साहब है, अदानी साहब है, टाटा साहब है, सब है, आपने एक कमरा नहीं बनाया वहां पर। एमओयूज तो करोड़ों रुपए के हो गए, आपने ख्वाब तो इतने दिखाए, मगर वो बेचारे वो ख्वाब तो पूरे नहीं होते कश्मीर के लोगों के लिए। जम्मू में करके दिखाइए, श्रीनगर तो दूर की बात है सर। और आखिर में मैं हुकूमत से जानना चाहता हूं कि इलेक्शन कब करवाएंगे? 24 का इलेक्शन तो आप करवा लेंगे, आपने जेरीमैंडरिंग करके आपने कॉन्स्टिट्यूंसीज बना दिए वहां पर, मगर अब भी आपको डर हो रहा है। आप जम्मू में नहीं जीत पाएंगे, बता रहा हूं आपको। वैली तो दूर की बात है, वैली तो मुझे यकीन है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और सब लोग निकाल लेंगे, जम्मू भी लूज करेंगे आप। अरे हाँ, आपकी हमारी डील नहीं हुई है, बोल देंगे डील हो गई। हमारा हाल तो लैला का हो चुका है। हम नहीं गए सर, हम नहीं गए भी तो आप लोग मध्य प्रदेश जीत गए। कैसा जीतिए मेरे बगैर आप मध्य प्रदेश? सर मैं कंक्लूड कर रहा हूं, मैं कंक्लूड कर रहा हूं सर, मैं कंक्लूड कर रहा सर। ये खामखा निशिकांत को आदत है छेड़खानी करने की, अब जवाब मिल गया उनको। तो सर मैं हुकूमत से जानना चाह रहा हूं कि आप असेंबली के इंतखाबात कब करवाएंगे, और आप क्यों लद्दाख में उनको सेफ्टी दे रहे हैं? आपने 370 निकाला क्यों? लद्दाख का इलेक्शन तो आप हार चुके हैं वहां पर लोकल बॉडी का। तो फौरन आप इंतखाबात करवाइए ताकि वहां पर जमहूरियत बहाल हो सके। कब तक दिल्ली से हुकूमत करेंगे? इसीलिए मैं दोनों बिल की मुखालिफत करता हूं। शुक्रिया सर। थैंक यू। जबीर सिंह ग्रिल मिस्टर। धन्यवाद चेयरमैन साहब, आपने मेरे को तो जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट एंड जम्मू कश्मीर रिजर्वेशन एक्ट पे बोलने का मौका दिया। ये जो एक्ट है ये काफी मददगार सिद्ध होंगे। जो लोगों में कंफ्यूजन है, जो अथॉरिटीज में कंफ्यूजन है, उसको दूर करने पे। सर, हम कश्मीरी और कश्मीरियत, इसकी बेहतरी के लिए, वहां जमहूरियत की स्थापना के लिए, कश्मीर की तरक्की और खुशी के लिए जितना साथ सरकार दे हम उनका साथ देने को तैयार है। मगर कश्मीर की जो जमहूरियत है, जमहूरी कदरें कीमतें हैं, उसको पहले सरकार को, उस स्टेट को देनी चाहिए, उन लोगों को देनी चाहिए जो जिसका वो हकदार है। सर, आज कश्मीर के लोग कब से उम्मीद कर रहे हैं कि कब हमारे वहां चुनाव हो, हम अपनी सरकार चुन सके। जैसे मेरे से पहले मनीष जी ने कहा था कि इसकी टाइमलाइन सरकार को देनी चाहिए बिना देरी के। अगर आप ये सरकार की तरफ से जितने लोग बोले हैं, उन सब ने कश्मीर में एक शांति, पीस और तरक्की के दौर की बात कही है। अगर वास्तव में ऐसा है तो मैं समझता हूं वहां चुनाव कराने में कोई देरी नहीं करनी चाहिए। सर, जो नई बैकवर्ड क्लास की लिस्ट है उसमें वागे, गिदरत, पाटी, चांग, जट, सैनी, मार्कबल, सोची, क्रिश्चियन बरादरी में जो कन्वर्ट होके हिंदू वाल्मीकि से गए हैं लोग, सुनार, तेली, हिंदू और मुस्लिम और आदि कास्टों को इसमें इंक्लूड किया है। सर, मगर मेरे को अफसोस से कहना पड़ा है कि पंजाब का एक बहुत पुराना कश्मीर के साथ एक रिश्ता है। आज भी जब कश्मीर में कोई बॉम्ब या कोई गोली की आवाज आती है तो उधर पंजाब के किसी न किसी घर में, किसी न किसी गांव में रोने और विलाप की आवाज आती है। कोई ना कोई पंजाब का सपूत बहादुरी से लड़ता कश्मीर में शहीद हुआ पंजाब का आता है। मगर जो हमारे जट सिख हैं, जो सिख सैनी हैं, जो सिख स्वर्णकार है, इसको इस लिस्ट से वंचित किया गया है। मैं आपके माध्यम से गुजारिश करूंगा माननीय गृह मंत्री जी से कि उनको भी इसमें जो है ये शामिल किया जाए। सर,
आज हमने एक बहुत बढ़िया स्टेट था, उसको स्टेटहुड से छीन के उसे हमने यूटी में जो है उसमें कन्वर्ट किया। उसके लिए हमने देश को बताया कि इससे आतंकवाद का खात्मा हो जाएगा, कश्मीर में एक तरक्की का नया दौर आ जाएगा। मगर अफसोस की बात यह है कि जब से ये आया है तो इनकी इकॉनमी बहुत बुरी तरह मुरझा चुकी है। लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन बहुत बुरी शेप में है। सर, वर्स्ट पार्ट इट इज, आपको इसका संज्ञान लेना चाहिए कि जिस तरह से करप्शन जो कश्मीर में बढ़ गई है, एक आपने बहुत बढ़िया काम किया, आपने वहां कहा देश के लोग आए, वहां आके प्रोजेक्ट लगाए। सर, मैं एग्जाम्पल दे देता हूं, जहां जो लोग इन्वेस्ट करने गए, जमीन की रजिस्ट्री के लिए वहां के एसडीएम 10-10 लाख रुपया मांग रहे। इस पे ध्यान दो। ये जो करप्शन हो रही है इसका अभी से सर कुचलेंगे तो ये कश्मीर के लिए बढ़िया होगा। सर, मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि कश्मीर में उद्योग की बहुत बड़ी जरूरत है। आपने उसमें यह आज उद्योग जो है वो वहां से उखड़ के गया है। बाड़ी ब्राह्मणा जैसे ऐसी जगह थी, डॉक्टर साहब डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी बैठे, इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी में है, एक बड़ा फलता फूलता औद्योगिक क्षेत्र था, आज वो खत्म हो गया। सर, इसमें एक और जो बात मैं करना चाहूंगा वो है कि आपने 2 सीटें जो कश्मीरी माइग्रेंट्स हैं उनके लिए जो है वो आपने रक्षित की है। एक सीट जो मकबूजा कश्मीर है वहां के लोगों के लिए की है। सर, आपको 2000 का वो मंजर याद होगा जब हमारे 43 सिखों को छत्तीस सिंहपुरा में जो है मार दिया गया था। सर, मेरी गुजारिश है कि ये जो माइक्रो माइनॉरिटी है, कम से कम इसके लिए एक सीट जो है वो रिजर्व की जाए। और जैसे मेरे से पहले बोलते स्पीकर साहब ने बोला था, बुलारे ने बोला था कि इसको ये राक्षस जो आपने सीटें की है या जो आगे करोगे, इसको नामजद कौन करेगा? लेफ्टिनेंट गवर्नर का लिखा है। इसका मतलब ये है कि आपके मंसूबे ये है कि अब कहीं वहां स्टेट गवर्नमेंट ही ना आए। कम से कम जैसे पार्लियामेंट में भी कुछ सीटें राज्यसभा में रिजर्वेशन के लिए रहती हैं, जिसे प्रधानमंत्री जी रिकमेंड करते हैं, जो कैबिनेट रिकमेंड करती है और प्रेसिडेंट नामजद करते हैं, ऐसा एक प्रोसेस उसमें भी बना के रखना चाहिए कि जो वहां की गवर्नमेंट होगी, कश्मीर के लोगों की अपनी सरकार होगी, वो रिकमेंड करे और उन्हें ही नामजद किया जाए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर ये जो सीट माइक्रो माइनॉरिटीज की बात कही और जो जट सिक्स हैं, जो सिख सुनियार्स हैं, सिख सैनीस हैं, और उनको भी इस लिस्ट में बैकवर्ड क्लासेस की में इसका जो इसका लाभ उससे वंचित ना किया जाए, उन्हें भी इसका जो लाभ दिया जाए। धन्यवाद। जय हिंद, जय पंजाब। बाल अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका अत्यंत आभारी हूं। भारत के गृह मंत्री द्वारा द जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन अमेंडमेंट बिल 2023 एंड द जम्मू एंड कश्मीर रिजर्वेशन अमेंडमेंट बिल 2023, इस दोनों को जो अमेंडमेंट का बिल आया है उसके समर्थन में मैं खड़ा हूं। मैं समझता हूं कि इन दोनों बिल की अमेंडमेंट बिल के लाने की जरूरत क्या पड़ी। आज चाहे 2019 में जब जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन बिल उस सदन में, जब हमारी पुरानी पार्लियामेंट थी, उस पार्लियामेंट की बिल्डिंग में एक इतिहास रचने का काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत के गृह मंत्री ने किया था और पूरे देश ने उसका स्वागत किया था।
मुझे लगता है कि आज इस भारत के नई पार्लियामेंट में फिर जम्मू कश्मीर के लिए एक नया इतिहास रचने का काम इस अमेंडमेंट बिल से भारत के गृह मंत्री श्री अमित शाह जी करने जा रहे हैं। और वो होगा नया बिल अमेंडमेंट का कि लोग इतनी बातें कर रहे हैं, आखिर लोग सवाल पूछेंगे। इतने दिन वहां असेंबली थी, इतनी दिन हुकूमत में थे, बरसरे इख्तदार थे, सत्तारूढ़ थे, आखिर इसके बावजूद भी उसमें जो बड़ी तादाद, बड़ी जनसंख्या के लोग जिनको आदिवासी कहते हैं, वो आदिवासियों को आरक्षण मिलने का काम क्यों नहीं हुआ था? इसका जवाब कौन देगा? आज नए सवाल खड़े कर रहे हैं, जिसका जवाब हमारे माननीय जितेंद्र सिंह जी ने दिया, हमारे अनुराग जी ने दिया, माननीय सदस्यों ने दिया, हमारे लद्दाख के साथियों ने दिया। मैं कह रहा हूं कि आखिर इस बिल के संशोधन करने का तात्पर्य है, जिसमें 3 प्रमुख उद्देश्य है कि जो कश्मीरी माइग्रेंट्स हैं, उन कश्मीरी माइग्रेंट्स को आरक्षण दिया जाए, पॉलिटिकल रिजर्वेशन दिया जाए, जिससे ओवरऑल उनका एक सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो सके। इस उद्देश्य को लेकर के आए। कितना पवित्र उद्देश्य। या जो डिस्प्लेस पर्सन, उनको स्वीकार करना पड़ता है कि जो ऐसे डिस्प्लेस पर्सन हैं, उनके लिए काम तो हम अच्छा कर रहे हैं रिजर्वेशन के। या फिर शेड्यूल्ड ट्राइब्स, इन 3 उद्देश्य को लेकर के जिस तरह से हमने इस बिल को जो नहीं 3 है, एक कश्मीरी माइग्रेंट्स हैं, एक डिस्प्लेस पर्सन्स हैं पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर से जो इलीगली उन्होंने कब्जा कर रखा, और तीसरे शेड्यूल्ड ट्राइब्स हैं। शायद इन 3 उद्देश्य को लेकर जो मैं समझ पाया हूं इस बिल का संशोधन है। भर्तृहरि मेहता जी, मैं जानना चाहता हूं, आप तो इस बात का समर्थन किया था, मैं आपको धन्यवाद दूंगा कि आज जम्मू कश्मीर के लिए भारत में तो उस दिन निश्चित तौर से जम्मू कश्मीर जिस दिन 370 समाप्त हुआ 5-6 अगस्त 2019 को, उस दिन जम्मू कश्मीर के लोगों ने, पूरे देश के लोगों ने माना कि जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है, टूट हिस्सा है, और एक दिवाली सी जैसा हुआ। लेकिन मुझे लगता है कि जम्मू कश्मीर में जो एक बड़ी जनसंख्या बकरवाल की है, गुजरवाल की है, आदिवासियों की है, आज जब ये उस 2019 के बाद भी जो ये फिर से अमेंडमेंट आज गृह मंत्री जी लेकर के आए हैं, और जब ये बिल आज पास करेंगे हम, तो निश्चित तौर से ये केवल एक बिल नहीं पास होगा, ये जम्मू कश्मीर के आदिवासियों के घरों में आज दिवाली मनाई जाएगी कि भारत के पार्लियामेंट ने भारत के नया इतिहास रचने का काम। ये सवाल करेंगे, ये बात गरीब की करेंगे, खेत खलिहान की करेंगे, आदिवासियों की करेंगे, दलितों की बात करेंगे, केवल बात करेंगे, गरीबी हटाने की बात नहीं करेंगे। मैं पूछना चाहता हूं कि आखिर हिंदुस्तान में देश 1947 में आजाद हुआ, और हिंदुस्तान की आजादी के बाद जब भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बने, भारतीय जनता पार्टी एनडीए की सरकार बनी, तो पहली बार देश के सुदूर उड़ीसा के एक आदिवासी महिला को आज देश का महामहिम राष्ट्रपति बना करके हमने स्थापित करने का काम किया। तो हम केवल कहते नहीं, आज एक जब हमने देश के महामहिम राष्ट्रपति के रूप में हमने एक आदिवासी महिला को प्रतिस्थापित किया, तो ये पूरे देश के लिए नहीं, पूरी दुनिया के ट्राइबल्स के लिए गया कि भारत इज सो प्रोग्रेसिव। दुनिया के हर कंट्री में ट्राइबल्स हैं, बड़े बड़े जो विकासशील देश हैं उन देशों में भी लोग आज ट्राइबल्स हैं। उन ट्राइबल्स को लगा कि भारत तो हमारे यूएसए हो, यूरोपियन कंट्रीज हो, चाहे साउथ ईस्ट एशिया हो, इनसे हमसे फार अहेड है कि आज दुनिया का सबसे सर्वोच्च पद भारत का संवैधानिक, उसको एक आदिवासी महिला को दिया जा रहा है। उसी सदन ने किया, और आज फिर इसी सदन ने जम्मू कश्मीर के जो पहाड़ियों पे जानवर की ढोर चराते थे, खाना बदोशी की जिंदगी रहते थे, न उनके पास आवास था, न उनके पास घर था, उनको शासन में, गवर्नेंस में पॉलिटिकल रिजर्वेशन मिले, उनको वहां की यूनियन टेरिटरीज की असेंबली में रिजर्वेशन मिले। शायद ये कल्पना रहता, आजादी के बाद बैठे हुए जो हमारे पूर्व मुख्यमंत्री जी इस बात का जवाब दे दें कि आखिर इतनी बड़ी तादाद आदिवासियों की थी, क्यों नहीं आपने आरक्षण दिया, चाहे आप कितने दिनों से हुकूमत पर हैं। आप यूनिफाइड कमांड की बात करते हैं। आज जब ये बिल पास होगा तो वो तमाम जो बड़ी संख्या में लोगों को लगेगा कि मोदी जी की सरकार एक काम ऐसा कर रही जो देश के गरीब, खेत खलिहान और आदिवासियों के लिए काम करती है।
बहुत से सवाल उठाए गए कि आज कौन सा इसमें नया इतिहास रच रहे हैं। अरे नया इतिहास आपने देखा नहीं, वही जम्मू कश्मीर है। 370 के समाप्त होने के पहले हमारे तमाम जम्मू कश्मीर से सांसद हैं, उधर भी बैठे हुए हैं, मंत्री जी बैठे हुए हैं। उस जम्मू कश्मीर में मैं कई बार गया, इसके पहले भी, अब इसके बाद भी जाता रहता हूं। मुझे स्पीकर साहब ने जब वहां पे लोकल बॉडीज का चुनाव हुआ, पंचायतों का चुनाव हुआ, स्थानीय निकाय का चुनाव हुआ, तो उनका एक ओरिएंटेशन कैंप था प्रशिक्षण का। उस प्रशिक्षण को में भी हमको हजारों पंचायत के जो चुने हुए निर्वाचित सदस्यों से बात, उन्होंने कहा कि पूरे जम्मू कश्मीर में की बात नहीं कर रहा हूं, जो सबसे बड़ा हाई कोर्ट था, उस हाई कोर्ट में भी 15 अगस्त 26 जनवरी को तिरंगा झंडा राष्ट्रीय ध्वज नहीं फहराया जाता था। और आज 370 के हटने के बाद जम्मू कश्मीर के हर गांव के पंचायतों पे तिरंगा फहराने का काम हुआ है। ये नया इतिहास रचने की बात हो रही है। आज अभी पिछले दिनों जब मेरा माटी मेरा देश का एक अभियान चला और जब फिर तिरंगा यात्रा वहां निकली, अभी अगस्त 2023 की बात, तो जिस तरह से अगस्त 2023 में एक तिरंगा यात्रा निकली और वहां कोई देश का नौजवान नहीं गया, उस पूरे कश्मीर का जो एक युवा यूथ, लड़के लड़कियां, जो एक हुजूम निकला, उस हुजूम ने पूरी देश को यह साबित कर दिया कि इससे लगता है कि अब कश्मीर की जो उग्रवाद की परछाइयां अतीत की थी, वो विकास की रोशनी में तब्दील हो रही है। ये मैं आपसे कहना चाहता हूं। तो आज कश्मीर किस तरफ बढ़ रहा है? बात करेंगे इंडस्ट्री की, बात करेंगे फार्मर्स की, बात करेंगे इलेक्ट्रिसिटी की। अरे किसी चीज का तो हमने बजट दिया, क्या हो रहा विकास, किस तरीके से वहां लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा जी के नेतृत्व में। फार्मर्स की बात कर लीजिए, और मैं बात जब करता हूं तो हमेशा रिकॉर्ड पे करता हूं, ऑन रिकॉर्ड पे करता हूं, आंकड़ों पे करता हूं, कि पहले लगता था कि जिस तरीके से 70% जमीनें बोई ही नहीं जाती, इतनी बड़ी उग्रवाद की परछाई थी, लोग अपनी जिंदगी की हिफाजत की, सलामती की लोग दुआ करते थे, ईश्वर से, अल्लाह से प्रार्थना करते थे कि हमारी जिंदगी सही सलामत हो। घरवाली अगर उसका पति, उसका सुहाग बाहर गया तो सूरज ढलने के पहले वो अपने सुहाग को थाली सजाए इंतजार करती थी कि हमारा सुहाग सही सलामत लाल चौक से लौट आए। स्थिति ये जम्मू कश्मीर की थी। और आज 370 खत्म होने के बाद जिस तरह से प्रीवियस रबी सीजन में उस कश्मीर डिवीजन की बात कर रहा हूं कि अकेले फर्स्ट टाइम वहां पे मस्टर्ड की, सरसों की जो 1.4 लाख हेक्टेयर में खेती हुई है, येलो रिवोल्यूशन आया है जम्मू कश्मीर में। ये हुआ किसानों के लिए। जस्टिस मसूदी साहब बैठे हैं, हमारे मुख्यमंत्री जी बैठे हैं, पूर्व मुख्यमंत्री साहब को भी कहेंगे। तो आज जिस तरीके से 1.4 लाख हेक्टेयर्स में मस्टर्ड का कल्टीवेशन हुआ है, तो ये अपने आप में एक रिकॉर्ड है। और यह भी रिकॉर्ड है एग्रीकल्चर में कि आज कश्मीर के जो किसान हैं वो देश में 5th लार्जेस्ट इनकम अर्निंग फार्मर हो गए। इसके लिए तो आपको तालियां बजानी चाहिए। हम स्वागत करते हैं कि जम्मू कश्मीर का किसान आज जिस तरीके से देश के साथ तुलना कर रहा है, और देश के सही बात है। आप इलेक्ट्रिसिटी बात करते हैं, जब पहले लोग अपने घरों में कैद रहते थे तो अपने घरों में कैद रहते थे, बिजली की कोई खपत नहीं थी, दुकानें बंद हो जाती थी, शाम के पहले दुकान बंद हो जाती। ये तो इस बात का सबूत है। आज सबूत था कि आज वहां पे बिजली शाम के बाद दुकान बाजारें चलती नहीं थी। और आज जब डेवलपमेंट हो रहा है तो इलेक्ट्रिसिटी का डिमांड बढ़ रहा है। It is already 6 o'clock. Honorable member, it is already 6 o'clock. You can continue tomorrow. The House stands adjourned to meet on Wednesday, the 6th December 2023 at 11 a.m.
Sir, Kashmir is called the paradise on earth, the most beautiful valley anywhere. Now, will Kashmir remain only a tourist place? Now we'll have a tourist territory of Jammu and Kashmir, or it will be for the people of Jammu and Kashmir. इस सदन की दादा इस सदन के एक मिनट इस सदन के ज्यादातर माननीय सदस्य मेरी शायद में 370 के बाद कश्मीर गए हैं, तो कश्मीर आज भी वैसा ही है जैसा पहले था। उनको बताओ मत, तो सुनते हैं पूरी बात को, अभी कान कमजोर नहीं हुए उनके। दादा Sir, this is a matter of opinion. This opinion is voiced by those who go to Kashmir as tourists. Oh, Dal Lake, shikaras are so nice. The cherry is blossoming. The apples are there on the trees. What about the people of Kashmir who live in Baramulla, in Anantnag, in the various, in Kokarnag, in various places of Kashmir? What is their condition? Kashmir is not for tourists. Kashmir is for the people of Jammu and Kashmir. Give them back, sir. ये कहना है कि आज मैं आशा करता हूं कि मंत्री जी अनाउंस करेंगे कि कब जम्मू कश्मीर में चुनाव होगा। डेलिमिटेशन कमीशन अपना काम पूरा किए है। आज आप कानून पास कराएंगे कि कश्मीरी माइग्रेंट से 2 लोग आएंगे और डिस्प्लेस लोग से 2 लोग आएंगे, ठीक है, लेकिन बोलिए हम जल्द ही जम्मू कश्मीर में लेजिस्लेटिव असेंबली बनाने जा रहे हैं। हम जो किए थे वो हम सोचे थे कि कुछ बनेगा, कुछ बना नहीं। हमने नाकामयाब रहा कश्मीर में शांति लाने को। इसलिए सर, आई वांट टू इन दिस discussion, I do not want to oppose these amendments because there is nothing wrong in having 2 nominated members from Kashmiri migrants. But everything is wrong in the government's handling of Jammu and Kashmir, particularly Mr. Amit Shah's handling of Jammu and Kashmir. He took it in his hand कि मैं करूंगा जो श्यामा प्रसाद बाबू चाहते थे, मैं 370 को एब्रोगेट कर दूंगा, मैं कश्मीर को एक स्टेट को यूनियन टेरिटरी बना दूंगा और वो जगह पिछड़ा रह जाएगा। आज यहाँ बैठ के कश्मीर के लोग बहुत सफर किए हैं। हमारा 2 जंग हुआ था, 65 में, 71 में, 47 में Pakistani Hanadar, they are called, invaders, they captured part of Kashmir. And again, the militants took control of the valley, and because of them, people have to leave. We must restore normalcy in Jammu and Kashmir. Give back. We want to see elections take place there. We want to see a nationalist person like Farooq Abdullah again occupy the chief minister's chair. Only then will Kashmiri realize they are Kashmirian. Kashmir is very special. Kashmir is very special because उनका एक अलग कश्मीरियत है। वहाँ कोई हिंदू मुसलमान का झगड़ा नहीं है। ये आप मत लगाइए यहाँ पर। कश्मीर कश्मीरी को कश्मीरियों से चलाया जाए, दिल्ली से नहीं, और दिल्ली से भेजा गया गवर्नर से नहीं। मैं यही बात ये 2 कानून के बारे में बोलने चाहता हूं। अमित शाह आज मान ले कि उनका जो कोशिश था कश्मीर में नया कुछ दिखाने का, जब जब फूल खिले, फूल खिलाने का, वो नाकामयाब रहा। कश्मीर फिर लोकतंत्र का रास्ता पर चले, ये मांग करके मैं अपना छोटा सा भाषण समाप्त करता हूं। जय हिंद।
करता था। दादा पश्चिम बंगाल से आते हैं, उन्होंने श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी का नाम तो लिया, लेकिन मुझे उम्मीद थी शायद उनके बलिदान के बारे में भी कुछ बोलते, कि उन्होंने बलिदान करना पड़ा तब जाके कश्मीर में बदलाव आया। आपको जरा सोचना चाहिए कि आप ये बात आज की कर रहे हैं, क्या हालत रही है कश्मीर की, किस तरीके से आप लोगों के शासन में जब आप समर्थन करते थे यूपीए को और कांग्रेस को, क्या हालत बना के रखी थी आपने कश्मीर की। आपने नेशनलिस्ट लीडर की बात की, नेशनलिस्ट लीडर के नीचे क्या हालत थी। कश्मीर में कितने लोग मरते थे, कितने मेजर रोज मरते थे, कितने आतंकवादी वहाँ पे घुसे हुए थे, उसका तो जिक्र करना चाहिए था। दादा श्रीमती बीवी सत्यवती, आपको बोलने का मौका देंगे पूरा, अगर आप बोले। अध्यक्ष जी, बदलाव इतना ही है, पहले पथराव होते थे, लोगों को मारा जाता था, आज कोई पथराव 370-35 के बाद नहीं हो रहा है। 2011 की घटना बताता हूं, नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार थी, तिरंगा झंडा में नहीं फहराने दिया, जेल में डाला था 2 विपक्ष के नेताओं को, लोकसभा के भी और राज्यसभा के। लेकिन आज लाल चौक पर भी क्या, कश्मीर की गली गली में तिरंगा झंडा फहराया जाता है। ये बड़ा बदलाव देखने को मिलता है। अगर और उदाहरण चाहिए तो और भी मिलेंगे, अब इस पे चर्चा होगी। लेकिन कलकत्ता में वहां पर बैठकर विकसित भारत की यात्रा को ना निकालने दिया जाए। देश में जो विकास नरेंद्र मोदी की सरकार कर रही है, उन गाड़ियों को वहां पर बंद कर दें और आप जेल में डाल दें। ये आपने बंगाल को क्या किया है, ये सुधार कश्मीर में हुआ है, जो बंगाल को आपने बिगाड़ने का काम किया है। बीवी सत्यवती। थैंक यू स्पीकर सर। मैं जो कॉलेज में पढ़ाता था वो श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम में है। उनका जो स्लोगन, एक प्रधान एक विधान एक निशान, वो उनका स्लोगन था, वो पॉलिटिकल स्लोगन था। लेकिन आज भी ये माननीय अध्यक्ष जी, ये बहुत ऑब्जेक्शनल है। इस एक देश में एक निशान, एक प्रधान और एक संविधान, ये पॉलिटिकल स्टेटमेंट है। मुझे लगता है दादा उम्र हो चुकी है। एक देश में 2 प्रधानमंत्री कैसे हो सकते हैं, एक देश में 2 संविधान कैसे हो सकते हैं, एक देश के 2 झंडे कैसे हो सकते हैं। वो गलत है। जिन्होंने भी ये करा था उन्होंने गलत किया था। नरेंद्र मोदी जी ने इसको सुधारने का काम किया। आपकी सहमति ना सहमति से क्या होता है, पूरा देश चाहता था। और ये चुनावी नारा नहीं है, हम 1950 से कह रहे थे, एक देश में एक निशान, एक विधान और एक प्रधान होना चाहिए, 2 नहीं चलेंगे, और हमने कर भी दिया। श्री बीवी सत्यवती, श्रीमती बीवी सत्यवती। थैंक यू स्पीकर सर। Thank you, Speaker sir, for giving me an opportunity to speak on this very important bill, Jammu Kashmir Reservation Amendment Bill 2023. Speaker sir, Jammu Kashmir Reservation Amendment Bill 2023 substitutes weak and underprivileged classes with other backward classes as declared by the Union Territory of Jammu and Kashmir. The definition of weak and underprivileged classes is deleted from the Act. So this is done to remove the confusion amongst competent authorities issuing certificates to eligible persons due to differences in such nomenclature. Speakers are inclusion in education and employment. So now with less confusion, the state can work towards lifting the literacy and also employment opportunities for other backward classes and empowering the communities to brighter future and an opportunity to come out of poverty. So, Speaker sir, from YSR Congress Party, under the dynamic leadership of Sri Y.S. Jagan Mohan Reddy Garu, a few suggestions from our party. So, one is conducting caste census. It's a current and comprehensive census detailing the population of other backward classes, OBC, is indispensable for effectively implementing
development schemes aimed at the marginalized masses in various states and union territories. And conducting a fresh OBC census should be the initial step towards the welfare of the community. So there needs to be qualitative and quantitative data to understand how our schemes aimed at OBCs are benefiting them. Speaker Sir, as I speak, from the state of Andhra Pradesh, under the dynamic leadership of our Honorable CM Sri Y.S. Jagan Mohan Reddy Garu, so we are in the process of conducting its own caste census within the state. Backward castes in the Andhra Pradesh constitute nearly 50% of the population with 139 subcastes. The goal of a caste-based census is to offer clarity on several aspects, such as the distribution of population among different castes and subcastes, and understanding the socio-economic status of the most backward castes, which will help the government to plan and maximize the outcomes of the policies and welfare programs. Sabhapati ji, setting up of a dedicated ministry for other backward castes. According to the National Sample Survey, the OBC population is at 41%. To accommodate all the needs and necessities of the OBC community, we should consider setting up of a central ministry for other backward castes as we have for SCs and STs. So the Ministry for OBCs can do wonders in the centralized planning of policies and welfare schemes for OBC communities which uplift the community socially and economically. So this ministry can also serve as a place where the OBCs can raise their grievances, avail benefits such as scholarships, and also have the task to ensure the OBC reservation is being followed in letter and in spirit all across the country. I request the Honorable Home Minister ji to look into this aspect. And the third point is reservation in state legislative assemblies. So urge the central government to move towards the idea of having reservations for OBC communities in state legislative assemblies also. This will enhance the political development of the OBCs. Remembering the Baba Saheb Ambedkar ji's ideas of achieving political diversity by empowering backward castes by breaking the barriers by reservation. So it's an essential step towards maintaining inclusivity and diversity in our political systems. The fourth point I want to mention, Honorable Chairperson ji, national-wide skill development programs. According to the National Sample Survey, the OBC population is at 41%, while there are currently numerous schemes in place aimed at enhancing the education of OBCs and providing valuable resources like scholarships. The apparent absence of national schemes addressing skill training programs is there. Introduction to nationwide schemes for skill development programs targeted specifically at the OBCs will make the community job ready. And before I conclude, Sabhapati ji, the Jammu and Kashmir Reservation Amendment Bill 2023 marks a significant step towards clarity and inclusivity. By replacing the term weak and underprivileged classes with other backward classes, the legislation aligns the evolving social dynamics of Jammu and Kashmir. So hence I urge the central government to conduct the caste census along with the population census, provide OBC quota reservations in state legislative assemblies, establish a ministry for OBC, and introduce more schemes for targeting the specific needs of OBCs, which will help the community nationwide. I want to bring only one sentence which our Honorable CM Garu frequently says, backward classes, they are not backward, they are the backbone classes to the society. So hence, I bring to the notice of this August House. So I conclude this bill from this, I support this bill from YSR Congress Party and also take it to consideration of the suggestions made by YSR Congress Party. Thank you very much, sir. Jai Hind. Thank you very much. Sri. Seeing it as a union territory. As already said, it is always the union territory which looks ahead of going into a statehooship so that they can have more authority. But this is the first instance where we see a state being converted into a union territory. And what is the main reason behind it? The BJP has just won
many of the state elections and they have come into this house. They see themselves and their strength is always seen as winning elections after elections and going after micromanagement. But what happens in Jammu and Kashmir? Why are they not able to do that? Since they are not able to do that, they bring a state into a union territory where they can have control over the governor and then they can run the governance through that. If they were capable and if they were very confident of winning Jammu and Kashmir, would they have gone in for a union territory? So that is the main reason that the people of this country should think that the power of this BJP is only winning elections and mainly in the heartland states of Hindi and what we generally call as the Gomutra states. You cannot come to South India. You see all the results of what happens in Tamil Nadu, Kerala, Andhra, Telangana and Karnataka. We are very strong over there. So we will not be surprised if you have an option of converting all these states also into union territory so that you can come into indirect power of coming and having, because you can never dream of setting foot over there and taking control of all these southern states. So having the reservation bill into confidence. So we should first look into the history, because the Dravidian ideologies have always been strong and has been pro-reservations. So in the early years, before independence, the country was ruled by a minority of 3% people having a majority stay in all the government jobs, work, everywhere, education. It was the Dravidian ideology, it was our forefathers of DMK, the Justice Party, in the year 1926 that brought in the Reservation Act for work and for education in OBC sectors and for all class people. Till then, it was marginalized and only a section of the people, or 3% majority of the people, had jobs and other things. So, in the year 1926 was the first time that in India, in Tamil Nadu, Justice Party brought all these reservations for people so that people from all class can take part in governance. And what happened after that? After India obtained independence in the year 1947, it was struck down by the Madras High Court that these reservations shall not exist anymore. And then again, when we went to Supreme Court, the same this thing was done, that it was struck down and no reservation was there. It was our leader, the great Dravidian ideology of Principal Tandai Periyar, who had, along with the then Prime Minister Jawaharlal Nehru and the Law Minister Ambedkar, had gone and sought that we need reservations for work and for education. It is completely necessary. And then after fight, at last the union government, under the leadership of Prime Minister Jawaharlal Nehru, agreed for reservation in work. But then Tandai Periyar and our leaders then struck it down. They said that if you give reservation only in work, who is educated? It is again only those people who are educated, that 3% of the society will again get work. So they again fought. They had many other protests, and then at last in the year 1951, the first amendment of this parliament, the first amendment of the constitution after it was formed, it was then declared that the first amendment, that there will be reservation given for both work and for education, and that is how education and work has come and reservation had come into place. And so many people, so many lakhs of people have come into governance and other places, so that we have a very good this thing. So, taking the 4 pillars of the democracy, both the legislative, we have reservations. It is very good that we have come till that, and now this government has also introduced the women's bill, which is a very good this thing. So, but coming into the executive, there is no reservation for OBCs. It is fully dominated by other castes, the so-called forward caste people, and a very marginalized section of the scheduled castes or the scheduled tribes. So we would like to urge upon this government to give more importance into the executive for OBCs. So DMK is always seen as a champion of the OBCs. In the recent 27% of the medical quota OBCs, it was our government that had gone court after court and got the final verdict in Supreme Court, so that we could have the 27% OBC quota, not only for Tamil Nadu, but for the whole of India. And it is only after our Chief Minister, Mr. M.K. Stalin, he is seen as the hero of the OBCs. Sir, again coming to the judiciary. In judiciary also, it is fully dominated by people of the so-called forward caste. There is not a reservation for OBC. And so that reflects on the judgment of the cases too. And so we also ask and request the government through you, Chairperson, sir, to urge upon the government to bring in reservations for OBC in the judiciary also. So coming into the Jammu and Kashmir, they have brought in this bill reservation
saying that, sir, Tamil Nadu has a very good rapport and relationship with Jammu and Kashmir. During the emergency days, the father of Mr. Farooq Abdullah, Mr. Abdullah was held in Tamil Nadu. He was safeguarded in Tamil Nadu by our Chief Minister, the then Chief Minister Kalanjar Karunanidhi. And still in memory of that, in Kodaikanal, we have Mr. Abdullah's guest house still as a very renowned and very sacred place over there. And when the Article 370 was brought, it was our leader, Mr. M.K. Stalin, who had brought all the allies and fought against this very government in the heart of Delhi, and we voiced out. So Tamil Nadu and Jammu and Kashmir always has a very good relationship. So here they say that the governed by Reservation Act because the legislation of J&K is not in place. Why is J&K legislation not in place? It is because of this government. And what is to be enacted by the state is now being enacted by this very house of the parliament. And sir, we would also like to make a very sincere request that the caste census, which has been pending for a very long time throughout the country, it should be conducted at once as demanded by our Chief Minister, Mr. M.K. Stalin. And sir, we told what are the struggles that we have got for OBC. But we see this government just handing over by a golden platter the economically weaker section 10%. So nobody has fought for it. Nobody has asked for it. Nobody has protested for it. But this government is seen in appeasing the forward caste. But the same quota, the same marks for an OBC, SC or ST is much, much higher than what is being handed over to the economically weaker section of 10%. So we request upon this government to look into that EWS section and to give in more quota for the OBCs and to conduct a caste census at the earliest for this thing. So thank you for giving me this opportunity. Thank you very much. Shri Kausalendra Kumar ji. सभापति महोदय, आपने मुझे जम्मू कश्मीर आरक्षण संशोधन विधेयक और जम्मू कश्मीर पुनर्गठन संशोधन विधेयक पर बोलने का अवसर दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यह विधेयक मूल रूप से जम्मू कश्मीर आरक्षण अधिनियम 2004 में कुछ संशोधन के लिए लाया गया है। अब दुर्लभ और शोषित जो वर्ग हैं, सामाजिक जातियां के स्थान पर अन्य पिछड़े वर्ग करने की बात कहा जा रहा है। यह शब्दों के कारण जो भ्रम और परेशानियां थी वह अब दूर हो जाएगा। बहुत ही अच्छा कदम है। यह धाराओं और उपधाराओं में भी संशोधन होने जा रहा है। यह सब उपयुक्त प्रक्रियाओं का पालन करने के साथ होने जा रहा है। अनुसूचित जातियां एवं जनजातियां की सूची में भी कई जातियों को शामिल किया जा रहा है, जो राज्य की मांग के अनुरूप है। इसी प्रकार देश के अन्य राज्यों से भी काफ़ी सुझाव आए हैं, उन्हें भी सरकार को ध्यान में रखने के लिए मैं अपनी मांग रखता हूं। जम्मू कश्मीर के करीब 16 जातियां और लद्दाख क्षेत्र से 12 जातियां अब अनुसूचित जाति में शामिल हो जाएगी। यह राज्य के लोगों के लिए काफ़ी फायदेमंद है। लेकिन माननीय मंत्री जी से भी मेरा अनुरोध है कि जिस तरीके से जब तक जनगणना नहीं होता है तब तक दलित पिछड़ों को, अगड़े को, जो आर्थिक स्थिति उनका कमजोर है, वो आरक्षण का लाभ नहीं ले पाएंगे। मेरा यह भी सुझाव है कि देश भर में जातीय जनगणना होना चाहिए, जिससे लोगों का इसका लाभ मिल सके। दूसरा संशोधन जम्मू कश्मीर पुनर्गठन संशोधन जो 2019 में कुछ संशोधन का प्रस्ताव रखती है। सरकार 2019 में जम्मू कश्मीर को इस अधिनियम द्वारा 2 भागों में बांटकर केंद्र शासित राज्य बना दिया था। धारा 370 समाप्त करने के समय माननीय गृह मंत्री जी साफ साफ कहे थे कि जल्द से जल्द जम्मू कश्मीर में प्रजातांत्रिक तरीके से सरकार का गठन होगा और राज्य का दर्जा दिया जाएगा। परंतु 5 साल होने वाला है, वहां की स्थिति पहले की तरह ही है। परिसीमन कार्य हो चुका है। जम्मू कश्मीर में 107 विधानसभा सीटें से बढ़ाकर 114 हो गई और उनमें 9 सीट अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित है।
3 नामित भी होंगे। अब कुल 117 सीट होने वाली है। यह सब तो ठीक है, किंतु जम्मू कश्मीर की जनता अपने लोकतांत्रिक अधिकारों से अभी तक वंचित है। G20 में भी जम्मू कश्मीर का इस्तेमाल हुआ, किंतु सरकार की वहां राज्य का दर्जा देने की बात पर चुप्पी समझ में नहीं आ रही है। जम्मू कश्मीर में समस्याएं ज्यों क्या त्यों बनी है, आतंकी घटनाएं भी घट रही है। कश्मीरी पंडितों की हालत तो और दयनीय है। सरकार द्वारा कहा गया था कि वहां के विस्थापित कश्मीर पंडितों को जल्द से जल्द वापस लाया जाएगा। आप बताएं कितनी कश्मीरी पंडितों को वापस लाए हैं? अन्य राज्यों में श्रमिकों की हत्याएं वहां रहती है। पर्यटकों की संख्या दिनों दिन कम रही है। वहां के नागरिकों की आमदनी बंद हो रही है। वहां का किसान बेहाल है। देखा जाए तो जम्मू कश्मीर की स्थिति पहले से भी बदतर हो चुकी है। केंद्र सरकार वहां के नागरिकों और राजनीतिक पार्टियों के साथ सलाह मशवरा करके राज्य में कानून व्यवस्था की स्थिति को बहाल करने की प्रक्रिया का प्रारंभ करे। जम्मू कश्मीर में पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाए और मेरा सुझाव होगा कि वहां चुनाव जल्द से जल्द कराया जाए, तभी लोकतंत्र बहाल हो सकता है। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। श्री महेश साहू जी। अधिष्ठाता महोदय, आज रिजर्वेशन जम्मू काश्मीर रिजर्वेशन बिल उपरे आगत करने मो दल ए कार्यक्रम में कहवाई सुजोग देछि। से दल को धन्यवाद देवा सहित आपण मते कहबार सुजोग देथिबारु मु आपण को बधाई जनाऊछि, धन्यवाद जनाऊछि। उक्त प्रसंग रे आलोचना रे भाग नहीं बिल टी डिलिमिटेशन कमिटी को सुपारिश करने उद्य अटे। सम्मानीय सभापति महोदय, जम्मू काश्मीर 21 नवेम्बर 2018 रे भंग करा जायथिले मध्य अद्यावधि यार पुनर्बार निर्वाचन परिप्रेक्षी मुहाई सुजोग कई सृष्टि करनथिले, किंतु आज से दिन ठारू आज पर्यंत कौन प्रयास बा उद्यम बोधहुए होई नहीं। साधारण जनता, नागरिक, बुद्धिजीवी, युवक युवती समस्ते उक्त भावनार आशा राज्यर मौलिक समस्या को राष्ट्रीय गणतांत्रिक व्यवस्था माध्यम केंद्र बा राज्य दृष्टि आकर्षण करने को आज समय आसी। प्रत्येक भारतीय परी जम्मू काश्मीर नागरिक एभली एक सुजोग पाइबा उचित। एवं एथिरे जेतेबेले 370 धारा बाद कराइथिला, केंद्र सरकार एक साहसिक पदक्षेप नहीं से समय गोटे नजर दबा दरकार। 370 धारा लागू होता बेले को व्यवस्था प्रति समानकर नजर थिला। आज जेतेबेले एससी शेड्यूल कास्ट को देला बेले एसटी को मध्य सुजोग दिया जाए नहीं। अदर बैकवर्ड क्लासेस अदर राज्यर अनेक राज्य कमिशनर विशेषकर राज्य ओडिशा प्रदेश रे माननीय मुख्यमंत्री श्रीजुक्त नवीन पट्टनायक ओबीसी कमिशनर गठन करी तार कमिशनर मेंबर भी मध्य प्रतिष्ठा करिसंती। एवं आगामी निर्वाचन रे जेतेबेले आमे विचार करूथुलु एक देश में 2 प्रधान नहीं चलेगा, ए प्रकार विचार करी 370 द्वारा बाद कला परे आज एससी ओबीसी एससी एसटी एमान को कौ सुजोग दिया जेतेबेले माननीय मंत्री ए बाबद रे प्रसंग रे उल्लेख करिवे ता स्पष्ट भाव में जनइमे। कारण माननीय मुख्यमंत्री ओडिशार श्रीजुक्त नवीन पट्टनायक अदर बैकवर्ड क्लास और सोशियली एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस स्पष्ट भाव में निर्धारण करी कमिशनर नियुक्त करिसेंती रिटायर्ड जज जस्टिस रघुनाथ विश्वाल एवं तार मेंबर भी अच्छा नवनीत रथ एवं मिस मिताली चेनारा एवं प्रशांत कुमार पात्र यही करने सहित राज्य गणतंत्र सहित प्रदेश देशर माननीय मंत्री ए बाबद स्पष्ट भाव में उल्लेख कले जम्मू काश्मीर विश्वास सहित आपको ग्रहण करेंगे। धन्यवाद। जय जगन्नाथ। धन्यवाद। श्री मलुक नागर जी। सब धन्यवाद, आपने बोलने का मौका दिया। और ये देश के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण बिल है क्योंकि पूरे वर्ल्ड की नजरें जम्मू कश्मीर पे लगी हैं और 370 के बाद खास करके तो जो पिछले 68-70 सालों से इन्हें कुछ दिया नहीं, जो वहां के जो एसटी में जो गुजर मुसलमान हैं या जो गुजर बकरवाल हैं, तो इनको
पिछले दिनों इनकी वोट ले ली जाती थी, रिश्तेदारियां कर ली जाती थी और देने के नाम पे इनको कुछ होता नहीं था, जितनी भी पिछली सरकारें रही हैं। तो 370 हटने के बाद इनको जो सुविधाएं दी, मुझे लगता है कि जो आज मौजूदा सरकार है उन्हें पूरा रिसर्च कराया, चाहे कारगिल के समय था, चाहे 1947 के समय था, चाहे 1952 के समय था, जितने भी पाकिस्तान और हिंदुस्तान की लड़ाइयां हुई, जितने भी उग्रवादी हमारे देश में घुसते थे, उनको बगैर तनख्वाह लिए हुए सरकार से और सरकार के सिपाही की तरह वहां के जो गुजर मुसलमान है, जो गुजर बकरवाल है, उन्होंने जो लड़ाइयां लड़ी, उसको ध्यान में रख करके सरकार ने इनको जो आरक्षण की सुविधा दी, दिल से मैं सरकार का इसके लिए धन्यवाद देता हूं, सराहना करता हूं और भर्त्सना करता हूं जो पिछले 68-70 सालों में इनको कुछ दिया नहीं गया था। तो मैं एक चीज आज कहना चाहता हूं, जो पीओके से लेके आ रहे हैं उनको कुछ भी सुविधा दो, बहुत ही अच्छी बात है, और जो गरीब लोग हैं, कश्मीरी पंडित हैं, उनको भी सुविधा दो, ये भी बहुत अच्छी बात है। लेकिन जो वहां के जो गुजर मुसलमान हैं, जिन्होंने हमेशा जाने दिए देश के लिए, लड़ाइयां लड़ी हैं देश के लिए, और 370 पे जिन्होंने मिठाइयां बांटी पाकिस्तान और हिंदुस्तान की बाउंड्री पे, उनके लिए सरकार ने जो एक आरक्षण निश्चित किया, अगर किसी को कुछ दे देते हैं, किसी को दान दे देते हैं, किसी को कोई चीज दे देते हैं, उसमें से अगर वापस लेते हैं तो फिर बहुत जोर पड़ता है। तो अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से मैं सरकार से मांग करता हूं कि आरक्षण किसी को भी देना है तो जो पहले उनको 10% दे दिया उससे अलग रखा जाए, उनका आरक्षण ना छेड़ा जाए, और जो अब देना चाहते हैं सरकार आरक्षण, उनको अलग से कितना ही दे दो। तो हम देश के लिए जो लोग जान दी, और देश हित में और जनहित में और जम्मू कश्मीर के गुजर बकरवाल के हित में आपके माध्यम से सरकार से मांग करता हूं कि उनके आरक्षण को ना छेड़ा जाए। अगर सरकार को कोई आरक्षण देना भी है तो अलग से उनको कितना ही भी आरक्षण दे दो, पर उनका कम ना करा जाए। बहुत बहुत धन्यवाद साहब। धन्यवाद जी। श्रीमती सुप्रिया सुले जी। Thank you very much, sir. I stand here on behalf of the Nationalist Congress Party to support the Jammu Kashmir Reservation and the Reorganization Amendment Bill, sir. Sir, I have very fond memories as a child about Kashmir, and fortunately Dr. Saab is sitting right here, and this is actually an opportunity for me to show gratitude to him and his family, who has led this most beautiful part of India. And I would like to read a few lines about Kashmir, sir. From a Sufi poet called Amir Khusraw, he said, if there is paradise on earth, it is this, and it is this. This is how much we all think about Kashmir. Nestled in the foothills of Himalayas, the Kashmir region is celebrated and esteemed for its ineffable and incomparable aesthetic wonder and charming beauty. Beautiful lakes, acres of Mughal gardens, mighty snow-capped mountains, rich saffron fields, vibrant meadows, crystalline glaciers are just some of Kashmir's natural features and landscape, which are in this poetry, which is the paradise of earth, sir. However, Kashmir's paradise, in many ways, brutally violated, and its peace has been plundered for various reasons, sir. But the flourishing meadows, stark mountains, and the vast fields, motives of freedom, but with hundreds and thousands of military forces scrutinizing Kashmir, freedom feel like a faraway and an elusive force. Nonetheless, beyond each blossoming tulip, flower fields and wild-eyed smile lies a story of Kashmir. Kashmir is essentially a region of stark contrast. It's actually a story of paradoxes. For beauty exists despite of its bloodiness, faith, tenacity, inner peace can be seen in its local residents amid all these activities which have happened in these decades. Fragments of paradise can be found despite the most hellish of horrors. Hope we reignited with all the hope seems to be forsaken. Kashmir is a place that beckons your soul, stirs your spirit, converses with your heart and dwells in your mind long after your body has departed. So I think Kashmir has really been through a very difficult journey. And administration is something which is continuity. Yes, it has had its red spots, black spots, it has had its moments, and I think unanimously everybody has contributed to the journey of Kashmir. So I think we can't just isolate one bad story to the glorious part and the contribution
in India's development, tourism, growth, beauty story, cultural story of India will be always incomplete without Jammu, Kashmir and Ladakh. So I think now we really need to look at the larger picture. We have to stop being a prisoner of the past and history. Because every time I see the Bharatiya Janata Party, I saw the leader speaking, the first person from the Treasury bench. I thought he'll enlighten us with what is achieved in the last 4 years. But I couldn't hear much from him, unfortunately. And nor do I want to get into a swinging march, because I genuinely owe a lot to Jammu and Kashmir and Ladakh, because it has given me my finest happy family moments which I ever have to look back in my life of my 5 decades would be all connected to Jammu, Kashmir and Ladakh. Sir, I absolutely welcome the decision and the reservation decision taking. But I would like to suggest to the Honourable Home Minister, who's been so large-hearted about this reservation in Jammu and Kashmir, I would like to make a suggestion to him that instead of bringing piecemeal programs about reservation, why doesn't he bring a comprehensive bill pan-India about reservation? The state where I come from, sir, Maharashtra, today is having huge challenges with Maratha, Dhangar, Lingayat and Muslim reservation issues pan-Maharashtra. The same thing resonated in Maqbul's Bhai's speech in Uttar Pradesh. In Rajasthan, the same. So why doesn't this entire house sit together, put their minds together and find an amicable solution in the larger interest of this nation on a discussion of reservation for all faiths? So when it comes to my state, it's about Maratha, Lingayat, Dhangar और मुस्लिम समाज की आरक्षण की बहुत बात हो रही है. So I was just trying to connect the two dots and see if you can do it in Jammu Kashmir, why cannot be applicable to my state, which is actually burning right now. So this is something I would like to put forward in front of the Honourable Home Minister. I would like to ask the Honourable Home Minister, who I remember his speech. It was when he said it in the old Parliament building. He told us his dream and his plans for Jammu Kashmir, and we were also quite keen on it, because who doesn't want peace? So we all thought, and we had put our hopes in him, and hoping that there'll really be a huge change in Jammu Kashmir, the lifestyles of the people. And I would like to ask, and I remember him committing to good investments on the floor of the house in the old building and to elections. Unfortunately, that has not happened. And I would like to put the urban local bodies, which Saugata Babu said in his speech, I would like to take that point forward, that the urban local bodies elections which were to be held in Srinagar have been postponed, and the excuse given or the reason given would be delimitation. Now, had they not thought about this before? And 4 साल हो गए sir, delimitation का तो homework पहले भी कर सकते थे. So what is the reason that you want to give them freedom, you want a democratic country? The first message you have to give to the people of Jammu, Kashmir and Ladakh is to have a fair election in that country. So हमारी मांग रहेगी कि पहले आप वहाँ एक election ले लीजिए. This is, I think, really going to be the honest commitment that the Honourable Home Minister made to this nation, and we trusted him. I'm not saying we mistrust him now, but I want to put it on record that we are really hopeful that they walk the talk. The other thing, sir, I would like to highlight is the tourism. I have myself been to Kashmir in the last 3 years once, and clearly the tourism has improved. But let's have some data. Tourism is 7% of Jammu, Kashmir and Ladakh's development story. So if you look at the economy, only 7% is of the entire bowl of Kashmir, if you say. So if only tourism is 7% of the economy, then what about the horticulture? What about the agriculture? What about the changes in climate that are having? हमारे भी किसान दिक्कत में है महाराष्ट्र में because of climate change. The same issue continues to happen in Jammu, Kashmir and Ladakh. So what is there a plan this government has vis-a-vis climate change with agriculture and horticulture, and what are their plans for Jammu Kashmir considering they don't have a government in place? अगर किसी आम आदमी को कुछ मदद लगे तो किसके भाई वो तो LG को नहीं मिल सकता. So what is the plan they have for all these, like kisan ho, yuva ho, mahila ho, like they say that is the new dharma of the BJP. So we really want to see them walk the talk for all these 4 verticals that they are. Unemployment, like Saugata Babu said, unemployment is at its peak in India, and so is it in Jammu Kashmir. So what specific intervention are they doing for unemployment? And one point which is alarming in Kashmir today is electricity. आज धरने हो रहे हर जगह जम्मू कश्मीर और लद्दाख में, श्रीनगर में 10-10 घंटे का पावर कट होता है सर. So what has really happened in the last 4 years? What magic has happened? If there is no electricity, how
are all the other things going to work? So these are some things which I'm sure the Honorable Home Minister would throw some light and enlighten us on how these things are going to be taken forward. And if there is a gap of electricity, एक बार India में कहते हैं there's a surplus of electricity. So national grid से क्यों जम्मू कश्मीर लद्दाख में नहीं जा रहे हैं बिजली? Why do people, our brothers and sisters and our children in Jammu Kashmir have to suffer with no electricity for 12 hours in a place like Srinagar? अगर श्रीनगर में 12 घंटे बिजली नहीं है तो बाकी के जो छोटे-छोटे गांव है वहाँ क्या होता होगा सर? So this is something we need to really discuss. The other big point which I was coming which is my last point, sir, that yes, things are better, but that doesn't mean they are okay. In September 2023 and in November 2023, there have been 2 major attacks and we have lost very, very brave sons of India. They are our sons, sir. ये शहीद हुआ है इस देश के बच्चे. और उसमें कौन है? कर्नल मनप्रीत सिंह, मेजर आशीष धोनचक, DYSP in JNK Police, Humayun Bhatt. This is in September 2023. In November 2023, the martyrs are Captain MV Pranjal, Captain Shubham Gupta, Haribau Abdul Majid, Lance Naik Sanjay Bisht, and paratrooper Sachin Laur. These are people in Rajouri and Punj where there is a problem. So we can't say everything is wonderful. पहले से बेहतर है, जरूर है. और अच्छे को अच्छा बोलना चाहिए. तो जो अच्छा हुआ है उसके लिए I do compliment the government, but a lot needs to be done. Everything is not okay because we've lost our sons. So tourism has gone up? Yes, it has. But when we lose our sons of soil, then really can we say the wonderful stories about Kashmir and say, oh, we are so happy tourism has gone up. But when our so many sons have gone, बच्चे शहीद हुए इस देश के लड़के नौजवान हैं. So we really need to introspect. It's not just about thumb chesting and, oh my God, we've done something wondrous, sir. We really need to walk the talk. वो माँ जानती है जिसका बेटा वहाँ शहीद हुआ है. वो बीवी जानती है उसका दुख, उसके बच्चे जानते हैं उसका दुख. For us, these are names. We will pray श्रद्धांजलि, आदरांजलि to them because जिंदा उनको रहना है. उनकी फैमिली का दुख रोज हमको नहीं पता. वो उनके बीवी, माँ और बच्चों को ही वो दुख पता है. So I think this house needs to be far more synthetic. We need to be more empathetic, more compassion towards Jammu Kashmir. And it's not about them versus us. I think we all love Kashmir equally. So it's not that they have done something wonderful and we did something disastrous. Not at all. And let's put some data. Kashmir was always very tourist friendly. People hosted us. They opened their homes to us. So they have been wonderful, proud Indians. And I would like to talk about Farooq Abdullaji's family's contribution in making sure that Kashmir remained an integral part of India. If it happened, I will put it on record. It's only because of his family and the commitment at that time that Pandit Jawaharlal Nehru did in the United Nations and Lord Mountbatten's contribution at that time, the way they negotiated it, that they stayed with us, they loved, and all the reason for many, many decades that there was no violence there is the contribution of Dr. Farooq Abdullah and his entire family. So I would like to so it's a combination. And it's not only that, even the Mufti family. आज ये इनके खिलाफ बोलते हैं, but कभी तो एक थाली में खाना खाया ना. Abdullah family also was their partners and so were the Muftis. So today it's not fair that just because they're on this side, they've done a bad job, and if they're on that side, they have a good job. I think अच्छे को हम भी कह सकते हैं, तो आप भी थोड़ा बड़ा दिल दिखाइए. And I think we are committed to contributing and supporting this government in whatever way we can, in a small way that we can, to make sure that the peace, happiness of Kashmir comes back, and every Indian who's so proud of this jewel in our crown, to make sure it's a safe place and it's a secure place, and every child gets a good quality education, every senior citizen has good freedom, he has to have good quality hospitals there without power cuts. So I think it's a large picture. Many things have been discussed. These are 2 small steps in the larger good of Kashmir, but still a lot more needs to be done. So it's not, and we would prefer that these decisions get taken in their own assembly. Why should we do decisions for somebody else's assemblies? We are only looking at India as a piece. We don't want to take state decisions. Unfortunately, sir, today even during question hour, assembly ke sawal hum parliament mein chinta kar rahe. I think I remember, and I'd like to quote Arun Jaitley ji, who used to always support cooperative federalism.
I think cooperative, I mean, I miss Arunji so much in the House and Sushma ji both, because if there were two leaders in the BJP who believed in cooperative federalism, were Sushma ji and Arunji. And I think we would like to resonate, remember them, and I hope from what I've said, the BJP remembers their senior leaders who really fought for cooperative federalism and gives the fair rights to the people of Jammu, Kashmir and Ladakh, which were an entire state by itself, which is broken into three. But abhi jo ho gaya, no point disagreeing or agreeing with what has happened. But I hope the BJP and the central government is committed to bringing up all the glory of Jammu, Kashmir and all the people, giving them a fair and a happy life in the future. Thank you, sir. Thank you very much. Sri Hasnain Masoodi ji. बहुत शुक्रिया जनाब। जनाब आज बाबा कौम शहरी कश्मीर शेख महमूद का जो ये पैदाइश है, पहले मुझे इजाज़त दीजिए कि मैं उनको खराज जिद्दत पेश करूं। जनाब सरदारी आवाम का हक है, हिंदू मुस्लिम सिख इत्तेहाद और लैंड टू टिलर जैसे स्लोगन उनके हैं, क्योंकि जो आज हम बहस कर रहे हैं कि जो हमारे अभी बेख्तियार तबके से हैं उनको बाख्तियार बनाने की जो बात हम करते हैं तो उनको ज़रूर हम याद करेंगे, क्योंकि जो भी जम्मू कश्मीर के लिए सोशल जस्टिस प्रोग्राम को चलाने के लिए जो काम किया वो तो सारी बरसगीर में उसकी कोई मिसाल नहीं है। जनाब जब पहले मैं आऊँगा जनाब जम्मू कश्मीर रिजर्वेशन अमेंडमेंट एक्ट, जनाब ये एक्ट हमें सीधे सीधे 5 अगस्त 2019 के फैसलों पर लेता है। क्यों? क्योंकि 5 अगस्त 2019 के फैसलों को मार्केट किया गया। एक के बाद एक मंत्री ने कहा, एक के बाद एक लीडर ने कहा कि वहां कुछ नहीं था, स्टोन एज है, कोई रिजर्वेशन नहीं, कुछ नहीं, वहां पर सब पिछड़े थे, कोई एससी की कोई बात नहीं। यह जो एक्ट है 2003 का है, जिस एक्ट में आज आप तरमीम कर रहे हैं ये 2003 का है। 2003 में ये सारा रिजर्वेशन दिया गया था, तो आज आप उसका सिर्फ तरमीम कर रहे हैं। तो ये पहले जानने की जरूरत है जो मिस पर जो मार्केट किया गया 2019 के फैसले वो सारा गलत था, और जो ये एक के बाद एक वजीर ने जो यहाँ कहा कि वहाँ कुछ नहीं था, कोई तरक्की नहीं थी, वो सारा बिल्कुल एक फ्रेब था, एक झूठ था, मिसलीड किया गया कंट्री को। इससे आज उसकी तायीद होती है। तो जनाब दूसरी बात यह है कि आज हम स्टेट जो लेजिस्लेचर है, जम्मू कश्मीर का लेजिस्लेचर है, उसके इख्तियारात का इस्तेमाल कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं? यह कानून तो जम्मू कश्मीर के लेजिस्लेचर का बनाया हुआ ना, इसका संशोधन, इसकी तरमीम तो वही करेगा ना। ये क्यों हम कर रहे हैं, कैसे करें, किस इख्तियार के तहत कर रहे हैं? जनाब ये हम कर रहे हैं रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के तहत, उसका उपयोग करके, उसका इस्तेमाल करके हम कहते हैं कि हम ये यहाँ ये तरमीम करेंगे। जनाब मुझे कहिएगा, एक फंडामेंटल क्वेश्चन है, रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट जो है उसको चैलेंज किया गया सुप्रीम कोर्ट के सामने। हमने अपनी बहस तमाम की, आपने भी अपनी बहस तमाम की, वहाँ आपके जो अटॉर्नी जनरल थे उन्होंने बहस की, सॉलिसिटर जनरल थे उन्होंने बहस की। हमने पूरा अपना ये पक्ष रखा कि कैसे रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट जो है वो आइन के मुनाफी है, आइन के विरोध में बनाया गया है, कैसे हम उस आइन को रोनते हुए बनाया गया। जनाब अगर वहां पर सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला महफूज रखा है तो क्या यह आपको शोभा देता है कि आप उसी कानून का प्रयोग करें, उसी कानून का इस्तेमाल करें जो जुडिशल सिक्योरिटी में है, जो सुप्रीम कोर्ट ने रिजर्व किया फैसला, सारे दलाइल सुन के हमारा ये कहना है कि आपके पास कोई इख्तियार ही नहीं है। आपको आर्टिकल 3 के तहत, आर्टिकल 1 के तहत आपको स्टेट के 2 हिस्से करने का, फ्रैगमेंट करने का, यूटीज में डिवाइड करने का कोई इख्तियार है ही नहीं, और ये आपने आईन को रोंद कर किया। तो अगर जनाब टॉप कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट के पास मामला है, होना यह चाहिए था कि हम सब इसका इंतजार। मैं कंटेंट पर नहीं हूं, मैं तरीकेकार पर हूं। ये नहीं कि जो जिस जाति को या जो हमारा जो हिस्सा है, सेगमेंट है, उसको बाइख्तियार नहीं बनाना चाहिए। मैंने पहले हवाला दिया बाबाई कौम का कि उन्होंने कैसे सोशल जस्टिस प्रोग्राम तक 34 लाख कनाल जमीन ट्रांसफर किए और उसमें 70% डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी मेरी बिल्कुल तायीद करेंगे, जम्मू में एससी उसको गया। लेकिन बात यह है, एक मूल मंत्र है हमारा विश्वास एक आइन पर, तो आइन को रोदा जा रहा है। कैसे आप कर रहे हैं? इंतजार कीजिए, सुप्रीम कोर्ट फैसला देगा, कुछ दिनों का इंतजार होगा, वहां से फैसला आएगा, उसके बाद करना चाहिए था। ये एक पहली बात है। दूसरी बात है कि आप स्टेट के ये छोड़ना चाहिए था, स्टेट असेंबली है ही नहीं। यहां पर वादा किया गया स्टेट को रेस्टोर किया जाएगा, 6 साल से इंतजार कर रहे हैं, 10 साल से कोई इलेक्शन नहीं हो रहे हैं। आप खुद से जवाब पूछिए ना।
आपकी एक जिम्मेदारी है, कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन, जो पॉस्टरिटी के लिए आपकी जिम्मेदारी है। देखिए, आप जो आपने यहां पर देखिए उनकी तकसीब कर रहे हैं, तो जनाब हर एक को उसका हक मिलना चाहिए, उसके खिलाफ हम नहीं है, लेकिन आप कहिएगा कि आप किस इख्तियार का इस्तेमाल करें। दूसरी बात है, नहीं जी 5 अगस्त के बाद सब ठीक हो गया। अगर सब ठीक हो गया, ये क्या बात है? आप खुद से सवाल पूछे, 10 साल के बाद भी वहां कोई इलेक्शन में होने की हिम्मत नहीं हो रही है आपको करने। आपने यूएलबीज की इलेक्शन भी नहीं की, पंचायत भी खत्म कर दी। क्या जब हमारे प्रधानमंत्री पेरिस में कहते हैं कि सिक्योरिटी काउंसिल का क्या महत्व है, जब उसकी सबसे बड़ी जमहूरियत उसका हिस्सा नहीं है, उसका मतलब है हमारे देश के साथ, हम उसकी तारीफ करते हैं। लेकिन वो कैसे कहते हैं मदर ऑफ डेमोक्रेसी इंडिया, जब 1.5 करोड़ लोगों को 10 साल से कोई हक ही नहीं है। तो दूसरी बात यह है जनाब, दूसरी बात आप कहते हैं कि सब ठीक हो गया। अगर आप बात कर दीजिए जम्मू कश्मीर का मामला, अगर सब ठीक है तो जनाब आप G20 में वहां के जो आए थे उनको दाशिगाम क्यों नहीं ले सके, गुलमर्ग क्यों नहीं ले सके? आप कहिए आप एम्बेसडर्स को लाए, लेकिन आपकी हिम्मत नहीं हुई गुलमर्ग लेने की, दाशिगाम। दूसरी बात यह है, जब आप कह रहे हैं कि पथराव बंद हो गया, अरे पथराव बंद हो गया चलिए ठीक है, लेकिन ये हाइब्रिड मिलिट्री की नई चीज किसने बनाई? ये आपके सिक्योरिटी फोर्स है कि अब हमारे दरमियान बैठे हैं, सारा सदन सुन ले, आप कह रहे हैं हमारे दरमियान बैठे हैं हाइब्रिड मिलिटेंट्स। वो क्या है? हाइब्रिड मिलिटेंट है जो अपना काम काज करता है, अपना स्टॉल है, अपनी दुकान पर बैठा है, अपनी नौकरी पर बैठा है, लेकिन हाइब्रिड मिलिटेंट है, उसके जेब में या कहीं पर कोई हथियार है। जब इसको संदेशा मिलेगा, उसको हिदायत होगी, वो करेगा, वो अपना काम करेगा। यही ईदगाह में हुआ, हमारे पुलिस ऑफिसर पर गोली चलाई गई। यही अभी टंगमर्ग में हुआ, एक पुलिस ऑफिसर को शहीद किया गया। और अभी जैसे कि सुप्रिया जी ने जिक्र किया, कोकरनाग में, वो तो अंदाज के साथ वाला इलाका है, कोकरनाग में हमारे कमांडिंग ऑफिसर चले गए, और आपका अपना एतराफ है कि ये वहां का जो कश्मीर का है वहां से ही कोई नौजवान था। तो जनाब जो आप बेच रहे हैं देश को, सब नॉर्मल है, नॉर्मल सी नैरेटिव बना रहे हैं, कुछ कल्चरल प्रोग्राम्स के बुनियाद पर, कुछ इवेंट्स की बुनियाद, ये कैसे आप गुमराह करें देश को? आपकी जिम्मेदारी है देश को वो कहें जो सच है। तो जनाब ये रही ये बात, अगर आपने कहा था कि वहां जहां पर ही मैंने सुना, यहाँ पर मंत्री जी कह रहे थे न कोई जूनियर जस्टिस एक्ट है, न कोई रिजर्वेशन है, न कोई एससीज के लिए है। उन्हें मालूम नहीं था कि 70% ऑफ जो लोग थे, एससीज थे, उनको लैंड टू टिलर प्रोग्राम के तहत शेर कश्मीर के जमीन फराहम की। तो ये एक बात है। दूसरी बात है, ये रही बात जनाब आपकी जो रिजर्वेशन एक्ट की, आप ले रहे हैं सरकार जो जम्मू कश्मीर के लेजिस्लेचर का इख्तियार है वो इस्तेमाल करें, एक ऐसे कानून के तहत इस्तेमाल करें जो इस वक्त जिसके चैलेंज किया गया है। और कॉन्स्टिट्यूशनल मॉरलिटी जो है, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रॉपर्टी है, वो आप पर लाजिम करती है आप सुप्रीम कोर्ट लिहाज करें, सुप्रीम कोर्ट का एहतराम करें। सुप्रीम कोर्ट जब तक कोई फैसला नहीं देता तब तक कोई काम न करे, उस कानून को अपनाने का। ये हो गई जनाब जहां तक रिजर्वेशन की बात। अब ये कहिए असेंबली का ही नहीं, आप कह रहे हैं मैं करूंगा, हम करेंगे रिजर्वेशन। अरे जनाब रिजर्वेशन के जो कंटेंट है बिल का वो तो अलग बात है, लेकिन आप किस चीज का इस्तेमाल करके ये रिजर्वेशन कर रहे हैं? जनाब कहीं पर असेंबली है नहीं, आप कहते 2 सीटें रखेंगे जो हमारे कश्मीर माइग्रेंट्स है और एक रखेंगे पीओके जो हमारे वहां से माइग्रेंट्स है। जब असेंबली ही नहीं है तो क्या जल्दी है, क्या इजलत है? एंड मोर सो when we have the Parent Act and that is kind of being implemented now is under judicial scrutiny before the top constitutional court of the country. आप अमानता कैसी करते हैं सुप्रीम कोर्ट की, कैसे उसको खातिर में नहीं लाते सुप्रीम कोर्ट को? ये होना नहीं चाहिए था और ये होना नहीं चाहिए। तो दूसरी बात है, अब किसको ये इख्तियार दिया जा रहा है? आप खुद देखिए किसको इख्तियार दिया जा रहा है। इख्तियार दिया जा रहा है एलजी को, वो नॉमिनेट क्यों? आप एलजी को जो एक नॉमिनी है, जो एक अपॉइंटी है प्रेसिडेंट के, आप उसको कैसे इख्तियार दे रहे हैं? अरे अगर आपने पहले तो मैं फंडामेंटल इसका जो है फंडामेंटल जो है जो बुनियादी है वो बुनियादी में इसको चैलेंज करता हूं। बुनियादी तौर इनके कंटेंट पर नहीं बल्कि इसके तरीकेकार पर जो आप अपनाने जा रहे हैं या अपना रहे।
तो उस पर मेरा एतराज है, उस पर मेरा विरोध है। लेकिन अब मतन पर भी चाहिए। क्यों देंगे एलजी को? एलजी नॉमिनेट करेगा, किसके कहने पर करेगा? खुद अपनी मर्जी है। देखिए हमारा जो है वो इशारे दिखा रहे हैं मुझे, क्या नाम है, ठाकुर साहब कह रहे हैं कि नहीं यहाँ से आ जाएगा संदेश। यहाँ से संदेश की बात है, ये तो वहां को जब आप नॉमिनेट करेंगे तो नॉमिनेशन में उनका जो रोल होगा, जो वहां के जो इलेक्टेड चीफ मिनिस्टर होंगे, जब भी स्टेट आप जैसे कि आपने वादा किया है, जब लेजिस्लेचर बनेगा तो वहां का उसके जो वहां पर जो गवर्नमेंट है उसकी रिकमेंडेशन होगा, जैसे हर जगह होता है। आप ये नहीं, आप इस बात का भी एहतराम कीजिए, हमारी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली का बनाया हुआ आईन अभी नाफिजुल अमल है, जिसके साथ गिरधारी लाल डोगरा मरहूम थे, कृष्णदेव सेठी थे, तो सरदार बुद्ध सिंह थे, कौशिक बकोला थे। क्या वो किसी ने भी मनसूख किया वो आईन? खुद से सवाल पूछे। क्या आईन, पार्लियामेंट को आईन मनसूख करने का हक है, इख्तियार है? नहीं है। जब बात उठेगी तो उस आईन के तहत भी एक तरीके का अर्थ था कि अगर अनरिप्रेजेंटेड एक सेगमेंट हो तो उसकी कैसे हम उसकी भरपाई करें। और उस आईन को नहीं हुकूमत का, नहीं हमारे जो सदर जमहूरिया उनका इख्तियार है, वो क्योंकि वो कॉन्स्टिट्यूएंट पावर है। एक कॉन्स्टिट्यूएंट पावर के एक्सरसाइज में बनाया गया है आईन, और उस आईन में ही लिखा है ये इंटीग्रल पार्ट होगा जम्मू कश्मीर मुल्क का। तो वो आईन किसी ने डिसेबल तो नहीं किया, वो तो वहीं पर मौजूद है, किसी ने एब्रोगेट तो नहीं किया। आपका इख्तियार नहीं था, कैसे एब्रोगेट करते? तो जनाब, जिन वादों पर हमने रिश्ता जोड़ा था मुल्क के साथ, जिन यकीन दहानियों पर हमने जोड़ा था, वो ये था कि आपका एहतराम किया जाएगा, आपकी शिनाख्त का, आपकी कवानीन का, आपका जो इंटरनल जो सिस्टम है उसका एहतराम किया जाएगा। उन्हीं हमने एक महात्मा गांधी के हिंदुस्तान के साथ एक रिश्ता जोड़ा था। यहाँ पर एक सेकुलरिज्म होगा, सोशलिज्म होगा, और ये मूल मंत्र होगा हमारे समाज का। और जब आप कहते कि नहीं, आपने जिसको अपनी उपलब्धि कहा, अपना जो कामयाबी कहा, वही तो हार है। अब मुझे कहिए एक सवाल पूछिए, हमारी 7 स्टेट से 7 हम कहते हैं नॉर्थ ईस्ट की, वहां पर आपकी पॉलिसी है, वहां पर जो अनसर्टिनिटी है, वो विरोध है, उस विरोध का आप वहां की ऑटोनॉमी स्ट्रेंथन करके आप उसका जवाब दीजिए। होम मिनिस्टर साहब खुद गए वहां और कहा कि मैं उपहार लाया हूं वजीर आजम की तरफ से आपके लिए, मणिपुर को कहा मैं आपके लिए ILP लाया हूं, इनर लाइन परमिट। तो जनाब ये क्या वजह है कि नॉर्थ ईस्ट को वहां का जो तशद्दुद है, वहां की जो अनसर्टेनिटी है, वहां की जो इंसर्जेंसी है, उसको एड्रेस करने के लिए वहां का जो इंटरनल जो उनकी ऑटोनॉमी है वो मुस्तकम कर रहे हैं आप। मैं नहीं जा सकता हूं नॉर्थ ईस्ट जब तक मुझे परमिट नहीं होगा। अनुराग ठाकुर जी जमीन नहीं खरीद सकते बोडोलैंड में या मणिपुर में, ना मैं खरीद सकता हूं जब तक वहां की इजाजत न हो, नहीं हम नौकरी के लिए वहां दरखास्त दे सकते। वहां अगर आप स्ट्रेंथन कर रहे हैं तो क्या वजह है जम्मू कश्मीर में आप बिल्कुल जम्मू कश्मीर में आप वो तो उसको महरूम ही कर रहे हैं। ये कैसा अप्रोच है? ये कैसा अप्रोच है कि जम्मू कश्मीर में आपकी क्या इसकी क्या वजह है? क्या तनासुब की वजह से, क्या ऐसी और वजह से? अगर आप इस पर आमादा हैं कि हम बोडोलैंड 10,000 स्क्वायर किलोमीटर देंगे, जहां पर आसाम के चीफ मिनिस्टर को जमीन खरीदने का हक नहीं, हम जमीन खरीदने का हक क्यों छीन रहे जम्मू के निवासी से, जम्मू निवासी से, कठवा से, उधमपुर वाले से, रियासी वाले से क्यों छीन रहे? अगर वहां का आप कह रहे हैं मणिपुर वाले में कोई नहीं आएगा जमीन खरीदने के लिए, यहां का हम डिसम्पावर कर रहे हैं जम्मू वाले को, जम्मू निवासी को, पुंछ वाले को, राजौरी वाले को, जम्मू वाले को, क्यों उसकी रोजी रोटी छीन रहे? तो जनाब ये सारे मामले जो हैं इनकी तरफ आपको तवज्जो देनी हो जाएगी। सबसे पहले आप देखिए, ये नहीं अफसरशाही नहीं चलेगी। अगर अफसरशाही कामयाब होती तो फिर अफसर सारी मुल्क में चलाइए। आप क्यों जश्न मना रहे हैं 5 रियासतों में अपनी कामयाबी के? वो तो बड़ा अच्छा है, जश्न मनाना आपका सही है, लोगों ने अपना एक वर्डिक्ट दिया, उसको क्यों सेलिब्रेट आप कर रहे हैं? लेकिन जब जम्मू कश्मीर का लोगों की बात आती है, प्लीज कंक्लूड, हमारा ही मामला है ना, तो आप कहते हैं देश का क्राउन है कश्मीर, बात सुनने का सच। तो जनाब जम्मू कश्मीर में कोई भी इख्तियार क्यों किया जा रहा है? नौकरियां क्यों दी जा रही है जम्मू कश्मीर की? हम तो कुछ नहीं मांग रहे, हम देश का हिस्सा है, हम देश के साथ हैं, देश के साथ रहे हैं,
देश का दिफा किया है। लेकिन जनाब, हमारे भी कुछ हुकूक हैं, हमारे जम्मू के नौजवान के कुछ हुकूक है, कश्मीर के नौजवान के कुछ हुकूक है। तो क्यों आप इस पर बिल्कुल आप इंसिस्ट कर रहे हैं, यू आर काइंड ऑफ कीन दैट दे शुड बी डिप्राइव्ड। आप जम्मू कश्मीर को एक लेबोरेटरी बनाना चाहते हैं, क्यों बनाना चाहते हैं? अब देखिए, अब देखिए ये सारे 5 साल के पोस्ट 5 अगस्त 2019 का देखिए वातावरण क्या है। ये खुद है, ये सदन के लिए जो यहाँ के ऑनरेबल मेंबर्स है, इनके लिए एक पैगाम है, आप में हिम्मत नहीं हो रही है इलेक्शन करने। इलेक्शन कराइए, वहां की वो जो भी आएगा वो शपथ लेगा आईन का, लेकिन वो नहीं करा रहे। तो दूसरी बात ये है कि जो आप नॉर्मल सी नैरेटिव बिल्डअप कर रहे हैं, वो नॉर्मल सी नैरेटिव की बुनियाद कहां पर है? तो जनाब, जो बार बार आप कहते हैं एक बड़े लीडर का आप नाम दे रहे हैं, सबका उनके लिए एहतराम है, लेकिन मुझे कहिएगा जिस बड़े लीडर का नाम मैंने पहले भी 5 अगस्त को भी उसका नाम लिया था, जिस पर सारा आप उठ खड़े हुए थे, राजनाथ सिंह जी भी और अमित शाह जी भी, और मुझे लगता है और जो पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर भी। बात यह है कि देखिए, क्या वो नाम, क्या वो हस्ती शामिल नहीं थी 1947 के फैसलों के साथ? एक बात है, क्या वो